Politics on as climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved to their ambitions, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and rolling thunder. Children dying without mothers, when no one show concern. We must unite and stand together, because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real. The sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. नमस्कार देवियों और सज्जनों, हम अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन फोरम वैश्विक संकट हमारा अस्तित्व एकता में है मैं आपका स्वागत करते हुए बहुत प्रसन्न अनुभव कर रहे हैं, जिसे अभी एक साथ 150 भाषाओं में व्याख्या की जा रही है। आज आप सीखेंगे कि हमारे दिन सभी मानव जाति के दिन वास्तव में गिने जाते हैं। आपने वही उल्टी गिनती देखी है जो हमने आपको दिखाई थी। यह मानव जाति के लिए बचा हुआ अधिकतम समय है, लेकिन हमारे पास इसके बारे में कुछ करने और स्थिति को बदलने के लिए और भी कम समय है। इस फोरम में आप इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। आज हम मानवता के रूप में जीवन और मृत्यु के किनारे पर संतुलन बना रहे हैं, और यह तथ्य है जलवायु। यह राक्षसी सर्वेयर्स के पूरे क्षेत्र को खा रहा है, और यह पर्याप्त नहीं हो सकता है। हमारा ग्रह भयानक आपदाओं में घिरा हुआ है, और उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। हमारे घर तूफान और भूकंप से नष्ट हो रहे हैं। पूरे शहर पानी के नीचे जा रहे हैं या आग से जल रहे हैं, मर रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं गति पकड़ रही है और अपने रास्ते में आए हुए सभी को सब कुछ नष्ट कर रही है। अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों लोग अपना सब कुछ खोकर आपदा से भाग रहे हैं। अगर हम आज सर्वरेस को नहीं रोकते हैं तो कल यह हम सभी को खा जाएगा। लेकिन इसी बीच मानव जाति किसमें व्यस्त है? हम सभी उपभोक्तावादी प्रारूप नामक एक ही इमारत में रहते हैं। हमें फर्श से विभाजित किया गया है, अलग अलग कमरों से हमें गलियारों और सीढ़ियों से विभाजित किया गया है। हमें एक दूसरे के साथ संवाद करने से मना किया गया है। हम अपने पड़ोसियों से डरने के लिए बनाया गया है। हमें सिखाया जाता है कि एक दूसरे का सम्मान ना करें। हम एक असली दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में हमें वास्तविकता नहीं देखना सिखाया गया है। सफेद रंग को काला कहने वाले ऊंचे रहते हैं, सफेद रंग को सफेद कहने वाले नीचे रहते हैं। यहाँ हम केवल टेलीविजन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन अपनी आंखों पर बिल्कुल नहीं। अब हमारी बिल्डिंग, हमारे घर में आग लगी हुई है। पहली मंजिल में आग लगी हुई है, दीवारें जल रही है, लेकिन अंदर कोई कुछ नहीं कर रहा है। हमें सिखाया गया है कि कोई हमारे लिए कुछ तय करता है, लेकिन अब कोई भी हमारे लिए कुछ भी तय नहीं करता है, बल्कि हमारे घर में आग लगी हुई है और हम इसके बीच में हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि हम में से कई लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं, और जो लोग ऐसा करते हैं वे विश्वास करने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनके कमरों में अभी तक आग फैली नहीं है। आग सिर्फ बाहर है। हालांकि निचली मंजिलों पर पहले से ही आग लगी हुई है और लोग चिल्ला रहे हैं। जिन्हें हमने इस घर पर नियंत्रण सौंपा है वे छतों पर बैठे हैं और आसमान की ओर देख रहे हैं। वे इस घर में रहने वाले हम सभी की परवाह नहीं करते।
क्योंकि वे हम सभी से ऊपर है। वे बादलों में अपना सिर रख रहे हैं। उन्हें लगता है कि वे दुनिया में सबसे ऊपर है, लेकिन यह दुनिया ढह रही है। हमारे घर में वाकई आग लगी हुई है। आज आप सबको हम बताने जा रहे हैं कि क्या चल रहा है। कृपया धैर्य रखें। हम विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में जलवायु के साथ क्या हो रहा है, हमारे समाज की वर्तमान स्थिति क्या है, और इस स्थिति में हम क्या रास्ता खोज सकते हैं। आज आप जो जानकारी सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, वो हजारों हजारों लोगों के कई वर्षों के काम का, मेहनत का परिणाम है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि आज का फोरम उन लोगों के लिए नहीं है जो हमारे ब्रह्मांड की छत पर है, जिनके सिर बादलों में है और जो पूरी तरह से जमीन से दूर है। यह फोरम हमारे लिए है, इस घर के निवासियों के लिए है, हमारे लिए, मेरे प्यारे पृथ्वी वासियों के लिए है। आप सभी के लिए ज्ञान और धैर्य की आवश्यकता है। Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to such a significant event for all of us, for all of humanity. Today's forum is being simultaneously translated into 150 languages. These are the languages which 90% of the world's population speaks. This is a great chance to be heard by all of humanity. We can only imagine the scale of the preparation for this forum, the huge number of people involved in making sure that the truth will be heard worldwide and that it will be understood and heard by people in their own languages. It is truly a colossal work. It is a tremendous effort. Thousands of people from all over the world have joined together to make our momentous meeting possible today. All this is able to be done only because of the dedication and commitment of these people to humanity, because they understand the importance, the responsibility, including the responsibility to disseminate this important information that will be presented to you today. It is an honor to be part of this team, because without any exaggeration, what you will hear today will save humanity if everyone knows about it. Dear friends, I would like to draw your attention. All information on the online forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, is presented for a non-profit purpose and in the interest of the entire society, entire humanity. The free use, reproduction, and distribution of this forum, in part or in a whole, by any means, without distortion of the transmitted information, and while preserving the links to the source, is permitted. Thank you very much. I want to express my sincere gratitude to the media partners of this forum. They are doing all they can to use their resources to make sure that everyone in the world learns about the Creative Society as soon as possible. They broadcast videos, songs, interviews, talk shows about the Creative Society. And some of them, right now, broadcasting this forum on their radio and TV stations and on their social media. We are grateful for what you are doing for all of humanity, and it is an honor to walk shoulder to shoulder with you in building the Creative Society.
Dear viewers, and right now we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Елизавета Kromova, geologist and geophysicist. Елизавета, the floor is yours. Здравствуйте, уважаемые участники форума и зрители. Для нас большая честь сегодня представить многолетний труд сотен ученых и тысяч волонтеров проекта «Созидательное общество», посвященный изучению истинных причин изменения климата, происходящего на Земле сейчас, не связанных с человеческой деятельностью. То, что мы сегодня расскажем, в таком масштабе и изложении еще никогда ранее нигде не было представлено. Всесторонняя научная работа ведется нашей международной группой с 1996 года. В данном междисциплинарном исследовании на протяжении десятков лет задействованы ученые, специалисты и волонтеры из разных стран. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы прогрессии климатических катаклизмов, которые предстоит пережить человечеству в ближайшие годы. В 2014 году были выпущены выдержки из текущего доклада, но полная информация и наши расчеты обнародованы не были, и позже вы поймете почему. Далее вашему вниманию будут представлены результаты 26 лет исследований. Хочу обратить ваше внимание, что мы будем приводить только ту информацию и те факты, которые вы сами можете перепроверить. Для этого мы намеренно использовали данные из общедоступных источников. Мы не использовали сегодня результаты показаний своих датчиков и измерений, чтобы не пугать и не сеять панику. Сегодня мы будем опираться только на открытые факты, легко проверяемые и общедоступные. Сегодня в докладе мы поднимем 3 ключевых вопроса. Первый. Что же является истинной причиной нарастания климатических катастроф? Второй. Что будет происходить дальше? И третий. Какой выход? Сегодня мы расскажем то, что не афишируют. Такую полноценную информацию вы не услышите из information from official media sources or political reports. These facts are not just being withheld, they're being ignored as not to cause panic in society. We understand that, but at the same time, such silencing is dangerous because it creates the risk of inaction in solving vital issues. First, let's look at the current state of affairs regarding the climate situation in the world as of November 2022. I would like to give the floor to PhD Associate Professor Konstantin Rybachuk, an active participant of the Creative Society project. He has been a reporter and presenter of the weekly climate breaking news for several years now, as well as a speaker of various conferences on climate monitoring and more. So now, he's going to speak about the progression of cataclysms around the world. Konstantin, the floor is yours. Hello, dear friends. The information we're about to present is truly shocking to any sensible person. We live in a time when scientists do not know about the inexorably growing climate crisis. Even more so, politicians do not know either. Now, all of humanity is on the brink of a large-scale climate catastrophe. And at the same time, contemporary science tells us only about anthropogenic climate change, but is silent about the actual cause of climate change. Many people doubt this, doubt climate change, but facts are stubborn things. A year ago, the number of cataclysms in the world did not exceed a few dozen per month.
But this year, we're already registering an average of 200 natural disasters per week. According to our monitoring data, more than 6,000 climate disasters occurred during the first 10 months of 2022. These include floods, fires, hurricanes, tornadoes, mudslides and landslides, abnormal snowfalls and hail. Imagine, it's like 6,000 war zones where climate, the only enemy of humanity, is waging its attack. And that's only what's reflected in open sources of information. In fact, there are many more natural disasters on the planet. And worst of all, these cataclysms have taken many lives that can never be returned. Their families and loved ones can never recover that loss. The monitoring report you will see is the result of work of thousands of volunteers around the world. All facts are cross-checked many times before we use them. All this information is taken solely from public sources so everyone can cross-check it and see for themselves the extent of the horror we have encountered. I want to emphasize that thousands of people are working on collecting and analyzing data. It is difficult for one person to collect and analyze so much information. In our research activities, we have encountered the fact that a lot of data that is available in open sources is being deleted. Information about climatic cataclysms, their power and frequency is simply disappearing. They try to give us the appearance of a more or less favorable climate situation. At the same time, the statistics are more horrifying than ever before in the history of modern civilization. That is especially evident this year. But to soften the situation, they try to tell us that nothing horrible is happening and our climatic condition is within the normal limits. Playback sound system. In the media, the data is falsified and downplayed. Even for one institution, collecting statistics on all climatic cataclysms and anomalies is difficult. But we are volunteers, and there are a lot of us around the world. To get a reliable picture of what is happening, we work with primary sources, research groups that record that data, and directly with eyewitnesses of climatic cataclysms. We're going to show you a climate monitoring video. I ask you to watch this video very carefully. It shows the actual progression of climate change in the world. USA, Taiwan, Kazakhstan, It's a true nightmare that's happened for the first time in my whole life. Bulgaria, It was as if a bomb had fallen. Italy, Who could have known that the water would rush in so fast? We lost everything. Pakistan, अपना घर छोड़ना पड़ा। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार नुकसान $100 बिलियन से अधिक होगा। तूफान श्रेणी 4 तूफान इयान संयुक्त राज्य अमेरिका में फ्लोरिडा निवासियों को मारने वाला सबसे घातक तूफान था। कुछ शहर तूफान की लहर, उग्र हवाओं और बाढ़ से 90% नष्ट हो गए थे। 15 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार नुकसान $100 बिलियन से अधिक होगा। प्यूर्टो रिको से गुजरते हुए तूफान फियोना ने कई मिलियन लोगों को बिजली और पीने के पानी के बिना छोड़ दिया, और यह एक समय था जब यह द्वीप पर असहनीय रूप से गर्म और आर्द्र था। फियोना इतिहास में पहला श्रेणी 4 तूफान है जो इस सुदूर उत्तर को स्थानांतरित करता है। यह श्रेणी 2 तूफान की ताकत को बनाए रखते हुए पूर्वी कनाडा पहुंच गया और देश में विनाश का एक अभूतपूर्व मार्ग छोड़ दिया। हाल के वर्षों में उष्णकटिबंधीय तूफान भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर बढ़ने लगे हैं। न्यूयॉर्क, बोस्टन, बीजिंग और टोक्यो जैसे दुनिया के मेगा सिटी जल्द ही उनके हमले का शिकार हो सकते हैं। तूफान नोरू के फिलीपींस में श्रेणी 1 तूफान के बराबर पहुंचने की
की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन केवल 6 घंटों में श्रेणी 5 सुपर टाइफून के लिए एक विस्फोटक तीव्रता थी, जिसमें हवा के झोंके 196 मील प्रति घंटे तक पहुंच गए थे। लोगों के पास ऐसे बल की प्राकृतिक आपदा के प्रभाव के लिए तैयार होने का समय नहीं था। 9 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए, जबकि कृषि को नुकसान $52 मिलियन से अधिक हो गया। फ्रांस के कोर्सिका द्वीप पर तूफान के दौरान हवा 224 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। तेज हवाओं ने बिजली के तार तोड़ दिए और पेड़ माचिस की तीलियों की तरह नीचे गिर रहे थे। अकेले यूरोप में तूफानों की औसत वार्षिक संख्या 2000 के बाद से लगभग 16.5 गुना बढ़ गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संवहनी तूफानों की संख्या, जिसका नुकसान $1 अरब से अधिक है, अभूतपूर्व रूप से बढ़ रहा है। 2000 और 2010 के बीच उनमें से 34 थे और अगले 11 वर्षों में पहले से ही 95 थे। दक्षिणी गोलार्ध में हाल के दशकों में तूफान की तीव्रता पहले से ही वर्ष 2080 में होने वाले अनुमानित स्तरों तक पहुंच गई है। असामान्य वर्षा और बाढ़। पूरी दुनिया में असामान्य वर्षा की मात्रा बढ़ रही है। 2022 के 9.5 महीनों के दौरान ग्रह पर 36,000 से अधिक दैनिक वर्षा रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। इटली के एंकोना प्रांत में रात भर आधा साल की बारिश हुई। अपने जीवन में पहले कभी भी निवासियों ने पानी की इतनी तेजी से वृद्धि नहीं देखी है। 10 मिनट में लगभग 1 मीटर। ऑस्ट्रेलिया 2022 में ऐतिहासिक बाढ़ की 3 लहरों की चपेट में आ चुका है। ब्रिस्बेन में रेन बम की चपेट में आ गया था, जब लगातार 3 दिनों तक रोजाना 1 महीने से अधिक की बारिश हुई थी। बाढ़ की ऐसी आवृत्ति और तीव्रता को देखते हुए कुछ शहरों के पुनर्निर्माण का कोई मतलब नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर लगभग 1 साल की बारिश 24 घंटों के भीतर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप देश में 21वीं सदी की सबसे घातक बाढ़ में से एक थी। दक्षिण कोरिया के सियोल में अगस्त 2022 में रिकॉर्ड बारिश हुई थी। पानी तेजी से सभी भूमिगत और अर्ध खाने के कमरों में चला गया। सबवे, क्रॉसवॉक, पार्किंग स्थल और यहाँ तक कि अपार्टमेंट भी मौत के जाल में बदल गए। लोगों की मौत घरों में बाढ़ से हुई है। कोलंबिया में केवल 1 वर्ष में बाढ़ की संख्या में 87% की वृद्धि हुई। 2020 में उनमें से 428 थे और अगले वर्ष में पहले से ही 802। इस बीच सुक्रे विभाग में कई नगरपालिकाओं में बाढ़ 1 साल से अधिक समय से चल रही है। सिर्फ 60 साल पहले दुनिया में हर साल 8 बड़ी बाढ़ आती थी और 2021 तक यह संख्या 27 गुना बढ़ गई है। इसके अलावा वे एक साथ होने लगे, एक साथ कई देशों को कवर किया। अकेले 2022 की गर्मियों में सभी महाद्वीपों पर कम से कम 120 देशों में बाढ़ आई। 2022 का मानसून सीजन पाकिस्तान के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी जलवायु आपदा में बदल गया। देश के 1/3 प्रांत जलमग्न हो गए। आपदा से 1600 अधिक लोग मारे गए हैं और 33 मिलियन लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से आधे बच्चे हैं। 2 लाख से अधिक घर तबाह हो गए हैं। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बच्चे अमानवीय परिस्थितियों में बाहर रहने को मजबूर हैं। भोजन, पीने के पानी और चिकित्सा देखभाल की कमी है। दूषित पानी संक्रमण का स्रोत बन गया है। लोगों को नौकरी, आश्रय और आजीविका के साधनों के बिना छोड़ दिया जाता है। करीब 2 माह बीत जाने के बाद भी पानी नहीं गया है। लोगों के लिए दुःस्वप्न आज भी जारी है और केवल बदतर हो जाएगा। अत्यधिक गर्मी और सूखा। 2022 के 9 महीनों के दौरान दुनिया भर में 1 लाख से अधिक उच्चतम तापमान रिकॉर्ड रहे हैं। चीन में विश्व इतिहास में पहली बार एक गर्मी की लहर 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गई और लगातार 79 दिनों तक चली। 900 मिलियन से अधिक लोग अत्यधिक तापमान से प्रभावित हुए थे। असहनीय गर्मी से राहत के लिए लोगों के लिए बम शेल्टर खोल दिए गए थे। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसानों ने रात में काम किया, क्योंकि दिन के दौरान मिट्टी 60 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गई थी। इस गर्मी में यूरोप ने रिकॉर्ड पर अपनी सबसे गर्म गर्मी का अनुभव किया। ब्रिटेन में जुलाई में तापमान इतिहास में पहली बार 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया। फ्रांस में लंबे समय तक हीट वेव के कारण नदियों में पानी इतना गर्म हो गया कि यह परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में परमाणु रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए अनुपयुक्त हो गया। ऐसा ही कुछ फारस की खाड़ी में हुआ। गर्मी लोगों को मारती है। यूरोपीय संघ में जुलाई में 50,000 लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर अभूतपूर्व लू को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस साल उत्तरी गोलार्ध की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भयंकर सूखे ने दस्तक दी है और अकेले 2022 की पहली छमाही में $13.2 अरब का नुकसान हुआ है।
चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अन्य क्षेत्रों में नदियां और जलाशय तेजी से उथले हो गए हैं और नेविगेशन एक तरह से ठप हो गया है। इसने ऊर्जा संकट को भी बढ़ा दिया है और बिजली की कीमतों में वृद्धि का एक और कारक बन गया है। सूखे ने कृषि को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जिससे खाद्य कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पशुधन फीड की कीमत में 90% की वृद्धि हुई। जल संकट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सुरक्षित पेयजल तक पहुंच खतरे में। कोई भी देश, यहां तक कि आर्थिक रूप से विकसित भी, इस समस्या से अछूता नहीं है। इस साल हमारे ग्रह पर 2 अरब से अधिक लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। जंगल की आग 2022 में अलास्का, संयुक्त राज्य अमेरिका अपने इतिहास में सबसे बड़े जंगल की आग के मौसम का अनुभव कर रहा है। 50 साल पहले मेगाफायर जैसी कोई चीज नहीं थी। वे विशाल क्षेत्रों को कवर करते हैं और उन्हें नीचे रखने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। अक्टूबर 2022 की शुरुआत तक अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में पहले से ही 16 मेगाफायर हो चुके हैं और कई और उस पैमाने पर आ रहे हैं। दक्षिण कोरिया में मार्च 2022 में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास एक मेगाफायर पहुंचा। इसे बुझाने के लिए 18,000 लोगों और दर्जनों हेलीकॉप्टरों को लगाया गया था। रूस में पिछले 5 वर्षों में जंगल की आग के क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। सर्दियों में बर्फ के नीचे जलने वाली आग में भी वृद्धि हुई है। 2022 में उपग्रह माप उपलब्ध होने के बाद पहली बार यूरोप में प्राकृतिक आग 770,000 हेक्टेयर से अधिक हो गई। यह कैनरी द्वीप समूह के आकार से अधिक है और एक वर्ष में औसत बर्नअप से 3 गुना अधिक है। और कुछ देशों में जंगल की आग में वृद्धि वास्तव में चौंकाने वाली रही है। चेक गणराज्य में सालाना औसतन 9 हेक्टेयर भूमि जलाई जाती है। हालांकि इस साल सितंबर के अंत तक आग पहले ही लगभग 1,500 हेक्टेयर को नष्ट कर चुकी थी। यह सामान्य से 158 गुना अधिक है। इस साल सितंबर की शुरुआत में ब्राजील में लगातार 3 दिनों में देश में रिकॉर्ड संख्या में आग लगी, प्रतिदिन 1,500 से अधिक। जंगल की आग अब मौसमी नहीं है, अब वे सर्दियों में भी नहीं रुकते हैं और तूफान हवाओं ने ब्रेकनेक गति से आग फैलाई। अल्जीरिया के अल्तारेफ प्रांत में 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के कारण आग की लपटें कुछ ही मिनटों में फैल गईं, जिससे लोगों के बचने का कोई मौका नहीं बचा। आग उन जगहों पर हो रही है जहां वे लगभग पहले कभी नहीं थे। मध्य यूरोप, दक्षिण अमेरिका के वर्षावन और यहाँ तक कि आर्कटिक भी जल रहे हैं। आज एकल प्रलय पहले से ही बहुत कम होते हैं। आपदाओं का एक पूरा झरना जाता है, एक दूसरे को शामिल करता है और यह अंतर संबंध तबाही को तेज करता है और अधिक से अधिक मानव जीवन लेता है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से विकसित देश भी वर्षों से अपने जलवायु रूप से तबाह क्षेत्रों को बहाल नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक क्षेत्र निर्जन होते जा रहे हैं। वर्ष 2100 के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी, वह आज हमारी आंखों के सामने पहले से ही हो रहा है। 2022 में प्राकृतिक आपदाओं की शक्ति और मात्रा में अभूतपूर्व छलांग लगाई गई है और प्रगति को देखते हुए वे रिकॉर्ड गति से बढ़ते रहेंगे। मानव जाति को जीवित रहने के लिए तत्काल असाधारण कार्रवाई की आवश्यकता है। इस बीच हमारे पास बहुत कम समय बचा है। Little time left. This video shows a tiny fraction of the climate disasters that have occurred this year. The year 2022 was watershed. Everyone has seen how abnormal and unpredictable the cataclysms have become. All hopes that the climate will change gradually have collapsed. The progression of disasters is increasing. Just think, over the past 9 months, 100,000 records of heat waves and 36,000 records of precipitation have been broken. That threatens to cause a food crisis of planetary proportions. In the fall of 2022, almost the entire northern hemisphere received another dose of heat instead of long-awaited coolness. In northern Canada, where the average September temperature is about 8 Celsius degrees, temperatures over 30 Celsius degrees were recorded for several days. And in icy Greenland, the temperature was more than 20 degrees above normal. Floods have become so powerful that even economically stable countries cannot withstand their onslaught. While last year floods of the century were recorded,
This year, floods of the millennium are occurring everywhere. These are floods that occur with a probability of once in 1,000 years. Such a climate catastrophe hit northeastern Brazil in spring of 2022. And in the summer, as many as 5 of these millennium floods occurred in less than 1 month in the United States. Some 70 million people were affected. That's a huge number. It's not just a statistic, it's 70 million people who have already been affected. The scale of natural disasters is constantly increasing. Emergency services in many countries already say there are not enough people and equipment to deal with the consequences of climate disasters. In Australia, for example, people have given up hope for help. Over the past year, the country has been overwhelmed by historic waves of floods. People are simply abandoned amidst a temporary climate disaster and no help can reach them. And it's only going to get worse. There is less and less hope for international aid because countries are simultaneously faced with cataclysms and have to try to solve their own problems first. In just a few years, when the cataclysms take full force, nobody will come to help because trouble will be everywhere. Today, the consequences of disasters already affect everyone. The world is very interconnected. Flooded or scorched fields in one part of the planet mean a massive increase in food prices or famine in another. The media shows us the disaster itself, but they don't show what happens to people afterward. A cataclysm can last for hours or even minutes, but people are left to cope with aftermath for years. Do you think this is the case only in developing countries? It's been a year since the deadly flooding in Europe in July 2021, and many of those affected are still unable to return to their homes. In technologically advanced Japan, hundreds of people still live in temporary housing 3 years after Typhoon Hagibis. In the United States, after the terrible tornado that hit Kentucky in December 2021, people are still not back in their homes. And there are countless examples of this. We're all vulnerable to the elements. Millions of people lose their homes and everything they own. Everything we have accumulated throughout our lives vanishes in an instant, irrevocably. Dry clothes, a piece of bread, or a sip of water are what becomes most precious. And if you are lucky enough to survive, the most you can count on is a place in a refugee camp. Yes, losing your possessions is not the worst of evils. Many survivors lose family and friends. We can restore everything except lost human life. Cataclysms are escalating and we have no way of coping with them. Existing programs to combat climate change do not work. Over the past 20 years, the situation on the planet has worsened catastrophically and climate disasters continue to increase. And today, when we need to study the real causes of climate change, we as humanity do nothing to understand the cause of growing cataclysms. We waste time and trillions of dollars on a knownly false theory of anthropogenic climate change and do nothing. It's simply a suicide. We watch our world crumble. We hope that we need to be patient and wait it out and everything will return to normal. It won't. Our world will never be the same again. If we continue to do nothing, tomorrow the elements will destroy our life and it will be too late to do anything about it. Now the search for salvation from a planetary climate catastrophe must become the most critical task for mankind, and all of the society's resources
must be devoted to it. Спасибо, Константин. Thank you, Konstantin. Thank you to the entire monitoring team for your dedicated work in collecting and analyzing the terrifying trends of the escalating disasters. And today, we're deeply honored to present the work of our interdisciplinary team. I'm pleased to introduce you the speakers who will share with you today the results of our research, which has been conducted by hundreds of scientists and thousands of volunteers since 1996. Anastasia Pashigreva, New Technologies Development Scientist, PhD in Chemistry, USA. Anastasia coordinates the area of research on functional and chemical changes in the atmosphere. In the context of the Creative Society project, she interacts with the scientific community. She has conducted dozens of interviews with experts from different fields. Anastasia is also part of the research team that studies the growing seismic activity on the planet. David Kruger, Creative Society project participant, geographer, Germany. By his profession, David knows well the geosystems of our planet and the natural phenomena that occurs in it. John Ann, Creative Society project participant, expert in the development and commercialization of new technologies in the fields of energy, chemical processes, and natural sciences, USA. John earned an MBA, a PhD in chemical engineering at Technical University of Munich, and a master's degree at the University of California, Berkeley. As a result of our research, we have come to a very well-reasoned understanding that the cause of climate change is not the increase in the anthropogenic CO2. The problem is not only that the temperatures on the planet are currently rising, but there is also an increase in the number of anomalies deep in the planet's interior. Therefore, the reason for the increase in disasters is something else. Let's look at the facts of multiple thermal anomalies which point to the problem inside the planet. One of the signs of climate change that you are well aware of is the melting of glaciers. It is now well established that the glaciers of Antarctica and Greenland are melting from below. But what is the threat behind this? Please look at the map in the middle. The red color here indicates the area where Antarctica has lost most of its ice since 2003. As you can clearly see on the map, this is only West Antarctica. Why is only West Antarctica melting from global warming? Geologists are well aware that West Antarctica is a relatively young continent with a thin crust. On the map to the left, you can see yellow and red areas showing the thin crust. The eastern part is represented by a thick, massive plate. Please pay attention to the right side of the tectonic map. You can see how West and East Antarctica differ. Volcanologists know well that Antarctica is also an active volcanic region. Today, more than 140 volcanoes have already been discovered under its ice. Take a closer look. Where are all these volcanoes? They're located exactly in West Antarctica, and most of them are located exactly where the glaciers are melting. You may have heard that there are two glaciers in Antarctica that are melting the most. They are Pine Island and Thwaites. You can see them marked with red arrows on the map to the left. Glaciologists call them doomsday glaciers. Multiple studies in recent years indicate that there is increased heat flow beneath these glaciers from the subsurface. Some scientists who advocate the CO2 theory claim that it is allegedly humans who heat the water which flows under the glacier and melts it down there. This is totally absurd. Think yourselves, what is more likely to heat the deep waters beneath a glacier? CO2 emissions that occur thousands of miles away from a glacier, or a volcano located directly beneath it? In fact, it is much scarier than that. Note when the intense melting of Antarctic glaciers began. That happened in 1995.
Remember this year. Today we'll hear a lot about it. Since 1995, Antarctica's ice melt rate has increased by 65%. The question arises, why did the intensive melting of glaciers start exactly in our time? NASA seismologists have discovered a huge Mary Bird magma chamber under West Antarctica. The increased heat flow from the Earth's interior comes exactly from there and activates volcanoes. In the diagram to the left, you can see this magma chamber marked in red. Despite the fact that magma chamber has been there for millions of years, in 1995, for an inexplicable reason, it became active, which led to an increase in volcanic activity and intensive melting of the glaciers in West Antarctica. It is an undeniable fact that Antarctica is melting from below due to the rise of magma within the magma chamber, and this has been happening since 1995. Right next to West Antarctica is another heat anomaly area. Oceanographers from Germany have found that in the Weddell Sea, off the coast of West Antarctica, at a depth of more than 2,000 meters, the water has warmed up 5 times faster than at the surface, whereas the upper 700 meters of water column has hardly heated at all. This is another fact showing that the heating is coming from below, from the depth. In the graph on the bottom right, you can see how significantly the temperature has been increasing since 1995. Just imagine how much water it takes to warm up icy waters of the Antarctic Sea. The Weddell Sea is bounded on all sides by volcanic structure features that are currently showing anomalous activity. And the Bransfield Strait area is currently the most seismically active in the world. Look, it is marked on the map with a red arrow. Further in the report, you will hear more about the 85,000 earthquakes that occurred here within only 6 months in 2020. For comparison, before 1995, there were no more than 15,000 earthquakes per year around the entire Earth. This indicates that magma is reactively rising in the Bransfield Strait area, thus triggering earthquakes. It is only 5 kilometers away from breaking through. You see that the Weddell Sea, just like the entire West Antarctica, has also been heating up since 1995. And this is also due to the magma ascent, which is accompanied by an extreme increase in the number of earthquakes. Any sane person would understand that humans cannot influence seismic activity at the bottom of the ocean in any way, all the more so in Antarctica. You will be surprised, but similar processes are taking place now in the central part of Greenland. So where does the increase in heat flow under Greenland come from? Let's take a look at the video. ग्रीनलैंड में ग्रह के दूसरे भाग में उतनी ही तीव्रता से बर्फ का पिघलना भी हो रहा है। अक्टूबर 2020 में किए गए शोध से पता चला है कि पिछले 12,000 सालों में ग्रीनलैंड की बर्फ पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। अकेले 2019 में ग्रीनलैंड में रिकॉर्ड मात्रा में बर्फ का नुकसान हुआ है, 600 बिलियन टन। ये भी आश्चर्य की बात है कि ग्लेशियर की सतह के नीचे, जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर है, विशाल झीलें बनती हैं। आज तक ग्रीनलैंड में लगभग 6 दर्जन सब ग्लेशियल झीलें पहले से ही ज्ञात हैं। इनके आसपास की बर्फ का तापमान लगभग -28 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये झीलें नहीं जमती। क्यों? ये प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए वैज्ञानिकों के कई शोध समूह एक साथ शामिल हुए। उन्होंने इस तथ्य की खोज की कि ग्रीनलैंड के नीचे अंटार्कटिका की तरह एक मैंटल प्लूम है, भूतापीय प्रवाह जो इसकी आंतों से आ रहे हैं। इसके कारण सब ग्लेशियल झीलों का निर्माण होता है और ग्लेशियरों का पिघलना होता है। रॉल्फ वोन फ्रेस के नेतृत्व में शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा गुरुत्वाकर्षण माप द्वारा ग्रीनलैंड की पपड़ी की मोटाई का अनुमान प्रदान किया। ग्लेशियरों का सक्रिय पिघलना द्वीप के उत्तरी भाग में देखा जाता है।
जहां पृथ्वी की पपड़ी पतली होती है और बढ़ते मैंटल प्लूम के कारण भूतापीय प्रवाह में वृद्धि दर्ज की जाती है। भूकंपीय टोमोग्राफी डेटा का उपयोग करते हुए श्मिट इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ऑफ द अर्थ के एक वैज्ञानिकों की अंतःविषय टीम ने देखा है कि ग्रीनलैंड के मध्य भाग के नीचे मैग्मा प्रवाह कोर के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों ने एक सैद्धांतिक ऊष्मा प्रवाह की गणना की है जो किसी दिए गए मैग्मा कक्ष से मेल खाती है और पाया कि ये गर्मी ग्लेशियर के आधार को बर्फ के पिघलने वाले तापमान तक गर्म करने के लिए पर्याप्त है। मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हुए समान अध्ययनों द्वारा समान परिणामों की पुष्टि की गई। Now, you know that the increased melting of Greenland is also due to the rise of magma in the magma chamber. The glaciers of Antarctica and Greenland have begun to melt from below since 1995. And this is happening faster than any time in the past 12,000 years. This suggests that there hasn't been such an intense rise in magma over a period of 12,000 years. But as it turns out, exactly this period of 12,000 years is of enormous importance. Next, you will learn why magma in magma chambers has begun to behave so strangely, how this threatens humankind, and when this will happen. In addition to melting glaciers, significant thermal anomalies have also been observed in the ocean. Where does the ocean get heated the most? As you can see on the map, of the averaged model of ocean water heating, the ocean water gets heated the most in the area of the Greenland tectonic zone, that is, in the area of the ascending magma chamber. But what is another key process occurring in this part of the ocean? It is in this area that an extremely abnormal process has started in recent decades, the shutdown of the Gulf Stream. Incompetent journalists write that the shutdown of Gulf Stream is caused by Greenland's meltwater. However, according to the calculations of oceanographers, the Gulf Stream is 20 times stronger than the oncoming cold stream of meltwater. This flow of cold water can be compared to a spit against a waterfall. So what kind of impact can we talk about? In May 2010, there was a short-term shutdown of the Gulf Stream. Why? Geologist James Camis has deducted a chain of correlations on how the Gulf Stream shutdown is linked to changes in the planet's interior. In 2009, the magma ascent caused a series of earthquakes in the vicinity of Iceland, which followed by the well-known eruption of the Eyjafjallajökull volcano in March 2010. And as early as May 2010, a huge mass of hot water surfaced across the tectonic zone along the faults and stopped the movement of the Gulf Stream. You can see this process on the screen right now. In other words, the shutdown of the Gulf Stream now occurs in pulsating stages as a result of the release of enormous heat caused by the ascent of magmatic chambers beneath Greenland. Given that magma chamber beneath Greenland is becoming more active, we're getting closer to the point when the Gulf Stream will stop completely. The last time, what's important, the Gulf Stream stopped was 12,000 years ago. Remember that figure, 12,000 years. You've heard about it already. And what is important, oceanologists note that such phenomena of water heating occurs not only in the area of Greenland, but across the entire world's ocean. So let's take a look at what is going on. महासागर पूरे ग्रह के लिए और हमारे लिए जीवन का स्रोत है। महासागर के कामकाज के लिए धन्यवाद, हम जी सकते हैं, लेकिन यह जीवन का स्रोत बनना बंद कर हमारी मृत्यु का कारण बनने वाला है। जरा इसके बारे में सोचें, केवल 30 वर्षों में समुद्र के गर्म होने में 450% की वृद्धि हुई है।
वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार समुद्र को आज की दर से गर्म होने में उतनी ही ऊर्जा लगेगी जितनी कि हिरोशिमा पर गिराए गए 7 परमाणु बम 1 साल के लिए हर सेकंड में फटने पर निकलेंगे। सबसे भयानक तथ्य यह है कि समुद्र न केवल सतह पर बल्कि गहराई से भी गर्म हो रहा है। अमेरिकी शोधकर्ताओं की एक टीम ने पाया है कि पिछले 10,000 वर्षों की तुलना में समुद्र की औसत गहराई पिछले 60 वर्षों में 15 गुना तेजी से गर्म हुई है और यह प्रगति हर साल तेज हो रही है। फिलहाल विज्ञान के पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इतनी गर्मी कहां से आती है। केवल सिद्धांतों पर विचार किया जा रहा है कि महासागर सूर्य से और ग्रीनहाउस गैस CO2 के मानव उत्सर्जन से गर्म हो रहे हैं, लेकिन वे समुद्र की ऊपरी परतों के 200 मीटर तक की गहराई तक गर्म होने की व्याख्या कर सकते हैं क्योंकि सूर्य की किरणें गहराई में प्रवेश नहीं करती हैं। मिश्रण के परिणामस्वरूप पानी को अधिकतम 700 मीटर तक सूर्य द्वारा गर्म किया जा सकता है। हम समुद्र की गहरे परतों के गर्म होने के असंख्य तथ्यों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में सोचो। दुनिया के महासागरों जैसे पानी की मात्रा को गर्म करने में कितनी ऊर्जा लगती है? हम पहले से ही हर जगह इस तरह के विषम ताप के उदाहरण देखते हैं। यह न केवल तल पर है बल्कि सतह पर भी है। 2013 के अंत में असामान्य रूप से गर्म समुद्र के पानी का एक विशाल क्षेत्र अमेरिका के आकार का लगभग 1/3 अलास्का की खाड़ी में बना और फैलने लगा। कई जगहों पर पानी का तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया। नेशनल जियोग्राफिक ने इसे डब किया ब्लॉब, जिसने प्रशांत को पकाया था। वाशिंगटन के राज्य जलवायु विज्ञानी निक बॉन्डर ने इस घटना को द ब्लॉब बूंद नाम दिया। ऐसी विसंगतियों की उपस्थिति अचानक अधिक होने लगी। इन सभी ब्लॉब के गठन के स्थानों को एकजुट करने वाली एक बात समान है। ये भूगर्भीय रूप से सक्रिय क्षेत्र हैं जिनमें एक युवा पतली परत होती है जिसमें सक्रिय पानी के नीचे ज्वालामुखी, दरारें और पृथ्वी की पपड़ी में गहरे दोष होते हैं। ये गर्म और गतिशील मैग्मा के सबसे सक्रिय निकास के जगह हैं। महासागर को मौसम की रसोई कहा जाता है। इसके पानी को गर्म करने से पहले से ही भयावह आंधी और तूफान तेज हो जाते हैं जो सालाना हजारों मानव जीवन का दावा करते हैं। महासागर के अभूतपूर्व ताप से पता चलता है कि महासागर पहले से ही ऊर्जा को समाहित करने की अपनी क्षमता को समाप्त कर रहा है जो पृथ्वी के आंतों से उगना की कोशिश कर रहा है। जब मैग्मा महाद्वीपीय क्रस्ट की घनी और मोटी चट्टानों तक पहुंचता है जो समुद्र की पपड़ी से औसतन 2-3 गुना मोटा है, तो भूमि ज्वालामुखियों के कैस्केडिंग विस्फोट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इस प्रक्रिया को रोकने या रक्षा की तलाश करने में बहुत देर हो जाएगी। As we can see, the ocean is warming at the seafloor, not only in the Weddell Sea, but also all over the world. Even the mid-depths are warming, while huge volumes of heated water, the so-called blobs, are rising to the surface. Note that such huge blobs of hot water have been appearing more and more frequently since 1995. Look at the bottom right graph. Obviously, no human emissions are capable of heating up the ocean as much as 5 to 7 degrees Celsius over such a short period of time, all the more so only in local areas. In light of this, the theory that anthropogenic emissions warm the oceans sounds ridiculous. As we have already understood, it is heated from underneath by ascending magma. How exactly does this happen? Now you're going to hear something unique about one of its heating mechanisms. Please turn your attention to the screen. इसके बारे में सोचो, दुनिया के महासागरों जैसे पानी की मात्रा को गर्म करने में कितनी ऊर्जा लगती है। इसके लिए एक विशाल ताप स्रोत की आवश्यकता होगी। इसे गर्म करने के लिए आवश्यक ऊर्जा पृथ्वी पर सभी परमाणु भंडार की ऊर्जा को 3 से गुना करने के बराबर होती है। एक बना पर एक बर्तन की तरह समुद्र को नीचे से इतना गर्म क्या कर सकता है? चलो समुद्र के तल में गोता लगाएं और देखें कि वहां शक्तिशाली गर्मी के कौन से स्रोत हैं। जैसे ही हम डुबकी लगाते हैं, हमें नीचे विशाल पहाड़ दिखाई देते हैं, ज्वालामुखी।
पृथ्वी के सभी विस्फोटों का 75% पानी के नीचे के ज्वालामुखियों से होता है। पहले यह माना जाता था कि पानी के भीतर विस्फोट लावा के क्रमिक रूप से बाहर निकलने के साथ होता है, जबकि पानी के स्तंभ के दबाव के कारण विस्फोट असंभव है। और इस प्रकार यह मान लिया गया कि पानी के नीचे के ज्वालामुखी पानी के स्तंभ को गर्म नहीं कर सकते, बहिर्मुखी लावा लगभग तुरंत जम जाएगा। हालांकि हाल के शोध पानी के भीतर विस्फोट के तंत्र के बारे में हमारी समझ को बदल रहे हैं। इस तरह के विस्फोट का तंत्र क्या है? मैग्मा का दबाव 10 से 30,000 बार तक होता है, लेकिन समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में पानी के स्तंभ का दबाव केवल 1000 बार होता है। और जैसे ही मैग्मा का अचानक विस्फोट होता है, पानी उबलता है और H2O अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाते हैं। यह सैकड़ों या हजारों बार के आंतरिक दबाव के साथ बुलबुले की तरह एक गैस जलगुहा बनाता है, और यह बुलबुला पानी के स्तंभ के दबाव को बेअसर कर देता है। यह एक जटिल भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसकी तुलना हाइपरसोनिक हवाई जहाज की अधिकतम गति पर उड़ान से की जा सकती है। इसके प्रोब के सामने निकाला गया प्लाज्मा हवा के आणविक प्रतिरोध को बेअसर कर देता है, जिससे विमान लगभग ऐसे उड़ जाता है जैसे वह भारहीन हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दहन मैग्मा के मार्ग में समान प्रभाव पैदा करता है, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोट होते हैं। लीड्स के शोधकर्ताओं की खोज से इस तरह के विस्फोटों के अस्तित्व की पुष्टि होती है। उन्होंने हुआन दे फूका प्लेट के पास प्रशांत महासागर के तल पर टैफ्रा के खेतों के किलोमीटर का अध्ययन किया, जिसका अर्थ है ज्वालामुखीय राख। एक गणितीय मॉडल ने दिखाया कि इस तरह के प्लम केवल बड़े पैमाने पर विस्फोट से ही बन सकते हैं। गर्मी के प्रसार के अलावा विस्फोटों के दौरान ज्वालामुखी से हाइड्रोथर्म पानी के गर्म जेट फट जाते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि निकाले गए उबलते पानी की मात्रा जबरदस्त हो सकती है, लगभग 40 मिलियन ओलंपिक स्विमिंग पूल, और वे विस्फोट के दौरान जल्दी से बनते हैं। बावरिया में जूलियस मैक्सिमिलियन विश्वविद्यालय के बर्न्ड ज़िमानोव्स्की द्वारा समुद्र के ताप में विस्फोटों के योगदान की पुष्टि की गई है। पनडुब्बी लावा विस्फोट के साथ महासागरों में थर्मल संतुलन धाराएं स्थानीय या यहां तक विश्व स्तर पर बाधित होती हैं। हालांकि समुद्र के आकार को देखते हुए इस तरह पानी के नीचे के विस्फोटों की ऊर्जा भी इसे गर्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, चूंकि सक्रिय ज्वालामुखी हर जगह स्थित नहीं है और उनके विस्फोट कभी कभार ही होते हैं। तो पिछले 30 वर्षों में समुद्र इतना गर्म क्यों हो गया है? По-настоящему страшно. The really scary thing is that volcanoes are not located all over the seafloor. However, the heating is already occurring all over the ocean. This suggests that not only underwater volcanoes do the heating, but the magma itself has started penetrating the ocean seafloor globally and heating up the ocean. And I ask you to pay special attention to another important piece of information from this video. Contrary to conventional belief, powerful, explosive eruptions are occurring at the ocean floor. Take a note of the fact that magma can suddenly penetrate the seafloor and form a bubble that can negate the pressure of the water column, and thus conditions are created for a powerful explosion at the ocean floor. This is a very important point, and further you will realize why. The heating of the ocean has been going since 1995. Arthur Vitteriter, who is a professor at Maryland Institute, also pointed out that as of this year, various ocean and atmospheric parameters have begun changing. He pointed out that as the atmospheric humidity begins to increase, which is due to the heating of the ocean from beneath. Take a look at the changes in 1995, marked on a graph as a red arrow. Professor Arthur Vitteriter discovered that in 1995, seismic activity began to increase at an unprecedented rate,
along the boundaries of thin oceanic plate in the mid-ocean. Look at the map at the right, showing the increase in activity, and the red arrow on the graph indicates the spike in earthquakes in 1995. So far, we have seen a part of the climate change research, not just from the perspective of climatology, but also from the standpoint of various scientific fields: oceanology, glaciology, geology, volcanology, and tectonics. This integrated approach enables us to see the more comprehensive picture. So, let us make some intermediate conclusions. Since 1995, there has been intense ascent of magma. This results in, first, increased melting of the glaciers of West Antarctica and Greenland from the bottom up. Second, warming of the Weddell Sea. Third, an increase in the number of thermal anomalies and ocean heating. Fourth, increased seismic activity along plate boundaries at the ocean floor. Let us once again note that all facts voiced here were obtained from public sources, and you can easily verify them on your own and arrive at the same conclusions. Next, you will hear about even more anomalous processes in the interior of our planet, which started in 1995. The ascent of magma has resulted in unprecedented increase in a number of earthquakes. Earthquakes usually occur at the depths of 5 to 80 kilometers, where the crust is more brittle and has crack. But the last decade have seen an increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes had been not happening previously and considered impossible. These are the depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molding clay, and they are enabled to crack. Over recent 7 years, the number of deep focus earthquakes has increased by a factor of 10. Remember this. So, why do earthquakes occur at such depth where they have never been occurred before? You will learn about this from the report later today. The highest number of the deep focus earthquakes is observed in the area where Honga Tonga Honga Ha'apai volcano erupted in January 22. Look, it is marked with a red arrow on the map, and the worst part it is that it's just outside the Mariana Trench, which has the thinnest oceanic crust, a mere 5 kilometers. This is an important fact. Please take a note of that as well. इस क्षेत्र में पता था वही सबसे ज्यादा गहरे फोकस वाले भूकंप देखे गए Earthquakes are emerging even in regions where they have never seen before. सबसे बुरी बात यह मरियाना ट्रेंच से ज्यादा दूर है। यहाँ सबसे पतला समुद्री क्रस्ट केवल 5 किलोमीटर है। यह एक महत्वपूर्ण कृपया इसे भी ठीक करें। भूकंपीय गतिविधि समुद्र तल और भूमि दोनों पर बढ़ रही है। भूकंप उन क्षेत्रों में भी उभर रहे हैं जहां वे पहले कभी नहीं थे। भूकंप की संख्या जनवरी उनकी तीव्रता और ऊर्जा बढ़ रही है। ध्यान दें कि 1995 में भूकंप के विकास में पहली अलग वृद्धि हुई थी। अपने सामने मानचित्र को देखिए। 1995 से पहले और उसके बाद के भूकंपों को दर्शाता है। आप इस तथ्य को देख सकते हैं कि भूकंप प्लेटों के किनारों से फैलने लगे हैं और नए क्षेत्रों में आते हैं। इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि पिछले 30 वर्षों में भूकंपीय गतिविधि की दर्ज वृद्धि का ग्रह पर
भूकंपीय सेंसर की संख्या से कोई लेना देना नहीं। ग्राफ को देखिए, काले डॉट्स लगातार उन घटनाओं को दिखाते हैं जो ग्रह पर दर्ज हुए, जो अवलोकन नेटवर्क के उच्च घनत्व को इंगित करता है। 1973 के बाद से दुनिया भर में ऐसे कई भूकंपीय स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जिससे 4 और उससे अधिक परिणाम के सभी भूकंपों को रिकॉर्ड करना संभव हो गया, चाहे वो कभी भी। आइए देखें कि हम मनुष्यों के लिए इसका क्या अर्थ। भूकंप और ज्वालामुखी। पृथ्वी के आंतरिक भाग की शक्ति सतह पर अप्रत्याशित रूप से प्रकट होती है, जिससे भारी क्षति होती है और चारों ओर का जीवन नष्ट हो जाता है। हाल के वर्षों में ग्रहों की ऊर्जा के उत्सर्जन में भारी उछाल में तेजी से वृद्धि हुई है। कुछ अकथनीय होने लगा है। 2015 में जापान के पास 751 किलोमीटर की गहराई पर एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला भूकंप दर्ज किया गया था। यह पहले कभी नहीं देखा गया था और वास्तव में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा असंभव माना जाता था। माना जाता है कि भूकंप केवल पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल में ही आते हैं, जब लिथोस्फेरिक प्लेटों के ब्लॉक टूटते और शिफ्ट होते हैं। बड़ी गहराई पर पदार्थ अधिक निंदनीय होता है और भंगुर कांच की तरह नहीं बल्कि प्लास्टिसिन की तरह व्यवहार करता है। वहाँ कुछ भी टूटने योग्य नहीं है, लेकिन भूकंप आते हैं और यह एक सच्चाई है। भयानक बात यह है कि उनकी संख्या और परिमाण बढ़ रहे हैं। भूकंप न केवल गहरे होते जा रहे हैं, बल्कि वे सतह के करीब भी पहुंच रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वे अधिक विनाशकारी होते जा रहे हैं। आज उनमें से अधिक लगभग 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित हैं। उदाहरण के लिए, अप्रैल 2022 की शुरुआत में न्यू कैलेडोनिया के पास 4.5 से 7.0 परिमाण की 36 भूकंपीय घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला हुई। अगस्त 2021 में हैती में समान तीव्रता और गहराई के सिर्फ एक भूकंप ने घातक क्षति की और 2200 से अधिक लोगों की जान ले ली। घातक खतरा तेजी से पृथ्वी की सतह पर बढ़ रहा है। हमारी आंखों के ठीक पहले दरारें आ रही हैं और दोष सक्रिय हो रहे हैं। हमारे पांवों के नीचे की जमीन सचमुच ढह रही है, पूरे घरों को निगल रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, केन्या, आइसलैंड, तुर्की, चीन, बैकाल झील और अन्य क्षेत्रों में दोष सक्रिय हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक भारी क्षति का कारण बन सकता है। यह एक खाई है जो पैरों के नीचे खुलती है। ग्रह पर देखे गए भूकंप के झुंडों की संख्या यानी लयबद्ध झटकों के समूहों की संख्या बढ़ रही है। एक झुंड को भूकंपीय घटनाओं के लगभग समान परिमाण की विशेषता होती है, जो एक स्थानीय क्षेत्र में कम अंतराल पर होती है। व्यक्तिगत भूकंप झुंडों में भूकंपीय घटनाओं की संख्या कुछ दर्जन से बढ़कर सैकड़ों और कभी-कभी हजारों हो गई है। उनकी परिमाण और अवधि बढ़ गई है। यह चट्टानों की सूक्ष्म दरारों में मैग्मा और गर्म गैसों के प्रवेश के कारण होता है। झुंड अब न केवल गलती क्षेत्रों और ज्वालामुखियों के पास बल्कि अधिक शांत क्षेत्रों में भी दर्ज किए जा रहे हैं। शांत महाद्वीपीय क्षेत्र में स्थित भारत का पालघर क्षेत्र सितंबर 2018 में भूकंपों के साथ शुरू हुआ और आज भी जारी है। केवल 2 वर्षों में एक छोटे से क्षेत्र में 3.8 की तीव्रता के लगभग 5000 भूकंप आए। और अगस्त 2020 से अंटार्कटिका के ब्रैंसफील्ड जलडमरू मध्य में जो कुछ हो रहा है, उसे वैज्ञानिकों ने विशाल मैग्मा घुसपैठ के रूप में वर्णित किया है। पहले 6 महीनों में करीब 85,000 भूकंपों का पता चला है, जिनकी अधिकतम तीव्रता 6 है। आमतौर पर ये प्रक्रियाएं भूगर्भिक समय के पैमाने पर होती हैं,
जैसा कि मानव जीवन काल के दौरान होता है, अध्ययन सह लेखक सिमोन सेस्का ने कहा, पोट्सडैम में अनुसंधान केंद्र में भूकंप विज्ञानी। मैग्मा सचमुच लिथोस्फेरिक प्लेट को अंदर से खा रहा है, 6 महीने में सतह पर की यात्रा कर चुका है। तबाही मचाने से पहले सिर्फ 5 किलोमीटर की चट्टान बची है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। हर जगह ऐसी ही बातें हो रही हैं। इन दिनों जिस तरह से भूकंपीय गतिविधि इतनी तेजी से बढ़ रही है वो एक आपदा है, लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि अब भूकंपीय एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय भूकंपीय डेटाबेस इस तथ्य को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंपों की संख्या और परिणाम बढ़ रहे हैं। 2014 तक मुख्य अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस के लिए भूकंप की संख्या में वृद्धि की रुझान मेल खाते हैं। और अब ध्यान दें, ग्राफ को देखिए। 2014 के बाद कोर्स ने ऐसा व्यवहार करना शुरू क्यों किया? हम विभिन्न भूकंपीय आधारों के डेटा के एक पूर्ण विसंगति देखते हैं। क्या हुआ? ये ग्राफ विभिन्न डेटाबेस से सभी अद्वितीय भूकंपों को संसाधित करता है, सारांशित करता है। आप रंगीन स्तंभों से देख सकते हैं कि 2014 से पहले डेटाबेस में भूकंप के समान सेट दर्ज किए गए हैं और 2015 के बाद उन्होंने भूकंपों के अलग अलग सेट रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बेतरतीब ढंग से क्षेत्र की परवाह किए बिना, दूसरे शब्दों में सभी घटनाओं को अलग अलग में क्रमबद्ध किया जाने लगा। वैज्ञानिक इसकी विश्वसनीयता पर भरोसा करते हुए एक डेटाबेस का प्रयोग करते हैं और अंत में वे भूकंपीय गतिविधि में वास्तविक वृद्धि नहीं देखते हैं और अपने अध्ययन में अपूर्ण डेटा पर भरोसा करते हैं कि 3 से 4 के परिणाम के साथ भूकंपीय गतिविधि के डेटा में सबसे बड़ा सुधार हुआ। देखिए बाईं ओर की ग्राफ पर आप देख सकते हैं कैसे छोटे परिणाम के डेटा का एक टुकड़ा गायब हो गया। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि इंडोनेशिया में सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक छोटे परिणाम के भूकंप आना बंद हो गए? उनकी संख्या 3,500 से घटकर 8 हो गई और डेटा विरूपण और परिणाम को कम करके आंकने के कई और समान उदाहरण हैं। वास्तव में जितना हमें बताया गया है इससे कहीं अधिक शक्तिशाली भूकंप अभी आ रहे हैं। इस स्थिति की बेतुकापन यह है कि यदि आप उन डेटाबेस से पूछते हैं कि वे परिणाम 4 और उससे छोटे भूकंपों को क्यों हटा रहे हैं और परिणाम में वृद्धि क्यों नहीं दिखाई गई है, तो उन्हें बहाने मिलेंगे कि इन आंकड़ों से निपटना मुश्किल है, कि बहुत सारी घटनाएं हैं और उन्होंने अपनी सूची में कम परिणाम वाले भूकंपों को शामिल करने के मानदंडों को बदल दिया है। दूसरे शब्दों में जैसे ही परिणाम 4 के भूकंपों की संख्या बढ़ने लगी, उन्होंने उन्हें हटाना शुरू कर दिया और तकनीकी कठिनाइयों से इसे समझाते हुए डेटाबेस स्टोरेज प्रौद्योगिकियों के आधुनिक विकास के साथ साथ तकनीका नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा डेटा प्रोसेसिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरह से डेटा जालसाजी को सही ठहराना हास्यास्पद होगा। 4 से कम परिणाम को क्यों हटाया जा रहा है? क्योंकि वे मैग्मा चराई की प्रक्रिया को सबसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करते हैं। विस्फोट से पहले भूकंपीय गतिविधि अक्सर बढ़ने लगती है और सभी तथ्यों से संकेत मिलता है। हालांकि निकट भविष्य में हमें उच्च परिणाम की भूकंपीय घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद करनी चाहिए। यह ग्रह पर भूकंपीय गतिविधि में वास्तविक वृद्धि इस तरह दिखाती है। हमारे ग्रह के गहरे अफसोस के लिए हम यह बताने के लिए बाध्य है कि पृथ्वी पर भूकंपीय गतिविधि की प्रगति यही दिखती है और हाँ, यह तेजी से बढ़ रहा है। गौर से देखिए, ये तो बस शुरुआत है। आगे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि गणितीय मॉडल के अनुसार घटनाएं कैसे सामने आएगी। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आप इंटरनेट पर पहले भूकंपीय प्रवृत्ति ग्राफ की खोज करते हैं तो यह केवल एक
डेटाबेस से आएगा, इसीलिए यह आपको वास्तविक गतिशीलता नहीं दिखाएगा। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोई भी विभिन्न डेटाबेस से भूकंप के आंकड़ों की तुलना भी नहीं करता है। कोई भी वास्तव में वैश्विक अध्ययन और ग्रह पर वास्तविक भूकंपीयता की निगरानी नहीं करता है। क्या यह बेतुका नहीं है? यही कारण है कि हमने अपने स्वयं के डेटा का विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। आप स्वयं भूकंपीय डेटाबेस डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी जानकारी को सत्यापित कर सकते हैं, और आप भी इस घोटाले के होते हुए देखेंगे। हम उन्हें जज नहीं करते। आप समझते हैं कि वे इस तरह के तरीकों का सहारा लेते हैं क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता है और वे लोगों को दहशत नहीं फैलाना चाहते। लेकिन क्या हम उन्हें सच्चा वैज्ञानिक कह सकते हैं? अब आइए स्पष्ट रूपक जांच करें ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके। There are mass media outlets that support one theory or another by promoting it. But the truth is that both theories are sponsored by the same sources, whether the media in both cases are owned by the same masters of manipulation. We are supposedly given a choice, given two hypotheses, but they are equally irrelevant to reality. There is a mass mind manipulation going on at a time where we should have been ringing the alarm bell a long time ago. This can associatively be compared to a burning city. Imagine you and I living in the city where a fire has started. की परिणाम स्वरूप जलवायु बदल रही है, और दूसरी यह है कि जलवायु बिल्कुल ही नहीं बदल रही है। ऐसा मीडिया है जो एक या दूसरे सिद्धांत का समर्थन करते हैं, इसे लोकप्रिय बनाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों सिद्धांत एक ही स्रोत से प्रेरित होते हैं, और मीडिया वे और अन्य दोनों एक ही मालिक के हैं। माना जाता है कि हमें दो परिकल्पनाओं को देखते हुए एक विकल्प दिया गया है, लेकिन वे वास्तविकता के लिए समान रूप से अप्रासंगिक है। बड़े पैमाने पर दिमागी हेरफेर है। ऐसे समय में जब घंटी बहुत पहले ही बजनी चाहिए थी, ये कोई आग नहीं है। चैन से जियो, सो जाओ और अच्छा आराम करो। इसकी तुलना एक जलते हुए शहर से की जा सकती है। कल्पना कीजिए कि आप और मैं एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ आग लगी है। हमारे शहर के बाहरी इलाके में घरों में आग लगी है। क्या हमें चिंता करते हैं और सवाल पूछे क्या हो रहा है, और हम तुरंत सुनने के लिए अलग अलग उत्तर दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं यह बिल्कुल भी आग नहीं, यह एक प्रतिक्रम है, एक कल्पना है, आप पर कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ एक चमक है, सूर्यास्त है, चिंता ना करें। दूसरे कहते हैं ये सिर्फ लड़के हैं जो फ्लश लाइट का साथ इधर उधर भाग रहे। फिर भी दूसरे कहते हैं गायों का झुंड और उनके प्रतिबिंब आकाश में को रंग रहे हैं। यह कोई आग नहीं, चैन से जियो, सो जाओ और अच्छा आराम करो। इसी बीच कुछ अन्य प्रति सक्रिय रूप से हमें आमंत्रित करते हैं। देखो, आदमी पैसे के लिए लड़ रहे हैं, देखो क्या हमारे नगर का हकीम है, क्या ही सुंदर भाषण देता है, उसकी करके सुनो। हम शहर के निवासी देखते और सुनते हैं, और हमें क्या करना चाहिए? हम देखते हैं कि हमारे पड़ोसियों के घरों में पहले से ही लगी हुई है आग, और सभी कानूनों के अनुसार हमारे घर भी आगे जलेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनसे कहें अच्छी तरह सो जाओ, तुम्हारा घर आज कल जल जाएगा, कल घबराना नहीं। क्या हमें अपने पड़ोसी को जल्द से जल्द जगाना चाहिए? हाँ, वो जगेगा, भयभीत होगा, लेकिन उसके अंदर भावनाएं और हार्मोन सक्रिय होते हैं जिससे उसकी मांसपेशियों को ताकत कि वो बाल्टिया में पानी ले आए और अपने घर के जलने से पहले पड़ोसी के घरों में आग लगाए। अगर हम अपने घर को बचाना चाहते हैं तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? नहीं तो यह निश्चित रूप से जल जाएगा। क्या हमें इसे शांत रखेंगे या आग बुझाएंगे? काफी है, आग बुझाने का समय आ गया। बेशक हम बाल्टी लेकर जाएंगे और जितना हो सके उसे बाहर निकालने के लिए दौड़ेंगे, नहीं तो कल हमारे साथ सभी घर जल जाएंगे। हमें अभी नहीं करना चाहिए क्योंकि हम ही आग बुझा सकते हैं, हमारे सिवा कोई नहीं।
इस उदाहरण में आग बुझाना मानवता को ग्रह पर वास्तविक जलवायु स्थिति के बारे में सूचित करने के बारे में मीडिया प्रभावित ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके पास स्थिति का कोई समाधान नहीं। जनता में शांति और बनाए रखने और दहशत को रोकने के लिए वे इससे हमसे झूठ बोलने के लिए मजबूर हैं। वास्तव में जलवायु पतन से बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सभी को जागना होगा, चल रही और आने वाली घटनाओं के बारे में सीखना चाहिए। इसके अलावा आज के रिपोर्ट में आप देखेंगे कि कैसे हमारा ध्यान CO2 से लड़ने के विषय के साथ भटक जाता है। जलवायु के खिलाफ लड़ाई का अनुकरण करते हुए हम इनमें से कई पैसा कमाते हैं। Further in the report, we will disclose step by step इस उदाहरण के what will लिए happen to the शादी climate, बहुत when it will धन्यवाद। happen, यह बहुत what it will उदाहरण lead to, अच्छा and उदाहरण है। most दरअसल important, हमारे what घरों the में way आग out लगी of the हुई है situation और जलवायु is for सर्वेक्षण the बिना entire किसी humanity. पट्टा Let's का go back to the गीले ग्रह processes पर inside the घूम रहा planet. है और इसे टुकड़ों What में has been फाड़ना happening कर रहा है। on the planet रिपोर्ट since में 1995? आगे हम कदम दर कदम This खुलासा year, a करेंगे series of जलवायु का क्या unprecedented होगा, changes यह began कब होगा, to इससे occur क्या in होगा, the magnetic और field सबसे of the planet. महत्वपूर्ण बात यह है The magnetic कि north इस pole begins स्थिति to से drift बाहर निकलने rapidly का at a rate रास्ता 4 times the पूरी north. At the same मानवता time, the के लिए magnetic field क्या weakens, है। tames us faster than before. Why does this happen? The 1995 drift से of the north magnetic pole परिवर्तन। happens आइए with the ग्रह के अंदर acceleration की of the molten प्रक्रियाओं पर outer वापस flow जाए। in the outer core. 1995 से ग्रह पर क्या Against हो this रहा है। background, there is also a growth of the इस South ग्रह Atlantic anomaly. के चुंबकीय This क्षेत्र में area where the अद्भुत magnetic रूप field is परिवर्तन extremely होने लगे। weakened. चुंबकीय It's a उत्तरी dent ध्रुव in the Earth's सामान्य magnetic से field. 4 गुना तेज गति This से anomaly बहने has लगे। doubled in वही size चुंबकीय in recent क्षेत्र decades. पहले की This तुलना also में has the 10 गुना anomalous तेज movement of से currents कमजोर in the होता liquid core है। of the planet. ऐसा क्यों होता है? उत्तरी Now, चुंबकीय as a ध्रुव का result of the बहाव weakening बाहरी of the कोर magnetic में field, we see that the पिघले हुए northern लोहे lights की are प्रवाह के कारण penetrating into more southern तरुण के कारण latitudes where होता they है। have not been इस observed before. पृथ्वीभूमि के खिलाफ दक्षिण This अटलांटिक is an alarming sign because it वृद्धि means हुई है। that the Earth's magnetic shield यह एक protecting ऐसा us from क्षेत्र है जहाँ disintegration is चुंबकीय weakening. क्षेत्र बेहद The number कमजोर है। of यह lightning पृथ्वी के strikes is चुंबकीय क्षेत्र में increasing. एक The गांठ magnetic है। field is coming हाल के into दशकों में imbalance. जब विषम के आकार Weakening of the दोगुनी magnetic हुई, field is यह already ग्रह affecting तरल even the और upper layers of the धाराओं की atmosphere, विषम गति के thus कारण भी reducing their होता density है। and cooling them down. But that's not all of it. What are you going to hear next about the अब changes of the चुंबकीय क्षेत्र planet के is कमजोर होने shocking. के परिणाम In स्वरूप हम 1995, simultaneously with the shift of the magnetic pole, the rotation axis of the आंकड़ों में planet sharply त्वरित चले, changed direction जहाँ and उन्हें began to पहले move नहीं देखा 17 गया। times faster than यह एक before. खतरनाक संकेत है Rotation क्योंकि axis इसका of the मतलब है planet कि started to ब्रह्मांडीय shift विकिरण से its हमारी रक्षा trajectory. करने Look वाली at the graph to the right. चुंबकीय The ढाल blue circles here कमजोर हो present रही the है। rotation axis बिजली गिरने as की it used संख्या to be बढ़ रही before है। 1995. विद्युत चुंबकीय The क्षेत्र orange circles प्रतिफलन में indicate the new आ रहा है। trajectory, चुंबकीय which shows क्षेत्र का that the कमजोर rotation होना axis of पहले the से ही Earth वायुमंडल is की shifting परतों sideways. को भी प्रभावित कर What रहा does the shift है। of इस the प्रकार rotation उनके axis of the घनत्व planet को mean? कम कर रहा Just है और imagine. उन्हें ठंडा It कर is रहा है। the axis around which लेकिन the यह globe सब कुछ revolves moved ग्रह abruptly पर to a बदलाव के different बारे में place. आप This indicates a complete आगे जो imbalance सुनने of the जा रहे entire हैं बहुत system. चौंकाने वाला है। В это же время, с 1995 में 1995 года наблюдается еще один из этапов. Meanwhile, since 1995, one of the stages of unprecedented acceleration of the planet's rotation has been observed. The acceleration occurs in leaps and bounds. The planet accelerates abruptly, then slows down a little. However, with each subsequent stage, it accelerates even more. Take a look at the yellow lines in the graph. These are the trend lines indicating the rate at which the length of the day is shortening. For example, the left line is flatter, whereas the right line showing the acceleration starting from 2016 is almost vertical, which means that the length of the day is shortening many times faster. And what does it mean? That our planet is spinning up drastically, like a spinning top, and it's getting faster every time. So what are the causes of the changes in the magnetic field and the trajectory of the planet's axis of rotation and the speed of the rotation that began in 1995? Few people know about the real nuclear threat. The real nuclear threat is nucleus. It is the core of our planet. The core of our planet is an entire system that synchronizes and stabilizes all processes on Earth. It plays a pivotal role in the climate
that is happening right now on the planet. The core of our planet consists of two parts. The inner core is a huge solid mass. Around it, there is the outer liquid core of molten iron, which is constantly rotating. The flow of molten iron is the outer core. In the outer core generates the Earth's magnetic field, which in turn generates gravitational field of the planet. 1995 Yes, के you've बाद heard it right. विज्ञान The की magnetic अभूतपूर्व field, तरह which is generated by the core, in तरंग turn generates the और gravitational field of the सीमा में planet. होता है। And जरा अचानक तेज progressive हो जाता है, physicists फिर know थोड़ा this. धीमा हो जाता है। Gravity हालांकि is प्रत्येक a बार के बाद तरंग manifestation के of the साथ energy of यह the और world भी तेज हो environment जाता है। of एक the नजर डालें, electromagnetic ग्राफ में field. पीली The रेखाएं pressure प्रवृत्ति रेखाएं gradient हैं of जो this इस दर environment को creates a दर्शाती है। जो gravitational force. You can easily find this है। information if you wish उदाहरण so. के लिए बाईं रेखा So let's go back to the planet's core. For a long 2016 time, में the शुरू होने rotation of the वाले core तरंग को remained दिखाने वाली unchanged, but a दाहिनी few रेखा decades लगभग ago, the 9 situation changed जिसका radically. अर्थ है All that कि you दिन and I की already लंबाई know about the की माप anomalies in the तेजी magnetic होना। field and the Earth's rotation suggests that there has been इसका a क्या मतलब है contraction कि in the हमारा core ग्रह तेजी itself, से and घूम this is रहा a है, एक catastrophe. कटाई So शीश what की is तरह, happening to the core और of यह our हर बार planet? तेज Let's हो watch a रहा है। video. इसका क्या मतलब है कि हमारा ग्रह तेजी से घूम रहा है। वास्तविक परमाणु सूत्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण सबूत जो पुष्टि करता है कि कोर में असामान्य प्रक्रियाएं हो रही हैं। पिछले 20 वर्षों में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के बहाव का 3.5 गुना तेज त्वरण है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव आंदोलन के अत्यधिक त्वरण के साथ एक रहस्यमय विसंगति ग्रह चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर करती है, जो हमें खतरनाक गैलेक्टिक और सौर विकिरण से बचाती है। वैज्ञानिक यह गणना करने में सक्षम है कि पिछले 200 वर्षों में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 9% कमजोर हो गया है। नतीजतन, कमजोर चुंबकीय क्षेत्र का एक क्षेत्र, जिसे दक्षिण अटलांटिक विसंगति के रूप में जाना जाता है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच बन गया है। इसके अलावा, पिछले 5 वर्षों में, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम में इस तरह का एक और क्षेत्र विकसित हुआ है, और यह सक्रिय रूप से बढ़ रहा है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के कोर में डायनामो तंत्र द्वारा उत्पन्न होता है, और इसलिए यह स्पष्ट है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कोर में परिवर्तन का संकेत देते हैं। पृथ्वी के कोर के असामान्य व्यवहार का एक अन्य प्रमाण पृथ्वी की आंतों से एक शक्तिशाली न्यूट्रिनो उत्सर्जन की उपस्थिति है, जिसे 2015 में भी पंजीकृत किया गया था। 1998 में एक और भी अधिक विसंगतिपूर्ण घटना घटी। वैज्ञानिकों ने उपग्रहों का उपयोग करते हुए पृथ्वी के द्रव्यमान केंद्र को देखकर कोर के एक तेज उछाल वाले विस्थापन का पता लगाया। उछाल के परिणामस्वरूप कोर तेजी से उत्तर की ओर तैमिर प्रायद्वीप की ओर स्थानांतरित हो गया। इस समय इटली के मेडिसिना स्टेशन के वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण के फटने का पता लगाया। ग्रह के वेग के साथ साथ अपकेंद्रीय बल में भी वृद्धि हुई। समवर्ती रूप से पृथ्वी के आकार में एक नाटकीय परिवर्तन हुआ, जैसा कि अमेरिका उपग्रहों से एक लेजर रेंज फाइंडर प्रणाली द्वारा मापा गया था। ग्रह भूमध्य रेखा के साथ असामान्य रूप से विस्तार करना शुरू कर दिया, जबकि इससे पहले प्रवृत्ति विपरीत थी। केंद्रपसारक बल में वृद्धि के कारण मैग्मा प्लम सतह के करीब उठने लगे, जिससे भूतापीय ताप प्रवाह और भूकंपों की संख्या में वृद्धि हुई। नए फॉल्ट और दरारें बनने लगीं, जिससे सतह से पानी पृथ्वी की गहराई में जाने लगा। उसी वर्ष उत्तरी चुंबकीय ध्रुव के बहाव की गति में तेज वृद्धि हुई। पृथ्वी के द्रव्यमान केंद्र की उछाल प्रणाली के असंतुलन का प्रमुख कारक बन गई। इस घटना ने पृथ्वी के सभी गोले के बीच एक विसंगति पैदा कर दी, जिससे कई प्राकृतिक आपदाओं में नाटकीय वृद्धि हुई। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, सुनामी, तूफान, बवंडर और आदि। यह ध्यान देने योग्य है कि इसी अवधि के दौरान सूर्य, चंद्रमा, मंगल और सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंडों पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं में समकालिक उछाल वाले परिवर्तन भी हुए थे, और यह उनके कोर के विस्थापन के कारण भी हुआ। इसने वैज्ञानिकों को यह विश्वास दिलाया है कि इस तरह के समकालिक उछाल सौर मंडल पर बाहरी कारकों के प्रभाव के कारण हो सकते हैं। लेकिन पिछले 50 वर्षों में हमारे ग्रह ने तेजी से बढ़ना जारी रखा है।
2016 के बाद से यह चलन और भी तेज हो गया है। 29 जून 2022 को प्रेक्षणों के इतिहास में सबसे छोटे दिन के रूप में दर्ज किया गया। पिछला रिकॉर्ड महज 2 साल पहले का था। यहाँ तक पृथ्वी के विशाल द्रव्यमान का नगण्य त्वरण निकट भविष्य में भयावह परिणाम देगा। Let's make brief conclusions from the video. जैसा कि As you आप समझते understand, हैं, in 1995 में हमारे ग्रह के irreversible मूल destructive processes नष्टकारी began to प्रक्रियाएं occur होने लगी। in the core इसे of our चुंबकीय planet. क्षेत्र में परिवर्तन This से can देखा be जा seen सकता from the change है और in एक magnetic परिणाम के field. स्वरूप इस And परिणाम के as a स्वरूप consequence, 1998 in में छलांग में 1998, इसने सभी प्रक्रियाओं को कई गुना बढ़ा दिया। which परिणाम accelerated स्वरूप all पृथ्वी का processes कोर many अचानक times उत्तर की over. ओर साइबेरिया की As a ओर result, स्थानांतरित हो the गया। core अब of हम the कोर Earth की पूर्ण shifted दिशा abruptly देख रहे हैं। northwards towards क्या हो रहा Siberia. है यह And बेहतर now ढंग से समझने we के are लिए observing आप हमारे complete ग्रह के destabilization रोटेशन of की the core. To व्हील better understand what is बैलेंसिंग going on, प्रक्रिया से you कर can सकते हैं। compare the व्हील के relation लिए of the planet बैलेंसिंग बहुत to the जरूरी है wheel ताकि balancing अंडर process. कैरिज डैमेज Balancing ना is हो। a अब very जब important हमारे of ग्रह the wheel जैसी so प्रणाली that अस्तित्व undercarriage मोड में does जाती not है, get damaged. अन्य सभी When a क्षेत्रों के system like कामकाज से our समझौता planet goes किया into जाता है destabilization और होने mode, के परिणाम the में functioning of गंभीर all गुरुत्वाकर्षण spheres is परिवर्तन शुरू हो compromised. गए और As a पृथ्वी result पर of balancing जड़त्वीय core, प्रक्रियाओं serious में अनियमितताएं gravitational दिखाई changes दी। began, and there वर्तमान appeared irregularities in the परिवर्तन inertial ने पृथ्वी process of the चंद्रमा Earth. प्रणाली को The भी change प्रभावित in किया। Earth's चंद्रमा की center कक्षा of पहले mass ही also बदलनी शुरू impacted हो Earth चुकी है। Moon system. दूसरे शब्दों में The सिस्टम के orbit of the moon has already अस्थिरीकरण began to change. पहले से ही In other चंद्रमा की words, कक्षा में destabilization बदलाव of the का system हुआ has गया है। already आने led वाले to a वर्षों में change in the जैसे moon's जैसे orbit. प्रक्रियाएं In the coming बढ़ती years, जाएगी, as हम the देखेंगे processes कि चंद्रमा continue to पृथ्वी के चारों escalate, ओर अपनी we will कक्षा see the moon को और change अधिक its orbit महत्व around the बदल Earth देगा। more significantly. और यह समझना महत्वपूर्ण है कि And it is क्रोध important to का understand that विस्थापन the shift ग्रह of the के core आंतरिक affects the भाग motion में of मैग्मा magma की in the गति को interior of the प्रभावित करता है। planet. Look at the 1998 में और trajectory of the core शिफ्ट shift को in प्रश्न प्रवक्त 1998. को देखें। The और bouncing के of the उछलने core से caused पृथ्वी two की ascending waves of आंतरिक magma भाग from से the Earth's विपरीत interior दिशाओं move में into मैग्मा opposite की directions. दो आरोही One तरंगे flow of उत्पन्न magma हुई। traveled मैग्मा toward का West एक प्रवाह Antarctica and पश्चिम the other one traveled अंटार्कटिका की towards ओर गया Siberia. और दूसरा What is साइबेरिया happening in की ओर गया। Siberia right now साइबेरिया में is अभी something क्या that हो has रहा है, never कुछ happened ऐसा there, जो happened वहाँ there पहले before. कभी नहीं हुआ। It is exactly in बिल्कुल Siberia at साइबेरिया में northern उत्तरी latitudes that अक्षांशों a number of extremely में anomalous विकसितों में phenomena have been कई observed over the अत्यंत past few विषम decades. घटनाएं देखी गई है। Heating of पृथ्वी the के Earth's interior इंटीरियर leads to के गर्म abnormal होने melting से of permafrost नीचे from से beneath, as well as gas परमाफ्रॉस्ट के explosions under आसमान the में ice, पिघलने के and an साथ-साथ increase बर्फ in mud के volcanism. नीचे गैस से Overwintering और पृथ्वी fires के beneath the snow have ज्वालामुखी appeared में in the वृद्धि Arctic. होती है। In आग areas की में above बर्फ the के नीचे poles, ice water in ओवरवेटिंग people's आग wells दिखाई is getting देती है। hot. The साल्ट number and के intensity ऊपर of के earthquakes is इलाके में increasing. लोगों Moreover, for 20 years, कुओं में now बर्फ का scientists पानी have been गर्म हो observing रहा that है। Siberia is भूकंप की heating up शक्ति और to तीव्रता 3-4 बढ़ती times है। faster इसके than the अलावा rest of the अब world. I emphasize this, वैज्ञानिक जो है 3-4 times faster बैक्टीरिया than the जिससे rest of the काफी world. में Look at 3 the से map. 4 The गुना huge red stain गर्म shows है। how the मैं average जोर देता हूँ temperatures in Siberia बाकी is दुनिया changing की faster तुलना than the rest of the 3 से world in 4 recent गुना decades. तेज। As आप magma चीजों को देखिए, rises, it साफ begins to पानी hit the साफ plate from आता है। below and boils हाल the ही के दशकों groundwater. में दुनिया But की magma is बाकी rising हिस्सों की not only in तुलना Siberia and में West औसत Antarctica. तापमान Where कैसे else is तेजी magma से rising, बदल रहा and what does it lead है। जैसे to? कि मैग्मा Let's ऊपर take a उठता look है at this या प्लेट video. को नीचे शुरू कर देता है, भूजल को उबाल देता है। लेकिन न केवल साइबेरिया और पश्चिमी अंटार्कटिका में मैग्मा बढ़ रहा है, मैग्मा और कहाँ बढ़ रहा है हाल यह के किसी दशकों और ले में जाता है। पृथ्वी अपने घूर्णन की गति आइए को एक नजर तेजी से डालते हैं त्वरित कर वीडियो रही पर। है, जिसका अर्थ है कि अपकेंद्रीय बल बढ़ रहा है। नतीजतन भूमध्य रेखा पर ग्रह का विस्तार और मात्रा में वृद्धि हो रही है। इससे पृथ्वी की पपड़ी फटने लगती है और
और भूगर्भीय दोष सक्रिय हो जाते हैं। इस समय मैग्मा के साथ पृथ्वी के आंतरिक भाग में रक्त गुहिकायन जैसी प्रक्रियाएं होती है। केसान रोग के दौरान रक्त गुहिकायन एक जीवन के लिए खतरे वाली घटना है जो सतह पर तेजी से चढ़ाई के दौरान गोताखोरों को ज्ञात होता है। दबाव में अचानक गिरावट के कारण रक्त में घुली हुई गैसें तुरंत निकल जाती है, जिससे रक्त उबल जाता है। परिणाम स्वरूप गैस के बुलबुले रक्त वाहिकाओं की दीवारों को नष्ट कर देते हैं।
पृथ्वी के आंतरिक भाग में अचानक दबाव की बूंदें ग्रह के घूर्णन के अचानक त्वरण के दौरान केंद्रापसारक बलों में तात्कालिक वृद्धि से जुड़ी होती है। इससे मैग्मा पृथ्वी की सतह की ओर एकाएक तेजी से दौड़ता है। लिथोस्फेरिक प्लेटें सक्रिय गैस संतृप्त मैग्मा के गुहिकायन माइक्रो बर्स्ट द्वारा नष्ट हो जाती है। जैसे जहाजों की दीवारें एक गोताखोर के बुलबुले रक्त से जुड़ी होती है। यह प्रक्रिया मेंटल की गहरी और गहरी परतों को प्रभावित करते हुए अपने आप तेज हो जाती है। यही कारण है कि हम और अधिक शक्तिशाली और गहरे भूकंप और भूकंपीय झुंड देख रहे हैं। इस प्रक्रिया के बढ़ने और तेज होने का प्रमाण पेरू में बड़े पैमाने पर आए दुगना गहरा भूकंप में देखा जा सकता है। इसी बीच मैग्मा के गुहिकायन के कारण क्रस्ट पर दबाव का विस्तार और गहनता क्षरण प्रक्रिया को तेज करने का कार्य करता है। हमारे लिए उसके क्या मायने हैं? जल्द ही हम ऐसे विस्फोट और भूकंप देखेंगे जो हमारी सभ्यता ने पहले कभी अनुभव नहीं किया है। हमारे ग्रह के अंदर मैग्मा बॉम्ब की घड़ी की क्रियाविधि की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पृथ्वी के आंतरिक भाग के भारी हमलों के तहत पतली समुद्री परत पहले से ही अपना स्थान छोड़ रही है। महासागर ने अब तक इस शक्ति को नियंत्रित किया है, लेकिन विस्फोट स्थलीय चरण में आगे बढ़ रहे हैं। टोंगा इसका ज्वलंत प्रमाण है। इसमें सबसे ज्यादा गहरे केंद्रित होने 15 जनवरी 2022 को केवल टोंगा हापाई ज्वालामुखी के विस्फोट ने आसपास के क्षेत्र की 80% आबादी को प्रभावित किया। यदि एक ज्वालामुखी ऐसा कर सकता है तो हम स्थलीय ज्वालामुखियों के भारी विस्फोट से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आखिरकार अब हम उनके तुल्यकालन का निरीक्षण कर रहे हैं। मोटा महाद्वीपीय क्रस्ट अभी के लिए लाइन पकड़ रहा है, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। इससे ज्वालामुखी सर्दी और एक नया हिमयुग आने का खतरा है। मैग्मा की हिंसक शक्ति ने पहले ही उन ज्वालामुखियों को जगा दिया है जो सैकड़ों और हजारों वर्षों से निष्क्रिय था। हमारा ग्रह अधिक से अधिक एक खदान की तरह दिख रहा है, जहां एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह गोले फटने लगे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा उन ज्वालामुखियों से है जो अभी तक नहीं जागे हैं। येलोस्टोन, कैंपी, फेलेग्रे, एल्बर्स, लास, किकाई जैसे दिग्गजों को डूम्सडे ज्वालामुखी कहा जाता है, क्योंकि उनमें से किसी के भी विस्फोट से पृथ्वी पर सभी जीवन का विलुप्त हो जाएगा। उन्होंने सहस्राब्दियों से पृथ्वी के आंतरिक भाग की शक्ति को रोक के रखा है, लेकिन अब वे सक्रियता के संकेत दिखा रहे हैं। जब इन ज्वालामुखियों के नीचे मैग्मा एक महत्वपूर्ण बिंदु तक पहुंच जाता है तो तबाही के पैमाने की कल्पना करना कठिन होता है। हमारा ग्रह अलग हो रहा है, फिर भी हम किसी और चीज में व्यस्त हैं। उपभोक्तावादी प्रारूप की अंतहीन समस्याएं हमारी आंखों को ढक देती है, हमें मुख्य बात देखने की अनुमति नहीं देती है। हम डेटा हेरफेर से धोखा खा रहे हैं। भूकंप के आंकड़ों में उसी तरह हेरफेर किया जाता है जैसे तापमान के आंकड़ों में होता है। ऐसा करने वाले चुप रहते हैं, कुछ पैसों के लिए और कुछ शायद लोग ना डरे, दहशत ना फैले इसलिए, ताकि लोगों अपने अंतिम दिनों को शांति से जी सके। Because it was so suffocating inside, I couldn't breathe. People die inside the dead body inside the house. It's a nightmare. Oh, I'm pretty well fucked. I fell through that hole. ताकि हम आंखें बंद करके सीधे खाई में चले जाए, जबकि कई जनता ऐसे हैं जो जानबूझकर छुपाता है या सच बताने से डरता है। Now we can see that magma ascent is happening all over the world,
Because the core is shifting, centrifugal forces are accelerating and the bounces of the core start to push out magma abruptly. The faster the planet spins, the harder it pushes liquid magma away from the core towards the surface. This happens according to the principle of centrifuge, and this is not happening over millions of years. It is happening right now. Recall how quickly magma came towards the surface near Antarctica. और एक और खतरनाक संकेतक है जिसे ज्वालामुखीविदों ने हाल ही में पंजीकरण किया। मैग्मा की एक अलग संरचना पृथ्वी के इंटीरियर से सतह पर उभरने लगी। उदाहरण के लिए आइसलैंड में पागाडालफजल ज्वालामुखी के एक हालिया अध्ययन में जो मार्च 2021 में फट गया था, तो पता चला कि इसके विस्फोट के दौरान मेंटल कण के गहरे क्षेत्र में मैग्मा ज्वालामुखी कक्ष प्रवेश किया। जैसा कि आपको याद है, यह वह बहुत प्लम है जो ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों को नीचे से गर्म करता है। Of change for the key chemical indicators of magma erupted by the Fagradals volcano in 2021 was over 8,000 times higher than in other eruptions. एक अध्ययन के अनुसार 2021 में पागाडालफजल ज्वालामुखी द्वारा फटे मैग्मा के प्रमुख रासायनिक संकेतों के लिए परिवर्तन की दर अन्य विस्फोटों की तुलना में 1000 गुना अधिक हो गई। इसके बारे में सोचें। The fact that they rise suggests mixing of मैग्मा की उपसतह परतों में एक रचना होती है, जबकि गहरी परतों में पूरी तरह से अलग संरचना होती है। आमतौर पर वे मिश्रण नहीं करते। मैग्मा की गहरी परतें सिर्फ आगे नहीं बढ़ सकती और सतह पर नहीं बढ़ सकती। तथ्य यह है कि वे उठते हैं, गहराई में मैग्मा के मिश्रण का सुझाव देते हैं जो नहीं होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से हम इसका अवलोकन करते हैं। हमें उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये पहले से ही हो रहा है और यह सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है। एक अलग रासायनिक संरचना का मैग्मा क्रस्ट को बहुत तेजी से खराब करता है। यह सिर्फ मेंटल को पिघला देता है। ये निर्भय तथ्य है। यह हमारे पैरों तले चल रही प्रक्रिया की गंभीरता का एक और सबूत है। मैग्मा चढ़ाई पहले से ही आइसलैंड में एक दिन में 1000 घटनाओं के भूकंप के झुंड के कारण बन रही है और ज्वालामुखी विस्फोटों को ट्रिगर करती है जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं थे। Let's see why magma started mixing up in the Earth's interior. As it rises, the pressure in the magma drops, causing it to boil like blood during agitation. Because of this, magma expands in volume and begins to press, erode, and heat the Earth's crust more. Remember, we have already talked about the unprecedented increase in the number of earthquakes at the depths of more than 700 kilometers. Let's see why And magma here's the answer started to what deep rising focus up. earthquakes in liquid magma are. आइए देखें कि मैग्मा ने पृथ्वी के इंटीरियर में मिशन क्यों शुरू किया है। जैसे जैसे ये बढ़ता है, Explosions equivalent to thousands of nuclear bombs in के power दौरान have started to occur in the वर्षों से interior मैग्मा of our मात्रा में planet. फैलता है और पृथ्वी की This is what पपड़ी को stirs the अधिक batches दबाना of नष्ट magmatic गर्म melt करना शुरू कर देता है। as if याद someone रखें, is stirring the पहले magma ही in the 700 interior किलोमीटर से with a अधिक की big गहराई spoon. पर This process accelerates के on बारे its में own. बात कर Magma चुके starts हैं। pressing harder against the thin crust of the Earth's और surface, यहाँ the तरल Earth's मैग्मा में crust. गहरे This फोकस causes भूकंप the क्या है expansion of the planet and causes cracking in the मैग्मा और thinnest कीटोन parts विस्फोटों का of उगलना the है। Earth's इसके बारे crust में among the सोचिए, mid-ocean बिजली में ridges and हजारों faults. परमाणु बमों के बराबर विस्फोट हमारे ग्रह के इंटीरियर में होने लगे। यह वही जो है मजबूत जलने के बाद बेंचों को हिलाता है, जैसे कि कई बार वे चम्मच के साथ इंटीरियर में मैग्मा को हिला रहा है। मैग्मा दबाव में वृद्धि पिघल जाती है और पृथ्वी की पपड़ी को विकृत कर देती है। नई दरारें और फ्रैक्चर की संख्या बढ़ जाती है और पुराने सक्रिय होने लगते हैं। नए फ्रैक्चर जोन खुल रहे हैं जिससे सतह के पानी के इंटीरियर में भाग सकता है। इस वजह से पूरे ग्रह पर नदियों में और झूले सूख रहे हैं, भले ही वर्षों और बाढ़ बढ़ रही है। दूसरी, इसी समय मीथेन और हाइड्रोजन गैसें दरारें और फ्रैक्चर के माध्यम से सतह पर उठती हैं। ये गैसें
आसानी से ज्वलनशील होती हैं, इसलिए दोषों के साथ अधिक से अधिक जंगल की आग होती है। पृथ्वी के इंटीरियर विगलन गुही के लिए प्रतिक्रिया के प्रमाण है, जो कोर और अस्थिरता से ट्रिगर होते हैं। और मैग्मा अभी हर जगह बढ़ रहा है, जहाँ क्रस्ट पतला है वहाँ सबसे ज्यादा महसूस किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, पश्चिम साइड और अंटार्कटिका के दोनों में बहुत पतली पपड़ी है, लेकिन नक्शे को देखें, पीले रंग के क्षेत्र दिखाई देता है। मैग्मा की चढ़ाई ज्वालामुखी स्फोटों को ट्रिगर करती है। वो वोल्केनो खतरनाक संकेत दे रहा है। भूकंप केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। मानचित्र से पता चलता है कि काल्डेरा के पास जमीन कहाँ और दिखती है और ग्रह के इंटीरियर में the motion of the planet core increases the pressure of magma, and then the pressure reaches the critical point, the magma will burst out सुपर वोल्केनो निस्संदेह प्रक्रिया करेंगे जब मैग्मा का युद्ध हो जाता है। ग्रह के कोर की गति मैग्मा से दबाव बढ़ाती है और दबाव पहुंच जाता है तो मैग्मा लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक तथ्य हमारे पास है। क्या आपको याद है कि हमने मलयालम फ्रेंड्स का उल्लेख किया था सबसे पतला है, लेकिन 5 मीटर जहाँ सबसे अधिक आते हैं। दूसरे शब्दों में मैग्मा की गुहिकाएं विस्फोटों की सबसे बड़ी मात्रा होती है और येलोस्टोन विस्फोट की तुलना में अधिक भयानक मरियाना ट्रेंच के पास 10 तीव्रता के भूकंप का पूर्वानुमान है। भूकंप हमारी सतह कभी नहीं हुई। इस शक्ति का मतलब है आसानी से 5 किलोमीटर की पपड़ी को फाड़ दिया। बाद में रिपोर्ट आप मरियाना ट्रेंच के मैग्मा ब्रेकआउट के परिणाम हमारे का क्या कारण मैग्मा को बाहर की ओर क्या धकेलना है। सौरमंडल में अन्य ग्रहों पर जलवायु परिवर्तन। What is pushing magma to the outside? In order to approach the understanding of this question, it is important to consider the प्रश्न की information समझ from के both दृष्टिकोण the के लिए astronomers खगोलविदों और and ग्रह planetologists, विज्ञानियों दोनों because the से change is जानकारी पर similar विचार to the करना ones महत्वपूर्ण है, happening on क्योंकि Earth, पृथ्वी पर are होने वाले also परिवर्तनों के occurring in समान the परिवर्तन interior सौर of मंडल other के अन्य planets of ग्रहों the के solar system. इंटीरियर में भी हो Just like रहे on हैं। Earth, on उदाहरण के लिए Jupiter, पृथ्वी की तरह Venus, यूरेनस, wind speed बृहस्पति और kills, and शुक्र the पर size हवा of की गति hurricanes are और increasing. तूफान का Ice आकार बढ़ caps रहा are है। मंगल ग्रह melting पर on बर्फ की Mars. So let's watch a video टोपियां about पिघल रही it. हैं। आइए इस बारे में एक वीडियो देखते हैं। दो दशकों से नेपच्यून की चमक 11 साल के सौर चक्र के अनुसार बदल रही थी, लेकिन 1996 के बाद यह प्रक्रिया बाधित हो गई। नेपच्यून के वातावरण में वैश्विक परिवर्तन हुए। यह निचले वायुमंडल में गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों के प्रवेश के कारण हुआ है, जिसका प्रभाव तूफान और तूफान के गठन पर पड़ता है। इसके अलावा नेपच्यून पर असामान्य तूफान आते हैं और 2018 में खोजा गया विशाल तूफान सबसे मजबूत, सबसे चमकीला और अटलांटिक महासागर की तुलना में चौड़ा था। भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हुए इसे भंग होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय यह मुड़ गया और भूमध्य रेखा से दूर जाने लगा। नासा कहता है कि यह अप्रत्याशित वायुमंडलीय व्यवहार देखने के लिए कुछ नया है। हमारे ग्रह पर गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणें वायुमंडल की मध्य परतों में भी प्रवेश करती हैं, जो अब वायुमंडल के वैश्विक पुनर्गठन की ओर ले जा रही है। यूरेनस को एक शांत ग्रह माना जाता था और 2007 तक वैज्ञानिकों ने यूरेनस पर सक्रिय मौसम को भूमध्य रेखा पर सौर ताप के प्रभाव के लिए जिम्मेदार ठहराया। लेकिन कोई भी यह नहीं समझ सकता है कि 2014 से ग्रह पर शक्तिशाली तूफान क्यों आ रहे हैं। पहले यूरेनस पर तापमान गिर रहा था, लेकिन 2014 के बाद से वैज्ञानिकों ने ग्रह के तेजी से बढ़ते ताप को देखा है।
एस्ट्रोफिजिसिस्ट हेनरिक मेलिन यूरेनस के बारे में निम्नलिखित नोट करते हैं। यूरेनस इस मायने में अद्वितीय है कि यह इतने लंबे समय तक बहुत शांत तूफान बना रहा और साथ ही 2014 में इन तूफानों की उपस्थिति ऊपरी वायुमंडल के अचानक गर्म होने के साथ इतनी अच्छी तरह से संबंधित है। यूरेनस के वायुमंडलीय तापमान में सामान्य बदलाव धीरे धीरे होने चाहिए। तथ्य यह है कि उलटफेर अपेक्षाकृत रूप से जल्दी हुआ, इसका मतलब है कि कुछ नाटकीय बदल गया है। पृथ्वी पर पिछले 50 वर्षों में वैश्विक वायुमंडलीय तापमान में भी वृद्धि देखी गई है। हमारे ग्रह पर विनाशकारी तूफान और रिकॉर्ड संख्या में बवंडर की शक्ति बढ़ गई है। शनि पर हर 30 साल में एक बड़ा तूफान आता है, लेकिन 2010 में यह उम्मीद से 10 साल पहले आया और यह अब तक का सबसे बड़ा तूफान है। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने बिजली की चमक रिकॉर्ड की। तुलना के लिए पृथ्वी पर इस तरह की बिजली प्रेक्षणों के पूरे इतिहास में सबसे शक्तिशाली रही होगी। तूफान ने थर्मल विसंगतियों को जन्म दिया, जिसने शनि के वायुमंडल के परिसंचरण, संरचना और संरचना को गहरी से ऊपरी परतों में बदल दिया। इस तूफान के परिणाम आने वाले वर्षों में शनि के उत्तरी गोलार्ध को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही पूरे रिकॉर्ड की गई अवधि के दौरान पहली बार कैसिनी ने शनि के चंद्रमा टाइटन पर विशाल धूल के तूफान की खोज की। लेकिन पृथ्वी पर हवा की गति भी तेज हो गई है। रेत और धूल भरी आंधियां बार बार आने लगी हैं। तेजी से रेत के बड़े पैमाने पर आकाश को अस्पष्ट करते हैं और अफ्रीका, एशिया, अमेरिका और यूरोप के कई हिस्सों में घुटी हुई हवा लाते हैं। खगोल विज्ञान के प्रोफेसर इनकेडी पाटर के अनुसार बृहस्पति भी वैश्विक परिवर्तन के बीच में है। अब बृहस्पति के लाल धब्बे बादलों के ऊपर फैल गए हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार यह वृद्धि उस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि का संकेत देती है। जैसा कि ग्रह वैज्ञानिक माइकल वोंग ने कहा, इसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट में सौर मंडल का सबसे बड़ा तूफान 2009 से 2020 तक हवा की गति 10% तक बढ़ गई है और लगातार बढ़ रही है, जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा है। इसके अलावा असामान्य रूप से तेज बिजली की चमक अधिक बार हो गई है। इसके अलावा बृहस्पति के चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी विस्फोटों की संख्या में वृद्धि हुई है। मंगल ग्रह पृथ्वी का निकटतम एनालॉग है और सभी प्रक्रियाएं जो हाल ही में मंगल पर देखी गई हैं, विशाल धूल भरी आंधी, भूस्खलन, चुंबकीय विसंगतियां, भूकंपीय गतिविधि में वृद्धि, बर्फ का पिघलना, अब पृथ्वी पर भी हो रहे हैं। मंगल गर्म हो रहा है और वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पृथ्वी और मंगल दोनों के गर्म होने का कारण एक ही है और इसका मानव गतिविधि से कोई लेना देना नहीं है। शुक्र ग्रह पर भी परिवर्तन हो रहा है। वीनस एक्सप्रेस ऑर्बिटर के आंकड़ों के अनुसार 2006 से 2012 की अवधि में शुक्र पर हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 400 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। कुछ समय पहले तक ग्रह वैज्ञानिकों ने शुक्र की भूवैज्ञानिक गतिविधि के बारे में तर्क दिया था। एक नए अध्ययन ने शुक्र की सतह पर हाल ही में सक्रिय 37 ज्वालामुखी संरचनाओं की पहचान की है। भूविज्ञान के प्रोफेसर लॉरेंट मोंटेसी कहते हैं, यह पहली बार है जब हम कह पा रहे हैं, देखो, यह कोई प्राचीन ज्वालामुखी नहीं है बल्कि आज सक्रिय है। शुक्र की तरह ही अधिक से अधिक ज्वालामुखी अब पृथ्वी पर जाग रहे हैं और ग्रह की आंतों में चुंबकीय गतिविधि बढ़ रही है। 1998 में डॉरिस प्रणाली ने सौर मंडल के ग्रहों के कोर और उनके उपग्रहों के कोर में तेज उछाल दर्ज किया। यूरी बार्किन के वैज्ञानिक कार्यों में कहा गया है कि सौर मंडल पर प्रभाव बाहर से आता है और ग्रहों पर वैश्विक जलवायु परिवर्तन एक साथ हो रहे हैं। Thus, we see that all planets with cores are now experiencing climatic changes and intensification of तीव्रता का earthquakes अनुमान and कर रहे हैं। volcanoes. The planet's ग्रहों के cores are कोर coming into imbalance, असंतुलन which में sets आ in रहे हैं, जो motion ग्रहों के the भीतर पिघले हुए multiple घटकों moments को within गति the के planets. गति As में a सेट करता है। इस consequence of प्रकार these में processes, abnormal परिणाम स्वरूप phenomena begin ग्रहों to के occur in the atmospheres of the वायुमंडल में planets, while असामान्य damaged घटनाएं होने steam लगती हैं, जबकि accumulate in ग्रहों the के interior of the इंटीरियर planets. में नुकसान Moreover, जमा this होता है। happens इसके even अलावा यह in the गैस gas giants, दिग्गजों despite the में भी fact that होता they है, do not इस have तथ्य के solid बावजूद कि cores. उनके पास ठोस Look at कोर नहीं है। Mars, the मंगल ग्रह closest को planet देखें, to us. We want देखो, to draw your जो हमारे attention to सबसे a निकटतम number ग्रह of है। हम इन other मुद्दों पर studies कई on अन्य these अध्ययनों का issues. आपका On ध्यान May आकर्षित करना 4, चाहते हैं। 2022,
4 मई 2022 को मंगल ग्रह पर 5 की तीव्रता के साथ कई अन्य ग्रहों पर देखा गया कि अब तक सबसे बड़ा भूकंप दर्ज किया गया है। स्क्रीन पर इस भूकंप का मॉडल को देखिए। Look at the model of this earthquake on the screen. मंगल ग्रह Seismologists studying पर earthquakes भूकंप and के quakes अध्ययन on Mars believe को that करने seismic वाले भूकंप activity is वैज्ञानिक का caused by मानना the है कि activation भूकंपीय of magma गतिविधि in the मंगल ग्रह के मेंटल Martian में मैग्मा mantle, की just सक्रियता as के it कारण होती है, just as it is पर हो happening रहा on है। Earth now. Moreover, इसके studies अलावा in 2022 के अध्ययनों 2022 ने have shown मंगल signs ग्रह of पर areas of ध्रुवीय liquid बर्फ की water टोपियों beneath के the नीचे polar तरल ice पानी caps के on क्षेत्रों Mars, के forming संकेत दिखाए हैं, जो मंगल to ग्रह के increased heat इंटीरियर flow में गर्मी in के the प्रवाह Martian में interior, वृद्धि के just कारण as this बनते is हैं। happening ठीक beneath वैसे the ही जैसे Greenland पृथ्वी and पर Arctic ग्रीनलैंड glaciers और on अंटार्कटिका Mars. ग्लेशियर के We नीचे began observing ऐसा हो climate रहा है। changes on the planets in the solar system back in the beginning of our research. Since हमने 1996, articles have begun to अपने शोध की appear शुरुआत में सौर that मंडल में documented ग्रहों पर changes on जलवायु the परिवर्तन planets. का We अवलोकन करना noticed शुरू कर that दिया the है। processes 1966 के of बाद the different planets 1996 were के बाद लेख simultaneous. दिखाई देने Some लगे हैं जो scientists believe that अन्य this ग्रहों is पर प्रलेख related to the परिवर्तन influence है। of the हमने sun देखा कि on the विभिन्न ग्रहों climate. पर प्रतिक्रिया के साथ However, एक as साथ we थी। now see, changes on the other planets are being triggered from the interior. कुछ This वैज्ञानिकों has का led मानना us है to कि the idea इसका that the संबंध reason for जलवायु पर this सूर्य is के more प्रभाव से है। global than हालांकि the ऐसा problem of अब हम one देखते हैं planet. इंटीरियर That is why we started इंटीरियर के conducting अन्य an ग्रहों के interdisciplinary परिवर्तन शुरू research किया in जा रहा climate है। change and इसने geodynamics, हमें इस and विचार की we ओर saw that अग्रसर the reason किया for है all these कि changes इसका lies कारण outside of एक our ग्रह की planet. समस्या से So अधिक in order वैश्विक to है। यही understand the कारण है full कि हमने picture जलवायु of the परिवर्तन और escalating catastrophe, it is necessary भूगर्भीय to पर एक disclose another key अंतर्विषय शोध aspect, करना शुरू कर namely दिया the है और हमने cataclysms देखा on कि Earth, परिवर्तनों as well का as कारण other हमारे ग्रह के planets in the बाहर है। solar इसलिए system बड़ी तबाही की पूरी that तस्वीर occur को समझने के cyclically. लिए एक और A महत्वपूर्ण detailed पहलू का खुलासा analysis of करना आवश्यक geological है, data has अर्थात shown हमारी that 12,000 years पृथ्वी ago, पर our planet already और साथ ही underwent सौर मंडल catastrophic के अन्य changes ग्रहों similar पर to those ये that are प्रलय escalating now. So चक्रीय let's रूप watch a से video होते हैं। about this. इसी तरह के बदलाव जो हम अब देख रहे हैं वे 12,000 साल पहले एक विनाशकारी तबाही के चरम से पहले हुए थे। इन घटनाओं को अलेरोड कंपन कहा जाता है, जिसके बाद यंगर ड्रायस हेमंदी होती है। 12,800 साल पहले वैश्विक तापमान कुछ ही वर्षों में 15 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। अधिकांश बर्फ की चादरें अचानक पिघल गईं और पृथ्वी एक पूर्ण हिमयुग से निकली। इस समय के दौरान अत्यधिक बाढ़ और प्राकृतिक आपदाएं हुईं, समुद्र के स्तर में तीव्र चढ़ाव हुई। इस समय गल्फ स्ट्रीम रुक गई, जैसा अभी हो रहा है। कैंसस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि लगभग 12,800 साल पहले पृथ्वी पर एक विशाल आग लगी थी, जिसने पूरे ग्रह की सतह के 10वें हिस्से को ढका हुआ था। अन्य शोधकर्ताओं ने यह भी पाया है कि 12,000 साल पहले साइबेरिया में बड़ी आग लगी थी और अब अधिक से अधिक बड़े पैमाने पर आग हैं जिन्हें बुझाया नहीं जा सकता है। उपग्रह छवियों के विश्लेषण के आधार पर वैज्ञानिकों ने पाया है कि 10 से 13,000 साल पहले सहारा रेगिस्तान और अन्य क्षेत्रों में सबसे बड़े ज्ञात टीलों का निर्माण हुआ था। यह यंगर ड्रायस के दौरान हवाओं की भारी ताकत को इंगित करता है। उस अवधि के दौरान हवाओं की एक अल्पकालिक तीव्रता को ग्रीनलैंड आइस कोर डेटा और अलास्का में अनुसंधान से भी प्रलेखित किया गया है। आजकल पृथ्वी पर वैसी ही परिघटना हो रही हैं जैसी यंगर ड्रायस के दौरान होती थीं। हम देखते हैं कि हवाएं, तूफान, आंधी और बवंडर तेज हो रही है और पूरे शहरों को नष्ट कर रहे हैं। 12,000 साल पहले चक्र परिवर्तन के दौरान जोरदार भूकंपीय गतिविधि हुई थी। यह रेडियोकार्बन विश्लेषण डेटा के साथ साथ यंगर ड्रायस काल के पुरापाषाणकालीन पुनर्निर्माणों से प्रमाणित होता है। इसी अवधि में 12,000 साल से भी पहले अभी की तरह चुंबकीय क्षेत्र का भीषण कमजोर होना और ध्रुव बदलाव होना, जिसे गोथेनबर्ग का भ्रमण कहा जाता था। इन सभी अचानक हुए परिवर्तनों का कारण क्रोड में परिवर्तन के कारण होने वाली असामान्य मैग्नेटिक गतिविधि थी। यह बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों में व्यक्त किया गया था, जिसे वैज्ञानिकों ने यंगर ड्रायस में धूल और हिमनदों में अम्लीय वर्षा के निशान से दर्ज किया था। हॉल की गुफा में पाए गए तलछट का विश्लेषण ज्वालामुखी विस्फोटों की ओर इशारा करता है, जो लगभग 13,000 साल पहले ज्वालामुखी सर्दी और दुनिया भर में हिमनद का कारण बना। यंगर ड्रायस में अचानक गर्माहट के बाद उतनी ही तेज ठंडक भी रही।
इस घटना ने मेगाफौना के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने का कारण बना दिया। साइबेरिया के उत्तरी ढलानों पर बर्फ में हजारों जमे हुए मैमथ और अन्य स्तनधारी पाए गए हैं। मानव आबादी में भीषण गिरावट आई, जिसमें क्रो मैग्नन का विलुप्त होना भी शामिल था। वे सभी विनाशकारी घटनाएं कुछ ही दशकों के भीतर हुईं। As you can see, in the younger Dryas, changes in the magnetic field began exactly as the ones happening now. Then there were catastrophic eruptions on the planet as a result of the magma ascent. During this period, 90% of the megafauna went extinct. There was a demographic catastrophe and humanity shrinked to 140,000 people. However, this time it will be much worse, and you will soon find out why. After analyzing the geologic data for the past 100,000 years, we have noticed that abrupt magnetic pole shifts occur with a certain periodicity. Have a look at the graph. You can see the time intervals when these pole shifts occurred. This happens approximately every 13,000 years. According to the geological evidence, during these periods, there was also a weakening of the magnetic field by 8-10 times. Let's recall that the same thing is happening today. Our magnetic field is weakening 10 times faster than in the last century. You and I already know that changes in the magnetic field do not occur by themselves. This is a result of changes in the planet's core. Thus, we see that every 12,000 years, for some reason, the motion of the Earth's core changes abruptly. And all of this happens due to the fact that there is something that cyclically causes sudden disturbances in the functioning of the core. Also, according to studies of ice cores, every 12,000 years there was an abnormal increase in volcanic activity. We already know that this is caused by the ascent of magma closer to the Earth's crust. And in the graph, you can see when such eruptions occurred. The size of circles reflects the size of the eruptions. And please pay your attention to the big red circles. They indicate that every 24,000 years, volcanic eruptions are more catastrophic. Such supervolcano eruptions wiped out almost all life on the planet. Archaeological evidence suggests that each time during these catastrophic eruptions, entire species of Homo sapiens almost died out. Taupo volcano in New Zealand erupted 24,000 years ago, and Elbrus erupted 48,000 years ago. Both of these volcanoes are already showing signs of abnormal activity these days. Last month alone, 700 earthquakes occurred in the area of Taupo. And 74,000 years ago, there was an eruption of the Tobo volcano. It was one of the largest eruptions on Earth over the past 25 million years. Archaeologists believe that only 2 to 10,000 people survived this catastrophe across the entire planet, which means that humankind was one step away from extinction. It is important to note that every 12,000 years, the climate changes dramatically and average temperatures on the planet spike by 10 to 15 degrees Celsius. This is followed by catastrophic floods and natural disasters. Look at the graph. It shows that every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. It is important to note that according to the ice core data, each time during the cycle, the CO2 concentration increases due to ocean heating. The same thing is happening now. CO2 is rising indeed, but it has nothing to do with human activity nowadays, just as it had nothing to do with it in previous times. We're now seeing a critical increase in climate disasters on Earth. That said, we know that the last time such changes in the core occurred was 12,000 years ago. The red arrow marks our time. As you can see, we are 12,000 years ahead from the previous peak. The traces of the cycle of catastrophes in the geological past of the planet have blurred the boundaries in time due to inaccuracy of the method of dating. And the further back in time, the greater this error becomes, and it can be thousands of years. However,
cyclic cataclysms occur exactly every 12,000 years. Facts and dates are very stubborn things. So unfortunately, we are forced to state that we are just in for the next such cycle. A 12,000-year cycle of climatic catastrophes, which is overlapped by a more catastrophic 24,000-year cycle. So unfortunately, the worst case scenario awaits us. We can see that magma pressure is already building up. What does that tell you? You are smart people and you're great at making predictions based on the facts. This suggests that the climate changes and natural disasters that we are seeing on Earth today are only the beginning, not yet the disaster. In fact, the real disaster is ahead. And according to our mathematical model, it is very, very close. Taking the progression into account, we have calculated how the 24,000-year cycles unfolded. And by analyzing the way things are developing now, we have calculated the phases, when it's going to peak and how it's going to end. You will hear about that next. But what causes the cycle of cataclysms and affects the core of our planet every 12,000 years? Let's watch a video. शोधकर्ताओं का मानना कि यह चक्रीय प्रकृति गैलेक्टिक है, यह आकाशगंगा के घूर्णन चक्र से संबंधित है। हर 12,000 वर्षों में ब्रह्मांड के केंद्र से विकिरण सौर मंडल को प्रभावित करता है और यहाँ तक सूर्य को भी प्रभावित करता है। 1998 में न केवल पृथ्वी की अंतर्भाग कूद दर्ज की गई थी, बल्कि चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों की भी दर्ज की गई थी। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के सभी ग्रहों और उपग्रहों पर भारी जलवायु परिवर्तन दर्ज करना शुरू किया। बहुत बड़ा आंधी और तूफान की संख्या में बढ़ोतरी, असामान्य तापमान, ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि में बढ़ोतरी। अब पृथ्वी पर सूर्य की कम गतिविधि के कारण ब्रह्मांडीय विकिरण के बढ़े हुए प्रवाह का पता चला है। वैज्ञानिकों को इस बात के प्रमाण मिले हैं कि 12,500 साल पहले ब्रह्मांडीय किरणों द्वारा इसी तरह की बमबारी हुई थी। इसके अलावा हर 12,000 वर्षों में ब्रह्मांड के केंद्र से हिंसक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अज्ञात प्रवाह हमारे ग्रह पर आता है। यह उच्च ऊर्जा प्रभाव सूक्ष्म स्तर पर होता है और इसमें ग्रह के मूल के एक बदलाव को प्रारंभ करने की अत्यधिक क्षमता होती है। गैलेक्टिक विकिरण जीवमंडल के जीवन चक्र को बाधित करता है। पेड़ बड़े पैमाने पर अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने लगते हैं, जबकि दलदल घातक गैसों के यौगिकों का उत्सर्जन करते हैं। इस बार पृथ्वी मंगल की तरह ही एक और मृत ग्रह बन सकती है। हमारी तकनीकी सभ्यता द्वारा उत्सर्जित विषाक्त पदार्थों से ग्रह की प्रतिरक्षा प्रणाली अब नष्ट हो गई है। ग्रह का रोगग्रस्त जीव उस भारी तनाव से नहीं बच सकता है जो चक्रीयता हर 12,000 वर्षों में पैदा करता है। हर 24,000 वर्षों में आपदाएं और भी विनाशकारी होती हैं क्योंकि सौर मंडल ब्रह्मांड के केंद्र से विकिरण के करीब पहुंच जाता है। अब हम निकट बातचीत के इस बिंदु पर आ रहे हैं। ग्रह अपने अंतिम वर्षों में जी रहा है और हम भी, अगर हम निष्क्रिय रहते हैं। जैसा कि आपने अभी भी सुना, कोर में परिवर्तन ब्रह्मांड केंद्र से आने वाले ब्रह्मांडीय प्रभाव से ट्रिगर होते हैं। हमारा ग्रह हर 12,000 और 24,000 वर्षों में एक ब्रह्मांडीय प्रभाव को प्रभावित होता है। चक्र में इतनी समय अवधि क्यों होती है? आकाशगंगा 220 मिलियन वर्षों में अपनी धुरी के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करती है। इसका मतलब यह है कि 12,000 साल का चक्र गैलेक्टिक रोटेशन का चक्र नहीं है। क्या ये संभव है कि हर 12,000 साल में एक बार हम किसी न किसी तरह से पल्सर प्रभावित हों, लेकिन हमारे सौर मंडल के मार्ग पर कोई विकिरण स्रोत नहीं है जो हर 12,000 या 24,000 वर्षों में इस तरह के उच्च ऊर्जा विस्फोट पैदा करेगा जो ग्रहों के कोर को प्रभावित करेगा। इससे पता चलता है कि हम अभी तक बहुत अच्छी तरह नहीं जानते कि गैलेक्सी कैसे काम करता है। फिर भी हर 12,000 वर्षों में पूरे सौर मंडल को प्रभावित करने वाला एक बड़ा प्रभाव पड़ता है।
हर in चौ every और हर 24,000 24,000 years, वर्षों में ये it is an परिणाम का order of एक क्रम magnitude अधिक powerful. शक्तिशाली होता है। The entire solar पूरा system सौर becomes मंडल exposed गहरे to a certain high अंतरिक्ष energy से एक impact from the deep निश्चित उच्च space. ऊर्जा प्रभाव के संपर्क में आ Let's call जाता it है और आइए external इसे बाहरी cosmic impact. ब्रह्मांडीय प्रभाव कहते हैं। This is a type of energy एक that has not प्रकार yet की been ऊर्जा practically studied by है modern जिसका science. अभी तक आधुनिक विज्ञान द्वारा We only see the व्यवहारिक रूप से अध्ययन consequences नहीं of किया the गया। impact of this हम केवल energy, इस ऊर्जा के प्रभाव resulting के in changes in परिणामों the को core देखते हैं, and जिसके catastrophes परिणाम of a स्वरूप planetary ग्रहों scale. के पैमाने के कोर और तबाही के This में is the परिवर्तन impact of होता है। an ये प्रभाव extremely एक अत्यंत high उच्च ऊर्जा energy का है, which causes जो significant सूक्ष्म changes in जगत the में microcosm. For महत्वपूर्ण example, परिवर्तन का between year कारण बनता है। 2003 and उदाहरण के लिए 2013, 2003 और the 2013 के बीच probabilities हाइड्रोजन परमाणु that the के प्रोटीन proton charge क्रिया raises में the 4% hydrogen की atom by महत्वपूर्ण कमी आई। 4%. इस This concept स्थिरांक was से previously पहले considered स्थिर to be माना जाता stable. था। कुछ लोगों के लिए इस For some जानकारी का people, कोई this मतलब नहीं है, information लेकिन does not कई mean लोगों के लिए anything. जो समझते But for हैं me कि who इसका क्या understand मतलब है, what ये it भयानक means, समाचार it was terrible और एक news, प्रमुख a अग्रदूत major था। harbinger. In other words, दूसरे this शब्दों में, ये radiation is विकिरण capable न of केवल ग्रहों के affecting कोर को not only the प्रभावित करने में cores of the सक्षम है, planet, बल्कि but सूक्ष्म also जगत the को भी प्रभावित करने में microcosm. सक्षम है। आज हम We'll आगे talk बात further करेंगे कि ये today प्रभाव क्या है। about what this impact is. There is one more very important thing that we need to ये एक understand बहुत now. महत्वपूर्ण बात If है the जिसे planet हमें has अब made it समझने की through जरूरत the है। previous यदि cycle, ग्रह ने albeit इसे with पिछले great चक्रों के माध्यम losses, से बनाया, yet it यद्यपि made बहुत it through. नुकसान के साथ, This फिर भी time, the thing इसने will be इसे much बनाया। इस worse. बार हालात और भी Having बदतर summed up होंगे। all signs of the climatic changes on पृथ्वी के Earth, we have found that today's event पृथ्वी are के पर progressing जलवायु परिवर्तन much के more सभी rapidly संकेतों than को in the previous अभिव्यक्त cycle. करने के बाद What हमने is पाया happening कि in आज our की planet घटनाएं पिछले now चक्रों in की तुलना में previous बहुत तेजी से cycle, आगे बढ़ रही हैं। it was at the अब हमारे second ग्रह के साथ stage, क्या हो रहा है? while पिछले we are चक्रों में ये दूसरे चरण experiencing में at था, the जबकि first इसे stage. पहले चरण के And अनुभव कर रहे these हैं और indicate that इंगित subsequent करता climatic है disaster कि will बाद be की जलवायु many आपदाएं times कई more गुना अधिक severe गंभीर and और विनाशकारी devastating, होंगी और and ये that कि the ग्रह planet इनसे will बच not नहीं पाएगा, survive them. क्योंकि Why? हमने अपने ग्रह Because की परिस्थिति we को have नष्ट कर destroyed दिया the है, वास्तव में ecology of उसकी our planet. In प्रतिरक्षा fact, को मार not डाला है। its immunity. ये मानव जनित This कारक is है the anthropogenic जिसे हम factor इतने that कम we समय will में not नहीं be बदल able to पाएंगे। change in such सभी a तिथियां short period ये of time. संकेत मिलता है All कि dates विनाशकारी प्रक्रिया indicate केवल that खराब हो destructive रही है और processes तेज हो are रही है। only हमें getting बताया गया कि worse इस तरह के and बदलावों में accelerating. हजारों साल लगेंगे, We have been लेकिन ये told बकवास है। that such a सब कुछ change बहुत तेजी will से हो take रहा है और thousands आप of पहले से years, ही but वैज्ञानिकों के it's द्वारा बयान nonsense. पा Everything is सकते happening हैं कि much 100 faster, वर्षों में होने वाले and जलवायु you can already find परिवर्तन अब हो statement रहे by the हैं। scientists that भगवान का climatic शुक्र है कि changes कई predicted to वैज्ञानिक take place में ये in कहने की 100 हिम्मत है years कि are उन्होंने happening गलत now. अनुमान लगाया, Thanks to गलत God थे that और सब कुछ scientists तेजी से हो रहा है। there are हिमस्खलन scientists who says की that they have तरीके से और miscalculated, that they जितना were लगता है wrong, कहीं that अधिक गंभीर है, everything is happening लेकिन हम fast लंबे समय से in इस an बारे में बात कर रहे हैं। avalanche-like manner, and it is more serious than it seems. But we have been talking about this for a long time already. Let us draw आइए हम intermediate मध्यम conclusions. वर्ती We're निष्कर्ष now निकालें। entering अब a हम more 24,000 dangerous वर्षों के cycle of प्रलय cataclysms से of अधिक खतरनाक क्षेत्र में 24,000 प्रवेश years. कर रहे हैं। इस In the बीच ग्रह की meantime, the planet's परिस्थिति को ecology मार was दिया गया killed और and the ग्रह की planet's immunity प्रतिरक्षा weakened. कमजोर हो While गई, we have जबकि not हमने even इस बिंदु entered पर the चक्र peak के of the चरम cycle at में this प्रवेश भी point, नहीं किया है। disasters and आपदाएं cataclysms are और already प्रलय पहले से ही escalating at an खतरनाक दर alarming से बढ़ rate. रही हैं। In इस this मामले में case, भूमिगत underground बंकर bunkers will मदद not नहीं करेंगे, help, as क्योंकि they वे will बस simply पिघल melt जाएंगे। because magma is ascending मैग्मा from नीचे below. से चढ़ रहा है And now, the और key हमारी question of our रिपोर्ट का मुख्य report: सवाल हमारे how चक्र की much time तबाही is left होने before में the कितना समय बचा है। catastrophe of our cycle happens?
Please कृपया take a look at the भूकंपीय seismic गतिविधि activity ग्राफ graph पर again, फिर से एक please. नजर डालें। आप स्पष्ट रूप You से can clearly घातीय वृद्धि see देख the सकते हैं। भूकंप की exponential संख्या में growth एक and अनिश्चित घातीय uncontrolled वृद्धि। exponential इस increase in the प्रगति में number एक of गणितीय पैटर्न है। earthquakes. इसलिए This सर्वश्रेष्ठ progression has वैज्ञानिक, a mathematical भूवैज्ञानिक और pattern, विश्लेषकों so के having साथ मिलकर calculated it इसकी गणना together with करने the के best बाद हमने scientists, इस geologists, and प्रगति का मॉडल analysts, we तैयार have किया है, modeled the जिसमें भविष्य progression में भूकंप in में which earthquakes will तेजी आएगी। accelerate और in the हमने जो future. खोजा And वह what we पूरी तरह से discovered भयानक था। was क्यों? utterly आपने terrifying. अपने आप Why? के लिए एक नज़र Take a डालें। look for yourself. जैसा कि As you आप can देख सकते see, हैं, the भूकंपीय rate of गतिविधि में increase वृद्धि in के दर seismic चौंकाने वाले activity हैं। is प्रत्येक क्रमिक shocking. चरण में भूकंप की At संख्या 3 each गुना बढ़ जाती है। successive यदि stage, उद्यमियों के रूप में the number आपकी of आय earthquakes इस प्रगति increases पर बढ़ी, 3 तो times आप as सबसे much. सफल व्यापारिक लोग होंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे The more आका earthquakes साझा will अंत की happen, प्रगति है। the
the जितने magnitude अधिक of them भूकंप will आएंगे increase more. उनकी तीव्रता And उतनी by बढ़ेगी और 2028 2028, तक there will be पृथ्वी पर एक दिन में 1,000 1000 destructive विनाशकारी earthquakes a भूकंप day आएंगे, on जबकि Earth, 2036 whereas में in एक वर्ष में 10 लाख से अधिक 2036, भूकंप आएंगे। जरा there will सोचिए, be एक साल over में a 1 लाख से million अधिक भूकंप। earthquakes a year. Just ये think about it, more than 1 million earthquakes a year. What ये is हमारा अंत नहीं this तो क्या है? if not पहले से ही our end? 2028 में जीवन Already in लगभग असहनीय होगा। 2028, ये सचमुच life 6 will be वर्षों में है। almost जरा सोचिए, unbearable. आपका That's आरामदायक literally पारिवारिक in जीवन, 6 आपका years. व्यवसाय, आपकी योजनाएं Just 6 think, साल में खत्म हो your जाएंगी comfortable और family life, 2036 में your पूरी मानवता का business, अंत आ your जाएगा। plans will be over in 6 years. And in 2036, the end of all humanity will come. Why do we use an exponential growth model in our calculations हम एक rather रैखिक than a linear विकास growth मॉडल के model, बजाय whose prognosis हमारी गणना may differ में than the एक global घातीय warming विकास theory? मॉडल का उपयोग क्यों Because we करते take हैं, into account जैसा कि a मानव variety of जनित factors ग्लोबल occurring वार्मिंग in the Earth's सिद्धांत के interior. समर्थक करते हैं, And क्योंकि today, हम पृथ्वी to के get the इंटीरियर में purpose, होने we had वाले to विभिन्न discover कारकों how को ध्यान में rapidly रखते हैं। climate और disasters are आज progressing. हमारे साथ मिलकर To understand how आपने पाया fast कि it can be, जलवायु आपदाएं कितनी we तेजी से compare it प्रगति कर रही हैं। associatively ये समझने to के लिए boiling milk in a ये कितनी saucepan. तेजी से हो सकता It है, heats up आप इसकी gradually at तुलना first, सॉस पैन but then में in दूध an उबालने instant, से the milk कर सकते boils हैं। ये and पहले escapes धीरे from धीरे the गर्म saucepan. होता है, लेकिन फिर एक पल में दूध We can उबलता है also और take into सॉस पैन account the बच inertia जाता of है। the process. Suppose you're driving a passenger car at a speed of हम 20 kilometers per hour. प्रक्रियाओं की The braking distance will जड़ता be को भी 2 ध्यान में रखते meters. हैं। मान लीजिए आप But 20 if किलोमीटर you're प्रति driving घंटे at की 80 रफ्तार से kilometers पैसेंजर per कार hour, चला रहे हैं, the तो braking ब्रेकिंग distance is की more दूरी than 2 30 मीटर meters. होगी। लेकिन अगर आप 80 The किलोमीटर same is प्रति true घंटे की for the रफ्तार से गाड़ी calibration चला रहे हैं, तो purposes. ब्रेकिंग की The दूरी 30 longer मीटर we से अधिक wait, होगी। the पहले की greater प्रगति के will लिए be the भी यही inertia सच है। as well as जितना the अधिक हम braking प्रतीक्षा distance. करते हैं, उतना ही अधिक All of us जड़ता in है। the world जड़ता are के in साथ साथ one ब्रेकिंग दूरी huge भी होती bus, है। which is दुनिया में हम speeding up, सभी एक विशाल बस में हैं, and ahead, जो तेजी से बढ़ रही ahead of है us, और हमारे is सामने an abyss. प्रतिफल है। ये हर किसी को It लगता है seems कि to हम अंत everyone में ब्रेक that लगाएंगे, we will लेकिन break हम at the end, जड़ता के बारे में and भूल we जाते forget हैं। about inertia. यदि हम If अब we ब्रह्मांडीय activate the प्रभाव के mechanism of प्रतिकार के counteraction to the तंत्र को cosmic सक्रिय impact करते now, हैं, तो and all हम the पर effects सभी on us प्रभाव stop, बंद हो so जाते that हैं, the ताकि planet ग्रह begins to ठीक recover, होने लगे। we'll तो have to हमें कई endure और many more वर्षों years के of प्रलय को cataclysms, सहन करना and a होगा और lot of बहुत people से लोग will die. मर जाएंगे। यदि हम If we drag it इसे out अगले for 5 another 5 वर्षों के लिए years, खींचते हैं, the जलवायु velocity घटनाओं and का वेग progression और of प्रगति climatic events बहुत बढ़ will जाएगी। increase greatly. ये अब 2 मीटर It will या no longer be 2 2 साल meters की or ब्रेकिंग 2 नहीं होगी, years of braking, लेकिन बहुत कुछ but much more. हमारे पास अभी भी समय We है, still have लेकिन time, उस समय but that time के will be paid for को हमारे with our जीवन lives. के साथ भुगतान किया जाएगा। विभिन्न देशों के हमारे अर्थशास्त्रियों ने गणना की है कि प्रलय की ये प्रगति विश्व अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करेगी, और उस प्रगति का ग्राफ यहाँ देखते The हैं। dynamics are obvious. गतिशीलता It स्पष्ट है। suggests that the इससे पता collapse चलता है of कि the वैश्विक world आर्थिक प्रणाली economic में पतन system 2030 से will शुरुआत happen होगी। as early as 2030. पहले से ही 2030 में दुनिया की जीडीपी So that जलवायु से in सभी 2030 नुकसान को year, कवर the करने में world सक्षम नहीं GDP होगी। will not be able to वास्तव में cover दुनिया भर all के the पूरे losses व्यवसाय के from the पास climate. 6 से 7 साल In से fact, अधिक नहीं the बचा, entire और business यहाँ से system प्रक्रियाएं और worldwide भी गंभीर has रूप no से खराब हो more than जाएंगी। 6-7 क्यों? years left. And from here on, the processes will worsen even more critically. Why? We now arrive at a very sad conclusion. We अब have हम lived एक in a बहुत दुखद निष्कर्ष पर 20,000 पहुंचे year हैं। cycle. अगर हम We 12,000 have साल के lived चक्र में रहते हैं, तो through हम एक this as a सभ्यता के रूप में civilization and इस continued माध्यम our से रहते existence, और albeit with अपने great losses. अस्तित्व को जारी But रखते we हैं, are भले ही बड़े in नुकसान a के साथ, लेकिन 24,000 हम year 24,000 cycle. साल के चक्र में हैं। Considering how ये our देखते planet हुए कि endured हमारे ग्रह before, ने it इसे was पहले कैसे सहन complete किया, devastation. ये पूरी तरह से Super तबाही थी। volcanoes exploded सुपर and most of the ज्वालामुखियों के life was विस्फोट हो simply गया swept away. और
अधिकांश जीवन And our बस बह mathematical गया। model, which takes हमारा into account गणितीय मॉडल जो comprehensive कि data जलवायु परिवर्तन की on how the प्रक्रिया processes of climate change पहले कैसे happened हुई before और अब कैसे and हो how रही they are हैं के happening now, व्यापक आंकड़ों को gives an ध्यान में रखता है, understanding that the ये समझ Earth लेता is है following कि in the पृथ्वी footsteps of मंगल Mars. के नक्शे We have कदम पर चल calculated रही है different variants of और events. हमने Moreover, घटनाओं के विकास के विभिन्न we came रूप to the की गणना conclusion की है that और इस today, निष्कर्ष पर even in the पहुंचे mildest हैं कि variant of किसी the भी current cycle, where यहाँ तक कि humanity will वर्तमान die, चक्र के सबसे हल्के रूप according to में our पूरी mathematical मानवता मर model, जाएगी और हमारे this will गणितीय happen मॉडल no के later अनुसार than ये 2036 के 2036. बाद नहीं होगा। Да.
Yes, we're हम already पहले से ही बुरे experiencing समयों bad का सामना कर times. रहे हैं। There is an एक आर्थिक economic संकट, crisis, भूगर्भ geopolitical राजनीतिकीय crisis, and संकट many और ग्रह regions के of the कई planet क्षेत्र are truly on the वास्तव में brink of भुखमरी की starvation. कगार पर हैं। बड़े Large-scale पैमाने पर cataclysms चल रहे are हैं, कुछ स्थानों underway. पर झुलसाने Historic वाला droughts सूखा in और some दूसरे places and terrible floods में in भयानक others, बाढ़, तूफान, hurricanes, सुनामी tsunamis, जब and और भूकंप। earthquakes. But just imagine what will happen when the planet is almost हाँ, devoid हमने of पहले से livable ही बुरे places due समय का to सामना कर रहे earthquakes, हैं। एक when आर्थिक the संकट, largest भू portion राजनीतिक of the budget of संकट all और ग्रह countries के कई will be क्षेत्र spent वास्तव on में covering losses from भुखमरी की कगार पर disasters. हैं। Of course, बेशक living conditions will रहने की स्थिति critically गंभीर रूप से deteriorate. बिगड़ Rents for जाएगी, हर everything will चीज की rise, कीमतें बढ़ water जाएंगी, and पानी और food, भोजन, गैस और gasoline. गैसोलीन। But in लेकिन 14 अब years 14 from वर्षों में now, किसी को भी nobody will पानी, need भोजन, गैस water, या गैसोलीन food, या किसी gas, भी or चीज की gasoline, बिल्कुल or भी anything आवश्यकता at नहीं all. होगी, क्योंकि Because 2036 के after बाद what जो होगा happens उसके no बाद किसी later को than किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2036, तो no 2036 one will need में हमारे ग्रह पर anything. क्या होने वाला है? We have हमने prepared a भविष्य में होने detailed वाली model घटनाओं of का एक events विस्तृत that will मॉडल तैयार happen किया in the है और अब future, हम and now इसे we're going to आपके सामने present it पेश to करने you. जा रहे हैं। हम We आपको consider it स्थिति our duty की to गंभीरता report के to बारे you में the विस्तार से बताना seriousness of आपका the कर्तव्य, situation in अपना कर्तव्य detail. समझते हैं। We've deducted the हमने scale of प्रगति के events आधार पर based on the घटनाओं के क्रम progression का that अनुमान we have been लगाया able to कि हम estimate from भूकंप की the संख्या increase और of ताकत की in the वृद्धि का number अनुमान and लगाने strengths में of सक्षम हैं। earthquakes. इन Further घटनाओं के आगे development of these events leads to विकास the internal से cracking पृथ्वी of the की Earth's खोपड़ी के crust. अंतरिक्ष Through दरार these cracks, हट magma जाती will है। begin to rise in इन दरार के geometric माध्यम से progression you ग्राफ have में seen आने in the graph. आपने जो This ज्यामितीय will then प्रगति lead देखी है, to इसमें मैग्मा बढ़ना शुरू हो microfractures in the जाएगा। इसके crust बाद in कुछ some स्थानों पर places, क्रस्ट और which क्रस्ट will में increase माइक्रो magmatic फ्रैक्चर हो जाएंगे, activity. जिसके And it will keep में increasing मैग्मेटिक even वृद्धियां more बढ़ until जाएगी it provokes a और ये large-scale तब तक और rupture भी in बढ़ता the रहेगा जब तक thinnest कि ये part क्रस्ट of के the सबसे पतले crust, हिस्से which जो is कि in the समुद्र में है ocean. में बड़े This is inevitable. There is a 99.9% probability that this 99.9% rupture संभावना will है occur in कि the area of the टूटना Mariana मरियाना Trench. ट्रेंच के क्षेत्र में This होगा। particular earthquakes ये are वह registered जगह है and जहाँ where the गहरे Earth's फोकस भूकंप crust is दर्ज the किए जाएंगे thinnest, only और 5 जहाँ पृथ्वी की परत kilometers. सबसे पतली होती है, At केवल 5 first, किलोमीटर। when a small amount of water will meet सबसे पहले magma, जब पानी magma की will छोटी break मात्रा through the मैग्मा को मिलती crust. है तो For मैग्मा the पहली first बार क्रस्ट के time, माध्यम से टूट जाएगा, exploding हिंसक violently. रूप से विस्फोट करेगा, फिर परमाणु When बमों we में say विस्फोट के the बराबर माइक्रो microexplosions will occur, ब्लास्ट की we एक mean that in श्रृंखला fact each होगी of जो these मरियाना explosions is ट्रेंच के equivalent माध्यम to से the फट explosion जाएगी। of dozens of विस्फोटों fireworks. की श्रृंखला This force will destroy दुनिया the की thin पूरी layer तरह of the crust beneath the दुनिया Mariana को पूरी Trench. तरह But the सतह पर worst बड़े thing will पैमाने में happen भूकंप की next. एक And to श्रृंखला के कारण understand what बनेगी, happens next, we लेकिन will show you an इससे बुरा हाल आगे होगा। experiment. मैग्मा प्लम से मैग्मा की एक विशाल मात्रा में एक पल में मरियाना ट्रेंच और चीन देगी। You see what happened when the water met red-hot metal? Now multiply it by 100 million times. A gigantic volume of magma from the magma plume will break the Mariana Trench in an instant. Billions of cubic meters of water will meet billions of cubic meters of magma. समुद्र And के the पानी sudden के अणुओं breakdown of के ocean अचानक water टूटते ही मरियाना molecules ट्रेंच in के the तल पर ocean will be अत्यधिक दबाव released under में tremendous ऑक्सीजन और pressure. हाइड्रोजन And निकलेगा, it will एक burn the विशाल Mariana गोला बनेगा Trench. जिससे भारी A विस्फोट huge होगा। यह explosion विस्फोट will पृथ्वी happen. पर This explosion will be उपलब्ध परमाणु equivalent to हथियारों के पूरे thousands of भंडार times को of the हजारों entire गुना के stockpile of बराबर होगा। nuclear weapons available on Earth. ये संज्ञान है Under कि extreme pressure, the ocean won't just this will rise a huge column of steam mixed with dust. And under this pressure, this gigantic column of steam will rise from the sea floor and begin to deteriorate the atmosphere. The atmosphere यानी हमारा वातावरण सचमुच पूरे जल आवरण के साथ बह जाएगा। साथ ही ये विशाल विस्फोट हमारे ग्रह के अंदर निर्देशित एक शक्तिशाली हाइड्रोजन प्रभाव का कारण बनेगा, क्योंकि मरियाना ट्रेंच में 11 किलोमीटर पानी उस बिंदु पर भारी दबाव है जहाँ विस्फोट होगा और वह दबाव बदले में हाइड्रोलिक दबाव में दिखाई देगा। ग्रह के केंद्र में मैग्मा के निर्देशित एक बहुत शक्तिशाली विस्फोट तरंग होगी जो स्पर्शरेखा रूप से फैल जाएगी। ये अतिरिक्त बहुकोणीय प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करेगी, जिससे मैग्मा के साथ दिशाओं में अचानक
10 गुना विस्तार हो जाएगा, यानी 10 गुना ज्यादा मैग्मा होगा। ये सचमुच ग्रह को अंदर से फाड़ देगा। इस तरह प्रभाव से मैग्मा एक गैसीय पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। सभी ज्वालामुखी दरारें, फ्रैक्चर, ट्रोफोफेरिक प्लेटें की सभी सीमाएं एक साथ फटेंगी और फटेंगी। इसकी लावा प्रवाह से भर जाएगी, जैसा कि मंगल ग्रह पर हुआ था। स्वाभाविक रूप से
प्रभाव के कारण आंतरिक कोर उछल जाएगा और बाहरी कोर की गति रुक जाएगी। हमारा ग्रह मर जाएगा। इस प्रक्रिया के केवल कुछ मिनट लगेंगे। क्रोध के रुकने के हमारे ग्रह की विद्युत चुंबकीय क्षेत्र गायब हो जाएगा और गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए सभी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में निकट से गिरेंगे, चांद सहित। यदि चंद्रमा पूर्वी गोलार्ध के ऊपर तो ये विस्फोट से दूर फेंक दिया जाएगा और सूर्य द्वारा आकर्षित किया जाएगा। और यदि चंद्रमा पश्चिमी गोलार्ध के ऊपर है तो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के खो जाने के पर यह पृथ्वी पर गिर जाएगा। लेकिन हम मनुष्यों को इससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस घटना के परिणामस्वरूप हम मानवता के रूप में पहले से ही पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। Because as a consequence of these events, we as humanity will already cease to exist completely. ये गणितीय मॉडल जो कह रहा है कि यदि विनाश की प्रक्रिया काफी धीमी है और इससे त्वरण को ट्रिगर करने के लिए कोई अन्य कारक नहीं है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं वह अक्टूबर 2036 में होगा। 2036. आपकी आंखों के सामने एक टाइमर देखते हैं जो उस समय तक गिना जाता है जब ग्रह जीवन द्वारा सबसे हुए एक जीवित ग्रह के रूप में अपने अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। और फिर बशर्ते कि इससे पहले कोई उत्तेजक कारण ना हो, एक उल्कापिंड का गिरना, एक परमाणु बम विस्फोट, कोर का विस्थापन में वृद्धि, पर्वतीय विस्फोट हो सकता है। इस समय पूरी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कह सकते हैं कि इस समय एक परमाणु युद्ध सर्वनाश को तेज करेगा और ये अपूरणीय क्षति का कारण बनेगा। ये अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से मार देगा और कोर को भीतर प्रतिक्रिया को स्थिर करने में योगदान देगा, इसे तेज करेगा। हम बस अपना खुद का कयामत का दिन देखेंगे। वह कोई समाधान नहीं है, ये बिल्कुल मूर्खता है। हम खुद को इस आखिरी बार वंचित कर रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं। अब बंटवारे और लड़ने का समय नहीं है। भू राजनीतिक असहमति से अधिक वैश्विक मुद्दों को एकजुट करने और निपटने का समय है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जब कुछ देशों के निजी हित पर सभी मानवता और के अस्तित्व की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। चीजें बहुत अधिक गंभीर हैं। यह बुरा है कि अभी भी लोग इससे अनजान हैं। हमने इन आंकड़ों और पूर्वानुमानों को पहले क्यों प्रकाशित नहीं किया? इससे हमारी रिपोर्ट शामिल क्यों नहीं किया गया जो 8 साल पहले प्रकाशित हुई थी? क्योंकि हमें हर चीज का सत्यापित पूर्ण गणना करनी है। यह हमारे महान अफसोस के लिए इस समय के दौरान सभी घटनाओं ने हमारे मॉडल को पुष्टि की। ये स्वयं सिद्ध में बदल दिया। सबसे परेशान संकेतक जिसमें हमने तारीखों के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया। गहरे अफसोस, भूकंपों की वृद्धि। हमने देखा कि प्रतिक्रिया फिनिश लाइन पर जा रही है और डरावना है, प्रक्रिया तेज हो रही है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि मरियाना ट्रेंच क्षेत्र के सबडक्शन जोन, जिसका अर्थ है कि जहां प्लेट किसी अन्य प्लेट के नीचे रेंग रही है। लेकिन हमने इस तरह के मरियाना ट्रेंच देखी 3D मॉडल को चित्रित करने के कारण यह है कि निचली प्लेट की सीमा मैग्मा द्वारा भंग की जा रही है। कई प्लेटों के नीचे को अब नीचे से मिटाया जा रहा है। इन्हें पिघलाया हुआ मैग्मा द्वारा भंग किया जा रहा है, जो कोर मेंटल सीमा बढ़ रही है। हम क्यों कहते हैं कि प्लेट को इतनी जल्दी भंग किया जा रहा है? देखें कि पिछले कुछ वर्षों में लाल गर्म गहरा मैग्मा कितनी जल्दी अपना रास्ता बना रहा है। अंटार्कटिका के तट से दूर ब्रेसफील्ड मध्य में मैग्मा के घुसपैठ की याद करें। ये जानना भी चौंकाने वाला है कि 2019 में अफ्रीका के तट पर माउथ द्वीप के पास नया ज्वालामुखी जितनी जल्दी दिखाई दिया। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी के अंदर प्रतिक्रिया जो लाखों साल लेती है, अब महीनों के मामले में होती है। हम कहते हैं कि इस तरह के बावजूद मरियाना ट्रेंच के तल पर मैग्मा का विस्फोट होगा कि पानी के सतह स्तंभ का इतना बड़ा दबाव है, क्योंकि
गहराई के चढ़ने वाला मैग्मा बहुत गर्म होता है और मैग्मा की तुलना में अलग अलग रासायनिक संरचना होती है जो आमतौर पर पानी के नीचे विस्फोट में बाहर आती है या अधिक है। विस्फोट ठीक होता है क्योंकि ये मैग्मा और पानी स्तंभ दोनों के दबाव गहराई से जोड़ा जाएगा। मैग्मा का पूरा करने के लिए दरारों के माध्यम से पानी रिस रहा है, इसलिए एक संलग्न स्थान में एक विस्फोट उन विस्फोटों की तुलना कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी जो खुले स्थानों में होती है। इस मामले में इस विस्फोट की तुलना पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट से करना एक अरब घन मीटर मैग्मा की तुलना लावा के चम्मच से करने जैसा है। लेकिन वास्तव में हमें मानवता के रूप में 2036 हाइड्रोजन प्रभाव के क्षण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विस्फोट होगा या नहीं। हम में से कोई भी इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेगा। हम मानवता के रूप में अपनी मूर्खता अमानवीयता के कारण बहुत पहले ही मर जाएंगे। हमारे पास 14 साल है, लेकिन 2036 अंत है, आखिरी बिंदु जिस पर पृथ्वी मंगल ग्रह की स्थिति में बदल जाएगी। हाइड्रोलिक प्रभाव के एक हमारे सामने जो झूठ विस्फोट के साथ साथ सुपर टाइफून जो न केवल शहरों बल्कि पूरे महाद्वीपों को दूर कर सकेंगे। अभी ये कल्पना की तरह लगता है। हमें लंबे समय से कह रहे हैं कि टाइफून लैंडफॉल करेंगे और गति पकड़ेंगे। हालांकि ये संभव है कि भौतिकी के विरुद्ध 10 साल से पहले हम पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन अब हम इससे पहले से भी देख रहे हैं। आज एक तूफान जैसे ही ये भूमि पर आता है, गति प्राप्त करता है। हमारी गणना के अनुसार एक और क्षेत्र है जहां मैग्मा विस्फोट हो सकता है। ये हिंद महासागर के बेहद कम जीडाइन विकसित क्षेत्र है। According to our calculations, there is another area where a magma outburst could occur. It's the area of extremely low geoid anomaly in the Indian Ocean. इस क्षेत्र में कोरमेंटल सीमा में लाल गर्म मैग्मा की भारी मात्रा बढ़ रही है और वे टूट सकते हैं। हम क्रिएटिव सोसाइटी चैनल पर फोरम के तुरंत बाद होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में से एक में इस विषय को उठाएंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं में आप सीखेंगे कि मंगल एक बार वायुमंडल, महासागरों और वनस्पतियों के साथ एक जीवित ग्रह प्रलय के 12,000 साल के चक्र के दौरान हाइड्रोलिक प्रभाव के दौरान क्यों मर गया। हमारे पास अधिक जानकारी है, लेकिन हमने इसे आज प्रस्तुत नहीं किया। क्यों नहीं? हम कई दिनों तक सभी तथ्यों के बारे में बात कर सकते हैं। हमने इस रिपोर्ट में अपने स्वयं के माप का उपयोग नहीं किया क्योंकि ये डेटा अभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ है और हम नहीं चाहते कि किसी को गलत धारणा मिले कि हम किसी की राय में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस कारण हम वर्तमान में केवल उन सूचनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो सार्वजनिक स्रोतों से उपलब्ध है। आप स्वयं इन सामग्री का अध्ययन कर सकते हैं, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा के बिना एक व्यक्ति कभी प्रभावशाली नहीं अपनी गणना जो करने के सक्षम होता और उसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा जिस पर हम आए थे। दुनिया में कोई अन्य शोध समूह नहीं है जिसके जलवायु समस्या को इतनी व्यापक रूप से सभी कोणों में देखता है और हम लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं। हजारों स्वयंसेवकों, विशेषज्ञों और दयालु लोगों के लिए धन्यवाद। अन्य वैज्ञानिक हमें जो कुछ मिला उसे खोजने के लिए विफल क्यों रहे? हर कोई सिर्फ एक तरफ से देख रहा है। भूकंप विज्ञानी जानकारी के स्रोत के रूप में केवल एक डेटाबेस चुनते हैं और अन्य सभी डेटाबेस को पूरी तरह से अनदेखा करते हैं। ये देखना उनका काम नहीं है कि समग्र तस्वीर कैसी दिखती है, वे केवल अपने देश के भीतर खोज रहे हैं। हमारे शोध में हम एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतविषय दृष्टिकोण लागू करते हैं, जिसकी बदौलत हम पूरी तरह तस्वीर देख सकते हैं। Thanks to this, we can see the whole picture. And now you can see it too. अगर हम अपने मॉडल के बारे में गलत हैं तो हम सबसे पहले खुश होंगे।
But unfortunately, the further we लेकिन study दुर्भाग्य से जितना oxygen, आगे the हम more we प्रश्न का became अध्ययन convinced किया of the उतना ही हम inevitability of the तबाही के catastrophe, and अनिवार्यता the के more बारे में we're thinking आश्वस्त हो about गए how to और stop जितना it, अधिक हम we've सोच been रहे हैं looking for कि इसे solution, कैसे and we रोका found जाएगा it. हम एक To समाधान की date, तलाश we में हैं know और that हमने the इसे energy पाया that है। affects our planet and leads to the destabilization of its core is similar आज to तक the हम kind of जानते हैं जो energy ऊर्जा which हमारे ग्रह को allows the प्रभावित करती है integral उसके मूल से particles to स्थिर करती है communicate वे with इसी each तरह other ऊर्जा के समान है even जो when उलझे they're हुए कणों को located at different आकाशगंगा ends के of the विभिन्न छोरों galaxy. पर होने We पर भी do एक know दूसरे के that it साथ is not a संवाद neutrino करने की or अनुमति देती है। इस electromagnetic तरह effect, ऊर्जा का it is अध्ययन नहीं something किया गया different, लेकिन but we do हम understand that जानते the हैं कि ये energy of this cosmic radiation न्यूट्रिनो is of a या physical इलेक्ट्रोमैग्नेटिक nature, प्रभाव which नहीं means है लेकिन that हम it is समझते हैं कि possible to affect ब्रह्मांडीय it, विकिरण ऊर्जा के the भौतिक physical प्रकृति की है जिसका अर्थ ये है plane, कि भौतिक for example, to weaken, to stop or redirect it, and so on. उदाहरण के But to carry कमजोर out करना है। any manipulation with it, we have to solve two key tasks. First task is to study दूसरा the nature of this cosmic radiation, which is beyond the limits of known physics. And second दूसरा task कार्य is to अंतरिक्ष find से a आने source वाले of इस ऊर्जा energy प्रभाव के equivalent or बराबर या बेहतर superior ऊर्जा to के this स्रोत को energy खोजना है impact और coming from इस ऊर्जा का space, उपयोग उसी तरह and to करना learn सीखना how है to जिस तरह use से हम it, बिजली का उपयोग करते हैं। use this energy in the same way as we use केवल electricity. अगर हम इन दो Only if we समस्याओं solve these को two हल करते problems हैं तो we will हमारी be चुंबकीय able to ब्रह्मांडीय विकिरण counteract the का मुकाबला cyclical करने और cosmic हमारे ग्रह radiation पर इसके and विनाशकारी stop its प्रभाव को रोकने में catastrophic सक्षम होंगे। effects हाँ, on our planet. हम Yes, पहले we से have ही already दशकों been से इस working नए on ऊर्जा स्रोत researching पर this शोध कर रहे hidden हैं और energy काफी source for सफलतापूर्वक लेकिन decades and quite successfully. जितना But हम as चाहते much हैं as we want वांछित to, परिणाम our प्राप्त करने के लिए capabilities are हमारी not क्षमताएं enough to पर्याप्त achieve नहीं the है। desired इतनी result. संकीर्ण Within समय such a सीमा के narrow भीतर time ये दुनिया frame, भर में this can be सच्चे done only वैज्ञानिक के साथ together मिलकर ही with the किया जा true सकता है। scientists from all over the world, with the scientific community. Some people ask how science can find new energy source in कुछ लोग such पूछते हैं कि short विज्ञान period. 5 साल में इतनी छोटी Just अवधि 6 में नया years, ऊर्जा we स्रोत wouldn't know कैसे how to पा use it. सकता है If it और took us सीखता 6,000 years है कि to इसका discover उपयोग कैसे करें। electricity. यदि हमें बिजली As की for खोज this करने में new energy 6000 source, साल लग गए। according to our जहाँ तक information, इस नई तरह many की famous ऊर्जा की बात laboratories है are तो already हमारी conducting जानकारी के research in अनुसार this direction. कई बंद But at प्रयोगशालाएं least पहले से ही keep इस this दिशा in में mind, शोध कर रही हैं as of लेकिन मैं today, we're आपको not निराश developing करने the के लिए latest energy जल्दबाजी to करता हूँ stabilize कि our आज तक world वे or हमारे humankind. ग्रह के मूल All में the को स्थित classified करने के लिए worlds in इस this ऊर्जा की field तलाश are नहीं कर being रहे। done इस क्षेत्र में simply for the सभी purpose वर्गीकृत for विकास केवल ऊर्जा के military नए purpose स्रोतों का of वित्तीय achieving विकास के world माध्यम से domination एक by राज्य या one किसी state अन्य or द्वारा another विश्व through the development वर्चस्व of new प्राप्त करने sources के of लिए energy. सैन्य उद्देश्य के लिए किए जा रहे हैं। Scientists who work in ऐसे such बंद core engineering इंजीनियर design डिजाइन areas ब्यूरो are में not काम known करने to वाले anyone. वैज्ञानिक किसी को भी नहीं The जानते states हैं। deliberately राज्य conceal it जानबूझकर इन्हें because छिपाते it हैं is not क्योंकि profitable इनके लिए if they आपकी प्रतिभाओं publicize their को geniuses प्रचलित on करना which they लाभदायक rely नहीं है for जिस their पर वे special अपने for their राजनीतिक strategic उद्देश्य के लिए purposes. भरोसा करते हैं। लेकिन These ये scientists वैज्ञानिक वही are the हैं ones जो who need हमें बचाने attention के वास्तविक to क्षमता save रखते us हैं क्योंकि आपके पास पहले because से ही they आवश्यक already have कौशल the है, necessary अनुभव skills, है और experience, and प्रतिकाओं understanding of the की समझ है processes that the जो world विश्व प्रसिद्ध famous नोबेल पुरस्कार laureates, विजेताओं great अनुदान engineers have never खाने even heard वालों of. और If we now करियरवादियों propose ने to कभी establish नहीं the सुनी है। United यदि States हम अब potentially राज्यों को refined एक and रास्ता coherent, खोजने के लिए वैज्ञानिक क्षमता को it एकजुट would give करने में us प्रस्ताव as रखते हैं breakthroughs तो and हमें opportunities. ये अनुमान We देखने are totally देने clueless वाले in this अवसरवादी issue, देंगे। ये मुद्दे में which must पूरी be तरह solved. अनजान हैं जिन्हें हल किया Accordingly, जाना चाहिए। they would not be able in तदनुसार any way वे to मानव ensure जाति the के अस्तित्व को survival सुनिश्चित of humankind. करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। As for those true scientists जहाँ तक who will be उन able to do it, सच्चे वैज्ञानिकों का सवाल no है one will give जो them. ऐसा कर पाएंगे उन्हें They're कोई locked नहीं up देता। like उन्हें
उन्हें कैदियों की तरह बंद कर दिया गया है और वे तब तक रहेंगे जब तक हमारा विश्व समाज उपभोक्तावादी प्रारूप में रहता रहेगा। वर्चस्व, प्रभाव, संसाधनों और सबसे महत्वपूर्ण बात पावर के लिए शाश्वत दौड़ का प्रारूप है, क्योंकि इस वर्चस्व की दौड़ में हर राज्य अपने असली सर्वश्रेष्ठ दिमाग को आखिरी तक छिपा देगा। इसलिए आज समस्या का वास्तविक सार यह है कि वैज्ञानिक को समाज में मौजूदा प्रारूप में एकजुट नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि हम वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो हमें समाज के लिए बहुत प्रारूप को बदलना चाहिए। हमारे सामाजिक संगठन का बहुत मॉडल, हमें समाज के ऐसे प्रारूप की आवश्यकता है जो युद्ध छेड़ने के लिए कोई शर्त प्रदान न करें और यहाँ तक व्यक्ति के लिए अरबों का शासन करना संभव हो
और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस प्रारूप को क्या कहा जाएगा। जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि समाज के में क्या परिस्थितियां बनाएंगा। कई वर्षों के काम के और व्यापक शोध के माध्यम से हम एक मॉडल के साथ आए हैं जो मानव जीवन को पहले रखता है। इस मॉडल को क्रिएटिव सोसाइटी कहा जाता है। क्रिएटिव सोसाइटी का मॉडल दुनिया में ऐसी स्थितियों का निर्माण करता है जिसमें हम मानव जाति के रूप में अंततः लाभ और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा को रोकते में सक्षम होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वास्तविक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक को एक मेज पर रखने में सक्षम होंगे। केवल ये मानव जाति को जल्द से जल्द ये पता लगाने का मौका देगा कि इस ब्रह्मांडीय विकिरण का मुकाबला कैसे किया जाए। कोर की स्थिति को रोकने के जलवायु आपदाओं के विकास को रोकने के लिए क्रिएटिव सोसाइटी में इंसानियत को जिंदा रहने का मौका मिलता है। और क्या अधिक है, हमें एक एकीकृत सभ्यता बनाने का मौका मिलता है जैसा कि हमें होना चाहिए, ताकि मानवता को फिर कभी ऐसे खतरों का सामना न करना पड़े। क्रिएटिव सोसाइटी जीवन के लिए हमारे असली मौका है। आज प्रस्तुत रिपोर्ट में आपने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की एक बड़ी अंतर्विषयीय टीम द्वारा किए गए वर्षों के शोध के परिणामों को सुना है। 10 से अधिक वर्षों के लिए प्रमुख विशेषज्ञों, स्वयंसेवकों और संबंधित देशकों की बड़ी संख्या के साथ हमने विश्लेषणात्मक डेटा चेक की, जानकारी संख्या के तथ्य एकमत किए और हमने व्यवहारिक प्रयोग और सैद्धांतिक गणना की, जिसने बाद में गणितीय मॉडल का पूर्वानुमान के लिए आधार बनाया। सच्चे वैज्ञानिक के इतने विशाल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से सत्य बोलना आज हमारे लिए एक बड़ा सम्मान है, जिसमें उनके विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि शामिल है। हमने बहुत चाहते हैं कि हम उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से और सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दे सके और बस सभी मानवता की भलाई के लिए उनके जबरदस्त निर्माण काम के लिए धन्यवाद कर सकें। लेकिन दुर्भाग्य से आज हम उनमें से अधिकांश को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद नहीं दे पाएंगे। इसके पीछे कई कारण हैं। दुर्भाग्य से उन अद्भुत लोगों में से कुछ माननीय वैज्ञानिक आज हमारे बीच नहीं है। उनमें से ऐसे लोग हैं जो मारे गए हैं कुछ अजीब परिस्थितियों में, क्योंकि उन्होंने जलवायु के बारे में सच बोलने की कोशिश की। अरबों डॉलर के माफिया के खिलाफ सच बोलना, ये इस तरह के अपमानजनक उदाहरण के कारण है कि हमारे अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय को अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए कई वर्षों तक गुप्त रहने के लिए मजबूर किया जाता है। और न केवल understandably forced to remain incognito for many years in order to preserve their lives, and not only. After all, many of them work for आखिरकार official उसने कई science दुनिया भर के laboratories प्रयोगशालाओं and और research centers around the अनुसंधान world, केंद्रों and में this अधिकारी allows them to वैज्ञानिक have the के लिए काम opportunity to करते हैं study the और necessary ये materials, to इन्हें have access आवश्यक to the सामग्री का अध्ययन equipment, करने, to conduct उपकरणों तक relevant developments, पहुंच प्राप्त करने, प्रायोगिक विकास, experiments, प्रयोगों, and अनुसंधान research, which are का crucial संचालन today करने for का the अवसर salvation of प्रदान करता है, humanity. जो आज मानवता के Therefore, in उद्धार के order लिए not to महत्वपूर्ण है। lose इसलिए access to the आवश्यक necessary सुविधाएं, facilities, सेंसर और sensors, and प्रयोगशालाओं laboratories, तक पहुंचना they're न खोने forced, due to the के लिए consumerist moment, उपभोक्तावादी not प्रारूप to के कारण advertise their real views चल on रहे the जलवायु ongoing परिवर्तन climate पर change, अपने but to वास्तविक stick to विचारों the का विज्ञान करने mainstream के लिए, opinion. बल्कि And मुख्यधारा की राय sometimes they even से have to publicly चिपके रहने के support लिए the CO2 मजबूर किया hypothesis जाता है। and anthropogenic climate change, or even sign और कभी protocols उन्हें that the सार्वजनिक रूप से climate is CO2 supposedly परिक्रमण के not मानव changing. जलवायु परिवर्तन के समर्थन करना All पड़ता these है people और are यहाँ तक not कि motivated by प्रोटोकॉल का titles and salaries. हस्ताक्षर करना पड़ता They है do और not chase titles and जलवायु recognition माना जाता है because they कि नहीं know बदल रहा है। very लेकिन ये well सभी लोग that if उपाधियों के nothing वेतन के is done प्रेरित नहीं होते। today, वे just किताब a और little मान्यता bit के of पीछा time नहीं will करते, pass, and क्योंकि वे humanity will बहुत soon have अच्छी तरह से other जानते हैं कि things to अगर worry कुछ भी about. नहीं किया जाता तो Being these बस थोड़ा honest समय people, even बीत though जाएगा they और make मानवता this के their पास jobs जल्द and ही चिंता income, करने के they लिए devote all अन्य their चीजें free होंगी। time to सभ्य verifying and ईमानदार लोग developing the होने के नाते hypotheses भले ही वे presented in अपनी the नौकरी report. खो Yes, the majority of our देते। international scientific रिपोर्ट community में who प्रस्तुत worked on this परिक्रमणा को report सत्यापित cannot be करने के present विकसित at करने के today's लिए अपना forum. सारा खाली But समय समर्पित today, करते we हैं। have the हाँ, honor to speak the truth on इस behalf of रिपोर्ट पर these काम करने वाले real हमारे ऐसे समुदाय heroes. का अधिकांश It हिस्सा is आज के thanks मंच to पे them उपस्थित नहीं that हो we सकता, know लेकिन this आज truth हमारे today. पास उन It असली is thanks to नायकों के them और सच that it बोलने का can be heard सम्मान है। today. और We उनकी bow बदौलत ये before है these कि true आज हम scientists इस whose सच्चाई को work for जानते हैं all of
और उनकी बदौलत है कि आज सुना जा सकता है कि इन सच्चे विज्ञानों के सामने झुकते हैं और काम हम सभी के लिए वास्तव में पूरी मान्यता के लिए हमारा सच्चा अस्तित्व है। आज इन्हें नए नाम बताने के कोई अधिकार नहीं। क्रिएटिव सोसाइटी में ही दुनिया के उन सच्चे नायकों को जान पाएगी और इन वर्षों के शोध के पीछे रहे हैं। आज की रिपोर्ट की प्रस्तुत परिकल्पना के सच्चे लेखकों का नाम हम क्रिएटिव सोसाइटी में ही रखेंगे और आप आश्चर्यचकित होंगे कि उनमें से कौन कौन प्रसिद्ध नाम सुनेंगे। अब हम इगोर मिखाइलोविच दानिलोव के भागीदारी के साथ वीडियो जागृति के अंश प्रस्तुत करना चाहते हैं। We will no longer live like we used to. We will not go back to the peaceful world we had just a year ago. In the literal sense of the word. Yes, a year ago it was still bearable. A year ago it was still good. But this year, 2022, from the birth of Christ, has changed a lot of things. We mentioned this 10 years ago, that the year 2022 would come, and you would see it all. It came, and a lot of people began to see clearly. Yes, I agree. People began to understand that something is wrong with the world, that for decades they had been deceived. The theory of the anthropogenic factor was imposed on them, that sort of, now we would join efforts, shut down a few factories, stop using, let's say, cars that emit a lot of carbon dioxide, or do something else, and everything would improve. But it hasn't improved. And now a realization comes for many people that green energy has done much more harm to the environment than hydrocarbons usually do. This is true, and that there is nothing to hope for, and worst of all, no one to hope for. After all, let's dig deeper. Since 1996, more and more people have been involved in studying that very climate. So many scientists have been involved in this and are still involved now. And how many of those who wanted to tell the truth came out and started speaking up? Our friends. Those scientists who worked with us, how many of them were killed? And who killed them? A simple question. It was actually those who lied to us and programmed us so that others would not even dare to open their mouths while they are stealing our money, hiding behind some mythical climate change caused by the anthropogenic factor, that supposedly carbon dioxide had destroyed everything here. We warned people, God knows when. It's true. We didn't reveal everything. There was a brief report, but we said, people, pay attention, because the amount of nutrients coming out of the ground has increased. It has increased very significantly. Well, this indicates that there, inside our planet, global changes have happened, which cause a dysfunction of the core. And there begins what we have come to now. Back then, we were talking about this, and we were laughed at. You know, smart couch क्या आप जानते critics हैं स्मार्ट सोफे and आलोचकों absolutely के inept बड़े नामों scientists के साथ बिल्कुल with fake अयोग्य names वैज्ञानिक जो उनके who are just like जैसे them ही हैं ने told हमें us, बताया कि show us how हमें you दिखाएं measured कि neutrinos. आपने न्यूट्रिनो को कैसे With what? मापा इसके साथ, क्योंकि Because उन in order to न्यूट्रिनो को get those पकड़ने के लिए आजकल neutrinos, शक्तिशाली nowadays there are स्थान हैं, powerful विशाल installations, हैं, huge ones, इसलिए so इसे पकड़ने everything के लिए is not आसान that नहीं है easy for इसके them, लिए, लेकिन हमारे लिए but not कुछ for नहीं। us. जिन लोगों ने कई वर्षों तक हमारे साथ Those काम people किया, who वे उन worked with सोफे us आलोचकों के for many और years छद्म वैज्ञानिकों की तुलना में are बहुत चालाक हैं, much smarter जो दुनिया में बहुत than लोकप्रिय these हैं, couch और हमारे पास ऐसी क्षमता है, critics, हमारे पास कॉम्पैक्ट pseudoscientists, डिटेक्टर थे जो who are very popular in the मात्रात्मक और world. गुणात्मक रूप से And we उन did have such a बहुत capability. न्यूट्रिनो का पता We had, shall we लगाया say, संभव बनाते थे। compact detectors, making it possible to detect those very neutrinos quantitatively and qualitatively. One
Of our हमारे good अच्छे दोस्त friends में से एक spoke ने up that कहा it कि was ये true, सच था but he's कि no वह longer हमारे with us साथ नहीं because he है। ये opened his क्योंकि mouth and उसने wanted to अपना मुंह tell, खोला to और scientifically वैज्ञानिक रूप में substantiate, to प्रमाणित करने refute के that लिए उन criticisms अवसरवादियों, by those अनुदान खाने opportunists, वालों grant और eaters, विज्ञान के झूठे लोगों and द्वारा liars for उस science, आलोचना का that he खंडन paid करने for के it with लिए his life. बताना चाहता Meanwhile, था he was the one और of the उसने inventors इसके लिए of अपने this जीवन के very साथ portable भुगतान किया neutrino था। detector, इस बीच and he वह was इस one of बहुत those पोर्टेबल न्यूट्रिनो who डिटेक्टर के walked many आविष्कारकों miles में से एक carrying था। it. वह उन लोगों में से एक था And जो इसे the लेकर कई fact, मील पैदल चलते थे the और scientific वैज्ञानिक fact सत्य was स्थापित किया established था कि that भारी मात्रा neutrinos में in huge न्यूट्रिनो हमारे quantities ग्रह पर उत्सर्जित होने began to लगे थे। emit यह वास्तव में सत्य है from our और अब planet. इसकी पुष्टि अन्य This is विज्ञानों really द्वारा the भी fact. की जा चुकी है। ये हाल में And वर्षों now में it has been सार्वजनिक already confirmed जानकारी रही है। by other scientists too. This has been public information in recent years. इस रिपोर्ट पर सभी जानकारी के बाद मेरा केवल एक सवाल है, विश्व वैज्ञानिक समुदाय इन सभी वर्षों में क्या कर रहा है? Diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them वैज्ञानिक समूह false मानवता के theories. CO2 सिद्धांत One group of पक्ष में था। scientists was on the इसके side of विपरीत the एक theory of anthropogenic अन्य समूह ने CO2. दावा किया कि In जलवायु बिल्कुल contrast, नहीं बदल रही another है। group claimed that the climate was not changing at all. Nevertheless, today फिर भी it is आज ये पहले already से भी evident सभी के to लिए स्पष्ट है everyone कि that the जलवायु अधिक climate से अधिक is बदल रही है, changing इसलिए more खुद को and आराम more. देने की कोशिश करने Therefore, वाले कई many लोग झूठे people सिद्धांतों में trying भ्रमित to होते हैं, comfort लेकिन इस themselves साल ने are खुद को deluded पूरी by ताकत से false दिखाया और theories. हर कोई पहले But से this year ही चिंतित है। has shown लोक itself लुभावन in वैज्ञानिकों full ने force, भविष्यवाणी की and थी कि अब everyone से is 100 साल already बाद क्या worried. होगा। What आज हो रहा populist है। जिस scientists दुनिया have की predicted हम आदी हैं, to happen वह 100 अब years मौजूद from नहीं now है is और अब happening हमें today. जलवायु The सर्वेक्षण world we से are खुद used को to बचाने no के लिए longer exists. And तरीके के now बारे में we must परिपक्व make a निर्णय mature लेना decision चाहिए। about how to protect ourselves from the climate Cerberus. चलो क्रम Let's में walk through इसके this माध्यम in से order. चलते हैं। We हमारे have पास केवल only 5-6 5 to अपेक्षाकृत 6 स्थिर वर्ष हैं। relatively इस stable समय years. के दौरान During हमें this time, विकिरण we का must मुकाबला करने find a का way एक तरीका to खोजना चाहिए counteract the जो हमारे ग्रह radiation के that मूल is को now अस्थिर कर रहा है और destabilizing our जलवायु planet's विकिरण core and आपदाओं का causing कारण बन climate रहा है। disasters. वैज्ञानिकों को इस विकिरण की Scientists प्रकृति का do पता नहीं not था, know the nature of जिसका this अर्थ है radiation, कि हम अभी भी which इस भयानक means खतरे के खिलाफ we are still रक्षाहीन हैं। defenseless against this terrible threat. मानवता के रूप में As अब humanity, हमारे पास 2 we now आवश्यक have कार्य हैं। two essential tasks. पहला ब्रह्मांडीय First विकिरण is to की प्रकृति study का the अध्ययन करना, nature of दूसरा cosmic radiation. इसका मुकाबला The करने के second लिए is to अंतरिक्ष से find आने an वाले energy विकिरण source के बराबर या or बेहतर ऊर्जा superior स्रोत to the खोजना। radiation coming from space to counteract it. इन समस्याओं को हल To करने के solve लिए these हमें problems, we सक्षम need वैज्ञानिकों की competent आवश्यकता है, scientists who are जिन्हें kept दुनिया भर in में close बंद प्रयोगशाला में laboratories रखा गया है। ये around the वैज्ञानिक world. These हमें scientists जिस ऊर्जा का study the energy आवश्यकता है we need, उसका अध्ययन करते but हैं, they do it लेकिन वे only केवल to नए develop प्रकार के new kinds हथियार of विकसित weapons. करने के लिए ऐसा No करते हैं। government कोई will भी give them सरकार up उन्हें नहीं because छोड़ेगी, these क्योंकि वे ये scientists वैज्ञानिक ensure राज्य की the सैन्य state's शक्ति को सुनिश्चित military करते हैं। powers. हमारे सामने The आने वाली time to समस्याओं को solve the हल करने problems का we समय face is विनाशकारी रूप में catastrophically छोटा short, है, only केवल 5-6 5-6 वर्ष। years. पूरी It is दुनिया के सक्षम possible वैज्ञानिक to की cope बौद्धिक with क्षमता को it छोड़कर only ही by उनका combining सामना करना the संभव है। intellectual जिन potential वैज्ञानिकों के बारे of में हम अक्सर competent मीडिया से सुनते scientists हैं, of the whole जिनके world. लिए अनुदान और शीर्षक The महत्वपूर्ण scientists है, we all वे often hear हमें about in the समस्या media, को हल करने में those मदद for नहीं whom करेंगे। grants and titles are important, will not help us solve this problem. यहाँ तक कि अगर Even देश if आज के क्षेत्र countries में किसी agreed भी on वैज्ञानिक any सहयोग scientific पर सहमत हो cooperation जाते हैं, in तो this हम area इस today, मेज पर we बैठे would end up अनुदान with खाने a
वालों, plagiarists, साहित्यिक and चोरी करने वालों opportunists और did it. अवसरवादियों के साथ
समाप्त हो That is जाएंगे। because no ऐसा state in इसलिए है modern क्योंकि society आधुनिक will give समाज up में its best कोई भी राज्य scientists. अपने सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक को Right नहीं now, छोड़ेगा। the अभी power अरबों of से few अधिक over the कुछ लोगों billions की शक्ति is in प्रभावी है, charge, वे अंत तक and इसके they लिए will fight लड़ेंगे। for it to the end. प्रतिस्पर्धाबंद It is प्रयोगशालाओं impossible to के bring विशेषज्ञ together के एक specialists साथ from लाना संभव है। हमारे competing उपभोक्तावादी closed प्रयोग के laboratories. नियम ऐसे हैं। Such are the rules of our consumerist format. इसका What समाधान is the क्या है? solution? हमें We ये need to सुनिश्चित करने के ensure लिए that these आवश्यकता है कि इन scientists वैज्ञानिकों को don't need हथियार to विकसित develop करने के लिए weapons, आवश्यकता and नहीं that है countries और देशों don't को need अपनी to रक्षा defend करने की themselves. आवश्यकता नहीं है। That sounds impossible in ये our हमारे consumerist format. उपभोक्तावादी प्रयोग को So the संभवत only way to लगता है। free इसलिए real वास्तविक वैज्ञानिकों को scientists मुक्त is करने to का change the एकमात्र format of तरीका society to समाज के one प्रारूप को where wars एक will में be बदलना है, impossible जहां and युद्ध forever संभव होगा, eliminated. असंभव होगा In this way, और real हमेशा scientists के लिए around the समाप्त हो world जाएगा। will have the इस तरह दुनिया opportunity भर के to वास्तविक devote वैज्ञानिकों their को full वैश्विक जलवायु attention खतरे को to हल करने solving के लिए the global अपना climate पूरा problem. ध्यान समर्पित करने का अवसर And this मिलेगा must be और इसे realized जल्द as से soon जल्द as महसूस किया जाना possible चाहिए क्योंकि because समय कम time है। is running out. 10 साल पहले 10 जब years जलवायु और ago, इसकी when the प्रगति के साथ situation स्थिति हमारे with the लिए स्पष्ट हो climate गई and है, its तो हमें progression became एहसास हुआ apparent to कि us, समाज we के एक नए realized प्रारूप that की a new आवश्यकता है format of और society क्योंकि ये was दुनिया भर required. के में एक And वैज्ञानिक because we परिवर्तन are लाएगा, worrying about a इसलिए इन global सभी कारकों change पर विचार करना worldwide, it आवश्यक is है, necessary जो to एक consider एकीकृत all the तरीके से factors समाज that की सुरक्षा ensure the सुनिश्चित safety करते of हैं। society in an integrated way. हमने मानवता की We सभी studied गलतियों the को world's दुनिया के historical ऐतिहासिक experience अनुभव का to अध्ययन account किया। for all of मुख्य बात जो humanity's हम mistakes. समझते हैं The main वो ये thing है we कि समाज के understood नए is मॉडल that the new सभी model लोगों of की society जागरूकता को must पूरा meet करना चाहिए। the needs आखिरकार of हम all मानव people. जाति के रूप After all, में पहले से ही we as पर्याप्त लड़ humankind चुके हैं have already और fought आर्थिक enough संकटों, in अकालों conflict, और युद्ध economic से गुजर crisis, चुके हैं famine, and wars. और ये सब हजारों सालों And से all this दुष्ट has been से repeated दोहराया in जा a रहा vicious है। circle इसलिए for यदि हम thousands of समाज के years. प्रारूप को बदलते हैं तो Therefore, ये if क्रांतिकारी we परिवर्तन change the होना format of चाहिए और society, ऐसा it must be परिवर्तन a होना radical चाहिए जो change सभी लोगों and के लिए one सर्वोच्च that will provide the रहने के लिए best स्थिति living प्रदान करे। conditions for all people. पिछले 10 वर्षों के दौरान दुनिया भर के सर्वसेवकों के और विशेषज्ञों के साथ मिलकर दुनिया भर में व्यापक विश्लेषण कार्य और कई सामाजिक सर्वेक्षण किए। and numerous social surveys worldwide. हमने We 180 surveyed से millions 80 of people देशों in में over लाखों लोगों को सर्वेक्षण किया, 180 countries, साक्षात्कार conducted और interviews परामर्श and आयोजित किया consultation, और विभिन्न and क्षेत्रों held में विशेषज्ञों के international साथ अंतर्राष्ट्रीय roundtable गोलमेज conferences सम्मेलन with और सम्मेलन आयोजित experts किए। in various fields. दुनिया भर के लोगों By की जरूरत का studying अध्ययन and कर और analyzing विश्लेषण the करके needs हम of एक people कामकाजी around the मॉडल world, बनाने में we सक्षम have हैं been able जो to समाज create a को working हर model पहलू को that बदल देता है transforms और every सबसे aspect महत्वपूर्ण of बात यह है, society. ये And most सुनिश्चित करता importantly, है कि it वैज्ञानिक ensures जलवायु that समस्या को जल्द से scientists जल्द हल come करने के लिए together एक to साथ आ solve the सकते हैं। climate problem as quickly as possible. लोगों को Based on a लोगों की इच्छा के comprehensive व्यापक विश्लेषण analysis आधार पर इस of the मॉडल को काम will करने of वाले people, 8 समूहों the का 8 गठन किया pillars गया है। that make this model वे work वही were मूर्त formed. रूप They embody what all people want. We have called हमने this इस मॉडल model को the क्रिएटिव सोसाइटी creative कहा है। society. Further on, आगे we will be ये using हम this शब्द का term, उपयोग करेंगे, but लेकिन it can अगर be अलग called तरीके से किया जा differently. सकता है। It ये is नाम not नहीं the है, बल्कि name, इस मॉडल but के the सारे essence of this सार है, model, which जो will help हमें us to वैश्विक cope with जलवायु the global आपदाओं से climate निपटने में मदद disasters. करेगा। In today's forum, आज के we फोरम will में look हम more इस मॉडल को closely और at अधिक what बारीकी से this देखेंगे। model ये is. मॉडल क्या है? For now, अभी इसके लिए let's आज look हम समाज के at its वर्तमान fundamental रूप, इसके differences मौलिक from अंतर the है। सबसे current पहले एक format of society. रचनात्मक समाज में हर चीजों First, के लिए in the creative प्राथमिकता society, जीवन है, the लाभ नहीं। priority of दूसरा everything सत्ता लोगों is के लिए life, होगी और but किसी not profit एक as we व्यक्ति have या it लोगों right के now.
एक विशेष समूह के हाथों में केंद्रित नहीं होगी, will belong to जैसा the कि आज people है। and मौलिक will not be concentrated in ये one मौलिक hands of सिद्धांत a युद्ध की single person संभावना को or हमेशा के a लिए रोकते हैं। particular group of people. It is, as we see it today, these दरअसल fundamental आज principles हम बात कर रहे हैं सबसे forever बचने के सवाल की। preclude ये the अब ये possibilities of संघर्ष या war. युद्ध के सवाल नहीं है। Indeed, ऐसा today करने we की are इच्छा talking शक्ति को about the देखते हुए question of किसी everyone's युद्ध को survival. रोका जा सकता It है, is no लेकिन longer a जलवायु question परिवर्तन of के conflicts or साथ अब क्या हो wars. रहा है, The हम threat केवल is तभी रोक over सकते हैं जब हम everywhere, क्रिएटिव over सोसाइटी का everybody. निर्माण करें। Any war हम can be चाहे हम stopped, इस given पसंद the करें will या to ना do करें, so.
ये एक But what is मजबूर happening उपाय now है, with the climate, क्योंकि we ये can समाज only का stop if एकमात्र we मॉडल है जो build the हमेशा creative के लिए society. युद्ध को समाप्त करता है, Whether we like it or वैज्ञानिकों को not, बंद it is प्रयोगशाला में मुक्त worst करता है matter, और उन्हें एक मेज पर इकट्ठा because करने it की अनुमति is देता है। the only नहीं हम model थोड़े of समय में society जलवायु that परिवर्तन के forever बाहर eliminates निकलने का रास्ता wars, खोज लेंगे। freeing अब हम scientists देखते from हैं कि closed क्रिएटिव सोसाइटी का laboratories केवल मॉडल and हमें मानवता allowing जीवित them रहने के to वास्तविक gather मौका देगा, together at the same देता table. है। As a result, we will find a way out of the climate collapse as in a short as possible time. We now see that only the model of the creative society gives the humanity बीआर का a real स्वागत chance करते to हुए survive. मुझे खुशी हो रही है। Dr. Seema Manral Nagy, Director, Principal, Sanjeevani World डॉक्टर School, सीमा का Mumbai. स्वागत करते हुए मुझे खुशी हो रही है। Life and Happiness सीमा Coach. She मनराल is the नेगी, Vice डायरेक्टर प्रिंसिपल President of संजीवनी Rotary वर्ल्ड Club स्कूल of मुंबई, Mumbai, लाइफ एंड West Coast, and हैप्पीनेस कोच हैं। Social ये मुंबई Ambassador के in वेस्ट Indian कोच Development में के रोटरी Foundation, as क्लब well as के an उपाध्यक्ष awardee और of the भारतीय Nation विकास फाउंडेशन के Builder सामाजिक राजदूत होने के साथ camaraderie. साथ रोटरी का राष्ट्र Dr. निर्माता Nagy is पुरस्कार के associated पुरस्कार with विजेता many हैं। डॉक्टर educational नेगी and कई social क्षेत्रीय organizations शैक्षिक और who सामाजिक contribute संगठनों for time के साथ efforts जुड़े हुए for हैं the और betterment शैक्षिक of the व्यवस्था समाज की educational बेहतरी system and के लिए society. अपना समय और प्रयास She's an देते हैं। ये एक international अंतर्राष्ट्रीय वक्ता speaker हैं and और is highly regarded in 7 7 देशों में countries. अत्यधिक Dr. सम्मानित हैं। Nagy has डॉक्टर been नेगी bestowed कई with many प्रतिष्ठित prestigious राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय national पुरस्कार and से सम्मानित किया गया international है। awards. दिव्यांग Her व्यक्तिगत work पेशेवर has been श्रेणियों, recognized वर्ल्ड in बुक the ऑफ रिकॉर्ड, World यूके Book of Records, एशियन वर्ल्ड UK, रिकॉर्ड, Asian World Records, द and ग्रेट the इंडियन Great बुक Indian Book of ऑफ Records, रिकॉर्ड में and मान्यता दी personal गई and है। professional स्वागत है titles. नेगी मंजिल Welcome, Dr. Nagy. The floor आपकी। is yours. Is increasing day by day. Millions of people across the globe have already experienced the terror, being left on their own with the raging natural disaster, and millions have become climate refugees. The progression is gaining momentum. While we continue to argue about the causes, ignore the facts, or simply ignore everything that is happening. Friends, this is suicide. Yes, I understand that the flow of information bombarding each one of us today, it's very difficult to discern the grain of truth. But it is there. Today, we have all heard about the true causes of climate change. We have all heard about how many years we have left to unite all of our scientific potential. It is impossible to overstate how important this information is today. If you have any doubt, take it and calculate it yourself. Compare all the data and all the numbers that have been presented today. This is actually already happening. See for yourself that this is fact. We should have started to act long time ago. We Rotarians got acquainted with the report earlier. And thank you for giving it to us. We have had time to reconsider a lot of things. And now it is important to take action so that we have time to save all of us, all of humanity. If everyone else has any doubt, check it for yourself. I do understand that it's scary, but we at Rotary have faced challenges more than once, and this experience will help us now as well. Right now, we need unity and courage of all Rotarians more than ever. And then we will succeed because our strength and survival is only in unity. Thank you. Thank you so much, Dr. Nagy.
And we pass the floor to the next distinguished speaker, Mr. Marco Antonio Hernandez, President of the Rotary Club of Cordillera de Peñalolén from Chile. Thank you for this opportunity. My name is Marco Antonio Hernandez Fuentes. I have the honor of being a president for the period from 2022 to 2023 of the Rotary Club, Cordillera de Peñalolén of Santiago de Chile. And today, we're working hard, focused on being successful in society and being its participants. I would love to complete and share the information with our club and with all people about this wonderful privilege that we have the opportunity to learn about today. It is called a creative society through which unity gains power, and it is fundamental. Thank you for this wonderful, unique chance to share with you my impressions after watching, listening, and enjoying the previous forum. A message to humanity. I have the opportunity to express my feelings about this and share this moment with you. In my life, I always try to help, participate, and get involved in the life of society, and I thought that it was enough. I always cared about helping those who were in need. But after I became familiar with this forum and following all the conversations, everything had changed. I felt needed. I felt like a person who had to do more. I had to step out of my comfort zone that I thought was a part of my life. I felt like I had to leave that comfort zone. And I really wanted to be able to share and express this new experience by learning and realizing that we don't have much time left in this world if we don't act, if we don't react. So I decided to react. I decided to express this feeling to my closest friends. And I shared with them the information about what will affect the whole world in the coming years. But it was my first knockout, so to speak. Indifference, doubts, and individualism. And very few people accepted what I shared. It made me think, it made me reflect on the fact that maybe not everyone is ready to carry the message to share something as you might think. I believe something needs to be done first. The message is very clear and specific, but it takes preparation. I feel that with this personal experience, you need to speak to people. Nothing impresses people better than respect and trust, and this is fundamental so that the idea of the creative society could be accepted without fear, without doubt, and could do its job. This society needs these kinds of values. It needs our trust, it needs our respect, and we're going to achieve that. That's why the tagline of this forum is Global Crisis, Our Survival is in Unity. That's the connecting link. To give trust, dissipate fear, and come out of the state of comfort that we're in. I think these three elements are fundamental. I appeal to everyone who sees and listens to us. There is no greater joy than the one you can experience when someone you invite says, "Yes, I will come." Thank you for this moment, for the opportunity to contribute to this tremendous work, experiment, project, and purpose that you are pursuing for a better world, for the opportunity to achieve it, not only for us, but for the next generations. The privileges that we have today and that we have to pass on to them. I believe that we are on another link in this green chain, and our only mission is to come together and work for the common good.
And I believe that we cannot oppose such a monster as consumerism. And yet, we can overcome it by finding those who have a need for that. Always, always. Thank you. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the Creative Society and for bringing people together, and for your profound understanding of the danger in which we as humanity now find ourselves. In fact, in the near future, we will all move out of our comfort zone. The only question is now, will the climate destroy the comfort zone, or we will step out of it ourselves in order to act? No one doubts anymore that we are not in control of the climate. The year 2022 has been a year of a tragedy for many people. But people are not seeing the holistic picture of what is happening. The media takes out attention away from a vital topic. Case point, when millions of people suffered in Pakistan, the world's media gave only a few words about this terrible tragedy. Let us hear the truth of what is happening from eyewitnesses of climate events around the globe. Notice how many tragic events you didn't know about. Why would you want to know that? Watch, and you will understand everything. दुनिया भर में हर दिन अधिक से अधिक जलवायु आपदाएं हो रही हैं। उनके बारे में खबरें हमें प्रभावित करती हैं, हमें दुखी करती हैं या हमें डराती हैं। लेकिन तुरंत एक विचार आता है कि यह कहीं दूर होता है और यह मेरे साथ नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल जब तक यह आपके साथ व्यक्तिगत रूप से नहीं होता है। मुझे नहीं पता, वहाँ धुआं था और हमारा दम घुटने लगा। मैंने इसमें अपने दोस्त को खो दिया। मैं अपने दर्पण में देखता हूँ और मैं आग पर हूँ। हमारे पास बाहर निकलने के लिए केवल कुछ मिनट थे। कोई भी सबसे अप्रत्याशित क्षण में क्रूर जलवायु सरबेरस का शिकार हो सकता है। क्यों? हम आपको जलवायु आपदाओं से प्रभावित लोगों की कहानियां दिखाने जा रहे हैं। दुनिया भर में उनके जैसे लाखों लोग हैं। जैसा कि आप उन्हें सुनते हैं, अपने आप को एक सरल प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करें, क्या आप तैयार होंगे जब जलवायु सरबेरस आपके घर में आता है? मेरा नाम डगलस फ्रैंकलिन रयान है और मैं मैकिनी क्रीक फायर से बच गया। हम रिज के दूसरी तरफ धुआं देख सकते थे और एक बिंदु पर ऐसा लग रहा था कि धुआं बंद हो गया था और भाप के सफेद बादलों के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। और फिर आग पहाड़ पर चढ़ गई और पहाड़ी के ठीक नीचे हमारी ओर आ रही थी। मैं वास्तव में नहीं था। मुझे इस बारे में चिंता नहीं थी क्योंकि आग नदी के दूसरी तरफ थी और पहाड़ी से नीचे आ रही बहुत आक्रामक नहीं थी। फिर हमने उसकी पूंछ पर नया हॉटस्पॉट देखा और यह कूद गया, नदी कूद गया और फिर सड़क पर कूद गया। और इसलिए हम दोनों तरफ से आग लग रही थी और इसलिए हमने सोचा कि हमारे पास वहां से निकलने के लिए आधा घंटा 45 मिनट का समय है। लेकिन वास्तविकता में हमारे पास केवल 7 या 8 मिनट ही थे और मैं घर में भाग गया। जॉन कोगन नाम के शख्स वहां मौजूद थे। वो मेरे एक रूममेट के चाचा थे और वो 74 की उम्र के लगते थे। और मैं वहां गया। मैंने कहा, जॉन, हमें जाना है। वो कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा, हाँ। वो आगे बढ़ते हैं। मैंने इसे 1 दर्जन बार देखा है। मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं यहाँ से चला गया और मैं सब कुछ खो देता हूँ तो यह मुझे मार डालेगा। अगर मैं यहीं रहूँ और मर जाऊँ तो मुझे वो मौका लेना ही होगा। लेकिन वो आग में जलकर मर गए, अपनी संपत्ति पर 5 कुत्तों को छोड़कर।
हाल के वर्षों में कैलिफोर्निया में आग क्यों बदतर हो रही है, अधिक जंगलों और कस्बों को जला रही है और उन्हें बाहर निकालना कठिन बना रही है। 95 में हमारे ग्रह के कोर में खराबी आ गई थी। इसके कारण मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से उगता है, उबलता है और मात्रा में फैलता है। पृथ्वी की पपड़ी पर इसका दबाव बढ़ता है, क्रस्ट में दोषों के साथ डेगासिंग होता है, ग्रह के आंतरिक भाग से गैसों की रिहाई और यह आग का कारण बनता है। कैलिफोर्निया ठीक ऐसे ही फॉल्ट जोन में स्थित है। वहाँ आग का बढ़ना एक चिंताजनक संकेत है। इसका मतलब है कि उस क्षेत्र में मैग्मा बढ़ रहा है। तूफान ने वास्तव में सभी तूफानों की तुलना में एक अलग प्रक्षेपवक्र लिया। यह पूर्व की ओर मुड़ गया और दक्षिण की ओर मुड़ गया, जो तूफान आमतौर पर नहीं करते हैं। 1997 में पॉलिना था एक श्रेणी 5 तूफान। वास्तव में अगाथा ने यहाँ इस क्षेत्र में यह पॉलिना की तुलना में अधिक विनाशकारी था। क्योंकि मैं समुद्र से लगभग 100 मीटर की दूरी पर रहता हूँ, जल स्तर 4 या 5 फीट तक पहुँच गया था। मुझे नहीं पता, मैं वास्तव में डर गया था। मुझे लगा कि शायद पानी उस छोटी सी खिड़की में आने लगेगा और मुझे नहीं पता था कि उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ पानी है। जब मैं बाहर गया तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। इतने कम समय में जो विनाश हुआ और कैसे। हम सभी यह मानना चाहते हैं कि हम हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन हकीकत यह नहीं है। जलवायु परिवर्तन हर एक को प्रभावित करने जा रहा है। मेरा मतलब है, यह अब हर एक व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है। तीन सितंबर को आग लग गई थी। यह दोपहर में शुरू हुआ। आप बहुत दूर धुआं देख सकते थे। फिर शाम के करीब सब कुछ पलक झपकते ही जल गया। पुलिस अधिकारी घरों में भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, जितनी जल्दी हो सके अपने जीवन के लिए भागो, अपने आप को बचाओ। लोगों को निकाला गया। बसें, रोटेशन वर्कर थे, कुछ को अपनी कारों में निकाला गया। हर कोई जितनी जल्दी हो सके निकाला। लोगों ने अपनी गाड़ियों में सामान भरकर सामान पकड़ लिया और चले गए। मेरी बेटी ने मुझे और उसके 4 बच्चों को पकड़ लिया, हमें कार में डाल दिया और हम चले गए। बहुत बड़ी लौ आ रही थी, धुआं था, हमारा दम घुटने लगा। जब मैं अपने घर के करीब चला गया तो मैं चौंक नहीं गया, मैं हिस्टेरिकल था। केवल दीवारें खड़ी थी, सब कुछ जला दिया गया था। घर, कारें, दस्तावेज, कुछ भी नहीं बचा था। यह अविश्वसनीय था। मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा कुछ देखे। यह भयानक था। ईमानदारी से कहूँ तो अपने 60 सालों में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, यहाँ तक कि हॉरर फिल्म में भी नहीं। हम यहीं रहने वाले थे। इसके अलावा चारों ओर एक जंगल, प्रकृति और ताजी हवा है। ऐसा लगता है कि कल सब कुछ था, सब कुछ अच्छा था, और अब आप यहाँ खड़े हैं और चारों ओर देख रहे हैं और कुछ भी नहीं है। यह कुछ ऐसा था जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। जैसे आप जानते हैं, यह सिर्फ पलक झपकते ही आया था। जैसे 24 घंटे पहले सब कुछ परफेक्ट था और फिर हम इस बात पर पहुंचे कि बाढ़ यहाँ है। हमने यहाँ बहुत कुछ झेला है। हमारी धान की फसल बाढ़ में बह गई है। चारों तरफ पानी था, बिजली नहीं थी, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। हम अकेले थे। लोग चीख पुकार मचा रहे थे। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। वे अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब मैंने 4 से 5 बच्चों और एक माँ को पानी में तैरते देखा। खाने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ पानी था जिसे हम पीकर बच गए। मवेशी भी भूख से मर रहे थे। आपके सामने ये पूरा नजारा है। हमारे घर गिर गए हैं। हम ऐसे खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। पहले भी बाढ़ आ चुकी है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि इस बार इतनी बाढ़ आएगी।
तो आप जानते हैं पाकिस्तान में यह विनाशकारी बाढ़, आप जानते हैं यह न केवल पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी जलवायु परिवर्तन के खतरों पर एक खतरे की घंटी है और यह रिकॉर्ड तोड़ बारिश किसी भी देश को तबाह कर देगी। पाकिस्तान में मानसून की बारिश असामान्य रूप से भारी क्यों हो गई है? हाल के वर्षों में हमारे ग्रह के घूर्णन में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे मैग्मा पृथ्वी की आंतों से सतह की ओर सक्रिय रूप से बढ़ रहा है। लाल गर्म मैग्मा क्रस्ट के करीब हो रहा है और बड़ी मात्रा में भूजल को वाष्पित कर रहा है, जिससे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ आ रही है। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए हमारे पास लोगों को सचेत करने का कोई तरीका नहीं था। वेदर वॉच यह साफ है। मैं नीदरलैंड में लगभग 36 वर्षों से हूँ और मैंने पहले कभी ऐसा बवंडर नहीं देखा है। यह पागलपन है, यह बहुत नुकसान पहुँचा सकता है। आणि पुढे काय? शायद यह एक F2 या F3 होने जा रहा है। मग काय करणार? मैंने अपने जीवन में ऐसा भूकंप कभी नहीं देखा। यह वास्तव में लंबा था। हम बहुत डरे हुए थे। मेरे परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मैंने आज उन्हें दफनाया। इसके अलावा 12 रिश्तेदार घायल हो गए। मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ। मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। इसमें कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मौत हो गई। कई घर भी तबाह हो गए। दिन के अंत तक 1000 से अधिक लोग थे जिन्होंने अपनी जान गंवा दी और 1500 से अधिक लोग घायल हो गए। घर गिरने की वजह से चारों तरफ लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। महिलाएं और बच्चे भूमिगत फंस गए, जिनमें से कई की मौत हो गई। अफगानिस्तान में अधिक से अधिक विनाशकारी भूकंप क्यों आते हैं? जवाब है, अफगानिस्तान में भूकंप की संख्या में वृद्धि मैग्मा की वृद्धि का परिणाम है। दबाव में वृद्धि के कारण मैग्मा क्रस्ट की ओर ऊपर की ओर बढ़ता है और दुनिया भर में भूकंपों की संख्या को बढ़ाता है। कोई रोकथाम नहीं थी क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं थी। 1 घंटे के भीतर हम बाढ़ आ गए। आमतौर पर बाढ़ 2 दिनों की बारिश के कारण हो सकती है। यह पहली बार है जब मैंने लोगों को अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर जाते देखा है। यह मेरे लिए सबसे चौंकाने वाला हिस्सा था। कल्पना कीजिए कि एक प्राकृतिक घटना के कारण जबरन अपना घर छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि आपके पास करने के लिए कोई अन्य चीज नहीं है और अपने शहर में शरणार्थी बनना या अपने ही शहर में विस्थापित होना। असल में स्थिति वास्तव में खराब थी। छोटे बच्चे बह गए। इन घरों में हमें कई शव मिले। यह बस किसी को पता नहीं चला। जिस क्षेत्र में मैं काम कर रहा था वह डूब गया। घर डूब गए। कारों को पानी से निकाल दिया गया। मैंने उसमें अपने दोस्त को खो दिया और कार को डूबते हुए देखा जब मैं मदद नहीं कर सका। फिर मैं यहाँ वापस आ गया। मैं फुजैरा यूएई में और वही होता है और मुझे लगता है कि यह जारी है। यह आपदा एक देश से दूसरे देश जाने वाली है। आपको इस पर यकीन नहीं होगा। यह पागल है। मैं अब तक ठीक हूँ, लेकिन यह कोई F** सीकिंग मजाक नहीं है। यह कोई मजाक नहीं है। मैंने चार्ड को फोन किया। वह जानता है कि मैं कहाँ हूँ। I'm okay so far, but this is no fucking joke. This is no joke. I called Chad. He knows I'm out here. He knows. So far so good as long as the house holds. वह जानता है। इतना लंबा, इतना अच्छा, जब तक घर रखता है। तो ठीक है, चिंता मत करो। सब कुछ ठीक होने वाला है। सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है दोस्तों।
सब कुछ ठीक ठाक है। Holy crap. हे भगवान, मैं यहाँ 29 साल से हूँ। मैंने कभी ऐसा अनुभव या देखा नहीं है। हमारे परिवार ने सब कुछ खो दिया है। यह हमारी सड़क पर पानी को देखकर तीव्र डर था और यह जानकर कि हमारे पास बाहर निकलने के लिए केवल मिनट है। मैं घबरा गया था। मेरा ट्रेलर आगे पीछे हिल रहा था। मुझे लगा कि एंड्रयू भयानक था, लेकिन इसने उसकी पिटाई कर दी। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जीने के ये संसाधन नहीं है। मैंने अपने भाई से कहा कि हमारे पास जीवित रहने या मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप जानते हैं, जैसे अगर हम उठते नहीं हैं और अपने परिवार को सुरक्षा के लिए नहीं लाते हैं, तो आप जानते हैं, सबसे बुरा हो सकता है। इसलिए हमने ऐसा किया। हमने उसे संदेश छोड़ दिया। मैंने बस इतना कहा, आई लव यू। मैं उसे नहीं बता सकता था कि हम इसे बना सकते हैं या नहीं। यह सब पानी के नीचे है। यह बहुत दुखद है। मुझे पता है कि मदद के लिए चिल्ला रहे लोग थे और लोग अभी भी छतों पर थे। हमारे पास जाने के लिए जगह नहीं है। आज हमने ही कष्ट झेला है। हम पर जलवायु सेरबेरस द्वारा हमला किया गया था। इसने हमारे घरों को नष्ट कर दिया, हमारी जान ले ली। लेकिन अब यह आपके लिए आ रहा है। क्या आप इसके आगमन के लिए तैयार हैं? Tell me, how is it so? How is it that we are suffering from the climate? These people have now shared their stories. इन्हें जलवायु का They've सामना had to करना face पड़ा the climate और and इनकी सभी experience क्रूरता का all of its अनुभव करना ferocity. पड़ा। लाखों लोग Millions of घरों people से have वंचित been रह गए left without और अब भी homes. जब दुनिया And भर में even लाखों now, लोग मर रहे as हैं hundreds of और millions of जलवायु people आपदाओं से around the पीड़ित हैं, world तो ये are सच्चाई dying and हमसे suffering छिपाई from जा रही है। climate disasters, हमें ग्रह this के साथ truth क्या is हो, being हमारे hidden ग्रह के from साथ क्या us. हो रहा है, इसके But बारे में why? पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई जाती? Why are we हम not कब तक told the मूक whole खेल truth खेलेंगे? about what is happening to the planet? आखिरकार यहाँ How तक long मानवता के will we भविष्य पर play the रिपोर्ट और silent game? प्रकाशित होने के एक हफ्ते बाद ही हटा दिया After जाने all, लगा। even हम in the इंसानों को report अंधेरे में on the रखने के future of लिए humanity, किसे फायदा होता है, began जो to be आप removed स्पष्ट है, just a week after सत्ता it में was बैठे लोगों released, और उनके produced. वैज्ञानिकों भी। Who benefits from keeping आखिरकार us people in वे the वही dark? हैं जिन्होंने हमें The अरबों answer is डॉलर से obvious. बाहर निकाला और Those in हमें बाहर power निकालते रहते and हैं। they're like his आपका मुझ पर scientists. विश्वास नहीं? After all, अपने they are the ones who have been screwing us over the $4 trillion अपने and को continue ripping us off. बाहर You निकालते don't रहते believe हैं। me? आपको मुझ पर विश्वास Look नहीं? at your utility आपने bills. उपयोगिता बिलों को देखो। क्यों Why the बकवास? hell do I have to मुझे pay एक ही triple प्रकाश price और for गर्मी the के लिए same light 3 गुना and कीमत heat? चुकानी पड़ती है। Let हरी that ऊर्जा के genius मुद्दे के who साथ came up with आने green वाले energy प्रतिभा को answer this मेरे लिए question for उस me. प्रश्न का उत्तर दे। ग्रीन What are एनर्जी the के फायदे benefits for कहाँ the हैं? simple invention पर्यावरण and सुधार for the कहाँ है? common people? We should CO2 में give कमी power कहाँ to है? these swindlers. मेरी सस्ती बिजली और I आरामदायक ask, जीवन where are these कहाँ benefits है? of the green energy? Where is the reduction of CO2? The environmentalists themselves are saying
We don't even have 10 years पर्यावरणविदों left. खुद And हमें 10 even at साल the से medical अधिक नहीं model देंगे we've heard और today, गणितीय मॉडल there में are जो हमने आज 14 सुना है years कम से कम 14 at साल the हैं। best. भविष्य के लिए So much बहुत for the कुछ। future. मुझे I वास्तव में remember आश्चर्य when है the कि authorities of क्या any किसी country भी have देश started में to budge. अधिकारियों ने Have they done स्थानांतरित करना anything शुरू to कर save दिया है? people during क्या this उन्होंने time? उस समय में लोगों I को don't think so. बचाने के लिए कुछ किया है? मेरा ऐसा Now, विचार नहीं है। instead of अब हर किसी और consolidating हर चीज everyone को and समेकित everything, करने के बजाय everything gets सब कुछ crumbled and ढह रहा है separated. और विभाजित हो रहा है। You, Judas, have sold out. तुम यहूदा बिक गए हो। You don't care about आप लोगों के people's जीवन की lives. तरह परवाह नहीं You करते। don't care about the आपको truth. सच्चाई की परवाह नहीं है। That's why you यही ignore कारण है कि आप reality and bark वास्तविकता at के those who aim अनदेखा to करते save हैं और उन humanity. लोगों को पर भोगते हैं जो But never मानवता mind. Let's see how you will के change your tune when the बचाने के climate लिए has its कार्य say. करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, चलो Then देखते हैं your जब lies will जलवायु become का so कहना obvious कहना है तो to कैसे all that गाएंगे। you will be simply torn to pieces by your own patrons. फिर And आपका if झूठ they don't, सभी के सामने and if they don't, people frantic with grief इतना will. स्पष्ट हो जाएगा कि आप Our बस people अपने ग्राहकों is द्वारा one टुकड़ों big में फाड़ दिए multi-story जाएंगे और house. अगर वे नहीं करते It तो is दुख पागल भीड़ collapsing. होगी। It is हमारा burning. घर एक बड़ा And it is बहुमंजिला घर है। bursting at ये the ढह रहा है, seams. ये जल रहा You, है, on the other ये hand, climbed up सीम में high पर to फट रहा है convince us और that आप हमें everything is समझाने के लिए fine. उच्च पर चढ़ते हैं और कुछ But ठीक है, that's a लेकिन lie. ये झूठ है। आपका Your फर्श floor, और फ्लैट flat, आज जल may नहीं not be रहा, burning today, लेकिन हम but में the से rest बाकी of आग us पर हैं और धुएं are पर on घुट रहे fire हैं। and choking on the smoke. जरा सोचिए Just कि think आप उन लोगों को क्या what you बताएंगे will tell the जो people एक पल who में will सब lose कुछ खो everything देंगे। in one आप instant. उन्हें कैसे How will समझाएंगे you कि explain to आपके them सभी that कार्य all of का your एक actions are a दिखावा scam and a और fraud? धोखाधड़ी है कि That आप you सिर्फ are just हमसे making money मुनाफा off कमा रहे us, हैं, filling your अपनी pockets जेब with और मुंह भर mess, रहे हैं, वैज्ञानिक justifying your धारणाओं के साथ nonsense अपने with बकवास को scientific सही ठहरा। postulates. अब Now तुम then, you सब freaks, सब मुझे जवाब दो, answer मेरा me. पैसा कहाँ Where है? is my एक money? बार फिर Once again, you आप मेरा bastards. पैसा कहाँ Where है? is my money? मुझे दिखाओ कि Show me आपने इसे where you कहाँ खर्च spend it. किया। क्या आप में से Will कोई भी any of इस you सवाल even का be जवाब able दे to पाएगा? answer that question? ऐसा लगता है मुझे Where अपना to किराया and देना है what did you और really spend it लोगों on? को उठाने और And कारण how has it और प्रभाव improved my प्रबंध life? को समझने के In बजाय fact, और जो I हमें actually इंतजार have कर to रहा pay the है, utilities too. एक समझ And के instead of बाहर raising काम कर people रहे up and बेवकूफ। explaining the cause and effect relationship and what awaits us, you're doing an incomprehensible thing. Idiots. There ऐसी are कई many गंभीर serious people लोग who हैं जो understand समझते हैं what कि is going जलवायु on के with the साथ क्या हो climate. रहा है और आप कहते And रहते you हैं keep कि ये saying जानवरों की it's the गलती है। animals' fault. क्या हम एक Are we पागल living in खाने an में रह रहे हैं? epidemics where the first one to put on the doctor's overall is the ड्रेसिंग doctor गाउन पहनने वाला and डॉक्टर the rest कहाँ are है the और बाकी patients? रोगी हैं? People, लोग आइए let's हम get स्मार्ट some बने, बड़े martyr हों, अन्यथा and हमारा grow अस्तित्व up. समाप्त हो जाएगा। Otherwise, we will simply cease to exist. ये स्पष्ट It है is कि clear that आप में से none of कोई you भी will मेरे answer सवाल my का जवाब नहीं questions. देगा। आप डरते हैं। You are आप afraid. वास्तव में ठंडे You पानी really में आधी wake रात up को in the जागते middle हैं, of the night in a डर से cold कांपते sweat, हैं कि tremble with आप उजागर fear हो जाएंगे that people have और exposed you. स्थिति से निपटने के बजाय And आप instead of खतरे से dealing with हमारा this ध्यान हटाने situation, और हमें चुप कराने के तरीके के you are बारे में thinking सोचते of हैं। ways to divert our attention away from the threat and shut us up. पहले महामारी थी, First, the epidemic. अब Now you're scaremongering us आप with a हमें nuclear परमाणु war. युद्ध से डरा रहे हैं। Listen, you geniuses, does it ever hit home to you that a सुनो, nuclear तुम strike प्रतिभाशाली, would only क्या speed तुम भी things ये up? उड़ा रहे I हो see that it would be कि in परमाणु your हमला केवल interests. चीजों की You गति wouldn't देगा? have to मैं देख conquer रहा some हूँ of them यहाँ, now. ये And you would हमारे tell लिए us sheep to अच्छा go होगा। on bleeding while your आपको mow is done. हमें भेड़ों के बताने के The कुछ only नया trouble करने is, की जरूरत नहीं होगी, जबकि the only आप trouble is, हमें घास काटने समय we'll ब्लीटिंग all drop पर dead जाते हैं। without एकमात्र exception. समस्या So यह है कि don't आप even सभी get your hopes अपवाद up को बिना for नीचे your जाएंगे bunkers.
The तो climate अपने बंकरों won't के लिए अपनी spare उम्मीदों को भी anyone. पूरा न करें। जलवायु किसी को भी नहीं बख्शेगी। As you can जैसा see, आप देख we सकते all हैं कि live हम सभी एक relatively अज्ञात भविष्य के comfortable साथ अस्तित्व lives के in किनारे an age पर of अपेक्षाकृत survival and आरामदायक an जीवन unknown जीते हैं। future. ये The दुनिया so-called
ये तथाकथित शासक हमें बताते हैं कि जलवायु समस्या को कैसे ठीक करेंगे और हम उनके कार्बन तथा मिशन को दुश्मन क्यों हैं। हालांकि काल्पनिक CO2 लड़ाई के कुछ विवरण सिर्फ नहीं जोड़ते। आज हम जिस समाधान के बारे में बात कर रहे हैं वह ब्रेन वॉश किए गए CO2 समाधान के बाहर है, जिसे हम इन दिनों हर क्षेत्र से सुनते हैं। CO2 स्कैमर योजना बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण 24,000 साल के जलवायु चक्र और ग्रह के अंदर होने वाली परिवर्तनों को नजरअंदाज कर दिया। ये बदलाव अस्पष्ट हो गए हैं। उनकी गणना के अनुसार जलवायु संकट को अपने CO2 सिद्धांत का समर्थन करने में मदद करने के लिए बचना चाहिए था, लेकिन विनाशकारी घटनाएं केवल बढ़ रही हैं। अब बेवकूफ कौन है? CO2 के लाभदायक व्यवसायिक मॉडल में कैसे बदल गया? जो आप पूछते हैं, एक बार की बात है, उन्होंने सोचा कि ये असामान्य चक्र है। आखिरकार हर 1000 3000 साल छोटे बदलाव वार्मिक और शीतलन होते हैं। 18वीं सदी में भी ठंड बढ़ गई थी। तब उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगा। वैज्ञानिक ने बस एक कूल ऑफ की उम्मीद में लाभ कमाने का फैसला किया। क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, इसलिए वे अनुसंधान के लिए अपने वित्त पोषण वृद्धि करते हैं। ये समझाते हुए कि ये एक मानव जनित ये राजनेता का पैसा बनाने की जनता को नियंत्रण करने की भी अनुमति देता है। राजनेता हरे रंग की ऊर्जा प्रचार निर्देशक कर रहे हैं। जुर्माना, कार्बन कर और CO2 कोटा बिक्री के साथ गैर देशों ने गुलाम बना सकते हैं। हमें दुनिया भर मीडिया में कुछ बड़े व्यवसाय को स्वागत। मेरा मानना है कि ये विचार जनता के माध्यम से हमारे सारे दिमाग में फैल गया है। वास्तव में हम तथाकथित शोध दान पर भी नहीं उठाते हैं, जबकि हम और गुमराह हैं। वे अपनी हवेली बनाने, नेताओं को खरीदने, निजी जेट उड़ाने, निजी द्वीपों पर पार्टी करने और हमारे पैसे खर्च करना सभी हमारे द्वारा प्रेरित होगा। हाँ, वे हमें झूठ बेचने के लिए बहुत स्मार्ट व्यापारिक लोग हैं। इन्हें बहुत लाभ उठाने के लिए और अपने भेड़ों को कोई वादा नहीं करने हैं। हवा में एक अणु से लड़ने पर खरबों डॉलर खर्च किए गए, जबकि वायु परिवर्तन के वास्तविक खतरे कहीं नहीं पाए जाते। वैज्ञानिक जो परवाह करते हैं, सच्चे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, नजीकन वे बंद हो जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वैज्ञानिक या किसी अन्य सार्वजनिक सामना करने वाले प्रकाशनों में प्रकाशित होने की क्षमता खो देते हैं। वे उपभोक्तावादी प्रारूप से के सभी गंदगी और खेलों का अनुभव करते हैं। प्रीमियम पैकेज होगा। ये हमेशा की तरह सरल है। दुनिया को जानबूझकर ये सोचकर गुमराह किया जा गया है कि हम केवल अपनी गायों को फास्ट को कम करके दो CO2 करों को अधिक भुगतान करके जलवायु परिवर्तन को हरा कर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, हम वर्तमान में 24,000 साल के जलवायु चक्र को गुजर रहे हैं और यह सिर्फ इसलिए गायब नहीं होता क्योंकि हम एक समस्या को हल कर रहे हैं जिसका हमने आविष्कार किया था। मग आपण कार्य करें। आप और कई लोग जो हमारे साथ इस लाइव प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं समझते हैं कि हमें जलवायु संकट के खाली समाधान के साथ सेवा मिली है। ये हमारा जीवन है, हमारे बच्चों और प्रियजनों का जीवन उन व्यावसायिक मॉडलों द्वारा संरक्षित नहीं है जो सरकार ने हमें चूसा है। हम अपने मस्तिष्क की कोशिकाओं को वापस कैसे बढ़ाते हैं? हम आज से शुरू करते हैं। हम भूल जाते हैं और माफ करते हैं। हम जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों के बारे में इस जानकारी को उन सभी को फैलाना शुरू कर देते हैं जिसे हम जानते हैं। हाँ, आपका पड़ोसी सोच सकता है कि आप पागल हैं, लेकिन अगर वह अलग अलग लोगों को प्लेटफॉर्मों से जानकारी सुनता है तो वे इसे आगे देखने में सबसे अधिक संभावना है। शायद आपका शोध भी करे।
Yeah, that's actually a very good advice. Thank you so much, Olga. Amazing speech. And yeah, if they follow your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on. And here's what they might discover for themselves. Since 1996, there was a very first prediction model made, and it was noted that synchronous changes were happening not only on Earth, but on other planets as well. And it means that the problem is global. It's more than a problem of one single planet. On the scale of galaxies in space, our planet is not bigger than a grain of sand on the beach. And there is very little that we know about the space in general. So we have to unite to observe and study everything. If we unite the best scientists to work on this problem, we have a chance. We have 5-6 relatively calm years ahead of us. After that, it will be obvious to everyone. There will be no time left to do anything about it. If we keep wasting time on fighting climate change by raising carbon taxes on CO2 and money-making schemes around it, we are done. So let's hear what scientists have to say about CO2 and its place in ecosphere of our planet. मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग 20वीं शताब्दी का एक भव्य वैज्ञानिक घोटाला है। हॉकी स्टिक ग्राफ ... मैंने इस ग्राफ पर एक नजर डाली और एक चूहे को सूंघा। यह वस्तुतः सबसे बड़ा कल्पनाशील धोखा है जिसे कोई आधुनिक विज्ञान में पा सका है। यह वास्तव में सबसे विनाशकारी षड्यंत्र सिद्धांत है जिसका आविष्कार मानव जनित जलवायु परिवर्तन के साथ किया गया है। ऐसा लगता है कि मैं पागल शरण में जाग गया और रोगियों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया है। आज हर दिशा से हमें हर समय बताया जा रहा है कि मानव निर्मित CO2 उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन के लिए दोषी हैं। जब आप दिन प्रतिदिन एक ही चीज को दोहराते हैं तो यह सामान्य हो जाता है, स्वीकार किया जाता है, जैसे कि हल्के में लिया जाता है। हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन चूंकि कोई ऐसा कर रहा है तो किसी को इससे लाभ होता है। वर्तमान ग्लोबल वार्मिंग की मानव जनित उत्पत्ति और मानवता के लिए इसके खतरे का यह मॉडल एक मिथक है। एक अलग सवाल यह है कि इस मिथक की आवश्यकता किसे है। CO2 से लड़ने के लिए वे हमें पौधों और कारखानों को बंद करने, हमारे घरों को गर्म करना बंद करने और गैसोलीन के साथ हमारी कारों को भरने, मांस खाना बंद करने और स्नान बंद करने के लिए कहते हैं। हमें यह भी बताया गया है कि हमें कम सांस लेनी चाहिए, बच्चे पैदा करना बंद कर देना चाहिए और आमतौर पर ग्रह पर मानव आबादी को कम करना चाहिए। और निश्चित रूप से हमें जितना संभव हो उतना अधिक करों का भुगतान करना चाहिए। क्या यह सुंदर नहीं है? क्या आपको टैक्स लगाना पसंद नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बेहतर नियंत्रण लीवर की कल्पना करना कठिन है, जो सचमुच समाज को पूरी तरह से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। CO2 के साथ यह असमान लड़ाई पहले से ही 40 से अधिक वर्षों से चल रही है। लेकिन इस लड़ाई के नतीजे क्या हैं? लेकिन अब तक कोई उपाय सफल नहीं हुआ है। इसके विपरीत, एक जलवायु सम्मेलन से दूसरे जलवायु सम्मेलन तक वातावरण में CO2 का स्तर केवल बढ़ता जा रहा है। सभी अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों और मानदंडों की पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है, जैसे कि हम इसके बढ़ने के लिए भुगतान कर रहे हैं। यदि आप कहानी, कथा, नकली कि CO2 पृथ्वी को मारने या हमें मारने जा रहा है या जो कुछ भी करने जा रहा है, यदि आप उस कहानी पर विश्वास करते हैं तो आप डर जाएंगे और आप दोषी होंगे और इससे आपको अपना बटुआ खोलना पड़ता है और ग्रीन पीस को एक बड़ा चेक भेजना पड़ता है। इन उपायों से जलवायु नहीं बचेगी, वे प्रभावी नहीं हैं और वास्तव में वायुमंडल में CO2 उत्सर्जन को कम करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका असर लोगों और आपके वॉलेट पर पड़ता है। इसका असर लोगों और आपके वॉलेट पर पड़ता है। यह कुछ स्वतंत्रताओं को प्रभावित करेगा जिनसे आप वंचित होंगे, लेकिन यह जलवायु या मौसम को 1 इंच भी नहीं हिलाएगा। आइए कुछ जांच करें कि हमें किस आधार पर प्रतिबंधित किया जा रहा है और कर लगाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि CO2 वास्तव में वायुमंडल में निहित है? कार्बन डाइऑक्साइड एक ट्रेस तत्व है, इसमें बहुत कम है।
वायुमंडल में केवल 0.41% CO2 है। इसमें से बहुत कम है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार CO2 का स्तर 400 ppm है। इसका क्या मतलब है? ppm का अर्थ है प्रति मिलियन भाग। दूसरे शब्दों में, वायुमंडल में हवा के प्रत्येक 10,000 अणुओं के लिए CO2 के 4 अणु हैं। लेकिन हमें बताया जाता है कि ये अणु पृथ्वी से आने वाली गर्मी को फंसाते हैं और वायुमंडल को गर्म करते हैं, लेकिन 4 अणु वायुमंडल में 10,000 अन्य अणुओं के लिए गर्मी को कैसे फंसा सकते हैं? इस तरह की छोटी सांद्रता का जलवायु पर कोई प्रभाव कैसे पड़ सकता है? यहाँ तक कि एक स्कूल के छात्र भी समझेंगे कि वे नहीं कर सकते। यह छोटी सी वृद्धि संभवतः किसी भी प्रकार के जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं बन सकती है। यदि आप कुछ भी दोगुना नहीं करते हैं, तो आपके पास अभी भी कुछ भी नहीं है। एक सेकंड पकड़ो। हालांकि यह सिर्फ मनुष्य नहीं है जो वायुमंडल में CO2 जोड़ता है। महासागरों, ज्वालामुखी, पेड़ों और दलदल जैसे प्राकृतिक स्रोत भी हैं। मानवता तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है? पूरे औद्योगिक युग में 1750 के बाद से CO2 सांद्रता में समग्र वृद्धि में स्थापित मानव योगदान विभिन्न शोधकर्ताओं द्वारा 1% और 12% के बीच होने का अनुमान लगाया गया है। पूरी मानवता वार्षिक CO2 उत्सर्जन के केवल 5% के लिए जिम्मेदार है। अन्य 95% वो है जो महासागरों और भूमि से उत्सर्जित होता है। यह एक प्राकृतिक चक्र है। यदि हम मानते हैं कि प्राकृतिक CO2 का 0.03% मानव योगदान से पहले वायुमंडल में पहले से ही था, तो मानव जनित CO2 कुल वायुमंडल के 0.0001% और 0.0012% 1 से 12/10,000 के बीच होगा। इसका मतलब है कि एक मानव ने वायुमंडल में अन्य अणुओं के प्रति मिलियन 1 से 12 अणुओं के बीच जोड़ा है। इस बीच हमें कार्बन करों द्वारा लूटा जा रहा है और CO2 की हमारी पहले से ही नगण्य सांद्रता को कम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हमने दुनिया के सभी कारखानों और पौधों को रोक दिया, और यहाँ तक कि अगर हमने सांस लेना बंद कर दिया, तो इसके परिणामस्वरूप 2050 तक 400 ppm में से 1 ppm से कम CO2 की कमी होगी। इस बीच आपदाएं पहले से ही पूरी तरह से अलग अलग कारणों से जीवन और पूरे देशों को नष्ट कर रही हैं। CO2 अकेले मनुष्यों को छोड़ दें, वार्मिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। There was no correlation at all between carbon dioxide and global warming. We had a period of global cooling from about 1945 to 1980, during a time when CO2 was rising rapidly. And so there's no correlation here at all. If you look at the data over the past 160 years, you will see that despite all the efforts of humankind to emit more CO2, this gas could not decide whether to heat the atmosphere or cool it. Similarly, before the industrial age, the planet heated and cooled on its own without any help from humankind. What effect is CO2 having on global temperatures right now? In 2019, during the pandemic, humankind significantly reduced its CO2 emissions. The entire world was under quarantine. Plants and factories were shut down, and the air in cities was cleared of exhaust fumes. However, the concentration of CO2 in the atmosphere continued to grow regardless of the quarantine. If there was a human effect, if the humans were causing this rise in the rate of rise, then when humans stop using hydrocarbon fuels for some significant period, as we have 2 examples now, 2010 and now recently, then you should see likewise a change in that curve, a slowdown in the rate of rise in that curve. But this is not observed whatsoever. The main orchestrator of atmospheric CO2 is the ocean. How dare you! Since about 95% of the Earth's carbon dioxide is dissolved in its waters. When the ocean heats up, it releases CO2 into the atmosphere. First comes the change in the sea temperature. A little bit later, the land temperature red. And then about 1 year, 11 months or 10, 11 months, the carbon dioxide changes. And when temperature at the sea goes down, the carbon dioxide goes down 10, 11 months later.
In other words, the increase in carbon dioxide is a consequence of the heating, not its cause. And humanity has nothing to do with this process, nor does it have anything to do with climate change. But if CO2 increases naturally, it must intensify the greenhouse effect anyway, right? That is absolutely not the case. The most important greenhouse gas is water vapor, whose content in the atmosphere is 50 to 100 times more than all the CO2. And it is water vapor that creates up to 95% of the greenhouse effect. In other words, the content of water vapor in the atmosphere on average is 5,000 times higher than the content of anthropogenic carbon dioxide. So the greenhouse effect of CO2 is extremely low. Is there one at all? According to theoretical calculations, the increase of CO2 in the atmosphere has a cooling effect. Everybody says, well, greenhouse gases are warming the atmosphere. But no, they're not. It's quite clear that greenhouse gases cool the atmosphere. 70% of Earth's cooling is caused by infrared active gases. And now we can ask a million-dollar question. What is another name for infrared active gases? It's the greenhouse gases. Some colleagues, I have done experiments to see if CO2 can heat or carry heat. So we have built small greenhouses and tried to heat it by the sun outside or inside with artificial heating. We were able to show that carbon dioxide stops radiation, that we were not able to show any heating. This experiment showed that increasing the concentration of CO2 only slows down the heating of the atmosphere. And another question remains: why are natural sources emitting more and more CO2 today? Ice cores from the last pre-industrial 100,000 years, when there were no cars or factories, contain CO2 concentrations that are well over today's 400 ppm. For example, between 700 and 2500 ppm. In the ice cores, they say, well, there's a higher concentration of CO2. For some unknown reason, however, these data began to disappear from the articles in 1985, which strangely coincided with the establishment of the Advisory Group on Greenhouse Gases that later became the Intergovernmental Panel on Climate Change. Our planet is currently going through a period of global climatic catastrophes occurring cyclically every 12,000 years. During this period, due to the changes within the planet, volcanoes and earthquakes become more active, causing magma to ascend and the ocean to heat up enormously. Heating of the deep ocean and awakening volcanoes are causing the concentration of CO2 in the atmosphere to increase rapidly, and this happens every 12,000 years. This is an IQ test. If you're too stupid to understand this, instead you're thoroughly brainwashed by governments to think global warming is caused by your car, your hibachi, you breathing too much and cow farts. You're too stupid for this discussion at all. You're going to become like the dinosaurs, extinct, and you should be. You're too stupid to survive. It's time to ask every lying scientist, where to and why was our money unreasonably spent? Why was our money wasted to the wind? If this was a false theory, then why did they shut the mouths of honest scientists? While they are creating an illusion of fighting with a negligible amount of CO2, millions of people are dying, cities are being destroyed, and the number of climate refugees is growing. And we are fast approaching the collapse of the planet because of the 12,000-year cycle. And due to our carelessness, the only way to escape the escalating disasters for us is to unite in order to build the creative society. Only together can we create a better world for our children and save billions of human lives. Our future depends on each and every one of us. What an amazing video. As you have just seen, the theory of human-made climate change is a proven fake, just like the weapon of mass destruction in Iraq. मोहित विनाश के हथियार दुश्मन की छवि से हमारा ब्रेनवॉश किया गया है और हमें उस दुश्मन से लड़ने के लिए अपनी भलाई और अरबों डॉलर का बलिदान करना चाहिए। पेरिस समझौते और
क्योटो प्रोटोकॉल के लिए इसकी आवश्यकता है। इन दो दस्तावेजों का तीव्र रूप से वैज्ञानिक साक्ष्य के एक टुकड़े के आधार पर हस्ताक्षर किए गए, जो यूएन बिल्डिंग कॉलिन पॉवेल की टेस्ट ट्यूब जितनी नकली है। हॉकी स्टिक ग्राफ ने एक बेरोजगार औसत दर्जे के वैज्ञानिक को सूरज के नीचे 1 ग्राम जला दी। संयुक्त राष्ट्र की नौकरी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसरशिप और शोध पर लाखों डॉलर, जिसका मुख्य परिणाम जलवायु विज्ञान को पूरी तरह से बदनाम करना है, जैसा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके बारे में लिखा था। ये ग्राफ एक सिद्ध नकली है। ये जानबूझकर हेरफेर और उपयुक्त डेटा के उपयोग का परिणाम है, जो इस तरह के परिणाम के लिए जानबूझकर गलत है। संयुक्त राष्ट्र के आईपीसी नेटवर्क अच्छी तरह से जानना चाहते थे कि ये ग्राफ न केवल जलवायु परिवर्तन के पूरे इतिहास बल्कि अन्य वैज्ञानिक ग्राफ विपरीत भी प्रकाशित प्रचार के ज्ञात किया गया है। राजनेताओं सहित सभी को गुमराह करने के लिए आईपीसीसी और डब्ल्यूएमओ रिपोर्ट में डेटा में हेरफेर किया गया। 2009 में इस लीक ईमेल, जिसे गेट के रूप में जाना जाता है, ये उन लोगों के बीच बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा किया जिन्होंने महसूस किया कि उन्हें धोखा दिया गया था। जनता को खुश करने के लिए कई फर्जी जांच की गई। इसका नतीजा सिर्फ जालसाजों को हल्की फटकार लगाना था। नकली चार्ट के लेखकों को केवल चेतावनी दी गई और भविष्य में अपने व्यवहार में सुधार करने की सलाह दी गई, और किसी भी जांच नहीं की गई। आईपीसीसी प्रबंधन ने उन वैज्ञानिकों पर दबाव कैसे डाला जिन्होंने मानव जनित जलवायु परिवर्तन के सिद्धांत के विपरीत डेटा छिपाने के लिए रिपोर्ट तैयार की थी, शाब्दिक रूप से संदेश को पतला न करने के लिए। इसके बजाय भ्रष्ट वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा एक बड़े पैमाने पर दब्बा अभियान शुरू किया गया था, ताकि किसी भी बदनाम किया जा सके जिसकी राय हॉकी स्टिक के सिद्धांत के साथ बाधाओं पर थी। सब कुछ इस्तेमाल किया गया, प्रकाशनों के अवरोध करने के, पत्रिका संवाद को डराने से लेकर बदनामी और फायरिंग तक। लेकिन ऐसे धोखेबाजों के कारण, जो केवल अपने किताब की परवाह करते हैं, दशकों से भारी रकम बर्बाद की गई और अधिकांश वैज्ञानिक समुदाय इसके बारे में जानते हैं। मार्टिन पुस्तक द डिस्पर्सिंग टू द प्रोफेशन में पीएचडी प्रोफेसर नोबेल पुरस्कार विजेता के सैकड़ों उदाहरण शामिल हैं, जो खुले तौर पर इस हॉकी स्टिक के आकार के तापमान चार्ट को सस्ते नकली के रूप में पास करते हैं। कनाडा के जलवायु विज्ञानी टीम बॉल ने 2 टूक कहा था कि इस तरह की धोखाधड़ी को पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में नहीं बल्कि राज्य काउंटी जेल दी जानी चाहिए। उन्होंने पुस्तक में लेखक दोनों हॉकी स्टिक के लेखक द्वारा उनके खिलाफ दायर हर मुकदमे को जीता, ये साबित करते हुए कि ग्राफ एक नकली है। हालांकि भले ही सभी वैज्ञानिक आपस में खुलकर चर्चा करते थे, लेकिन केवल कुछ ही इस उच्च पेडियम बताते थे। कौन खुद को बदनामी की लहर और जलवायु डेनियर और विधर्मी के कलंक के लिए उजागर करना चाहता है। अब आप चुपचाप अनुदान प्राप्त करना जारी रख सकते हैं और सम्मानित वैज्ञानिक की उपाधि पहन सकते हैं। केवल जिसके द्वारा सम्मान किया जाता है वही अनुदान खाने वाले, जो लोग खुद ही प्रशंसा करते हैं, वे एक दूसरे के सकारात्मक समीक्षा लिखते हैं और एक दूसरे के पुरस्कार पिन करते हैं। और ये हमारे लिए क्या अच्छा है? हमें ऐसे विज्ञान की आवश्यकता क्यों है? हमें क्या हासिल किया? जो लोग खुद को विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक कहते हैं, सिर्फ अच्छी तरह भुगतान के लिए भ्रष्ट किराए और नौकरी निकले प्रमुख की बात कर रहे हैं, और उन्हें सिर्फ में केवल व्यक्तिगत लाभ था। वहाँ कोई विज्ञान नहीं था। वे जलवायु परिवर्तन के बाहरी कारणों की हमारी परिकल्पना पर हंसे, लेकिन अब वे हंस नहीं रहे, क्योंकि वे महसूस करने के लिए काफी चतुर थे कि मानवता के रूप में हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और ये डरावना है। ये डरावना है, सच्चाई मूर्खों तक भी पहुंचती है। ये न केवल इसलिए डरावना है क्योंकि सच्चाई विज्ञान के सबसे बुरे प्रतिनिधित्व तक भी पहुंचती है,
बल्कि but इसलिए कि because we हमारे have पास इसका nothing to सामना करने के लिए contradict कुछ नहीं है। this with. The number of प्रलय की cataclysms संख्या हर साल increases बढ़ती each जाती year. है। वास्तविक The real समस्या problem, चक्रीय जलवायु cyclical परिवर्तन climate का change, अध्ययन is कर studied केवल only कुछ by लोग few द्वारा किया who जाता are है telling the जो truth. सच कह रहे हैं And कि और most of the CO2 के money खिलाफ spent पौराणिक on लड़ाई this पर खर्च mythical किया गया fight है। against पैसा CO2, कई वास्तविक those समस्याओं का money हल would be करने enough के to लिए actually पर्याप्त solve a होगा। lot of real problems. ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें These कई are लोगों the ने अब facts that खुलकर many आवाज have now उठाना शुरू began कर to दिया है, voice लेकिन समस्या openly. यह है But कि the problem is that हमें we must जलवायु का find a way मुकाबला to करने के लिए counteract and मानवता के रूप survive में this. जीवित रहने But का एक तरीका खोजना our चाहिए। knowledge today आज is हमारा not ज्ञान enough इस to जलवायु stop this सर्विसेज climate को रोकने के लिए fervor. पर्याप्त नहीं है और And we हमें need to एक get तंग it पट्टा पर in a प्राप्त करने की आवश्यकता है, complete अन्यथा heat. ये पूरी दुनिया, Otherwise, हमारी it will पूरी दुनिया को destroy नष्ट the कर whole देगा। world, our whole world. और अब And पहले now, से more कहीं than अधिक ever, हमें we need to व्यक्तिगत stop नियमों के this हितों के bickering लिए and झगड़े stop और लड़ाई को fighting रोकने की for the आवश्यकता interests है। of हमें एकजुट होने की individuals and जरूरत है। हर corporations. कोई We need to समस्या unite. है Everyone समझता है कि understands that the उपभोक्तावादी प्रारूप consumerist खुद को प्राप्त कर चुका है और has वर्तमान outlived प्रणाली अस्थिर itself, है। and that the current system is समाज का unsustainable. There is no ऐसा format कोई of प्रारूप the नहीं है society जो that अभी की corresponds जरूरत से with मेल what is खाता हो, needed right क्रिएटिव now, सोसाइटी को छोड़कर। except for the creative हर कोई society क्रिएटिव format. सोसाइटी में रहना चाहता है, Everyone wants to live in the creative जैसा कि society. दुनिया भर में लाखों Evidence is showing सर्वेक्षणों it. के Here's माध्यम से हमारे in-depth research प्रतिभागियों conducted द्वारा by किए गए गहन volunteers, शोध के participants वर्षों from को all over the से world, स्पष्ट है। हर कोई millions of क्रिएटिव surveys सोसाइटी around the globe. रहना चाहता है। And it shows everyone wants to live in the creative society. We don't have time for the हमारे पास political games. राजनीतिक खेल के लिए समय Everyone नहीं है। has to हर face the समय truth. किसी को Look सच्चाई का around सामना us. करना पड़ता है। We have 14 years हमारे left चारों ओर at देखो, most. हमारे पास लगभग अधिकतम And it 14 is साल बचे हैं uncertain that we और will ये even have अनिश्चित those है कि 14 हमारे years. पास 14 The साल mental रहेंगे। model is not गणितीय flawless मॉडल भी either. निर्दोष It is based on नहीं है। current ये progression. वर्तमान प्रगति पर But आधारित है, accelerating लेकिन त्वरित factors can कारण add के up. साथ आ And the सकते time हैं can be और उस समय को significantly काफी reduced. कम किया जा It सकता is है। enough only of परमाणु It is only विस्फोटों के लिए few पर्याप्त nuclear है और यह सब explosions कुछ ताटकीय that रूप से would be तेज enough हो to सकता है। accelerate it dramatically. लेकिन मानवता के But there is जीवित a chance रहने for का humanity एक to मौका है survive, और and we हमें इसका must लाभ उठाना take चाहिए। advantage of it. अगर हम If we दुनिया, want to be खुद और अपने safe and बच्चों को save बचाना our चाहते world हैं and save it तो for हमें पूरे ourselves and प्रारूप को बदलना future होगा। children, we क्यों? must change the क्योंकि entire एकमात्र format. विकल्प जो है You might दुनिया का ask सबसे why. Because प्रतिभाशाली this लोगों is को the मुक्त only कर देगा। option that will हम free एक up the मेज most पर brilliant people on this बैठकर earth. We will सभी be वैज्ञानिक able to क्षमताओं को gather इकट्ठा them, करने में सक्षम all होंगे the scientific और उन्हें वे potential सब at कुछ one table, प्रदान and करेंगे जो provide them उन्हें with काम करने की everything आवश्यकता है necessary और to एकमात्र do प्रारूप their जिसमें job, हम to do a उनके really good आरामदायक work. काम के And this is the only format in which लिए we can सर्वोत्तम create the best परिस्थितियां बना conditions सकेंगे for their और comfortable वह work क्रिएटिव in the सोसाइटी। creative society. उपभोक्ता The प्रारूप वैसे consumerist भी format समाप्त हो will जाएगा, end लेकिन anyway. सवाल The यह है कि question is, will क्या we यह हमारे end साथ with it, समाप्त हो or जाएगा will we become a या civilization, क्या हम एक evolve, सभ्यता बन step जाएंगे, over this विकसित होंगे, इस enslavement दास प्रणाली पर system of the कदम mind, उठाएंगे and और इसे remember केवल it एक only भयानक as a अतीत के terrible रूप में past? याद The रखेंगे। choice is विकल्प up to us, अब हम में से each one of प्रत्येक us. पर निर्भर है। And now, it is my pleasure to pass the floor to Dr. Arthur Viterito, who has been actively involved in research and climate change his entire academic career. And he came up with the hypothesis that geothermal heat is a significant driver of climate change. मैं आर्थर विटोरिटो हूँ। मैं भौतिक भूगोल और सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। इसकी मानव जनित उत्पत्ति जाहिर है। कई लोग द्वारा गंभीरता से सवाल उठाया गया है जो इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से शोध कर रहे हैं, लेकिन कई मायनों में हम चर्चा से बाहर हो गए और जिस तरह से उन्होंने हमें बंद कर दिया वे ये हम चुप करा दिया गया है, हमें बदनाम कर दिया गया है, हमारे काम को नजरअंदाज कर दिया गया है या हमें प्रकाशन तक पहुंचने से वंचित कर दिया गया है।
मैं इसके साथ अपने अनुभव के साथ शुरू कर सकता हूँ, जिस पर मैंने जो पहला पेपर किया था, जो 8 साल पहले था, उसे 2 पत्रिकाओं ने खारिज कर दिया था। मैंने अपना शोध 9 को भेजा। उदाहरण शीर्ष स्तरीय पत्रिकाएं 9 पत्रिकाओं में से 5 इसकी समीक्षा भी नहीं करेंगे। प्रधान संपादक ने उन्हें हाथ में खारिज कर दिया था। यह हमारी पत्रिका के दायरे में नहीं आता।
उनमें से एक वास्तव में कहा, मुझे नहीं पता कि क्या ये जानते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के वास्तव में क्या चल रहा है। अब ज्वालामुखीय गतिविधियां उसके पेपर में कहीं की गई किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के कारणों से होता है। सत्य पढ़ना चाहिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। इसलिए ये एक तरीका है कि विपक्ष को चुप कराने की कोशिश करते हैं। बेशक वे विज्ञान फेमिनिन हमलों में भी शामिल हो जाते हैं और हमें कुछ हद तक फटकार लगाई गई और चर्चा काट दिया गया और चीजें ऐसे ही काम करती हैं। इस प्रकार हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल और पर्सनल अटैक हुए और शोधकर्ताओं ने अपने कार्यालय को अपने कार्य गोली मार दी थी। एक सम्मेलन में था और वे अपनी इमारत के किनारे बंदूक की गोली के निशान की तस्वीर लेकर आए थे। एक और जिसे जानता हूँ, अन्य प्रमुख जलवायु वैज्ञानिक विज्ञान को सीख के रूप में छोड़ने के लिए बहुत मजबूर किया गया था, क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के साथ पर्याप्त था जो उसे सहकर्मियों और वहां के प्रशासन से मिल रहा था। वहाँ है अन्य जलवायु लोगों पर इस पर सवाल उठाने के लिए मुकदमा दायर किया गया है, भले ही आप वैज्ञानिक फेमिनिन हमलों में शामिल हुए हों या नहीं। यदि आप अपने शोध पर हमला करते हैं तो बदले में उन पर मुकदमा दायर किया जाएगा। इसलिए जानकारी का सक्रिय रूप से दमन किया गया है और यह वास्तव में दुखद है। तो हाँ, इन्हीं चीजों में के बल पर करियर बनाया या तोड़ा जा सकता है। यदि आप सही गेम नहीं खेल रहे तो आपको छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। जलवायु परिवर्तन का विषय एक अत्यधिक जटिल बहुआयामी खोज है। इसे भूगोलविज्ञान के तत्व और गतिशीलता शामिल है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स को देखता है, समुद्र विज्ञान इसमें शामिल है, जलवायु ज्वालामुखी विधियों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इसमें जलवायु वैज्ञानिकों को शामिल किया जाना चाहिए और इन बहुआयामी दृष्टिकोणों को कई मामलों में स्वागत नहीं किया जाता और उन्हें खराब मान जाता है। इस तरह के शोध करने के लिए आवश्यक अनुसंधान टीमों का बड़ा होना चाहिए और विशेषज्ञ कई अलग अलग क्षेत्रों में लाना चाहिए और लोग इस तरह के शोध के वित्तपोषण में रुचि नहीं रखते हैं। तो यह दिलचस्प है कि ग्लेशियरोलॉजिस्ट उदाहरण के लिए ज्वालामुखीविदों से बात नहीं करते हैं और ज्वालामुखीविद वायुमंडलीय विज्ञानों से बात नहीं करते हैं। और आपके पास यहाँ वैज्ञानिकों की बड़ी संख्या सरणी है जो वास्तव में एक दूसरे से बात नहीं करते। कुछ मामलों में वे नहीं कर सकते क्योंकि समझ में नहीं, लेकिन साथ ही वे ऐसा नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि स्थापित करना गंभीर रूप से महत्वपूर्ण है और बहुत अनुशासित में कहूँगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण है कि कोई जलवायु विज्ञान का अध्ययन करना चाहता है और उन्हें कई अलग अलग भौगोलिकी के विज्ञान के विषय इकट्ठा करनी होंगी। धन्यवाद प्रोफेसर विटेरिटो। जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 की दोषी ठहराना सदी एक घोटाला है। जैसा कि आपने सुना, अगर कोई इस कथा के खिलाफ बोलता है तो व्यक्ति के वर्तमान समाज के परिणाम भुगतने पड़ते हैं और सच्चाई को दबा दिया जाता है। पिछले महीने रोटरी के लिए रिपोर्ट पेश करने के बाद मुझे एक अनुभव हुआ। रोटरी एक महान संगठन है, उसके पास असली नायक हैं जिनके कर्म अनुकरणीय हैं। आपने उनमें से कुछ को उससे सुना है, लेकिन उनमें छाया में छुपकर रोटरी के नाम का अपने हित का शोषण करने वाले भी शामिल हैं। और आज मैं उन अंधेरे के बारे में बात करना चाहता हूँ। वास्तव में उनके संगठन के वास्तव अपमानजनक व्यक्ति हैं। रोटरी रिपोर्ट प्रकाशित होने के लगभग एक हफ्ते बाद एक व्यक्ति पर्यावरणीय स्थिति रोटरी एक्शन ग्रुप से इस व्यक्ति करने के कॉल करें। मेरे नियोक्ता नेटवर्क में एक ईमेल भेजा जिसका शीर्षक था जलवायु दुष्प्रभाव प्रचार घोटाले द्वारा पकड़े गए रोटरी के बाद क्षति नियंत्रण, आपके कर्मचारी शामिल हैं। संक्षेप में, ये रिपोर्ट हमें विचारों और असहमत थी कि मेरे पीठ के पीछे ये अनैतिक परेशान करने वाला संदेश लिखा था। उम्मीद है कि मेरा नियोक्ता दंडात्मक कार्रवाई करेगा। अपना मामला बनाने के लिए रोटरी से करने का आरोप लगाया। क्रिएटिव सोसाइटी रोटरी नाम का उपयोग किया। घटना की उपस्थिति में बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय धोखा दिया जहां जलवायु परिवर्तन की गलत सूचना प्रस्तुत की गई है और एक
ये क्रिएटिव सोसाइटी लोगों को धोखा देती है, बीबीसी स्मीयर लेख में संदर्भ देती है। इसके अलावा करेन ने पूछा कि क्या मेरे नियोक्ता को इस कार्यक्रम में मेरी भागीदारी के बारे में पता है, तो पता दुष्प्रचार अभियान में कैसे संबोधित करेंगे। उसने कहा कि मेरे संगठन पर अच्छी तरह से प्रतिबंधित नहीं करेगा। इस तरह के वे झूठ के साथ ईमेल पढ़ने के बाद मैंने खुद से भी ये सवाल किया कि मैंने कुछ गलत किया है। मुझे पता नहीं था कि परिणाम क्या होगा। इससे नौकरी चली जाएगी, क्या मैं अपने परिवार का पेट भर पाऊंगा। कुछ घंटे बाद मैंने नियोक्ता उपाध्यक्ष के साथ फोन किया। मैंने पुष्टि के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्राकृतिक आपदाओं, हालांकि प्रगति और जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों के बारे में रिपोर्ट, न मानव जनित CO2 सिद्धांत। मैंने कहा कि ये मेरे विचार हैं और मैं अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता, लेकिन वास्तव में परेशान करने वाली करेन के अपेक्ष थे। उसने लिखा कि मेरी आवाज दब की गई थी क्योंकि मेरे मुंह के आंदोलन शरीर को दबने के साथ गठबंधन नहीं किया था, और ये कि मेरी छवि का अपहरण किया गया जा सकता है। उसने सवाल किया कि मैं इच्छुक प्रतिभागी था। वास्तव में इन सभी आरोपों के अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे पीछे हटने की योजना की पेशकश की गई थी। मुझे बस इतना कहना था, मेरी छवि एक अपहरण कर लिया गया था और ये मैं नहीं था। I think Karen very likely used this type of dirty tricks in the past, offering a backup option. उन व्यक्तियों को बैकआउट विकल्प प्रदान करना जिन्होंने अपने हितों के खिलाफ बात की थी। ऐसा करके उसने पूरे संदेश को बदनाम करने का प्रयास किया, और ये योजना शायद प्रभावी थी। यदि आप उसकी राय के खिलाफ कुछ कहते, भले ही सच बोला जाता, तो आपको दंडित किया जाता, ताकि अगली बार आप अपना मुंह ना खोलें और उन्हें चुप करें। स्पष्ट होने के लिए, मैं क्रिएटिव सोसाइटी का एक प्रतिभागी हूँ। रेटोरेक्ट अटलांटा द्वारा आमंत्रित क्रिएटिव सोसाइटी की ओर से मैंने स्वयं उसको प्रस्तुत की। अब इसके हमले का मुख्य उद्देश्य करने जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों पर रिपोर्ट से असहमत थे। इसलिए उसने हमें जलवायु से इनकार करने वाले कहा और लिखा, क्रिएटिव सोसाइटी मानव जनित जलवायु परिवर्तन में जीवाश्म ईंधन के योगदान से इनकार करके दुष्प्रभाव फैला रही है और भ्रम पैदा कर रही है। वे जोर देकर कहते हैं कि जलवायु मुख्य गतिविधियों CO2 की मानव जनित रिहाई नहीं, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। इसलिए CO2 के काम करने के लिए खर्च किया गया और कोई भी पैसा बर्बाद हो जाता है। वास्तव में रिपोर्ट के बाद रोटरी सदस्यों ने यह भी सवाल करना शुरू कर दिया कि जलवायु परिवर्तन में वास्तविक कारणों का अध्ययन करने में क्यों शामिल नहीं है, और क्या मौजूदा जलवायु कार्यक्रम का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जाहिर है, रोटरी में उनके स्थिर समूह के हितों कार्यक्रमों को चोट लगी थी, क्योंकि रिपोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 को दोष देने का समर्थन नहीं किया था, और क्योंकि इसके एजेंडे को धमकी दी गई थी। करेन ने रोटरी में एक उत्पादक उपद्रव भेज दिया था, फिर गुप्त रूप से तीर खींचने के लिए गंदे ईमेल का झूठ कर लिया था, बस अपने हितों के माध्यम से धक्का देने के लिए। अफसोस की बात थी, क्योंकि उसने सार्वजनिक वक्ता राजदूत के रूप में कार्य किया है, फिर भी इस तरह से चरित्र प्रदर्शित किया। चुपचाप मेरे नियोक्ता के माध्यम से तार खींचने नैतिक नहीं है। क्या किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता धमकी दी जानी चाहिए सिर्फ इसलिए कि दूसरा पक्ष असहमत है। और एक और सवाल है, क्या करेन के कार्यों को रोटरी क्लब के साथ समन्वयित किया गया? निसंदेह रोटरी सदस्य है, जैसे कि आज बोलने वाले, जो रोटरी ध्वनि नाम और गौरवान्वित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से करेन ने दिखाया कि रोटरी से उसका कम वर्ण भी है, जो कुछ भी लाभ के लिए अपने रास्ते पर दूसरों को डूबते हैं। तथ्यों के बारे में, यहाँ तक कि मानवता के भविष्य के बारे में कुछ परवाह किए बिना रोटरी से करने के कार्यों के प्रसिद्ध क्लब के बदसूरत चेहरा दिखाया, और लाखों लोग अब 150 भाषाओं में इसके बारे में सुन रहे हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है, मेरे नियोक्ता के पास अच्छे लोग हैं और इस शर्मनाक झूठों के जवाब देने का अवसर प्रदान किया। मैं दृढ़ता से खड़ा था
अपनी स्थिति समझाई और उन्होंने मेरे विचारों का सम्मान किया। मुझे अपने संगठन के लिए काम करने पर गर्व है और अद्भुत नेतृत्व की सराहना करता हूँ जो कर्मचारियों को मनुष्य के रूप में मानते हैं और इस तरह के बदमाशों के नेतृत्व का पालन नहीं करना है। It is worth noting the broader implication of this incident. I'm an ordinary citizen. ये घटनावाचक है, ध्यान देने योग्य। मैं एक आम नागरिक हूँ जो सार्वजनिक रूप से बोलता है। किसी को मुझे पसंद नहीं आया, इससे किसी के, और ये एक ऐसे देश में हुआ जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी जानी चाहिए। ध्यान दें कि मैंने एक राय नहीं बल्कि बहुत ही गंभीर विषय पर शीर्ष वैज्ञानिकों से अनुसंधान किया, तथ्यों और डेटा विश्लेषण निष्कर्ष प्रस्तुत किए। With so much meanness and such violent character as Karen, why would any true scientist speak the truth in public? कई लोगों को वास्तविक धमकी दी गई, बहिष्कार किया गया और जलवायु परिवर्तन के लिए CO2 को दोष देने के दुष्प्रचार पर लंबे समय तक चुपचाप रहने के लिए मजबूर किया गया। हमारे साथ वैज्ञानिक हैं, ग्रह पर हजारों सबसे चतुर लोग, स्थायी, सभी मानव जाति के प्रति वफादार, हर व्यक्ति के भविष्य की रक्षा करते हैं, लेकिन कैरन जैसे लोगों की वजह से उन्हें दुर्भाग्य से छुपाने के लिए मजबूर किया गया और हम उनकी ओर से बोलते हैं। अन्यथा, जैसा कि मेरे लिए था, गंदगी और धमकियां फेंक दी जाएगी और वे अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। Dirt and threats will be thrown, and they will not be able to conduct the research. आपको आश्चर्य होगा कि उनके कुछ नाम कितने बड़े हैं और कैरन जैसे लोगों ने उनके नाम मांगे। क्यों? विज्ञान या जलवायु से निपटने के लिए नहीं, बल्कि वे सच्चे वैज्ञानिकों के साथ उसी तरह से निपटने जैसे मेरे साथ किया था। नतीजतन झूठ को बर्दाश्त किया जाता है और सत्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है और सत्य को नहीं छुआ जा सकता है। ये देखना दर्दनाक है कि क्या हो रहा है, लेकिन दुख की बात है कि यह पैटर्न है जिसे हम आमतौर पर समाज के वर्तमान के रूप में देखते हैं। हमारे पास आगे तत्काल कार्य है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। रिपोर्ट में पृथ्वी के कोर में परिवर्तन के कारण होने वाले आसन्न प्रलय का प्रकाश डाला गया है। दुर्भाग्य से वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए वास्तव में समस्या का हल करने के लिए काम नहीं कर रहे। क्या उन लोगों को गंदगी डालने के लायक हैं जो व्यक्तिगत हितों या पैसे के लिए सच्चाई की लड़ाई की आवाज उठा रहे हैं? क्या पैसा कुछ वर्षों में बेकार हो जाएगा? मानवता के रूप में हमारे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक तथ्य अपनाने, कमाने, धोखा देने और हेरफेर करने के प्रयासों को खर्च नहीं करना चाहता। उन्होंने खोजने और विकसित करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए और सभी अलग दशक तक जीवित रहने के लिए वैज्ञानिक की दक्षता बेहद महत्वपूर्ण है। हमें एक ऐसे समाज की आवश्यकता है जो हमें सामान्य लक्ष्य से एकजुट हो, अर्थात जीवित रखना, मानव जीवन को महत्व देना ताकि सत्य की आवाज उठाई जा सके और जहां उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित की जा सके। क्रिएटिव सोसाइटी में सच्चाई खुले तौर पर ध्वनि होती है, जैसे कि ये इस फोरम में लगता है। लाखों लोगों के सामने जब जानबूझकर झूठ बोला जाता है, जैसा कि कैरन के ईमेल में अपने स्वार्थ को धक्का देने के लिए था, तो हम सच्चाई बताएंगे और हर कोई सुनेगा। व्यक्तियों के निजी हित के सभी मानव जाति के लोग हावी नहीं होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ताकि इस तरह के मतलबीपन और गंदगी सच्चाई को फेंका नहीं जाए। इस तरह विज्ञान बनेगा और मानवता कैसे जीवित रहेगी और आगे बढ़ेगी। Thank you so much, John. यही कारण है कि बहुत कम लोग जानते हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई मानव जनित कारक के बारे में जानता है, लेकिन वे नहीं जानते कि वास्तव में हमारे ग्रह के साथ क्या हो रहा है। इस मंच के दौरान हमें टिप्पणियां मिल रही हैं कि ये जानकारी हर जगह से सुनी जानी चाहिए। मित्रों, हम सभी समसेवक हैं और दुर्भाग्य से हमारी दुनिया के मीडिया तक कोई पहुंच नहीं है जिसके माध्यम से कम समय में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रयास
प्रसार किया जा सके। quickly as possible. हम केवल एक We can दूसरे only पर भरोसा count कर on सकते each हैं, other. और यदि आप स्थिति की And सभी if you गंभीरता को understand समझते the हैं तो इस seriousness मंच of को this सभी के साथ साझा situation, करें। please यदि share आप this forum with इस मंच को everyone. If टेलीविजन you और can रेडियो get the पर forum on प्रसारित television, कर सकते radio, हैं or तो इसे even करें। podcast, do it. हम जानते हैं कि We जलवायु know that परिवर्तन एक climate चक्रीय change is a प्रक्रिया है। cyclical ये process. मानव जनित कारक It पर does निर्भर not नहीं depend करता, on लेकिन हमारी anthropogenic गतिविधियों ने factors. ग्रह की But परिस्थिति our activities इतना have नष्ट कर दिया है devastated कि the ये planet's ecology प्रतीक्षा so रक्षा के much बिना रह गई that है। it is left without यही कारण है कि immunity. इस बार हम चक्र से नहीं Therefore, बच this पाएगा। time it will not be able to endure this केवल cycle. एक अर्थ Only an विशेष दृष्टिकोण interdisciplinary इस मुद्दे को approach समझ सकता है। can आइए make जानें कि sense वास्तविक of this मानव issue. जनित कारक क्या है Let's figure और out ऐसा क्यों what है, the real और हमारा ग्रह anthropogenic प्रलय factor के is. चक्र से Why बच नहीं exactly पाएगा। now will our planet not survive the cycle of cataclysms? मुझे अपने अगले I'm वक्ताओं pleased to जर्मनी के एक introduce you वेब to रसायक और our वेब next सूचना speakers, विज्ञानी Alexander अलेक्जेंडर Masny, मास्त्री a और biochemist and इजराइल के एक bioinformatician from Germany, परिस्थितिविद and अन्ना Anna Kotlyar, पेट्रोलियर an को ecologist from Israel, कोटलियार को who will प्रस्तुत करते हैं। present a प्रसन्न हो report रही है कि ये जो prepared by क्रिएटिव an सोसाइटी प्रोजेक्ट international के team of वैज्ञानिकों व स्वतंत्र scientists स्वतंत्रता and के लिए एक independent अंतर्राष्ट्रीय टीम researchers द्वारा of the एक Creative रिपोर्ट Society प्रस्तुत project. करेंगे। Hello, dear नमस्कार friends. प्यारे I'm दोस्तों, मैं honored to आज be इतने बड़े present today at पैमाने such a पर large-scale अंतर्राष्ट्रीय मंच पर international forum. उपस्थित होकर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। Hello, friends. Yes, the crucial information for the whole of humanity has been revealed. फोरम में आज हमने जो सुना वह चौंकाने वाला है। जलवायु आपदाओं की वृद्धि के लिए प्रस्तुत गणितीय मॉडल इसमें कोई संदेह नहीं छोड़ता कि यह तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। ग्रह को पिछले चक्रों में गंभीर जलवायु झटके का भी सामना करना पड़ा, जिसमें 10,000 से अधिक बचे नहीं हैं, लेकिन मानवता का अस्तित्व बना रहा। फिर अब हम क्यों कह रहे हैं कि ग्रह इस चक्र को पार नहीं करेगा और न केवल मानवता गायब हो जाएगी, बल्कि पूरा ग्रह नष्ट हो जाएगा और मंगल की तरह बन जाएगा। क्या बदल गया? वास्तव में हमारे ग्रह को पिछले चक्रों से बचने में मदद मिली है। मुद्दा यह है कि हमारे ग्रह का पारिस्थितिकी तंत्र इसी परीक्षा है और ये पृथ्वी के इतिहास में विकसित हुआ है, और ये इसमें प्रतिरूप तंत्र बनाए गए हैं जो नम करने के सक्षम हैं, जो ब्रह्मांडीय प्रभाव को कम कर रहा है। महासागर परिस्थिति तंत्र एक ऐसा शमन तंत्र है। उदाहरण के लिए ग्रेट बैरियर रीफ जो 25 मिलियन वर्षों से बन रहा है। प्रलय में कितने चक्र बनाए गए हैं? अभी वैज्ञानिक कह रहे हैं कि तबाही के कगार पर हैं और इसे बचाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ग्रेट बैरियर रीफ पूर्वी तट के तूफान बचाता है और सुनामी के बल कम करता है, और फिल्टर फीडर का भी घर है जो 5 साल में प्रशांत महासागर की पूरी मात्रा को फिल्टर कर सकता है। चट्टानों के गायब होना महासागर परिस्थिति तंत्र की अखंडता को बाधित करता है, क्योंकि हमारे पास ग्रह पर सब कुछ आपस में जुड़ा है और इससे के विनाश पूरे सिस्टम का संतुलन पैदा हो जाता है। ये एक प्रतिपूरक तंत्र का सिर्फ एक उदाहरण है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमने स्वयं अपने स्वास्थ्य कार्यों के लिए गृह सुरक्षात्मक कार्यों को नष्ट कर दिया है और जलवायु खतरे का सामना करने की क्षमता से वंचित कर दिया है। ये वास्तविक मानव जनित कारक है। मैं एक वीडियो देखने का सुझाव देती हूँ जिसे क्रिएटिव सोसाइटी प्रोजेक्ट के स्वयंसेवकों की अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा नियुक्त किया गया है। ये दिखाता है कि हमारे गैर जिम्मेदाराना कार्य कितनी जल्दी हमारे पक्ष में ग्रह संतुलन को टिप कर सकते हैं। हमारा ग्रह प्रलय के चक्र के चरम पर पहुंच रहा है, जो हर 12,000 वर्षों में होता है।
हर 24,000 वर्षों में चक्र अधिक विनाशकारी होता है और पृथ्वी पहले से ही प्रकृति द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक तंत्र के लिए एक से अधिक बार इसके माध्यम से गुजर चुकी थी। लेकिन अब हमें पूरी तरह से विनाश की धमकी दी गई है। क्या बदल गया है? ये तंत्र अब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? महासागर। महासागर पृथ्वी की सतह के 70% को कवर करता है और पृथ्वी की मौसम प्रक्रियाओं का नियामक है। लेकिन यह आज अपने कार्यों का सामना करने में असमर्थ क्यों है? चक्र के चरम पर पृथ्वी को प्रभावित करने वाले ब्रह्मांडीय विकिरण ग्रह के कोर में परिवर्तन का कारण बनता है और इसके परिणामस्वरूप मैग्मा की चढ़ाई होती है। यह बदले में समुद्र को नीचे से ऊपर तेजी से गर्म करता है, जिससे विनाशकारी परिणाम होते हैं। आज भी टाइफून, बवंडर और बाढ़ की आवृत्ति और गंभीरता में वृद्धि हुई है। महासागर का गर्म होना फाइटोप्लांकटन दोनों को मारता है, जो ग्रह की ऑक्सीजन का 80% तक उत्पादन करता है, और प्रवाल भित्तियां, जो तटीय क्षेत्रों को गंभीर तूफानों से बचाती हैं। कोरल की मृत्यु महासागर वनस्पतियों और जीवों के बड़े पैमाने पर विलुप्त होने में योगदान देती है। यह वैश्विक जलवायु परिवर्तन का परिणाम है और मनुष्य तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, सीवेज, रसायनों, पारा और अन्य भारी धातुओं, रेडियोधर्मी अपशिष्ट और प्लास्टिक के साथ इसे प्रदूषित करके समुद्र की मृत्यु को और तेज कर रहे हैं। हर साल अकेले टैंक जहाजों से फैलने के परिणामस्वरूप 10,000 टन से अधिक तेल विश्व महासागरों में जाता है, जो 730 करोड़ टन अपशिष्ट जल और लगभग 14 लाख टन प्लास्टिक कचरे के अलावा है। आज विश्व महासागरों की सतह का 88% हिस्सा पहले से ही प्रदूषित है और यह प्रक्रिया लगातार बढ़ती रहती है। महासागरों को एक विषाक्त समाधान में बदल देती है। रासायनिक प्रदूषण को बेअसर करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नतीजतन प्रदूषकों की उच्च सांद्रता वाले क्षेत्रों में महासागर न केवल वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ना बंद कर देते हैं, बल्कि वे इसे अवशोषित करना भी शुरू कर देते हैं। जंगलों, जलवायु परिवर्तन, असामान्य रूप से उच्च तापमान, लंबे समय तक शुष्क अवधि, बिजली के हमलों की संख्या में वृद्धि और पृथ्वी के इंटीरियर से विघटन के कारण विनाशकारी जंगल की आग की संख्या बढ़ रही है, जिससे बड़े पैमाने पर जंगल का नुकसान हो रहा है। इस बीच हम स्वयं विनाशकारी दर से जंगलों को काट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमानों के अनुसार मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप सालाना 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल नष्ट हो जाते हैं। इससे जलवायु संकट और बढ़ जाता है। आखिरकार जंगलों में अद्वितीय गुण होते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को सामान्य कर सकते हैं। जंगल तूफान हवाओं और तूफानों के लिए एक प्राकृतिक बाधा है जो उनकी विनाशकारी शक्ति को कम करते हैं। मैंग्रोव वन सुनामी से समुद्र तटों की रक्षा करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जंगल का 30% से अधिक पहले ही मानव गतिविधियों के कारण खो चुका है। पेड़ों की जड़ प्रणाली भी नमी को अवशोषित करती है और इसे मिट्टी के अंदर रखती है। यह पृथ्वी की पपड़ी के विरूपण के दौरान ग्रह के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। जब पानी छोटी दरारों और फ्रैक्चर के माध्यम से पृथ्वी में गहराई से बच जाता है, वहीं भारी बारिश की संख्या में इजाफा हो रहा है। जंगल न हो तो शुष्क क्षेत्र और भी शुष्क हो जाते हैं और जहां बारिश होती है वहां नमी जमीन में अवशोषित नहीं होती। पानी के बहाव से मिट्टी और अतिप्रवाह नदी के किनारे नष्ट हो जाते हैं, जिससे भूस्खलन और बाढ़ बढ़ जाती है। हम अमेज़न के क्षेत्रों में इसके उदाहरण देखते हैं। अपने कार्यों से हम प्राकृतिक आपदाओं की विनाशकारिता को बढ़ा रहे हैं। लिथोस्फीयर। हर सेकंड 128,000 क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस को पृथ्वी के इंटीरियर से पंप किया जाता है। 240 टन कठोर कोयले का खनन किया जाता है
और 184,000 लीटर तेल निकाला जाता है। खनिजों का निष्कर्षण, बड़े जलाशयों का निर्माण, तकनीकी विस्फोट और नए प्रकार के हथियारों के परीक्षण के दौरान विस्फोट गुहाओं और रिक्तियों का निर्माण करते हैं और चट्टान की अखंडता को बाधित करते हैं, जिससे यह अधिक नाजुक हो जाता है और क्रैकिंग, फ्रैक्चरिंग और भूमि ढहने का खतरा होता है। ग्रिफिथ के मॉडल के अनुसार ये प्रभाव क्रिस्टल गोले को फ्रैक्चर का कारण बन सकते हैं, जिसमें कहा गया है कि किसी सामग्री में माइक्रो क्रैक भी कुछ तनावों के तहत पूरी तरह से विफलता का कारण बन सकता है, और यह सब ऐसे समय में है जब चक्रीय परिवर्तनों के कारण पृथ्वी की पपड़ी पर मैग्मा दबाव बढ़ रहा है, भूकंप की आवृत्ति और ताकत बढ़ रही है, जबकि पृथ्वी के दोष और भूमि पतन बढ़ रहे हैं। वायुमंडल। वायुमंडल ब्रह्मांडीय विकिरण से ग्रह पर सभी जीवन की रक्षा करता है, महत्वपूर्ण ऑक्सीजन के साथ हवा को संतृप्त करता है, वैश्विक जल चक्र को बनाए रखता है और पृथ्वी की सतह के तापमान को आरामदायक स्तर पर रखता है। इसकी ओजोन परत सूर्य से पराबैंगनी विकिरण के खिलाफ एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है, लेकिन 12,000 वर्षों के प्रलयकारी चक्र के कारण वायुमंडलीय कार्य बाधित होते हैं। ग्रहों के विघटन में वृद्धि ओजोन परत को नष्ट कर रही है और रासायनिक संदूषण चल रही प्रक्रियाओं को और बढ़ा देता है। PNAS जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मानव जनित उत्सर्जन में मौजूद आयोडीन का पृथ्वी की ओजोन परत पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है और इसके उत्थान को धीमा कर देता है। डाइक्लोरोमेथेन जैसे अल्पकालिक यौगिक भी ओजोन को कम करते हैं। अंतरिक्ष मिशन और अंतरिक्ष मलबे में ईंधन दहन वायुमंडल के सुरक्षात्मक कार्यों को कम करता है। पारिस्थितिकी ग्रह की प्रतिरक्षा है और रक्षा तंत्र केवल तभी काम करता है जब प्रतिरक्षा मजबूत होती है, लेकिन हम मनुष्यों ने पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता का उल्लंघन किया है और इसलिए प्रतिपूरक तंत्र अब काम नहीं करते हैं। इस अवस्था में हमारा ग्रह प्रलय के शिखर से बचने में असमर्थ है। हमें पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए समय की आवश्यकता है और यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास नहीं है। अब हमारे पास असहमति के लिए, एक दूसरे के साथ शत्रुता के लिए या समाज के उपभोक्तावादी प्रारूप के लिए समय नहीं है, क्योंकि जलवायु प्रलय बढ़ रहे हैं और हम उनके चरम से केवल कुछ साल दूर हैं। यदि हम जीवित रहना चाहते हैं तो मानवता को एक सामान्य लक्ष्य में एकजुट होना चाहिए, जीवन को संरक्षित करना। यह केवल रचनात्मक समाज में संभव है, जहां हमारे सभी वैज्ञानिक, संसाधन से संबंधित और मानव क्षमता मुख्य कार्य को हल करने पर केंद्रित होगी। यदि आप अपने भाग्य और हमारे ग्रह के भाग्य की परवाह करते हैं, तो रचनात्मक समाज के बारे में जानकारी साझा करें। ग्रह को बचाओ, रचनात्मक समाज का समर्थन करें। हमने अपने कार्यों से प्रसिद्ध ग्रह को इतना थका दिया है कि इसके सुरक्षात्मक कार्यों को सक्रिय नहीं किया जा सकता। यही कारण है हम इतने तीव्र और कठोर तरीकों से जलवायु आपदाओं को चक्र प्रवेश कर रहे हैं। ग्रह कचरे के ढेर में तब्दील हो गया है। हर साल 2 अरब टन से अधिक कचरा डंप करेगा। इसी समय अकेले प्लास्टिक कचरे का द्रव्यमान एक ही वर्ष में फेंक दिया जाता है। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के द्रव्यमान से अधिक है, जो 300 मिलियन टन, और 90% कचरे को पुनर्वितरण नहीं किया जाता, लेकिन ग्रह को जमा और जहर देता है। आज ग्रह में 36 मेगा शहर है, जो इसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। जरा सोचिए, दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रह की सतह क्षेत्र के 1% पर रहती है।
ये सब All of this लिथोस्फेरिक creates a प्लेटों tremendous पर point एक load जबरदस्त on the बिंदु भार lithospheric बनता है plates and जो increases पृथ्वी the की risk पहाड़ी of में fractures फ्रैक्चर को in the जोखिम को Earth's बढ़ाता है। crust. Just think, what will happen if you put pressure on a सोचिए, single अगर आप point of बहुत the लंबे body समय तक शरीर और for a बिंदु very long पर दबाव period of डालते हैं तो time? क्या It होता would है? cause a इससे disruption रक्त of blood प्रतिकरण के circulation and consequently व्यवधान होता है tissue और damage and परिणामस्वरूप death, ऊतक meaning क्षति और necrosis. मृत्यु यानी The same परिगलन thing is होगा। now ये happening हमारे to ग्रह our साथ भी ऐसा planet. ही हो रहा है। At the साथ same ही time, we have हमने lost अपना 1/3 वन of our वर्ग woodlands. क्षेत्र खो दिया And this is और ये only केवल according to official data. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार We है। cut down forests at हम a प्रति speed of सेकंड एक 1 फुटबॉल मैदान football की field per दर से second. जंगलों को काटते The हैं। reduction of वन आवरण woodlands में के triggers कम करने destruction के in all सभी the परिस्थितियां ecosystems. प्रणालियों में विनाश होता है। वन Forests नमी में के वितरण, influence the ऑक्सीजन के distribution उत्पादन of और जलवायु moisture and परिवर्तन production को of oxygen, कम करने as को well as प्रभावित mitigate करता है। climate change. ये जानवरों के घर हैं। They are a home हर दिन for animals. पौधों, Every जानवरों year, और पक्षियों की every day, 137 विभिन्न प्रजातियां जिनके 137 various वैश्विक species नुकसान of के कारण plants, गायब हो animals, जाती and है। birds disappear due to the global loss of forests. हाँ, Yes, और and the केवल एक extinction of प्रजाति only के one विलुप्त species होने causes के the so-called तथाकथित domino डोमिनोज effect, when प्रभाव the होता chains है। of जब interconnections are इंटरकनेक्शन destroyed. की श्रृंखला We नष्ट have हो no जाती है, हमें नहीं idea पता how कि प्रकृति में everything सब is कुछ कितना interconnected in the परस्पर nature. जुड़ा हुआ है। I will give you a simple example. मैं Ordinary आपको एक worms सरल in उदाहरण the दे ground. दूंगा। Do you जमीन know में that साधारण if कीड़े, these क्या आप worms जानते हैं वे disappear, कीड़े गायब हो जाएंगे we तो will हमारे live जीने के for 2 केवल 2 साल years बचे at the रहेंगे। most. एक और Another उदाहरण, मच्छर। example, हम उसमें से कहीं ने mosquitoes. सोचा कि ये बहुत Many of अच्छा us होगा कि thought अगर that वो it गायब would हो be जाए, great लेकिन अगर if ऐसा हुआ तो all of अधिकतम them 4 साल disappeared. और फिर हम उसके बाद But गायब हो if it जाते हैं। happens 4 years प्रत्येक maximum, प्रजाति and अपने then पूरे we जीवन में disappear after that, परिस्थिति every तंत्र को species contribute to योगदान the देती है। ecosystem throughout देखो its life. Look like कि everything इस दुनिया depends में on each सब other कुछ in एक this दूसरे world. पर If निर्भर करता है। something यदि is ग्रह disrupted on one part एक of the हिस्से पर planet, दुनिया this will बाधित होगी surely reflect it तो to the दुनिया whole world. भर The में world गूंजने is की one. गारंटी है। We are in one boat. दुनिया पूरी एक नाव में है। 50 50 साल years पहले ago, स्टॉकहोम के environmentalists संयुक्त at the राष्ट्र UN सम्मेलन में conference at Stockholm पर्यावरणविदों ने said that कहा if we था, do अगर nothing हम आज today, कुछ नहीं there will करते be an तो environmental पारिस्थितिक आपदा disaster. होगी। और हम क्या देखते हैं, And what do we see? पर्यावरण की स्थिति The environmental और गायब situation होगी has only और खराब हुई है। worsened. और हम We are एक entering a बर्बाद पारिस्थितिकी 24,000 तंत्र year के साथ cycle जलवायु of प्रलय climate के cataclysms 24,000 साल with के a ruined चक्र में प्रवेश कर रहे ecosystem. हैं। इन The 50 world's वर्षों में wildlife दुनिया की population वन्य has आबादी declined by almost में लगभग 70% 70% over की the गिरावट past आई है। 50 हमने years, पिछले 10,000 while वर्षों में over the तुलना में last पिछले 100 100 years वर्षों we में have lost अधिक more प्रजातियां खो species दिया than है। in the previous 10 वैज्ञानिकों ने millennia. घोषणा की है कि हम Researchers state पहले से that ही we have छठी already सामूहिक entered a प्रजाति period of the के sixth विलुप्त होने की अवधि mass में प्रवेश कर चुके extinction हैं। of species. The state परिस्थितिकी of the की environment स्थिति actually निर्धारित determines करती how है the कि ग्रह planet बाहरी खतरों का resists प्रतिरोध external कैसे करता है, threats. क्योंकि पृथ्वी एक स्व Because the नियमित Earth is a जीव है। self-regulating सभी organism where प्रक्रियाएं all परस्पर जुड़ी processes हुई है। are interconnected. सबसे स्पष्ट One of तथ्यों the में से most एक obvious कि facts ये that the ग्रह planet is undergoing अपरिहार्य inevitable पर्यावरणों changes से गुजर is रहा that है। animals ये are कि beginning to जानवर behave असामान्य abnormally. रूप से We व्यवहार lose the करना शुरू ability कर to रहे हैं। navigate in ये space. अंतरिक्ष Birds में suddenly falling onto the ground, नेविगेट करने की and marine क्षमता inhabitants खो देते throw हैं। themselves on the पक्षी अचानक shore, जमीन पर गिर रहे taking हैं their और own समुद्र के lives. निवासी खुद को किनारे But पर फेंक animals देते हैं, only अपनी जान ले communicate their लेते हैं। strongest instinct, क्या जानवर the वास्तव instinct में of अपने सबसे self-preservation. मजबूत व्यक्ति They are not के suicidal. खिलाफ जा रहे हैं? It can't be real. आत्मसंरक्षण की वृत्ति It वे happens आत्मघाती because of नहीं the है। North magnetic ये pole असली नहीं drift, हो सकता है। magnetic ये anomalies, the उत्तरी gassing of the चुंबकीय ध्रुव subsoil, प्रवास, and increased चुंबकीय seismic विसंगति, activity. मिट्टी के You may विघटन be और wondering, भूकंपीय
समुद्री गतिविधि की वृद्धि का कारण होता है। talking about this because in all of our science, You just are- like in ecology, there is no comprehensive क्योंकि study. हमारे सभी विज्ञान परिस्थिति की तरह समस्या में We कोई have been व्यापक able अध्ययन नहीं है और to हम study everything वास्तविक thanks to an दृष्टिकोण के लिए interdisciplinary धन्यवाद सब कुछ समझने में सक्षम हैं। सभी जलवायु प्रलय और प्राकृतिक विसंगतियों के कारण कोर चुंबकीय क्षेत्र का जुड़ा होना ये पैदा करता है। और एक ज्वलन उदाहरण ये समुद्र की गहराई पर आसमान असामान्य परिवर्तन होते हैं। गहरे समुद्र में मछली स्टैंडिंग के कई मामले हैं। विशालकाय और फिश आमतौर पर 1000 मीटर की गहराई पर रहती है और सतह पर आ जाती है और भूकंप और सुनामी का भविष्य रखता है। उदाहरण के लिए वे जापान के फुकुशिमा के पास सुनामी भूकंप में कुछ समय पहले
आए थे। 1995 में स्टैंडिंग Because of changes in the नाटकीय core, रूप से the बढ़ गई थी। geophysical parameters कोर के are परिमाण के updated. कारण Changes ग्रे like व magma भौकीय comes up पैरामीटर to भी the बदल जाते subsoil हैं। and the मैग्मा Earth's crust उपमृदा warms up. से आता है और So पृथ्वी does की the पपड़ी atmosphere. और महासागर गर्म हो जाते हैं, Where इसलिए our वायुमंडल planet's भी गर्म होता process है। is triggered. और यही है As a result of warming, वजह है methane and कि CO2 ग्रह are की emitted. प्रति गर्म So होती as है। वार्मिंग temperature के rise, परिणामस्वरूप the मीथेन और ocean CO2 starts उत्सर्जित होते emitting हैं, इसलिए CO2. जैसे तैसे Swamps तापमान also बढ़ता start है। emitting समुद्र CO2 CO and other dangerous का combination of gases instead of उत्सर्जन its करना natural शुरू कर filter. देता है। And the दलदल most प्रक्रिया interesting हीटर के thing रूप में is काम that करने के even बजाय this small CO2 amount of गैसों को forests खगोल we still haven't been able उत्सर्जन to cut करना शुरू कर down देते हैं। are now also functioning in a और सबसे different दिलचस्प way. बात यह जंगलों की We have छोटी छोटी started to मात्रा emit हम more सभी CO2 than काटने we में सक्षम absorb. नहीं है। अब भी एक Scientists अलग have तरीके से found काम and कर रहे हैं। recorded this उन्हें everywhere, which means अवशोषित it is a करने natural के तुलना में mechanism of अधिक plants CO2 का उत्सर्जन and करना the पड़ता है। reaction to changes occurring on Earth. वैज्ञानिक ने इस जगह पाया कि Thus, रिकॉर्ड किया, CO2 जिसका increases अर्थ यह है कि regardless of पृथ्वी human पर होने वाले activity. It's our planet's परिवर्तनों की response to प्रतिक्रिया external के रूप में impacts. पौधों में एक Contrary to popular प्रासंगिक beliefs, तंत्र है। CO2 does not heat इस the प्रकार atmosphere. CO2 मानव It गतिविधि cools के it. It's just प्रवाह किए physics. बिना And there बढ़ता है। is another important point. Where does the CO2 flow to? To the CO2 कहाँ atmosphere. बढ़ता है? वातावरण The lower में। layers of the atmosphere heat वायुमंडल up, की निचली the upper परतें गर्म हो layers जाती हैं cool और down. ऊपरी परतें The ठंडी हो result जाती है। of the तापमान temperature अंतर difference, परिणाम the स्वरूप atmosphere वायुमंडल condenses. In other words, स्थगित kind of a होता है। barrier दूसरे or शब्दों में इस bumpers form. प्रकार की बाधा This एक is one of the बम्पर बनता planet's है। protective ये functions. ग्रह का सुरक्षा कार्यों में Almost like एक है। separate ये puzzles सभी of the whole picture चक्रीय of the जलवायु cyclical परिवर्तन की climate तस्वीर change. अलग-अलग पहलियां I हैं। would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenges. और अब हमारे And पास विज्ञान now उस स्तरीय we don't have एकीकृत नहीं science as है जितना unified as it कि used ये to be. हुआ करता था। हर Everyone कोई अपने researches विशिष्ट their क्षेत्र own पर शोध specific करता field, है, and they don't notice anything outside of it. इसके बाहर So कुछ there is no नोटिस नहीं करते, comprehensive view. इसलिए कोई व्यापक The दृष्टिकोण problem नहीं is है। that समस्या science ये now है कि doesn't विज्ञान work अब for the समाज के benefit फायदे of के लिए काम society. नहीं करता। Modern आधुनिक science is विज्ञान 90% अनुदान चाहने grant वालों के seekers सतही and चोरी करने plagiarism. वालों का They report only what is 90% है। beneficial for वे individuals. केवल वही रिपोर्ट And करते the हैं जो best कुछ minds गलतियां are known to व्यक्ति the के general public, फायदेमंद है। work for the और military सबसे industry. अच्छा दिमाग In आम order for जनता के लिए science to अज्ञात serve society, सैन्य we need उद्योग to के give लिए काम scientists करना back है। their freedom of action and से let them out of secret design वापस bureaus. देने और This गुप्त is only डिजाइन ब्यूरो possible के in a बाहर creative society. आवश्यकता है। ये क्रिएटिव सोसाइटी में ही संभव है। The ecosystem is the परिस्थिति immunity of तंत्र our ग्रह की planet. परीक्षा है Our और climate जलवायु चक्र cycle is महामारी के like an समान है। epidemic. ये परीक्षा The प्रणाली जितनी stronger the मजबूत होती immune है, system उपचार is, प्रक्रिया उतनी the ही आसान easier and तेज होती faster है। is the ये एक recovery वायरस की तरह है। process. ये वायरस वही है It's like a जो virus. मरता है। It's not a virus that ये kills, but the जटिलताएं हैं जो विकसित complications होती that है। develop. परिस्थिति Ecology की जलवायु is not परिवर्तन का the कारण cause of नहीं है, climate ये घातक change. जटिलताओं का कारण है। It's a cause of deadly complications. In the previous cycles, the पिछले environmental पर्यावरण चक्रों situation में अब was की much तुलना में better बहुत than it बेहतर is था now, और and भूवैज्ञानिक अध्ययन geological इसकी पुष्टि studies करते हैं। confirm that. ग्रे हिल Yes, रहा है, the सांस planet was लेने के लिए shaking. कुछ नहीं है, There was nothing to सागर लगभग eat, हर जगह and है, the ocean was almost everywhere, लेकिन but लोग बच people गए। survived. अब हमारे पास Whereas सबसे now खतरनाक we have स्थिति the है। worst मैं situation उन ever. लोगों को सम्मान Those करती हूँ people who जो sincerely try ईमानदारी to से save ग्रह the को planet बचाने की deserve कोशिश true कर रहे हैं। respect. वे They रैलियों के come लिए out to बाहर mass आते हैं, विभिन्न demonstrations, कार्य hold करते various हैं, actions, बकवास का sort सॉर्ट garbage, करते and हैं restrain their और आम comfort for the अच्छे sake of the के लिए common आराम good. को सीमित And करते it हैं। makes me और ये cheerfully मुझे sad आंसू that all these actions बहाता are है कि सभी totally कार्य pointless. कहीं नहीं जा रहे। In the consumer उपभोक्ता society, समाज में corporations निगम skillfully manipulate कुशलतापूर्वक and लोगों की exploit वास्तविक the genuine आकांक्षाओं में aspirations हेरफेर of और people, शोषण करते हैं। turning परिस्थिति
परिस्थिति कार्यकर्ता परिस्थिति आतंकवादी में बदल देते हैं। वे लोगों का ध्यान आकर्षित करने और अधिक धन जुटाने के लिए लोगों को आतंकवाद और बर्बरता के कृत्यों को अंजाम देने के लिए उकसाते हैं। वे लोगों को सक्रियता के नाम पर अपराध करने के लिए उकसाते हैं, चाहे कला के कार्यों पर रखकर या रात की देरी करके या आम लोगों के जीवन में हस्तक्षेप करके। दुर्भाग्य से पारिस्थितिकी कार्यकर्ता के लक्ष्य अक्सर पर्यावरण की रक्षा करना नहीं होती है, बल्कि एक ठोस भौतिक लाभ बनाना होता है। बाजारों के संघर्ष में अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्यों के प्रेरित करने कंपनी
प्रेरित मामले में Basically, सामने आए हैं। eco-activism has वास्तव में turned from परिस्थिति a सक्रिय real ग्रह movement को to बचाने के लिए एक save the वास्तविक planet आंदोलन into से a एक trivial तुच्छ चरमपंथी extremist संगठन में बदल गई। organization. लोगों का People's ध्यान attention हो is रहा है diverted from the परिवर्तनों true cause के of the वास्तविक changes कारण क्या that पाया take जा रहा है और place, हमें सच्चे and खतरे का we are सामना करने deprived के of लिए the अवसर वंचित opportunity किया जा रहा to है। confront the real threat. हम ये We नहीं are कह not रहे saying कि that पर्यावरण environmental की problems should इस not be समस्याओं का solved, समाधान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारी but it's प्राथमिकताओं important को to सही set the करना right महत्वपूर्ण है। priorities. क्या ये Would it help a fatally मरणासन्न ill person बीमार to व्यक्ति recover को ठीक if होने we की मदद apply करने यदि उसके lipstick पास and लिपस्टिक, false पलके और eyelashes on कॉस्मेटिक him परिसर and do हैं? some cosmetic treatment? Our planet हमारा is ग्रह actually ये such गंभीर a रूप से बीमार severely व्यक्ति है ill और सर्वोपरि person, कार्य मुख्य खतरे से निपटना है, and the paramount जलवायु। task is to cope with the main threat, the climate, ग्रह को नष्ट to करने वाली counteract बाहरी the प्रक्रियाओं external का processes परिचार which are करना destroying the planet, और उसके बाद प्रकृति and का प्राचीन afterwards we can सौभाग्य already बहाल restore करने के the लिए। pristine beauty of nature. If यदि we are हम minding the उपभोक्तावादी प्रारूप consumerist में बन format सकते हैं और and हम में each of से us प्रत्येक अलग separately से will अपने जमीन के save टुकड़े his को own piece बचाएगा, of तो land, हमें अगले 5-6 then वर्षों में बस all ये we देखना have to है do कि in the हमारा next 5 or 6 ग्रह हमारे years साथ is कैसे मर simply रहा to है। watch how our planet is perishing along with ourselves. हमें एक We साथ should काम act करने की जरूरत together, है और and we हमें should कार्य act करने की already जरूरत है। now. मैं दोहराता ही हूँ, I will repeat, जलवायु प्रभाव के because of कारण the climate हमारे पास impact, 10 साल we भी don't नहीं है। have even 10 years. आज फोरम में प्रस्तुत According to the गणितीय गणना mathematical के अनुसार calculations presented ग्रह at the forum 2036 में today, the planet हाइड्रोलिक will die प्रभाव due के to the कारण बढ़ जाएगा, hydraulic impact लेकिन in हमें तारीख पर भरोसा नहीं करना चाहिए, 2036. But we should not count on this time क्योंकि period ऊपर because की the ओर growth trend प्रवृत्ति is बहुत तेज very है और fast, ग्रह रक्षा तंत्र इतने while the planet's नष्ट हो गए defense कि हम हाइड्रोलिक mechanisms are प्रभाव की so तुलना में बहुत destroyed जल्द मर जाएंगे। that we will die much sooner than the hydraulic impact takes हमारे place. पास We have काम neither करने के time nor समय में technology सभी to पर्यावरणीय resolve समस्याओं को all हल the करने के लिए environmental समय या problems तकनीकी in नहीं a है short period of time. और And we have no time to और dissipate बिखरने our का समय attention. नहीं है। कई संगठन A lot of अब organizations now पारिस्थितिक तंत्र busy या जानवरों saving की एकल individual species of प्रजातियों ecosystems को or बचाने animals. में व्यस्त Some हैं। are saving कुछ पांडा, pandas, others the अन्य Amazon अमेज़न forest, वन, still others are अन्य saving डॉल्फिन dolphins और and व्हेल को whales, बचा रहे while हैं, some are not जबकि saving अन्य किसी anyone, को भी they नहीं only बचा रहे fight बल्कि केवल technological तकनीकी progress. प्रगति से लड़ रहे हैं। If we keep यदि हम pulling the वैगन के wagon in अलग-अलग different दिशाओं को directions, खींचें तो it आगे will नहीं not बढ़ेगा। move. गैर उदासीय लोग People who are एकजुट not होने से indifferent should और एक सामान्य unite लक्ष्य कार्य and करना शुरू start करने acting की for a आवश्यकता है। single common goal, मानवता का उद्धार। salvation of humanity. और हम And we क्रिएटिव can do सोसाइटी this के मंच पर only ऐसा on the कर Creative सकते Society हैं। platform. ये It's हमारा not विचार our नहीं है, ये idea, मानव it's की a एक परियोजना project है। of all of humanity. केवल एक Only साथ हम together जलवायु we will be समस्याओं able को to हल solve करने the और climate प्रत्येक मानव problems जीवन को and बचाने में save सक्षम होंगे। every human life. जब हम Once जलवायु we solve समस्या the को हल climate करते हैं problem, तो the सबसे most vulnerable activity सम्मानजनक will be बात to यह है कि save हम our अपने ग्रह planet's की पारिस्थितिकी environment. को बचाने के लिए In the कर Creative सकते हैं। Society क्रिएटिव format, our सोसाइटी प्रारूप में actions हमारे will कार्य bring वास्तविक परिणाम real लाएंगे। results. And now it is my pleasure to introduce Elena Sevrikova, Doctor of Engineering, Professor at the Institute of Advanced Materials and Technologies of the National Research University, Moscow Institute of Electronic Technology. Elena, the floor is yours. आज आपके साथ रहने का अवसर पाने के लिए धन्यवाद। मैं रूस में 15 से अधिक वर्षों से टेक्नोलॉजी सुरक्षा, पृथ्वी की जलवायु, विज्ञान सहित पर्यावरण के जोखिमों के विषयों पर काम कर रहा हूँ। ये जमीन का और
उपग्रह based on निगरानी ground डेटा and आधार satellite पर मेरे कई monitoring प्रकाशित कार्य data. द्वारा पुष्टि की जाती In है। my मेरे field, क्षेत्र में I see मैं that देखती हूँ कि meteorological conditions on the ग्रह planet नई require भूवैज्ञानिक technical स्थितियों के नए approaches, तकनीकी दृष्टिकोण technologies, प्रौद्योगिकी का safety सुरक्षा standards, मानकों अपेक्षाता without which होती the है, जिसके technogenic बिना accidents टेक्नोलॉजी are दुर्घटनाएं inevitable. The अपरिहार्य number of है। natural and technogenic disasters is प्राकृतिक और growing. तकनीकी आपदाओं की संख्या बढ़ रही है। Dangers are taking जिस place in वातावरण the में हम रहते हैं environment वह where we परिवर्तन live, हो रहे हैं and और इसलिए therefore सभी को affect सीधे everyone प्रभावित करते directly, हैं, making it जिससे हमारे impossible for बाहरी us to be परेशान होना outside संभव है। observers. विभिन्न देशों में Officials and अधिकारी news और channels in समाचार चैनल various वास्तव में भयानक countries समाचारों are को trying to दबाने की hush कोशिश up कर the रहे truly हैं, terrible जिसे news, अब which can पारंपरिक no आपदा longer नहीं be कहा जा called सकता। वे traditional अस्थायी disasters. विसंगति के They बारे में talk बात about करते हैं, जो temporary वास्तव में पहले anomalies से ही which, in एक आदर्श fact, बन have गई है। already become a लोगों norm. के पास सच्ची People जानकारी do नहीं not है, have उनके truthful दिमाग में information. वैश्विक स्तर They की do not have a तस्वीर global नहीं है। scale picture in their समय के minds. साथ वे एक और Over तबाही time, और they एक perceive another साधारण स्थिति के रूप catastrophe में as an देखते हैं। ordinary कई situation. वैज्ञानिक मानते Many हैं कि scientists प्रकाशन जो make जलवायु परिवर्तन और publications ग्लोबल which use the वार्मिंग terms शब्दों का climate उपयोग करते change हैं, and उन्हें global प्रिंट warming मीडिया कर्मचारियों are द्वारा edited प्रकाशित by the होने से print पहले media एक निश्चित staff in a तरीके से certain way संपादित before they are किया published. जाता है। यदि हम पिछले If we 8 make वर्षों में observations मौसम on स्थिति के changes बदलाव in के weather अवलोकन करते conditions हैं, तो हम over the past देख 8 सकते हैं कि years, हर साल पूरे ग्रह we पर can विभिन्न see that जलवायु every year विसंगतियां हैं, there are various climatic anomalies all जिसमें over the हमने planet, दासियों को which we सैकड़ों have वर्षों not से नहीं देखा observed है। for tens or even hundreds of years. रूस में The सबसे स्पष्ट clearest उदाहरण examples मई in में Russia सेंट are heavy पीटर्सबर्ग में भारी snowfalls in बर्फबारी, St. अप्रैल के Petersburg अंत में in मध्यम May रूप से सबसे भारी and the बर्फबारी है। heaviest snowfalls in central Russia at the end of April. यूरोप में In 15 से Europe, 20 वर्षों में instead एक of बार होने के occurring बजाय, once जैसा कि वे in करते हैं, 15 to गंभीर 20 years, बार as अब they वार्षिक है। used to, severe floods are now annual. Snowfalls in the अमेरिका में US बर्फबारी बहुत have अधिक become गंभीर हो गई है much और लंबे more समय चलती है। severe and शक्तिशाली last तूफान longer. अधिक बार हो गए हैं। Powerful hurricanes have become more frequent. हालांकि However, जलवायु besides आपदाओं के climatic अलावा मनुष्य catastrophes, स्वयं humans पारिस्थितिक तंत्र themselves को काफी नुकसान have पहुंचाया है, जो significantly पृथ्वी की damaged प्रतिरक्षा के the रूप में planet's कमजोर ecosystem, करता है, खासकर which वैश्विक critically चुंबकीय weakens the प्रक्रिया Earth's की अवधि। immunity, आइए especially in the period of global cyclical cataclysms. आइए Let's recall the आइए slow 2010 onset के मैक्सिको की environmental खाड़ी में हुई disaster that धीमी गति occurred in शुरू the होने Gulf of वाली Mexico in पर्यावरणीय आपदा की याद 2010. करें। मकरेंडो On the प्रोजेक्ट Deepwater Horizon के oil डीप rig वाटर in the Macondo Prospect, हेराइजन ऑयल the रिग epidemic पर एक disaster destroyed a टेक्नोलॉजिक आपदा pacemaker ने of the planet's ग्रह की climate. जलवायु के पेसमेकर को नष्ट कर दिया। As a result of the explosion on the oil rig, तेल रिंग में विस्फोट के प्रारूप 1500 about मीटर की 5 गहराई, million क्षतिग्रस्त barrels कुएं of के पाइप oil मध्य में spilled into the 152 Gulf दिनों में of अवधि में Mexico मैक्सिको की खाड़ी में for लगभग a 5 period मिलियन of बैरल तेल फैल गया। 152 तेल days रिसाव through the 75,000 वर्ग damaged किलोमीटर well के क्षेत्र में pipes at the पहुंच गया depth था। of मैक्सिको 1,400 की खाड़ी meters. में लगभग The oil 5% है spill reached an area of 75,000 square और अमेरिका kilometers, which is आपातकालीन about सेवाओं की 5% of the त्वरित Gulf of कार्रवाई Mexico. के And बावजूद despite the prompt action of the लगभग US 40% emergency तेल services, about समुद्री 40% of the पारिस्थितिक oil तंत्र में remained तटीय in the पट्टी marine पर बना रहा। ecosystem and on the coastal strip. हमारी The दुनिया जिन problems समस्याओं का that सामना our कर रही world है वे is काफी facing are संख्या quite में है। numerous. ओजोन परत Destruction का of the विनाश, ozone ग्लोबल layer, वार्मिंग, global वैश्विक warming, महासागर global ocean प्रदूषण, वायु pollution, प्रदूषण, air पेयजल की pollution, कमी, lack of drinking water, उष्णकटिबंधीय जंगलों का destruction विनाश, of प्रदूषण tropical के forests, मरुस्थलीकरण, desertification जैव of विविधता में territories, कमी, reduction of प्राकृतिक संसाधनों का biodiversity, क्षरण। depletion of natural resources. हालांकि इन तकनीकी However, आपदाओं का there is केवल only एक ही one कारण है, cause of ये these ग्रह के carcinogenic disasters. It is the संसाधनों, अन्य जीवित consumerist attitude of प्राणियों के humans प्रति towards the मनुष्यों की उपभोक्ता planet, दृष्टिकोण its है, जो resources, इसमें all निवास the करते हैं। living इसके अलावा beings एक that दूसरे के inhabit प्रति it, उपयुक्त and समस्याओं में moreover, से किसी को towards each भी other. अलग से None हल of नहीं the किया जा सकता। above-mentioned
हमें केवल रचनात्मक प्रारूप के रूप में की गई हमारी समाज के दर्शन और बदलाव के साथ और पृथ्वी में हमारे सामान्यगत रूप में एक जीवित जीव के रूप में मानव व्यापक रूप से हल किया जा सकता है, जिसमें हम कोशिकाएं हैं। आज क्रिएटिव सोसाइटी बिना तरह के बढ़ते हैं। पहले के संसाधन खोजने के लिए दुनिया में वैज्ञानिक की पूरी क्षमता के साथ ला रही है। मानवता के भविष्य के रोटरी इंटरनेशनल के लिए बनाई गई रिपोर्टों का प्रस्तुत करते हुए सटीकरण पर आधारित था। सभी पढ़ाई के वैज्ञानिक परिकल्पना पर आधारित है और विभिन्न क्षेत्रों में देशों में अग्रणी वैज्ञानिकों के तथ्यों और गणनाओं से समर्थित थे। ये आसानी से इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों के लिए प्रदान किए गए लिंक के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। आज मैकेनिकल सिस्टम
प्रबंधक की सभी समस्याएं एक वैश्विक गांठ बंधी हुई है और उसका औसत वैश्विक होना चाहिए। यहाँ तक कि प्रमुख राष्ट्र भी अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। इसके अलावा मानव जाति की परिस्थिति को बदलने के लिए बहुत कुछ समय बचा है। आशावादी परिदृश्यों के अनुसार ये केवल एक पीढ़ी के भीतर और निराशवादी परिदृश्यों के अनुसार ये हमने पहले से ही अपनी वापसी के एक बिंदु पर अर्जित कर चुके हैं। इस रिपोर्ट पर काम करने के लिए सभी विषयों का बहुत बहुत धन्यवाद। परिस्थिति और समस्याओं के किसी ने कभी इतने बहुआयामी तरीके से नहीं देखा। ये विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के एक साथ लाने का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसकी बदौलत हम तस्वीर को समग्र रूप से देख पा रहे हैं। ये दोस्तों, अभी अपने फोरम में जो सुना उसके बारे में वीडियो प्रतिक्रिया रिपोर्ट करें और अपने सोशल नेटवर्क पर पोस्ट करें या इसे info@creativesociety.com भेजें। हम आपके ध्यान में कैलिफोर्निया रॉयस्टार साउंड 6 के प्रसिद्ध गीतकार और कलाकार के सदाबहार बोले गए शब्द के एक अनूठा प्ररूप लाते हैं। सदियों से हमारी मानवता उन्हीं समस्याओं से जूझती आ रही है जो उपभोक्तावादी रूप से हमारे लिए पैदा की गई है, और चुप्पी के इस सर्पिल को तोड़ने के लिए हमें किसी की जरूरत है जो वास्तव में क्या हो रहा है और हमारे पास क्या रास्ता है, इस बारे में सच्चाई बोलना शुरू कर दें। टाइमलेस स्पोकन वर्ड रॉयल साउंडिंग की ओर से हमारे सभी के लिए संदेश आह्वान वास्तव में पूरी मानवता की से अपील है। आइए इसे सुनते हैं। For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today, for faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we pay the maniacs stung by power for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter. All for the sake of some tyrant to say, it is I who have conquered this land. And the media read excuses for the murders. Hang in there. Feebly they slur to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in the human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak. Someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. Why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all,
and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak, because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality. For those who just joined the live stream, we would like to remind that right now you are watching an international forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which has been translated into 150 languages by volunteers from around the world. These 150 languages are spoken by 90% of the world's population. To learn more about the Creative Society project, please visit creativesociety.com. The world is now sinking into the abyss of a global economic crisis, exacerbated by a worsening geopolitical situation and increasing climatic disasters. Traditional tools to stabilize the world economy are no longer working. This time, we should not expect or hope that a recovery will follow the economic downturn. We will not be able to revive the current economic system. Now we will show you why. हमें यह सोचने की आदत है कि आर्थिक संकट के बाद आर्थिक उथल-पुथल है और हमें नई परिस्थितियों के अनुकूल होने और प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। हम में से प्रत्येक को उम्मीद है कि संकट हमें प्रभावित नहीं करेगा या हम इसके लिए तैयार करने में सक्षम होंगे। लेकिन इस बार मामला कुछ और ही होगा। यहाँ तक कि सबसे विकसित देश में भी आसन्न पतन से कोई छिपा नहीं है, यहाँ तक कि पर्याप्त धन और उच्च भुगतान वाली नौकरियों के साथ भी। अब यह मायने नहीं रखता कि आप किसी कंपनी के प्रमुख हैं, व्यवसाय के मालिक हैं या शीर्ष विशेषज्ञ हैं। यह संकट किसी को नहीं बख्शेगा। आज वैश्विक आर्थिक संकट क्यों है? और भविष्य में हमें क्या सामना करना पड़ेगा? यहाँ तक कि दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाएं भी मुद्रास्फीति के झटके का सामना कर रही हैं। दुनिया भर में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में मुद्रास्फीति अब पिछले 40 वर्षों की तुलना में अधिक है। मुद्रास्फीति में इतनी तेज वृद्धि का क्या कारण है? महामारी के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में $15.5 ट्रिलियन और यूरोप में 2.5 ट्रिलियन यूरो से अधिक मुद्रित किए गए थे। पैसे के इस इंजेक्शन ने मुद्रास्फीति, आबादी की क्रय शक्ति में कमी और मूल्य वृद्धि का नेतृत्व किया। बाजार अर्थव्यवस्था में माल और सेवाओं की मात्रा को मुद्रा आपूर्ति द्वारा संतुलित किया जाना चाहिए। यदि अधिक पैसा है तो यह केवल अवमूल्यन करता है और इससे सभी वस्तुओं और सेवाओं के लिए उच्च कीमतें होती हैं। इस साल महंगाई पर काबू पाने के लिए अलग अलग देशों के नेशनल बैंक ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि प्रत्येक देश में सभी क्रेडिट की लागत व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अधिक महंगी हो रही है। यह स्थिति वैश्विक ऋण में गंभीर वृद्धि पर अधिरोपित है। 2021 में दुनिया कर्ज के संकट में घिर गई। विश्व ऋण में अभूतपूर्व $77 ट्रिलियन की वृद्धि हुई है और यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 350% है। देशों के विदेशी ऋण इस ऋण का 1/3 हिस्सा हैं। मुख्य ऋण वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में हुई है। चीन में इससे बंधक संकट पैदा हो गया है जिसने अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। बंधक का 30% खराब ऋण है जिसे कभी नहीं चुकाया जाएगा। चीनी डेवलपर्स नई इमारतों के पूरे ब्लॉक को ध्वस्त कर रहे हैं क्योंकि नहीं बिका फ्लैटों की उपयोगिता लागत डेवलपर्स द्वारा वहन की जाती है जो लाभहीन है। बढ़ते कर्ज और मुद्रास्फीति का विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा? ब्याज दरें बढ़ने की वजह से देशों को सरकारी लोन पर ऊंची ब्याज दरें चुकानी होंगी। इसका मतलब यह है कि हमारे कर यानी हमारा पैसा हमारे जीवन, सामाजिक लाभ, चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को जाएगा जिनसे हमारे देश ने उधार लिया है। भूराजनीति के कारण आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है जिसने दुनिया भर में ऊर्जा संकट को शुरू किया है। विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से गिरावट के दौर से गुजर रही है। यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करेगा? आर्थिक संकट जल्द ही पूरी दुनिया को स्टैगफ्लेशन की ओर ले जाएगा। इसका क्या मतलब है? बढ़ती मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में वस्तुओं और उत्पादों की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, उत्पादन में गिरावट आएगी, नौकरियां ढूंढना बेहद मुश्किल होगा और मजदूरी सिकुड़ जाएगी। कई सामान और उत्पाद दुर्लभ हो जाएंगे और उनमें से कुछ पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। इससे भुखमरी, बिजली की किल्लत और ईंधन की किल्लत होगी। आज गरीबी हमारी दुनिया का नियम है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की लगभग आधी आबादी एक दिन में $5.5 से कम पर रहती है, जो कि $165 प्रति माह है। इस राशि के साथ लोगों को न केवल खुद को भोजन प्रदान करना चाहिए बल्कि उपयोगिताओं, किराए, बुनियादी आवश्यकताओं और दवाओं के लिए भी भुगतान करना चाहिए। जाहिर है, इस पैसे पर लोगों का गुजारा करना नामुमकिन है। विकसित देशों में गरीबी भी एक बड़ी समस्या है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 50 मिलियन लोग गरीबी में रहते हैं। ब्रिटेन में 14.5 मिलियन, जर्मनी में 13.8 मिलियन लोग, जापान में 20 लाख। इन देशों में गरीबी का उच्चतम स्तर बाल गरीबी है। अमेरिका में 6 में से 1 बच्चा एक गरीब परिवार में रहता है। यूनाइटेड किंगडम में 3 में से 1, जर्मनी में 5 में से 1, जापान में 8 बच्चों में से 1। गरीब परिवार अपने बच्चों को न तो उचित पोषण दे सकते हैं, न दवा दे सकते हैं और न ही शिक्षा दे सकते हैं। विरोधाभास यह है कि हमारे उपभोक्ता समाज में 70% से अधिक लोग गरीबी में या जीवित रहने के स्तर पर रह रहे हैं, जबकि 1% आबादी ग्रह पर बाकी सभी लोगों की तुलना में अधिक पूंजी का मालिक है और उनकी पूंजी हर मिनट बढ़ती जा रही है। संकट के समय भी अमीर और अमीर हो जाते हैं और गरीब गरीब हो जाते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था का मॉडल ही इस असमानता को पैदा करता है। वर्तमान मॉडल में कुछ लोगों की संपत्ति केवल दूसरों की दरिद्रता की कीमत पर जमा होती है। उपभोक्ता समाज की अर्थव्यवस्था किसी अन्य तरीके से काम नहीं करती है। यह समाज के आधुनिक उपभोक्तावादी प्रारूप का सार है। दुनिया में भारी मात्रा में धन और संसाधन हैं, लेकिन गरीब लोगों की एक बड़ी संख्या भी है। आने वाले आर्थिक संकट से दुनिया भर के अरबों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। हर देश में असुरक्षा, उथल-पुथल और अनिश्चितता बढ़ेगी। बेकाबू जन अशांति शुरू हो जाएगी। तो इस वैश्विक आर्थिक पतन का असली कारण क्या है? असली कारण मौजूदा आर्थिक व्यवस्था है। यह हमें केवल संकटों में नहीं ले जाता है, यह उन्हें पैदा करता है। यह असमानता, गरीबी, मुद्रास्फीति और अस्थिरता पैदा करता है।
आजकल आर्थिक प्रणाली विशेष रूप से विनाशकारी है क्योंकि हमारी दुनिया गंभीर जलवायु आपदाओं के चक्र में प्रवेश करती है। हर देश में जलवायु का नुकसान बढ़ रहा है, जो सैकड़ों अरब डॉलर की राशि है। जलवायु आपदाओं में तेजी से वृद्धि हो रही है। वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा तैयार किए गए जलवायु परिवर्तन के हमारे गणितीय मॉडल के आधार पर 2030 तक वैश्विक जीडीपी विनाशकारी जलवायु प्रलय से होने वाले सभी नुकसानों को कवर करने में सक्षम नहीं होगा। यानी 6 से 7 साल में विश्व अर्थव्यवस्था का पूरी तरह पतन हो जाएगा। हम में से हर कोई सब कुछ खो देगा। अब हमारे पास बिजली, हीटिंग, पानी, आवास, भोजन या दवाएं नहीं होंगी। जलवायु आपदाओं बस हमारे अभ्यस्त जीवन का अंत कर देगा। क्या हम इस भयावह स्थिति को रोक सकते हैं? यदि हम कठोर कदम नहीं उठाते हैं तो यह केवल बुरा हो जाएगा। हम आज के आर्थिक मॉडल में कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते। यह डूबते जहाज में छेद को पैच करने जैसा है। यह वैसे भी डूब जाएगा। अर्थव्यवस्था लोगों द्वारा बनाई गई एक कृत्रिम प्रणाली है। हमें जीवित रहने के लिए वर्तमान आर्थिक प्रणाली को बदलने की जरूरत है। हमें एक नए मॉडल की आवश्यकता है जो पृथ्वी पर हर व्यक्ति के लिए स्थिरता और सुरक्षा पैदा कर सके। एक मॉडल जो सभी लोगों की सेवा करता है, न कि केवल 1%। इस आसन्न पतन से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए दुनिया भर के विभिन्न आर्थिक और संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। रचनात्मक समाज अर्थव्यवस्था का एक मॉडल विकसित किया गया है जिसमें एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, पृथ्वी पर हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा और जीवन स्तर का एक उच्च स्तर प्रदान करना। बढ़ते कर्ज और मुद्रास्फीति का विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा? ब्याज दरें बढ़ने की वजह से देशों को सरकारी लोन पर ऊंची ब्याज दरें चुकानी होंगी। इसका मतलब यह है कि हमारे कर यानी हमारा पैसा हमारे जीवन, सामाजिक लाभ, चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों को जाएगा जिनसे हमारे देश ने उधार लिया है। भूराजनीति के कारण आर्थिक संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसने दुनिया भर में ऊर्जा संकट को शुरू किया है। इस कामकाजी मॉडल को लागू करने के लिए हमें विशेषज्ञों, व्यवसाय और विज्ञान के प्रयासों को संयोजित करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे पहले हमें अधिकांश लोगों से रचनात्मक समाज के लिए सार्वजनिक मांग बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि इस पैमाने के परिवर्तन केवल प्रत्येक व्यक्ति की प्रत्यक्ष भागीदारी, इच्छा और सहमति के साथ लाया जा सकता है। यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है कि हम कल किस तरह की दुनिया में रहेंगे। Greetings, dear viewers. What you've just seen is not a Hollywood movie, but a reality of today's life. Most of these crises are already visible. One of them, which we still tend to underestimate and don't want to admit to ourselves, is food crisis. And what is even scarier is that hunger is being created artificially. And unfortunately, if we do not change the consumer format of society, it's what awaits us all. The modern economic system of the consumer format is designed so as to create crisis, inflation, and wars. All wealth and resources in this system belong to a small percentage of people. It is even called the economy of the 1%. Meanwhile, the rest of the people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand and the recession begins. And this causes people to become even poorer and money to flow even more to the top of the pyramid, to the so-called 1%. This is the economic system itself creates poverty, and poverty creates hunger. This is the standard mechanism of the consumer format.
However, there are factors that are now further exacerbating this system, and these factors lie at the level of geopolitics. The first factor is the climate agenda, which aims to reduce CO2 emissions. Under this cover, a situation is created to reduce the amount of food on Earth. For example, the Netherlands, which is the second largest supplier of food in the world, decided to reduce nitrogen emissions. And this has led to a reduction in agriculture. Farmers find themselves in a situation where it is not economically profitable for them to produce agricultural products and raise livestock. Either they are burdened with high climate taxes, or they are given quotas for permitted emissions. The second factor is the development of expensive green energy and geopolitical decisions, which has led to a soaring of electricity and fertilizer prices. Farmers and companies in the agriculture are practically unable to bear these costs. Their business is no longer profitable, and similar situation can be observed in many other countries, including Germany, Canada, and Australia. This year, we have not yet felt the consequences of this situation because we are still living off the last year's harvest. But next year, there will be no such volume of harvest. And already this winter, we will be experiencing a shortage of common products in stores because of the electricity prices. It is already unprofitable to grow food in greenhouses and store it in refrigerators. We will have a delayed problem, which we will gradually begin to feel already. Some basic food products will disappear. These are likely to be vegetables, fruits, and meat, because it will be absolutely unprofitable to produce them. Let's simulate a situation. Taking all factors into account, what will this lead to? Our economy is collapsing, and we are entering a severe economic crisis. People are getting poorer and poorer. Consumer demand is dropping rapidly. In parallel, there is a geopolitical crisis, and we find ourselves in a situation where producers can't produce and buyers can't buy. Even if there is demand, there is no money. What will be the result? The food market is divided among three huge global corporations. These corporations are owned by two global financial funds which own each other. And of course, they are all owned by that very 1% we talked about earlier. Now, let's imagine this situation. There are far fewer goods in the world. Prices are getting higher and higher. Do you think corporations will take care of distributing food around the world so that there is enough for all people? Of course not. In a consumer format where profit is the main goal, this is not going to happen. Governments in our consumer format will also not take care of hungry people in their country. Through these corporations, governments will only sell products to those who give them more money. Eventually, some countries will be left without the ability to get normal food at all. And some of the countries that will still have more or less solvent demand will buy food at very high prices. As a result, people will not be able to get these products anywhere else. Now, add to these factors the climatic situation
which has already been felt by all countries this year. The climate will exacerbate the geopolitical, economic, energy, and financial situation. And things will only get worse. This means that we will have no production, no money, no agriculture, and no fertilizers, without which we cannot grow anything. And in a very short time, we come to the point where simply we will have no food. So how do we solve this problem? There is no solution in the consumer format at all, because there is no equal redistribution of food, and there is no goal for providing food for people either. So either the situation will escalate to the level of a food war between countries, God forbid that, or we will have what we are foretold, a mass starvation and famine. This situation would indeed be hopeless. But we have an answer and a solution: the economy of the creative society. A change in the economic model will completely eliminate the artificial factors that are now leading us to starvation. There will be no crisis, no inflation, no wars, no poverty. Everyone will have a high unconditional basic income and be able to buy as much as food as they need. Businesses would be free from taxes, interest on loans, and would have access to the most advanced technologies. Political pressure on farmers and agriculture companies would disappear. All this will allow agriculture to expand and develop at a new technological level. And the new technologies will enable us to provide food for people even when the climate gets worse. Later in the forum, we will tell you how this will be implemented already in the transition period to the creative society. Thank you. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. Today at the forum we learned about the true causes of catastrophic climate change, the critical state of our ecology, why the world economy will no longer recover, and why hunger threatens everyone. Stay tuned. Next, you'll see the premiere of the film The Diary of the Last Man. You'll find out which prophecies have already come true. We realize we have covered many heavy topics today, but you have the right to know the truth. Stay with us. We'll be talking a lot more about the solution and the perspectives that will open up for everyone in the near future. People can no longer remain silent about the problems we see in today's society and about the need to unite to solve these problems. This is what the famous Cuban band Buena Fe song is about, which they wrote and performed especially for our forum today. The song is called Cuánta Más, which means how much more suffering and catastrophe does humanity need to endure to realize that it's time to change the world. And even though it seems that each of us is just a tiny flame, together we are a huge tsunami of love, and we will save the world and make it truly beautiful. Hello, beautiful people. We're the Buena Fe Band, and we want to send our greetings to the friends of Global Crisis, Our Survival is in Unity. And that's exactly the way we feel. There is no other way. The world today is going down a very bad road, and we have no choice but to unite and become better people every day. To stand against egoism, against anything that might harm the other. Big hugs. You can always count on us.
We present to you the song Quanta Mas. This is our gift to you from Havana, Cuba. Let us move forward through solidarity and collaboration. Big hug. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuanto más crueles, como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuanto más, cuanto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Ego parece tan pequeño, pero a veces por efecto dominó se esparce, expande y crece, y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea, donde ingenio y rendimiento favorezcan nacimiento. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. Ya basta de trampas, trucos y galimatías, de tabular las almas, como si fueran mercancía. La lluvia y la nieve, gotas que montañas mueve. Hará falta un gran ciclón que transforme este relieve. Que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas. Y si toca ser soldado, sé en defensa de olvidado. Comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo. No hay ganador si muere el mar. The depth of your soul. You can feel how much understanding, wisdom, and personal experience is put into this song. Indeed, as has been said, in order to change the terrain of this consumerist format, it is necessary to bring all people together. How much longer will we allow the consumer society to turn us into slaves? How long, with our tactless consent, will this lawlessness continue? How many more wars do we need in order to realize that wars only happen because of our inaction, because we continue to support the consumerist format? And yet, all wars have the same causes. Let's learn more about that.
Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars on Earth for only 292 years. And since the end of World War II, humanity has had only 26 days of peace. Wars have taken 3,640,000,000 lives. That's almost half of the world's population today. War has always been an integral part of the consumerist format of society, in which profit is the primary value, and war is the instrument to achieve it. War is a business, the most profitable business. Wars are fought over resources, new markets, territories, money, and power. Who do you think benefits from this? The nations that don't even have the money to fight these wars? No. It only benefits the corporations that have become so powerful, they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? No, it is paid for by all of us people. Remember, wars don't happen. They are created, and created ahead of time. Wars are planned decades before a direct armed confrontation, and the fighting is just the culmination of this plot. Starting a war requires convincing the public of the necessity of the war and of the right to a preemptive strike to avoid possibly worse consequences. Accordingly, anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war must convince the public that it will be easy and that the victory will be swift, inevitable, and inexpensive. In practice, this means convincing people that the cost of the nation will be small and the risk of escalation will be controllable, and the likely outcome can be easily anticipated. To achieve these goals, 10 simple but very effective techniques are used. Their effectiveness has been tested over the centuries, tested in more than one war from the time of the Sumerians to the present day. They guarantee a result without fail, and so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles of military propaganda. The first principle: we don't want war, we defend ourselves. To conduct war propaganda, the first thing that you must do is convince your own people that we didn't want war. It is the others, they, who have started the war, or are planning to start it any day now. We, on the other hand, are forced to defend ourselves. The use of this principle can be seen in almost every single war. The main thing is to convince people that the bad guys hate us and have already started or are prepared to start first. A suitable political assassination, an attack, an act of terrorism, etc., can be tucked in as proof. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. The second principle: the enemy alone is responsible for starting the war. The third principle: the leader of the enemy is the devil and truly evil. The enemy gets a face, and it is now the object of hatred. It is not necessary to force hatred of the entire nation. The image of the enemy is personified in order to show its population that the head of the leader
or of the others is a mentally ill, deranged, and corrupt man. The fourth principle. We defend a noble cause, not private interest. The economic and geopolitical goals of the war are carefully disguised. The defense of moral values, democracy, freedom of the nation are brought to the forefront. That is, the goals of war are noble: to save the people from suffering, to destroy terrorist bases, to prevent the spread of weapons of mass destruction, or overthrow a bloody dictatorial regime. The fifth principle. The enemy is brutal. Stories of the enemy's atrocities are one of the critical points of propaganda. Only the enemy commits atrocities. Principle 6. We don't commit atrocities. We go to war like knights. We fight by the rules. The seventh principle. Hide our own losses and exaggerate those of the enemy. The eighth principle. This principle involves the creative and scientific intelligentsia in supporting the war effort. The ninth principle. Religious idolization of the war effort. Slogans are used. Our cause is holy. God is with us. The enemy will burn in hell. The 10th principle. Extreme conviction. Whosoever questions our propaganda is abating the enemy. You are either with us or you are against us. Any opposition is excluded. The leader of the country is identified with the whole country. The interests of that leader are the interests of that country. If you are dissatisfied with our leader, you are against the country. The effectiveness of these principles is guaranteed by the total monopolization of the media, which makes it impossible to obtain information from other alternative sources. Thus, verifying the reliability of this information being broadcast becomes almost impossible. Weakening of the victim. In addition to the ideological conditioning of the population, work is also carried out to weaken the victim. Depending on desired results, methods of weakening can be applied in stages or simultaneously. For your safety, we recommend that you memorize them. A typical tool that is used is a color revolution, followed by a country's leadership change, the appointment of a puppet government, destabilization of the economic and political situation, and plundering of the country's assets and resources. Modern armed conflicts increasingly use hybrid methods of warfare long before active military action begins. The aggressor state secretly, without a formal declaration of war, destabilizes the administration apparatus, the economy, the army, and even the cultural sphere by introducing to the people, as well as the rules and norms in the country of the victim, to the advantage of that very aggressor. An essential component of hybrid warfare is dragging the country into debilitating military expenditures by creating local conflicts in bordering and strategically important regions. These so-called gray zones are created by separating part of the bordering territories from the country through armed clashes and creating separate republics, which subsequently exist for decades and are points of conflict escalation. Gray zones are like red buttons around the world that can be pressed at any time to unleash an armed conflict. And even the signing of a peace treaty does not guarantee peaceful life in these zones. Today, any territory in the world can become a gray zone just because someone benefits from it. And when all the conditions have been created, one spark, one provocation is enough to start full-scale hostilities. Such a provocation can be shelling on the border,
assassination of a prominent political figure, you name it. Of the U.S. military, I declare that war is the most terrible phenomenon in our society. It leads to the destruction of human lives, individual cities, and entire countries. In effect, the severing of supply chains and the destruction of production facilities and infrastructure set the nations back decades, if not hundreds of years. But if for some people war is a misfortune, for others, it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. And the primary source of revenue in war is armaments. Global military spending is rising for the 7th year in a row, reaching $2,113 billion in 2021 alone. That means that someone is constantly preparing for war or already engaged in warfare. It is essential to understand that weapons buyers are mostly countries, but the sellers are mostly private companies. So how does a manufacturer manage to convince governments to buy their weapons? The fact is that decisions in most countries are made by politicians, while the principal customers that make such requests are military industrialists. As a rule, schemes to bribe politicians and lobby for decisions and laws are used to ensure that decisions are made in their favor. Thus, the state serves the interest of arms manufacturers. And companies in the military sector are interested in keeping the war going, because if the wars stop, they will lose their multi-billion-dollar businesses. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits corporations make. Why is it possible to carry out such deals and remain unpunished? Because it is all hidden under the national security seal, and the participants are protected from scrutiny. The mere expediency of producing weapons as a commodity already raised many questions. Not only do we continue to spend resources on inventing means of killing each other, but we also continue to produce something that will be destroyed one way or another. It doesn't matter if it is one bullet, $1 bullet, or a $13 million missile. If someone wants to get rid of money, why not make fireworks? At least they're pretty. Even better, invest in healthcare, technology. After all, the same MRI machine costs much less than missiles. Only a missile kills while an MRI machine helps save lives for decades. Imagine how much good would do people if the money for one cruise missile was spent on 13 MRI machines instead. Armaments are not the only lucrative scenarios. There are others. Every war has another side, a shadow side. Human trafficking and exploitation in various forms are carried out under the guise of war. Forced labor, including sexual exploitation, slavery, and the forced removal of organs. People who participate in such schemes and benefit from it are also interested in the continuation of war. The production and trafficking of drugs, the profits from which go to maintain and finance the conflict by corrupting officials and infiltrating the ruling circles of government, are increasing sharply. Taking advantage of martial law, enterprises and industries, private property and businesses are being nationalized, assets are being frozen, and bank accounts blocked. Other people's property is easily seized under simple propaganda. It's not enough to accuse a company or a business owner of collaborating with the enemy
and all assets are immediately taken over by others. In times of war, it is possible to eliminate a competitor without hindrance or to destroy the production capacity of a business or industry. As a result, the right people take over large and important companies. Profit is extracted from everything. For the first time, global military spending exceeds $2 trillion annually. That means governments have paid $2 trillion of our tax money to various corporations producing weapons and military equipment. At the same time, people are being persuaded that the increase in spending is due to the country's need to strengthen its defense. But in reality, behind this is the desire of corporations to make even more money by expanding their markets. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits the corporations make. There is an even greater reason why war in the current format of society will never stop. And this reason lies in the very essence of the consumerist format of economy. For the economy to continue to exist, it periodically needs a reset created by war. In order to continue to function, today's economy must continually grow. If there is no growth, there will be an economic crisis that will lead to inflation and rising prices, unemployment and impoverishment. This happens because the economy is overflowing with money not backed by commodity production. As a result, money loses value, prices rise, and inflation accelerates. The economy is built in such a way that money and capital are constantly flowing to a small group of people who owns the majority of the world's wealth. At the same time, the rest of the population is getting poorer and world demand is falling, which stops the economy's growth and creates another crisis. The economy comes to a standstill. Everything is there, but most people cannot buy food and necessary goods. People find themselves in unbearable living conditions. Discontent grows and uncontrolled protests erupt, threatening the loss of power to a small group of individuals. In order to retain their power, a war mechanism is launched, necessitated by the need to reset the economy. How does war relate to resetting the economy, you may ask? War requires increased production of weapons, destroys the infrastructure and industry in countries where hostilities begin, and consequently frees up markets for the corporations owned by this small group of people. Why destroy entire cities? Infrastructure, communications, resource extraction facilities, and the energy complex, all in order to redistribute spheres of influence and make money on that reconstruction. That allows them to increase their capital even further, expanding their spheres of influence and increase their control over the population. The war in the consumer format creates the conditions for a small group of individuals to continue to get rich. The only thing is, we 99% of humanity pay for this. Not only do we pay for the war with our lives, but we also sponsor it ourselves by paying taxes and buying all kinds of goods and services. After all, the prices of goods includes taxes that go into the national budgets from which loans for military expenditures are repaid, which not only we, but even our children and grandchildren will have to pay for. We could have chosen to spend this money on equally expensive but peaceful projects, finding a cure for cancer or solving the hunger problem. But no one is asking people. More than anything else, war demonstrates that people are subservient and slavery has not disappeared. In our consumerist format of society, war will never stop.
It is a part of the economy, a means of increasing capital and strengthening the power of a small group of people. In the consumerist format, it has always been and will always be so. So how to break this vicious circle? Not paying taxes will not fix the problem at its root. By buying any goods or service, we contribute to the economy of the consumption format, the economy of war. Neither can we stop buying. These are the conditions of a consumer society. If we do not change the format of our society and the present-day economy, wars will continue. So the only way out is to change this model of society from a consumerist society to a creative one, where the economy will be stable and aimed at ensuring a quality of life for every single person. The whole society will make decisions on socially important, socially significant, and economic issues. When conditions in society change and the economy's functioning changes, wars will simply cease to be necessary. So I ask you, stop the war, support the creative society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит зацикливаться на разрыве в Марианской впадине и падении Луны, потому что самое страшное The year случится. 2036 is not the main thing we want to say. We don't care about the date. We shouldn't be obsessed with the Mariana Trench rupture or the falling of the moon, because the worst will happen much earlier. 2036 is the date of our planet's destruction. No one will be able to live up to this date. It is impossible. No one in the world will be able to see it. This is the most important thing we want to say. We as humanity will perish much earlier because of the stupidity and inhumanity. We cannot agree today and get on the solution path. We are divided while the sword, the climate service, is looming over each of us. And the fact that we are all going to perish is certain. Let's not lie to ourselves and to each other. We have killed pretty much everything that should be human in a human being. Today, we're mercilessly destroying each other. We're mired in hatred, conflict, and selfishness. We are all divided. The climate will provoke and exacerbate all social, political, and economical crises. Wars, epidemics, famines, and riots. Chaos and madness will overwhelm the planet. No one will come to anyone's aid. No country, no army, and no service will be able to cope with the madness that will be all around. It is laid out in the documents what we should be like. It is laid down in religions what we could be like. But in the consumptiveness of permissiveness, everyone will be killing. And we have to take that into account. In the consumer format, the strong will kill the weak, and the strong will be killed by the stronger ones. And for every stronger one, there are smarter ones. But even for the smarter ones, there is the climatic Cerberus that will put a stop to their lives. And we are totally unprepared for that. Do you know why? Let's face it. How our attention is being diverted away from the problems of the climate. When climate disasters begin to escalate around the world's media immediately stopped talking about it. And then it was immediately covered for 2 years by a pandemic and then by the threat of nuclear war. The media completely fails to reflect the real picture of the ongoing climate catastrophes. Can we just stop fooling around? If we don't build the greatest society, we will kill each other for a piece of bread and a sip of water. Why would that happen? It's simple. Look at how people behave in extreme situations, during warfare or natural disasters. Panic takes more lives than the disaster itself. People in fear for their lives mercilessly eliminate each other, merely to prolong their lives for at least one more day. What becomes more precious in such a situation?
food, water, and some kind of shelter. Let us recall the most famous cases of mass starvation in the past 100 years. 1921, Povolzhye, Russia. People had to eat grass, dirt, insects, cats, dogs, clay, horse harness, carrion, animal skins, and eventually they resorted to cannibalism. A great many people ate members of their families and preyed on human meat. Cases of cannibalism were reported to the police, but there was nothing they could do because cannibalism had become a method of survival. It was reported that the police were forced to protect themselves, cemeteries attacked by hungry mobs. There is also evidence that people killed abandoned children in order to eat. 1932, Holodomor in Ukraine. During the Holodomor, cannibalism was widespread in Ukraine. People banded together, killed members of their families, and ate dead children. During the Holodomor, the vast majority of people went insane because of mass starvation. 1955, 1958, Great Chinese Famine. According to official statistics, about 15 million people died. And according to unofficial statistics, it was about 45 million people. Police reports detail specific cases of cannibalism. People lost all moral principles and often ate human meat. Some parents did not dare to kill their own children themselves. They exchanged children and ate those of other people. Cannibalism was severely punished by the authorities, but in spite of that, it persisted. Most of the food in China was precisely human flesh, and some parts of the country were populated by cannibals. Cannibalism during this famine has been called an unprecedented case in the history of the 20th century. 1994, North Korea. People went mad because of hunger and even killed and ate their old babies, looted graves and ate corpses. Parents were in panic. Their children could be kidnapped, killed and sold as meat. There was only hunger, hunger, hunger all around. Now people have no idea what hunger is. The feeling of acute hunger practically turned people into beasts. These are just small fraction of the egregious examples. It may seem that famine has not touched the civilized countries. Well, let me remind you then of the mass starvation in Europe and the US in the 1930s. Yes, there is not much publicity about it, and they try to hide the information about the scale and the number of victims. But I'm sure if you search for cases of famine and related cannibalism cases in your country, you will surely find more evidence. No one is immune to starvation now. There are no more safe, civilized countries. We can assume that over the past 100 years, people have changed, made conclusions, and nothing like that will ever happen again. Then let's recall at what happened in the Philippines in 2013 after Typhoon Yolanda, in Haiti after the earthquake in 2021, and in Pakistan after the floods in this year, 2022. Hasn't this scenario repeated itself there? According to eyewitnesses, people out of fear and panic were violently grabbing food and water from each other. All this happened in conditions of food shortages, that is, hunger has not even come yet. So, just as 100 years ago, so now, consumerism and hunger are pushing people into violent fratricide. Now, are you still hoping for a peaceful scenario? Just a reminder, 85% of the world's firearms are in private hands. 2% are possessed by law enforcement agencies and 13% are in the hands of the military. And this is our reality. As a result, that the gangs will simply begin to form in places where they can get something to eat or where there is at least some source of water. In such a state of affairs, there is simply no chance of survival. Understand, it will not be possible to somehow sort it out and get something for yourselves and your families. I mean, really, what can a person offer in exchange for food,
Well, what? Your junk? Your car, your yacht, your house, your jewelry? No one will need that. The most valuable thing you have is your flesh. Only your flesh matters in this chaos. Do you know why? Because it's eatable. The man who eats his own kind crosses the line, his last inner line. This is not inhuman left in him any longer. There is no doubt that this is exactly the scenario they're preparing us for. Just look at all the stuff that fills the information space: movies, TV shows, articles, advertisements, and scientific publications that describe the benefits and inevitability of cannibalism. It started a few years ago and keeps picking up steam nowadays. How would you behave in such a situation if this scenario is the only one you have in your head? We will turn into animals before the climate kills us. Imagine you are stretching out your hand to be helped, and they cut it off and eat it instead of saving you. That's scary. This is a true zombie apocalypse in real life. This is what awaits us in the not-too-distant future. This is what the consumer format has done to each of us. So think about it now. Is this consumer format worth dying for? Or should we struggle for everyone's life and change the format of society to a creative one? If we don't achieve the creative society, this scenario will become our collective reality. Okay. If someone doesn't like the creative society, suggest another solution to the situation. We are ready to hear any suggestions. Everyone has the right to have their own point of view, but it must be justified and accurate, like in mathematics. After all, what we have said about the climate is an accurate prediction based on the mathematical model. But while you're thinking, time is ticking. The climate Cerberus is on the loose already, and in just as little as a couple of years, it will be impossible to stop it. In the consumer format, we are enemies to each other everywhere, in politics, in economics, in society. We were being separated for 6,000 years. It is time to understand that when two people fight over a piece of bread, both will die. It is necessary to share this piece of bread, and this is the only way everyone will survive. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet in the next few decades if we do nothing today. Do we have a realistic idea of what will happen? Some may say that we don't want to imagine such a development or that it's scary. But people must be aware of the future that awaits us all if we do nothing. So now we propose not just to imagine, but see what will happen on our planet with us and with our loved ones in the near future. If today, with all, we take the path of inertia and silently surrender to the climatic Cerberus. Now, I understand. We all had a chance. We're sheer idiots for not using it. I regret just one thing, that I did nothing earlier. Hello, diary. This is such bullshit. Maybe the psychologist is the crazy one. Does he really think I can talk to a diary as if to a living person? I can't believe I fell for it. I wonder how it is supposed to rid me of depression. Okay, I'm supposed to talk to the diary as if to a friend. Well,
Hey there, buddy. Well, nothing comes to mind. Although, I got fired. I have no money. How am I supposed to pay the mortgage, insurance, and my children's college? No idea. Fucked up world. The only thing that helps me keep my head above water is the family. I'll do anything for them. My psychologist said I should write down what's bothering me. So what's really bothering me? A constant sense of anxiety, fear. I'm afraid that tomorrow I'll have nothing to feed my family. These thoughts are so crushing. Prices are skyrocketing. The world is going to the dogs day by day. What will happen tomorrow? It's a question. Yay, I got a great job offer. It was unexpected. I'll be automating engineering systems in a bunker somewhere high in the mountains for a rich guy. It looks like the client is thinking about a doomsday arc. He's paranoid. They made me sign a non-disclosure agreement. I hope it doesn't cover this diary. Good news, I'm getting an advance payment tomorrow. When I receive it all, we'll be able to pay the mortgage and have a shit ton of money left over. But there is bad news too. I'll only see my family twice a year. Just this thought of such a long separation from Eve and the children makes me anxious again. Took place in some regions. Some scientists sound the alarm and say that by the end of the century, temperature will rise by 2 degrees across the planet and it's humanity's fault. Others say the climate was always changing, so nothing terrible is happening. Meanwhile, they show on TV that budgets should be increased to fight CO2. They propose to raise taxes. They just want another excuse to rip people off. But the climate really is changing. There are also crazies who are scaring people, saying that no life will remain on the planet in 14 years. Something is supposedly wrong with the core raised taxes. They just want another excuse to rip people off. But the climate, some kind of days, they suggest a way out. They say we should unite and build. What is it called? The creative society. Sounds good for sure, but looks unrealistic. The client has changed the deadline once more. Damn it. No vacation for me again. I'm tired of sitting here. It's a good thing they have doubled my salary though. When the contract is over, we'll even be able to buy a new house and a car. That's unexpected. Cool. But I miss Eve and children like hell. We watch TV a lot. They show some climate disasters every day, as if there's nothing else to show. Several severe hurricanes occurred, but probably nothing unusual. What's all the fuss about? Everyone has gadgets these days. People film all the time. So it looks like there are many disasters. I don't think there's anything to worry about, although I have to admit that there is ever-increasing destruction. I've come across this post about the Yellowstone volcano today. They say something is wrong with it. There are too many earthquakes. Although we do come across many comments that people are just being hysterical. Nothing new there. The strange thing is, there is too much destruction from earthquakes now. Doesn't really match their scale. I mean, some conspiracy theories say that governments underreport data to avoid panic. People come up with such nonsense. Last week, a minor earthquake destroyed a whole city.
I tried to find posts of those crazies who had predicted the apocalypse, but found nothing. All links were removed for some reason. I managed to learn that governments in various countries forbid spreading any theories except the official anthropogenic one. You can even go to jail for that. Why so harsh? They even prohibit posting eyewitness videos now. We should sort of trust only official stats and remain calm. Are they afraid of something? The bunker is almost done, but supplies are delayed. Everyone left. Just 4 of us remain to fine-tune the automation system. We're waiting for supplies, but it's unclear when they will come since logistics are screwed. I really hope to see my family soon. They called yesterday. Eve says Mark is sick and has been missing school for 2 weeks. Many people are sick because there's an inflow of migrants from different countries. To ours, they come barefoot and hungry and bring epidemics. Where the heck did so many of them come from? They say there are millions at the border. Why not stay home? Get back to your countries. We have plenty of our own problems. I asked Eve why they don't show this on TV. How does the government respond to that? But the connection was cut. I had to come up to the surface, but the hurricane was so wild that I couldn't even go out. What the hell is going on there? I feel that something's wrong. Maybe they don't tell everything on the news. Once I get my money, I'll go back home. It's time to move, somewhere as far as possible from the border. We finally finished the job. I can't wait to see my family. 4 years of separation. My God, the kids must be all grown up. I'm so tired. We had no time off the last 2 weeks, helping to unload endless boxes with food, clothes, and hygiene items. Why does he need so much? It's enough for children and grandchildren here. He'll fly in tomorrow, inspect our work, pay us off, and I'll go back home as fast as I can. The first thing I'll do is kiss Eve many times over. Happiness does exist. We've waited all day long, but our client didn't come. We can't get through to him. The internet cuts off from time to time. Eve writes some wild stuff. Last week, they had hail the size of a pumpkin. It was like cannonball bombing. What the hell is that? It made holes in the roofs. My family barely had time to hide in the basement. The car is gone. Just a piece of metal remains. And our neighbor, Bill, died. I have no words. Eve is now helping to take care of his kids. What is happening in the world? We finally got a message from the client's office this afternoon. His airplane crashed due to severe turbulence. The bunker owner and the entire crew died. It turns out the office staff knows nothing about the bunker project. They promised to contact us. Shit! Who's gonna pay us now? And who's gonna pick us up? We're screwed. It's totally fucked up. It seems we've been here a whole eternity. No one picks up the phone at the office. We contacted the emergency service, but some crazy shit is happening there. We're the least of their problems. They say all of their equipment is being used to extinguish fires and patrol the streets. They told us to wait. They'll evacuate us as soon as they can. I read on the news that all of this year's crops died. Our city started rationing food sales. I'm losing my temper more and more often. It's like I'm going mad, having outbursts of anger and fury. Jack complains that no one is going to get us out of here. The government doesn't care about people at all, that they'll be saving their own asses. It's not a bed of roses here, and this jerk is making it even worse. In short, we had a huge fight the other day. Mass famine and unemployment
started in our city. I wrote to Eve, warning her not to open the door to anyone and keep the lights off in the evening. More and more gangs have been appearing in the streets. Borders have been shut down by the military. People crazy with hunger are trying to get into our country, as if we have food. Meanwhile, I have enough canned food here to last several decades. Gosh, I wish I could send at least some of it to my family. Nobody's coming for us. We still don't know what to do. We keep thinking about how to get out of this trap. Guys went out to scout around, but couldn't walk even 5 miles and came back. It's 200 miles to the closest settlement through the rocks. Meanwhile, horrible news keeps coming from home. And one day, no food was left on the shelves. The country is going through an economic crisis because of droughts and massive fires. Rivers are drying up. There are severe water shortages everywhere. Ashes and burning smell make it impossible to breathe outside. It's super difficult to find protection masks. Drinking water is being distributed by ration cards in cities. And what about our government? Our government has waged a war with 2 countries at once for access to the one river, which still has water. I just can't believe this is happening. Goodness, it's like a nightmare. I hope I wake up soon. It seemed there could be nothing worse than the heat. But when water came back, which everyone was waiting for, it was no longer joyful. Endless rains began. Rivers overflowed. A flood swept even through my city and is now washing away everything in its path. I had a short call from Eve. She managed to tell me that the subway was flooded. Sewage is floating in the streets and municipal services are almost non-functional. There's so much water everywhere that it has nowhere else to go. Then we lost the connection. What's happening there? Looks like the city is doomed. I hope they manage to save their lives. I hope someone helps them. We are all people. Good, normal people. I've been trying to reach my family for weeks. My dearest people. But no luck so far. Nobody knows anything about them. I check all the news and search for them in photos. It's sheer madness not to go completely insane. I read information all the time about what's happening in the world. They scared people, saying that the Gulf Stream would stop. There were plenty of disputes whether it can stop or not. It turns out it can. At one point, it just stopped, and that's it. Now many people are freezing in their homes without food and heat. Snow showers are getting heavier and breaking the power lines. They say the glacier will reach all the way to Rome. A colleague from Japan, Mamoru, had a nervous breakdown yesterday at the news of a terrible earthquake in Japan. They say the magnitude was 10. I don't know what's going on, but it is probably hell there. I can say one thing for sure. The world has never seen such destruction. They're not giving the exact number of victims, possibly hundreds of millions. Mamoru wasn't able to contact his family. He couldn't contact anyone he knows at all. Today, Mamoru disappeared. We searched for him everywhere, but couldn't find him. He probably left. Where could he go? Jack and Ali went searching for him. He couldn't have gone far. I stayed at the base to wait for them. A week passed. No one came back. Guys are offline. I went up, fired my gun, and lit signal fires. Nothing. Just my echo. Something happened to them. Damn it! Am I going to stay here alone? I'm the only one left. And I simply cannot get out of here. What day is today? I've had no communication with Eve for over a year. Satellites are malfunctioning. Communication with the outside world is getting worse. I'm finding out and recording the latest news in the Apocalypse Journal, as I call it now. Maybe someone will read it someday. When the permafrost melted, there were a lot of new epidemics.
Apparently, ancient viruses thawed. Whole settlements are being burned down to stop them spreading. Volcanic eruptions covered vast areas around the world with ashes. People have nowhere to live and nothing to breathe. Acid rains corrode soils and infrastructure and poison groundwaters. Food can no longer be grown anywhere. By the way, planes no longer fly. There's not enough air density. They just cannot take off. Who could have thought it? And the sea has gone wild. More and more ships crash right in the marinas because of storms. Toxic gases rise from the bowels. Poisonous fumes rush to the surface from crevices. Sulfurous gas levels are already off the scale in some places. Hills and roads are smoking. Even water in the springs is bubbling. There's less and less information available. There seem to be no cities left that have any power. Wind turbines have been blown away by major hurricanes. Solar panels are swept away downwind like a deck of cards. I heard that now books and furniture are increasingly used as fuel for heating. Some scientists say that humanity will face complete darkness and terrible frosts. I still believe I'll see Eve and the children somewhere, someday, but I will see them. Why did I need that mortgage? I would now give everything to be next to them. Satellite communication stopped working. Jack's ancient radio that we all used to make fun of came in handy. I sit there tuning it. Sometimes some voices in incomprehensible languages break through the noise. It's so nice to hear the voices of living people. The faces of Eve and children arise in my memory more and more often, and the question, why wasn't I able to save them? I could. I actually could. I managed to contact several groups of survivors. Now everyone understands that we were warned about the coming cataclysms a long time ago. Back in 2022, it seemed unrealistic at that time, but now it's certainly impossible to deny the facts. I used to think that earthquakes occurred in certain places, but now they are almost everywhere. One night, there was such a rumble, as if shells were exploding underneath me. In the morning, I was afraid to even go out. It was only in the evening that I dared to make a foray. When I saw what I saw, my legs buckled. The whole valley was covered with round holes from a few feet to several hundreds of feet. The ground looked like cheese. I don't know if it was mastam or a mental. I couldn't imagine, even in my dreams, that such a thing is possible. Someone reported on the radio that Africa had split apart. Now I know it's possible. Coastal cities are flooded. Tsunamis rage almost every day. Asia seems to be all underwater, as the radio says. My consciousness refuses to believe it. I found a radio frequency where the people who were talking about a way out of the apocalypse are broadcasting. Now I understand everything. Why didn't I get it before? I actually saw it all the madness that was going on and gaining momentum, those bunkers, all the talks about the apocalypse. It was all obvious before. Something could have been done, and there were people who offered a way out. I should have heard them. Why was I so blind? If only I could bring it all back. Once a week, I contact survivors over the radio. It keeps me from going completely insane of loneliness. Every day, there are fewer and fewer of us left on this earth. They say cannibalism is no longer a rarity, now the norm. There are gangs getting together to hunt people. They roast and devour those they catch. Crazy freaks. Though I don't know how I'd behave if I didn't have a supply of food to last many years. Wild winds made it simply impossible to come outside. It's even more like a sandstorm, only the sand seems to be radioactive. They say whoever is out in it gets severely irradiated. Volcanoes are not subsiding. Today, no one even knows what part of the planet they are erupting in. The sky is covered with ash clouds 24 hours a day. It's like dusk and night all the time. Without sunlight, plants cannot survive. The earth becomes desolate, gray, and bare everywhere. They also say that phytoplankton no longer survives.
ocean waters are saturated with caustic gases. There's no life there anymore. Oxygen levels in the atmosphere decrease steadily. People on the radio have become my friends long ago. They advised me not to go outside because my skin could be burned. Apparently, some kind of cosmic radiation is being directed at the Earth. Neanderthals smeared themselves with ochre against such radiation. We also started smearing ourselves with it. Although people say it doesn't help much, but it is still better than nothing. Strong winds carrying sand and dust literally wipe out brick structures on the surface. Survivors have to hole up in basements and catacombs. Yet another strange threat has emerged. Lightning often kills those who dare to go on long forays. Lightning now occurs without thunderstorms. It just strikes constantly like laser weapons from the sky. Now it's clear why they said back then how destructive the weakening magnetic field was. It seems to me it was such a long time ago. It's getting harder and harder to write in the diary. My head hurts all the time. I don't know who I'm writing these notes for. The only living people remain in the same shelters and bunkers as me. It seems the Chinese managed to build something and someone else, but for how long? Total silence on the radio. I don't even know if there's anyone left alive on this planet. It became hot in the bunker. The walls are hot and keeping heat all the time. Air conditioning systems are failing. Constant heat forced me to crawl upstairs and settle right in front of the entrance hatch. Lord, get me out of all this. How much I envy those who are already dead. This is total madness. I'm just sitting and waiting for the end. Why didn't I do anything before? If only I could go back to the point where it was still possible to change something. How crazy I was back then. I left the bunker. There is no point in sitting there anymore. The sky had turned orange. There are huge flashes on the horizon. It feels like the sun is rising somewhere from the west. My head is bursting with terrible pain. The earth seems to be shaking and exploding from within. Lava is everywhere. Scorching steam comes in waves. I'm running out of oxygen in my tank. This is the end. This is the end. I put the diary into the container. Heave sighs. Forgive me, Lord. Forgive me, darling. Will a sane person agree to such a scenario as we have just seen? Understanding the gravity of our situation, one learns to appreciate every minute of time, because you know you can never get it back. Now we must do everything
we can to not be immensely bitter about the lost chance we still have. All the prophets have spoken of our time and this chance. If we had studied the writings of the world's religions carefully, we would have realized long ago that the time has come, which they called the end times. And now let's watch the video. The interdisciplinary scientific study of the causes of climate change also includes the study of eschatology, that is, the description of the end times and their harbingers in the scriptures. Let's look at the eschatological science of the two fundamental religions, Christianity and Islam. There are two scenarios mentioned in the scriptures: the golden millennium, Eden on earth, or the apocalypse, the end of time. As long as we are in a consumerist format, we are on the way to self-destruction. Time is passing, but we are not changing direction and are approaching an apocalyptic finale. Let's take a look at what we have been warned about. 12,000-year cycle. According to the Bible, in the second book of Ezra, Common English Bible Translation, chapter 14, verses 10 to 17, it is said, "The age is divided into 12 parts. 9 parts and half of the 10th part have already passed. As for the evils that you have seen now happen, people will yet do worse than these." Here, the age refers to the cycle of 12,000 years. In other words, the Bible itself speaks of the cycle of 12,000 years. Remember this. The message was left 500 years ago before our era, that is 2,500 years ago, at the time when 9,500 years from the beginning of the age had already passed. Thus, the Bible gives an indication that the cycle is 12,000 years, and it ends in our times. Scientists and atheists have all the answers except one. How could people 2,500 years ago accurately predict what is happening now? After all, there were no geophysical studies or predictions of mathematical models back then. There are two hypotheses as to where this information came from. Those who insist on the primacy of the mind are willing to believe that this information came from aliens or from past civilizations. For believers, it is divine providence. We do not claim anything. Which version is correct is up to you to decide. In Islam, the time of Judgment Day was indicated by the Prophet as the end of his community. According to the legend of the great Islamic scientist Al-Barazanji, the life of this community will exceed 1,000 years, yet be limited to 1,500 years. As of today, 1,390 years have passed since the Prophet's departure. We can accurately determine the approach of the Day of Judgment by the harbingers of the last days, indicators that the messengers left for us so that people who live in the last times can recognize them. Let's consider which harbingers of climate cataclysms from the scriptures have already come true. Fires. The 9th minor sign of the Day of Judgment in Islam talks about the Hijaz fire. Ibn Hajar writes in Fath al-Bari, one fire will happen among other events that will happen, according to the words of the Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, before the Day of Judgment. And the other will arise just before the Day of Judgment without a gap. The increase in the area and the number of fires in modern times is caused by degassing of the subsoil along faults and unprecedented heat. The cause of these phenomena is a heating of the earth bowels due to rise of magma. Rains and floods. There are several authentic hadith in Islam which state that the Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The famine would not break out because of drought, but there will be famine despite heavy rainfall, as nothing would grow from the earth." The rise of magma causes groundwater to heat up and evaporate, increasing humidity, which in turn leads to record rainfall and flooding. Already now, floods are destroying crops.
Another natural harbinger of the Day of Judgment is the blooming of the desert. A hadith narrated by Abu Hurairah states that the Prophet, peace be upon him, said, "The last hour will not come till the land of Arabia reverts to meadows and rivers." In 2018, heavy rains that hit arid Saudi Arabia inundated the desert and caused flooding, which made the desert bloom. Flooding has now become a frequent occurrence on the Arabian Peninsula. Land collapses. Sal bin Sa'd reports that the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said, "There will befall this ummah land collapses." Now in many regions of the world, huge sinkholes and land collapses suddenly appear. Such examples are known in Turkey and Croatia, in Chile and Mexico. Also in Siberia, methane explosions form huge sinkholes. All of this is due to the rise of magma, the heating of groundwater, and the release of mantle gases. Earthquakes. The hadith says that there will be an increase in the number of earthquakes at the end of times. The hour will not be established until earthquakes will be very frequent. Christianity also mentions earthquakes as harbingers. The Gospel of Luke, chapter 21, verse 11 says that there will be great earthquakes, famines, and pestilences in various places, and fearful events and great signs from heaven. Now, due to the rise of magma and the expansion of the planet, the number of earthquakes is growing exponentially. They are expanding their geography, their magnitude and depth are increasing. Since the beginning of the century, they're having more great earthquakes, as the Gospel says, with a magnitude greater than 8. So we see that harbingers such as an increase in earthquakes, floods, land collapses, and fires are already coming true. In addition to climate change, all the other harbingers of social change, diseases, technology, and astronomical science have already come true. The 12,000-year cycle end dates announced by the prophets also point to our time. Let's see what awaits us on the apocalyptic path. Judgment Day, Apocalypse. The prophets also describe the apocalypse scenario in great detail. In the Gospel of Matthew, Jesus Christ says, "There shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down." These words point to the unprecedented power of cataclysms. The Gospel of Luke says that there will be the roaring and tossing of the sea. People will faint from terror, apprehensive of what is coming on the world. The roaring sea indicates a tsunami from the strongest earthquakes. In the Quran, Surah 56, the Prophet, peace be upon him, speaks of the earthquake of unprecedented magnitude, when the earth will be violently shaken and the mountains will be crushed to pieces, becoming scattered particles of dust. In Surah 27, 52, and 70, it is said that the mountains, which we regard as motionless, will be set into motion like clouds. And they will become like wool, that is, they will be shaken and split up into blocks along the fault. So strong the tectonic shifts and the speed of the movement of the lithospheric plates will be. There is a description of the unprecedented speed of events in Hadith narrated by Abu Hurairah. It is said there that the end of the world will come so suddenly and quickly that people will not have time to complete the action they started. A person has raised a morsel of food to his mouth, but will not be able to eat it. In the Gospel of Mark, Jesus Christ tells people to run to the mountains, not to take anything with them, and not to turn around, which also indicates the suddenness of cataclysms taking place. And based on the words, "For in those days there will be tribulation, such as has not been seen since the beginning of the creation, which God created until this time, nor ever shall be," one can understand that a disaster of such a magnitude hasn't yet occurred on earth, such as has not been since the beginning of the creation, nor ever shall be. Similarly, in the Old Testament, the prophet Daniel said that such events had not yet been experienced by the earth. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. The Quran speaks of violent volcanic eruptions and catastrophic fires during the Judgment Day. Watch for the day when the sky will bring a visible smoke covering the people. This is a painful torment.
At the peak of the cataclysms, due to disastrous eruptions of numerous volcanoes, there will be a discharge of volcanic ash into the atmosphere, which will cut off the sun rays to the Earth's surface for many years. This is a description Jesus Christ gave in the Gospel of Mark. But in those days, after that tribulation, the sun will be darkened, and the moon will not give its light, and the stars will be falling from heaven. The planet will be illuminated only by the light of the fires and the glow of the fiery lava. This is stated in the Quran in Surah 55, Ayat 37. And when the heaven is split open and becomes rose-colored like oil. Hydraulic impact. In the sacred text, we find description of the destruction of our planet, which the Prophet and Jesus Christ conveyed to people using the terms they could understand, and now, having a scientific basis, we can understand what they spoke about. For example, in the Quran, Surah 82, the cleaving, it is said, when the sky splits open, and when the stars fall away, and when the seas burst forth. The surah mentions that the atmosphere at the time of the violent explosion in the Mariana Trench will be ruptured by the flow of steam. Also, Surah 21 says, the supreme horror of that day will not disturb them. On that day, we will roll up heavens like a scroll of writings. What is described in this surah really reminds of the fact that in the event of steam explosion rupturing the atmosphere, the integrity of the atmosphere would be broken, it would be blown away by solar wind and dispersed in space. Also, Surah 81, the overthrowing says, when the sun is put out, and when the stars fall down, and when the mountains are blown away, and when the seas are set on fire, and when the sky is stripped away. It is also clear from the surah that the folding of the atmosphere will take place when the red-hot magma erupts into the ocean and sets it on fire. At that time, when the mountains are blown away, the strongest earthquakes will occur all over the planet. What is the falling of the stars that is mentioned in both Islam and Christianity? During the hydraulic impact, the rotation of the planet will instantly accelerate and the atmosphere will disappear. It is this phenomenon that will create the sensation that the stars are falling. If we summarize the Prophet's words about Judgment Day, we see the description of the phenomena that the mathematical model predicts for October 2036 during the hydraulic impact. Indeed, they see it as distant, but we see it as near. Then, do they await except that the hour should come upon them unexpectedly? But already, there have come its indications. That is the day of carrying out the threat. On the day heaven will sway with circular motion, and the mountains will pass on, departing. On the day the earth breaks away from them, and they emerge rapidly. Then watch for the day when the sky will bring visible smoke covering the people. This is a painful torment. And the earth and the mountains are lifted and level with one blow. Then, on that day, the occurrence, that is resurrection, will occur. And the heaven will split open when the sun is wrapped up in darkness, and when the stars fall, dispersing, and when the mountains are removed, and when the seas are filled with flame, and when the sky is stripped away. If the apocalypse scenario comes true and what the prophet, peace be upon him, described happens, then our planet will become like Mars. Peace be with you, dear brothers and sisters. The film we have just watched is truly shocking. A question arises immediately. How could ordinary people, thousands of years ago, know what would happen to us and describe it so precisely? How did the prophets know that in thousands of years we would destroy the ecology and enter a cycle of cataclysms? This is the most important sign for all believers. It is the sign that Allah has warned us all the times we live in now, the end times. Allah was aware of what we're about to face. All of us living have much to ponder. Everything we have seen now in this film, what the prophets warned us about,
an accurate description of the mathematical model you have heard today. Frighteningly accurate at that. The big question remains, why do we see it and talk about it openly and the rest do not? Allah is mercy. He has given us freedom of choice, and we have two paths. Either we die in the apocalypse, or we choose the life, and then He will give us the golden millennium. With all of the above, one thing that is not clear: why the entire Muslim Ummah is not here? Why all the representatives of Christianity are not here now? I appeal to all believers of the entire world. You have heard the predictions, you know them. Don't you feel how time has shortened and that the world is on the brink now? Why are you silent? Why are you not with us now? Yes, there are many believers among our active participants, but there must be the believers of all religions, of all denominations. If you are true to the prophets, if you believe in one God, you must be here and speak with us. For you and me, the scriptures have described two paths that mankind has. So far, the whole world follows the negative scenario, which leads us to total annihilation of humanity and the whole planet. Although so much has already been given to people, there is a report that everyone has heard today. There are confirmations in religions about what is going to happen. I don't expect anything from polytheists. They have different positions and attitudes to everything. However, the mono-religions are the dominant religions, and they're exactly pointing to what is coming. It is written in their literature, and it is indeed so. Why are the representatives of religions who know these predictions not with us today? Or do they seek the destruction of all humanity? Allah has given us a choice. What will we choose now? Do we wait for the sky to fall to the ground? Or do we take the chance and build the society all the prophets dreamed of? Just as Christianity talked about the golden millennium, so in Islam, the Prophet talked about the new order of society that will be under Imam Mahdi if people unite. So the choice is up to us, every person. Allah loves us so much that He has given us the greatest gift of freedom of choice. If we do nothing now, when our world is falling apart, that is also our choice. It is a choice to leave things as they are, which means supporting the mass demise of all humanity. We cannot justify ourselves by saying that everything is predetermined, that we're powerless to fix anything. For what then will we be judged on the day of judgment if everything is predetermined? And if everything is predetermined, then why did the prophets describe the beautiful society which you and I can build in such details? The prophet, the best of men, hoped for the last people, those who will choose the right path. And the last ones are you and me. Islam is the last religion, and the greatest responsibility for the path society takes lies with the Muslims. Remember the words of our Prophet. We are the last of the community, but the first to be held accountable. Because
everyone will be asked. The time has come for us Muslims to come together, look each other honestly in the eyes and answer ourselves the question, where and whom are we following as Ummah? So tell every Muslim to hear and know, and tell everyone that there will be an international conference for all Muslims on December 10th, 2022. The global crisis. Who is the Prophet Muhammad to us? Brothers and sisters, it is our choice to descend with the shaitan into hell, or to build a beautiful world and be with our beloved Prophet in the house of Allah. Thank you very much, Arman. Dear viewers, do not forget to put December 10th on your calendars for the conference Global Crisis, Who is the Prophet Muhammad for us? Sallallahu Alaihi Wasallam. Now, we offer you an excerpt from the program, Awakening, with the participation of the esteemed Igor Mikhailovich Danilov. The time has come for us to become humans, to look at the problem reasonably, to make a mature decision, and to start saving the whole world, the way a human being should act, to take care of each and everyone, and most importantly, to take care of our planet, to take care of our home, but we are unable to do that. We haven't been taught this. Therefore, we'll have to learn everything on our own. Yes, there will be many problems. There will be many stones on this road. But if we have a higher goal, we will traverse this road. And we shouldn't rely on anyone. Without us, yes, without you, my friend, we will not survive. That's a fact. And unfortunately already a scientific fact. A substantiated and repeatedly verified one. What else can be said? In such a situation, where we find ourselves as humanity, I can say just one thing. We have to trust, not even in God. After all, it's our choice. God has no right to interfere in our affairs. Yes, believers will now get indignant and say, God is Almighty. Of course He's Almighty. He created the entire universe. But He gave us freedom, the freedom to choose whom to serve. Yet what have we chosen? We crucified Christ and betrayed Prophet Muhammad, the best of people. Tell me, what good have we also done for God when we do not accept His messengers? When our heart breaks and tells us what to do, while we do as the devil whispers? Have we really been faithful to God? Have we been listening to Him? Or whom have we been listening to, friends? We shouldn't trust in God. He gave us the freedom of choice. And we chose what we chose. We can now trust only in ourselves and each other. The time has come for everyone to support everyone else, to become one big human family, to become a civilization. Our survival, friends, is in unity. Remember that. Let's just become humans. Right? Everything is in our hands, and we can even save this world. We can build an Eden here. We can build the creative society. We can become humans and stop betraying each other, stop killing each other. We can start taking care of each other and loving one another. And the world will change.
Thank you, Igor Mikhailovich, for your support, your honesty, and for your constant motivation to us so that we can keep going. After the shocking information we heard today, any normal person understands that we are flying into the abyss. Everyone understands that something needs to change. Many boldly declare that our society has reached a dead end, but they don't see a solution and don't know the way out. But today, we already touched on the solution to all the problems and crises in our society. It is the creative society format. Stay with us as we will now explain what the creative society format is and why humanity will only survive if we build the creative society worldwide. We will show how the creative society will benefit everyone without exception, and why you should begin informing all people about it right away. We are only as strong as we are united. We need to stand together and prove that we are human beings with a capital H. Creative society is the way out. It is the goal that can unite us all. After all, we can only find a solution and survive together. And John, I'd like to pass the floor to you. The problem that we have today, we have to solve, has never before been faced by humankind. The year 2036 is the year of the destruction of our planet if nothing is changed. We have only 5 to 6 relatively stable years to do everything possible and impossible to counteract the radiation that is now coming on our Earth and causing this catastrophic destruction. It is a matter of everyone's survival. Climate cataclysms are gaining momentum, and as of today, the scientific world has not put forward a single working model to solve this vitally important issue. The scientists we know about from the media will not help us find a solution. These are people for whom grants and titles are important, not the truth. Today, all that official science does is fight for more prestigious cabins on a sinking ship. We're not satisfied with this, and we want to save the whole ship because we are all on this ship and it is already sinking. We need real scientists who know how to save this ship. We need scientists with practical scientific experience and real knowledge to solve this problem. So where are these scientists? It's no secret that humanity's best minds are now engaged in the military sector. They have applied knowledge and practical experience. They are those who develop new technologies in closed laboratories, technologies that are now unfortunately being used against humanity. Today, it is not profitable for any state to reveal those who are genuine scientists. Why not? Because these scientists provide a military advantage over other countries with their innovations. The only way to free real scientists is to change the model of the existing social organization of world society to a model where wars and the dictatorship of power will be eliminated entirely. Then, scientists would no longer need to develop weapons, and countries would no longer need to defend themselves. An important point: we need to eliminate wars not only in the present, but also in the future. Otherwise, states will cunningly continue to hide scientists in order not to lose their intellectual capacity and thus their power. Let's be honest. Politicians protect only themselves and their successors, and the latter only to avoid punishment in the future for what they have done. For the sake of their own safety,
Politicians will do anything, even destroy the world along with all of us. So changing the format of society is our only chance for survival. Changing conditions will spare us all from having to fight each other. Only this will guarantee the possibility of uniting the intellectual potential of real scientists and directing their attention to solving the global climate threat. Whether we like it or not, we need to unite into a larger human family to survive. If we fundamentally change the format of society, it must be acceptable to everyone. If we take this step, we must do what's best for people. Realizing that we need to change something, it became apparent that we don't need to invent anything. We can simply ask people. No one knows what's best for us but ourselves. For many years, we have been asking people how they see the world, what kind of world they would live in, and how they think the world should be. Tens of thousands of volunteers have participated in these surveys. These surveys were broad in scope. We asked all the people, acquaintances, friends, and strangers on the street. Millions of people were surveyed in all countries of the world. By analyzing all the answers, the 8 pillars of the creative society were formed. The concept of the creative society itself was developed as a result of a request from all of humanity. All that people wanted became the basis of the new creative format. That's how the creative society was born. Understandably, we are at the beginning of the journey, but the foundation has already been laid. Yes, we still have a lot to solve, but that is a task of specialists. Lawyers will solve legal issues, and economists, economic issues. They, as well as scientists, must sit around the same table and combine their knowledge and experience for the benefit of all humanity. Their task is to provide people with clear and understandable options for solving various issues. And people will vote for the most appropriate option. Thus, we will choose together the rules by which we will live in the world as one big family. If anyone has an alternative to the creative society, we would love to hear it. Among us are historians, political scientists, sociologists, and a vast number of specialists and enthusiasts who have studied human history in detail. Always, in all attempts to change something, everyone has tried to preserve power, the power of the few over many. Wherever there is power over people, it always turns into tyranny, consumerism, wars, and slaughter of people. It doesn't matter whether it is power of a single person or a group. Everything inevitably turns into a permanent or temporary slave system. We are well aware that there has never been such a format as a creative society, but it is precisely what people want. Any other system where there remains even a temporary, slight power of one man over another will inevitably lead to catastrophe. We will live again as we do now, as enslaved people. We must first realize that we're all slaves to a small group of people. We're like an obedient herd that is simply incapable of making decisions. That is what we have been indoctrinated with for 6,000 years. In fact, it's not true. Even according to the Constitution, we are free people. We are the holders of power in all countries. It's written in all constitutions. We're the ones who actually built this world. We need to realize and understand that clearly, and stop listening that someone will come
and do something good for us. We're being persuaded that people are not capable of solving anything. Yes, they can. Specialists are capable of thinking things through, and people are capable of making decisions. We won't need politicians anymore, because a politician in today's world is a representative of certain groups of people who think they are masters of the world. Those very politicians make slave out of us. History clearly shows us this, and we need to understand it. On paper, a politician is someone who prevents conflict and wars, cares about people, and is a representative of the people. But in reality, it is the opposite. A politician sits on people's necks, considering the people a herd, and drives in wherever he wants, or where those who are behind the politicians tell him to go. Therefore, such notion as a politician cannot exist in a created society. In the face of a global climate catastrophe, we can speak frankly and openly. We have been divided into states and told that we must fight and kill each other in the interest of these states. The question arises, what and who is a state? The answer is simple. The state is made up of people. It is not just a territory. But today, the state is power, a superstructure over people. Everything is done in the interest of some ruling party or simply in the interest of power, but not in the people's interests. Let's be honest and call things by their proper names. We have a few free breaths left. Then we will have hard time breathing and communicating with each other. Before the climate destroys us, let's talk honestly to each other. Better yet, let's build a created society for each and every one of us, for our descendants. The created society will ensure a world free of poverty, crime, and violence. It'll give us a safe, comfortable life anywhere in the world, stability and confidence in our future and that of our children, the ability to develop our businesses in a sustainable and predictable economy, able to implement technologies withheld from us, withheld from use in the current consumer format. Moreover, it'll give humanity access to new ways of generating energy. It will accelerate our development as one unified civilization. Such a society is beneficial to all. The creative society is based on 8 pillars, 8 guiding principles that should be adopted into every country's constitution. That allows for a peaceful and lawful reformatting of the fundamental values of world society from anti-human to human, and to make human life the highest value. Creative society is a new format for the unification and partnership of people worldwide. It is not a single organization. It is a movement of all people of goodwill who support the 8 pillars. Let's look at these pillars more in detail. The first pillar is the most fundamental principle. It declares that human life is the highest value. There is not, and never can there be, anything else more valuable than a human's life. The goal of society is to ensure and guarantee the value of each human's life. Do you feel the difference with what we're seeing today? Isn't that what we really need right now? For most people, freedom and equality are very important. Life cannot be fulfilling without freedom, and freedom is impossible without equality among all people. Despite the declared rights in today's Constitution, people are not treated equally in real life. The consumerist format undermines equality, and in reality,
imposes on us a social hierarchy that supersedes any laws. The second pillar guarantees those rights. It states that every human is born with the right to be a human being. All people are born free and equal. There can be no one and nothing on earth superior to a human, his freedoms and rights. We all have a fear of tomorrow. We don't know what will happen tomorrow. Will I still have my job? Will the economy be okay? Can I afford the medical bills if something happens? What if? What if? To put it simply, the third pillar removes that ultimate fear, the fear of tomorrow. That is, the fear of survival. Each human is guaranteed free provision of essential life necessities, including food, housing, medical care, education, and complete social security. And of course, everyone wants to feel physically safe. A unified global service will protect everyone from any emergencies and threats. Read that again. Did you catch that? Did you really fully get it? You'll be provided with everything to live your life without worrying about survival. Food, housing, medical care, education, and so much more. Next pillar, number 4. For society to function properly and justly, there cannot be any secrets from its citizens. Therefore, transparency and openness of information for all is essential, including the information about the movement and distribution of public funds. Technology will allow us to track all public funding down to a penny. No disinformation will be allowed because mass media will belong exclusively to society and reflect information truthfully, openly, and honestly. Ideology is what shapes society's values and behaviors. The prevailing ideology should bring out the best human qualities in people. Today on TV, we see violence, destructive, hateful news, and endless problems without solutions. Mass media is aimed at the division and manipulation of the masses. After watching the news, people feel hopeless and depressed. In creative society, propaganda of violence, division, aggression, and anti-humane manifestations will be prohibited. Therefore, establishing conditions for the development and education of a human with a capital H, cultivating moral values in each individual and society. The 6th pillar guarantees everyone high quality, free education, and harmonious development of their personality. That will eliminate the colossal student loan that today leaves graduates enslaved by debt for many years to follow. Also today, many young people choose their fields of study based on the profession's earning potential instead of following their heart's desires. In creative society, every person, regardless of location, can attend university or college of choice and receive a degree in any field they choose completely free of charge. That will give freedom, enjoyment of learning, and fulfillment of true potential. The 7th pillar assures equitable distribution of our planet's natural resources among everyone, regardless of nationality, age, and social status. Today, we have never-ending wars and battles because of the lack of resources in certain countries and the unstable desire by certain groups, the insatiable desires by certain groups to hoard and accumulate resources in their own hands. When all resources genuinely belong to people and are distributed evenly, conflicts and wars won't be needed. The concept of power in the creative society is absent.
People directly participate in making decisions on key issues. You and I will decide how our communities and the world at large operate. You and I will determine what happens on our planet. Politicians will no longer supersede the vast potential of the people, and therefore the people themselves will use their rights and talents for the benefit of the whole. And that's it. Just these 8 short, simple paragraphs describe everything that all people want. And you know what? If someone agrees with at least one of these principles, he is already a member of the creative society because it's what he wants. But if a person denies all 8 pillars, then he is so harmful and dangerous to society that something needs to be done about it. And you need to understand that creative society is a new format for bringing people together. It is not an organization, but an association of people based on the desire to live and live well, to live in safety and dignity, and to develop and prosper. A question is often asked, guys, who are you? Ask a counter question. Who are you? Whose interests do you represent? Your own. Isn't that so? And that's the meaning. That is the creative society, which serves everyone's interests. So, if we all decide we can start living like this within 5 years, let's tell everyone, let's create public support for this idea. Let's create electoral demand. Let's create a new reality. Thank you so much, Wilkins. Absolutely agree with you. A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper, but in the practice. A society where there is no power of one person over another, where people make decisions on key issues together without shifting the responsibility to a small group of people. In this model of society, all resources belong to a man by bartering water, gas, oil, electricity, natural resources. The possibility of the separation of resources is the same, hence is eliminated. This also prevents the domination of one person or group over the majority. Let's see what each person in the creative society will receive. कई सालों से हम रचनात्मक समाज के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे लगातार सवाल हम सुनते हैं, रचनात्मक समाज में मेरा जीवन कैसा होगा? मित्रों, अब समय आ गया है कि हम सभी को चिंतित करने वाले इस प्रश्न का उत्तर दिया जाए। खुद को आरामदायक बनाएं। हम आपको एक अद्भुत दुनिया में आमंत्रित करते हैं, जहां सबसे मूल्यवान चीज मानव जीवन है। आपका जीवन, रहने की स्थिति, रोजमर्रा की जिंदगी पहले से ही समाज के उपभोक्तावादी प्रारूप से रचनात्मक प्रारूप में संक्रमण काल में प्रत्येक व्यक्ति को तुरंत आरामदायक जीवन के लिए कम से कम 60 वर्ग मीटर का आवास प्रदान किया जाएगा। यदि आपके पास 5 लोगों का परिवार है, तो आप 300 वर्ग मीटर के घर या अपार्टमेंट में रहेंगे। यह आवास आपकी संपत्ति होगी। यह करों और उपयोगिता बिलों के अधीन नहीं होगा। जैसे जैसे आपका परिवार बढ़ता जाएगा, आपके रहने की जगह का विस्तार होगा। एक उपभोक्ता स्वर्ग बनाया जाएगा। खाली समय, धन और विभिन्न प्रकार के गुणवत्ता वाले सामान और सुलभ उत्पादों की उपलब्धता। और यह पहले से ही एक उपभोक्तावादी प्रारूप से रचनात्मक समाज में संक्रमण काल में है।
वित्तीय स्वतंत्रता। लोग अपने जन्म से ही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। संक्रमण अवधि के पहले दिन से रचनात्मक समाज तक सभी बंधक और ऋण लिखे जाएंगे। अब कोई महंगाई नहीं। एक ही उत्पाद या सेवा के लिए कीमतें पूरी दुनिया में समान होंगी। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों पर कोई और कर नहीं। व्यक्तियों पर कोई और कर नहीं। आपको हर महीने $10,000 की सार्वभौमिक मूल आय प्राप्त होगी। सिर पर छत रखने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रचनात्मक समाज में आपको हमेशा अपने भविष्य पर विश्वास रहेगा। क्या आप अधिक पैसा चाहते हैं? आपको जो करना पसंद है उसे करने का मौका मिलेगा। दिन में केवल 4 घंटे, सप्ताह में 4 दिन, साल में कम से कम 2 महीने छुट्टी रहेगी। क्या आप अधिक काम करना चाहते हैं क्योंकि आप समाज को लाभ पहुंचाने वाले अपने काम को करने से चर्चा प्राप्त करते हैं? इसके लिए जाओ। आप हमेशा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। सभी कठिन, खतरनाक, हानिकारक और नीरस काम रोबोट और स्वचालित प्रणालियों द्वारा किया जाएगा। इंसान एक पैसे के लिए सुबह से रात तक मेहनत का गुलाम नहीं है। आपके पास खुद के लिए समय होगा। आप उन चीजों को करने में सक्षम होंगे जिनकी आप वास्तव में परवाह करते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताएंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं, खुद को विकसित करते हैं, रचनात्मक होते हैं और वीजा या प्रतिबंधों के बिना दुनिया के किसी भी हिस्से की यात्रा करते हैं। रचनात्मक समाज में आपके जीवन का हर दिन केवल खुशी और खुशी लाता है। पर्यावरण उत्पादन अपशिष्ट मुक्त और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होगा। उत्पादों को उगाने के लिए अब कीटनाशकों और रसायनों की आवश्यकता नहीं होगी। केवल स्वादिष्ट, स्वस्थ और विविध भोजन हमेशा आपकी मेज पर होगा। आप जहां भी जाएंगे साफ, ताजी हवा का आनंद ले पाएंगे। आप अच्छे सूक्ष्म तत्वों और खनिजों के साथ संतृप्त क्रिस्टल स्पष्ट पानी पीने में सक्षम होंगे। रचनात्मक समाज में हम ग्रह के पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करेंगे और हम महासागरों की शुद्धता और प्राचीन जंगलों की सुंदरता की प्रशंसा करने में सक्षम होंगे। रचनात्मक समाज सद्भाव और सौंदर्य की दुनिया है। स्वास्थ्य देखभाल। प्रत्येक व्यक्ति का सही स्वास्थ्य रचनात्मक समाज की प्राथमिकताओं में से एक है। संक्रमण काल की शुरुआत से ही चिकित्सा देखभाल सभी के लिए मुफ्त होगी। स्वस्थ मरीजों के लिए डॉक्टरों को भुगतान किया जाएगा। एक रोगी को अब एक लाभदायक ग्राहक के रूप में नहीं देखा जाएगा। प्रत्येक चिकित्सा केंद्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस होगा, जो पूरे इतिहास में दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों के अनुभव को शामिल करेगा। स्वास्थ्य सेवा में दृष्टिकोण बदल जाएगा। यह 90% निवारक बन जाएगा और यह सब तुरंत संक्रमण काल में। अब रचनात्मक समाज में नई प्रौद्योगिकियां मानवता को कभी बीमार नहीं होने की अनुमति देंगी। हर किसी को अपने जीवन काल को काफी बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आज तक इन प्रौद्योगिकियों को पहले से ही विकसित किया जा रहा है, लेकिन उपभोक्तावादी प्रारूप उन्हें हमारे लिए दुर्गम बनाता है। शॉवर क्यूबिकल में स्থাपित एक साधारण उपकरण आपके शरीर को स्कैन करेगा और आपकी इच्छाओं के अनुसार आपकी उपस्थिति को समायोजित करेगा। रचनात्मक समाज में आप वास्तव में पूरी तरह से निःशुल्क स्वस्थ होंगे। शिक्षा। आप एक सभ्य, उच्च गुणवत्ता और मुफ्त शिक्षा के हकदार हैं। क्या आपको पढ़ना पसंद है? रचनात्मक समाज में आप जितनी चाहें उतनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं और आपको जीविका कमाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक सार्वभौमिक बुनियादी आय होगी। रचनात्मक समाज के लिए संक्रमण अवधि के पहले दिनों से आप आसानी से एक नया पेशा प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चाहें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी खासियत के अनुसार आपके लिए एक अनुकूली शैक्षिक कार्यक्रम बनाएगा।
आप दुनिया में कहीं भी अध्ययन कर सकते हैं और एक ऐसे समय में जो आपको सूट करता है। रचनात्मक समाज जानकार और बहुमुखी व्यक्तित्वों की दुनिया है। स्वतंत्रता, लोग खुद तय करेंगे कि किन नियमों और कानूनों से जीना है और एक एकीकृत मंच पर मतदान के माध्यम से अपने फैसलों को लागू करेंगे। सबसे अधिक मूल्य मानव जीवन है। सब कुछ इस मौलिक आधार के इर्द गिर्द बनाया जाएगा। दुनिया का मीडिया अब निजी हाथों में नहीं होगा, बल्कि पूरे समाज का होगा। इसका मतलब यह है कि वे अब कुछ लोगों के लाभ के लिए जनता की राय में हेरफेर नहीं कर पाएंगे। मीडिया सच्चाई से और समग्र रूप से लोगों को सूचित, शिक्षित और प्रेरित करेगा। सुरक्षा, पहले से ही उपभोक्तावादी प्रारूप से रचनात्मक समाज में संक्रमण काल में लोगों का भाग्य अब कुछ व्यक्तियों द्वारा किए गए निर्णयों पर निर्भर नहीं करेगा और इस बात पर निर्भर करेगा कि सत्ता में बैठे लोग आपस में क्या सहमत होंगे। समाज ऐसे हालात पैदा करेगा जिसमें युद्ध, हत्या, चोरी, गुलामी, मानव तस्करी और नशीली दवाओं का व्यापार असंभव होगा। अपराध पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नवीनतम तकनीकों को हर जगह लागू किया जाएगा, जो एकीकृत आपातकालीन सेवा को दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से काम करने में मदद करेगा। आप आसानी से अपने बच्चे को स्कूल या बाहर जाने दे सकते हैं ताकि उसकी सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से सुनिश्चित हो सके। शाम को घर लौटते समय, पार्क में टहलने या कॉन्सर्ट में जाने के दौरान आप दिन और रात के हर समय सुरक्षित रहेंगे। मुख्य खतरा, वैश्विक जलवायु तबाही का खतरा हल हो जाएगा। मानवता को फिर कभी जलवायु आपदाओं और युद्धों से खतरा नहीं होगा। रचनात्मक समाज में आप और आपका परिवार दुनिया में कहीं भी सुरक्षित रहेंगे। संक्रमण काल के पहले दिनों से ही आपको यह सब मिल जाएगा और पहले से ही रचनात्मक समाज में एक प्रतिलिपिकार तकनीक के लिए धन्यवाद, आप अपनी जरूरत की हर चीज प्राप्त करने में सक्षम होंगे। सभी प्रकार के भोजन, कपड़े, घरेलू सामान और बहुत कुछ। जैसा कि यह शानदार लग सकता है, हम जिन प्रौद्योगिकियों के बारे में बात कर रहे हैं उनमें से अधिकांश पहले से मौजूद हैं। यह सिर्फ इतना है कि उपभोक्तावादी प्रारूप में उनका उपयोग करना असंभव है। संक्रमण काल से शुरू होकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। जीवन को केवल आनंद और आनंद लाना चाहिए। पूरी बेतुकापन यह है कि रचनात्मक समाज में रहने की सभी संभावनाओं के बावजूद हम उपभोक्तावादी प्रारूप को बनाए रखना जारी रखते हैं। हम कम से कम संभव समय में संघर्ष या टकराव के बिना शांतिपूर्वक रचनात्मक समाज का निर्माण कर सकते हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी लोगों को छोड़कर कोई और क्रांति नहीं होगी जो रचनात्मक समाज में एक स्थायी और प्राकृतिक घटना होगी। अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और परिचितों को इस परिप्रेक्ष्य के बारे में बताएं। साझा करें कि रचनात्मक समाज उनके लिए कितनी फायदेमंद और शांत है। आप और मैं एक अद्भुत समय में रह रहे हैं, जब थोड़े समय के भीतर हम उपभोक्तावादी प्रारूप की दास प्रणाली से रचनात्मक समाज की स्वतंत्र और सुरक्षित दुनिया में जा सकते हैं। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। यदि आप ऐसा जीवन चाहते हैं, रचनात्मक समाज का समर्थन करें और सभी को इसके बारे में बताएं। Everyone about it. Our life? A creative society is a format of social organization. At its core and the center of everything is the individual, its life and its benefits. That will require a reformatting of all spheres of our life. And there is a step-by-step plan for implementation of the creative society. And there are very specific stages. So let's learn about the stages of building a creative society, what actions
have to be taken, and what is the goal of each stage is? How do we know that building the creative society is possible? Because any normal person wants to live in the creative society and not in the consumerist format. The informational stage is essential because if people don't learn about the creative society, there will be no politicians for whom they will vote. Such politicians will only appear when there is an electoral demand for the creative society. This is required to lawfully implement creative society values in our countries. Creative society is an actual working model. There is a clear plan and a strategy of its implementation. It consists of 3 stages of creative society formation. First stage, informational. Second stage, political. Third stage, world referendum. The strategy outlines specific activities to achieve the goal of each stage. In just 5 years, we will be able to move from the current consumer format to the creative society peacefully and lawfully. To make this happen, all people need to unite around the idea of the creative society as quickly as possible. Now we are at the first stage. The first stage of building the creative society is the informational stage. The goal of this stage is for majority of people in every country to support the transition to a creative society format. The objective of the informational stage is for every person on the planet to become aware that there is an alternative to the consumerist format in which we are struggling to survive. The alternative to the creative society. The alternative is the creative society. This stage is the most important one. What does it mean to inform about creative society? It means to talk about what prospects of a new quality of life it opens up for each person: safety, security, and high quality of life. It is essential to convey to each person that forming the creative society is a practical and feasible task, and we can build it in the shortest time frame, within 5 years. Today we will learn many interesting things about how life will be in the creative society. During the forum, we will discuss how to join the Creative Society project and what you can do right now. It is crucial to showcase your choice wherever possible. That's exactly how people will create a global electoral demand in their countries. This is exactly how we will demonstrate to politicians that we want to live in the creative format of society. The result of first stage of informing will be the creation of an electoral demand for the creative society. We are at this stage right now. We have calculated that if each person tells only 5 other people about creative society, we will accomplish the first of the 3 stages in only 2 weeks. When we achieve this result, we will be ready to move on to the next stage. The second stage of creative society formation is political. Here, we aim to implement the 8 pillars of the creative society into the constitutions of every country and enact the law about the electoral platform. We will use the existing legal framework. This new format of social organization should be secured on the legislative level. To build the creative society quickly and peacefully, we need to use politics as a tool. We will vote only for those politicians and only for those political parties that support the creative society and the 8 pillars. If there aren't any, we won't vote at all. Today,
There are more and more decent people among politicians who understand everything. They support the creative society and the 8 pillars. If you and I vote only for those politicians and those parties that they build the creative society, other politicians have no electorate. Politicians always follow the electorate. If there is an electoral demand for a creative society, they will build it. Once our chosen politicians and political parties are in power, we will need to enact laws that will guarantee the realization of interests of every person. In the second stage of building a creative society, with politicians' help, we will achieve the following goals. Adoption of 8 pillars of the creative society into the constitutions. Enactment of the electoral platform law. Enactment of the politicians' instant recall law. The first step that politicians will carry out at our request is to introduce the 8 pillars of the creative society into the constitutions and laws of the countries, according to the existing laws, in a legitimate and legitimate manner, without violation of the current laws, in an entirely peaceful way. The basis of all laws will be the 8 pillars of the creative society. That's why we say that the creative society is an absolutely peaceful scenario. Introducing the electoral platform law will give us back the power and the right to choose how we live. We will regain the right to make decisions through direct voting, without intermediaries. The role of politicians will be solely executive. Another essential step of the second stage is introducing the law about an instant recall of a politician if he doesn't perform or fails to fulfill the functions entrusted in order to form the creative society. The outcome of the second stage is the implementation of the 8 pillars into the constitutions of most countries in the world. After that, we can move on to the third and final stage, the vote referendum. At this stage, thanks to electoral platform, all people of the world will be able to accept the creative society as a unified form of social structure on the whole planet and establish the 8 pillars as a law by which all spheres of life of our society will finally begin to function. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Today, ignorance of the laws not only deprives us of a beautiful future, but can also deprive us of life. After all, we simply do not use our legal right to create an electoral request, and as a consequence, we put our fate in the dishonest hands of others. A creative society is an absolutely natural and necessary way to guarantee the realization of human rights, which today are declared in the legislation of any country, but are not actually realized. In order to guarantee these rights of every person, it is necessary to introduce a working legal mechanism into the legislation of all countries, not by breaking the current order, but by improving it. There is no need for any revolutions. It is evolution. A legitimate question arises: how to do it? Into the constitutions of all countries, it is necessary to introduce 8 foundations of the creative society
and to pass the law on the electoral platform. The electoral platform is a society-owned electronic system, which is the only tool of initiation and adoption of laws and decisions by all people. It is also a unified legislative base. This is possible when a majority of the members of parliament support the creative society. And for this to happen, the majority of votes in the country needs to vote for those candidates who will pledge in their election programs to implement the 8 foundations into the Constitution and pass a law on the electoral platform. And now we come to the most important thing, the formation of a public request coming from the majority of citizens who have the right to elect public representatives and authorities. How to achieve such a majority among active voters? This is the main task of the first stage of building the creative society, the stage of informing. All people on the planet who have already heard about the creative society and want to live in it simply need to actively inform all people about the creative society. When the majority of the world's population actively supports the creative society, the remaining stages of its creation will proceed very quickly and easily, in accordance with the national legislation of each country. This is why the information stage is most important. That is, the formula is simple. First, we inform all people about the possibility of building a creative society. Then voters choose only those politicians who support the creative society. And these politicians already implement 8 foundations of the creative society at the legislative level and pass the law on the electoral platform. With a form of government like a monarchy, things are even simpler. The monarch, by his decision, amends the constitution or simply adopts the 8 pillars of the creative society as the basic law of the state. It is important to remember that any monarch and any politician always depends on public demand. As we can see, we, all human beings, have the irrevocable right to decide what kind of society we will live in. And the creative society is the natural embodiment of people's decision. And its constitution is not a revolution. Construction is not a revolution, but an evolution which takes place in a legal way. The time has come to exercise this right. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We, people, have the legal right to create an electoral request and to build the creative society. Still, people do not know about this right and therefore do not use it. In preparation for today's forum, we interviewed Ms. Christian Anderson, a member of the European Parliament from Germany. We invite you to watch a fragment of this conversation. Our first question is about the upcoming forum that we will have on November 12th. The name of our forum is Our Survival is in Unity. How important is the unification of people during this challenging time? And what is the role of people to make a long-lasting positive change in our society?
Well, the unity of the people is very important at this point, because what we have seen, especially in the last 2 years, how the rights of the people, civil rights, and inalienable rights, constitutional rights have been infringed upon. They have been taken away. They have been redefined into being privileges that a government can grant whenever they want to or withhold whenever they see fit. And this is not only happening in 1 or 2 or 3 countries. This has been happening all over the world. So it is of utmost important that people once again realize it is their democracy. They need to get involved. If they want things to change, they can make it happen, but they need to go and cast their votes and not stay at home. They need to take responsibility. Democracy is not a place where you simply go to sleep, because there was once said, when you sleep in a democracy, you will have a very rude awakening in a tyranny. You will always have a conflict of interest. Whoever has power, his aim is always to expand his power at the cost of the one he is overpowering. We do need to have institutions that have some kind of a governing power. Obviously, we do need this. But the key is there needs to be checks and balances. That is also a cornerstone of every democracy. The people need to realize they have the responsibility for their life, and they need to make their own decisions. Then they elect representatives who are supposed to implement the wish of the people. But what we're seeing now is the people are being dictated to by these elected representatives what their wishes have to be. And that is wrong on so many levels. So people need to realize we elect representatives and they are our employees and they have to do what we tell them. But nowadays, a lot of people think, well, they're the bosses and they tell us what to do. No, it's the other way around. And we need to get a clearer understanding once again of how democracy works. And it seems to be a pretty big problem right now. Dobrý večer. Good evening. Nowadays, human rights are declared in the legislation of every country, but as we can see, they are not actually implemented. Do we control our own lives? In our present consumerist format of society, can we stop wars, abolish inflation, or at least reduce our electricity and heating bills? We rightly cannot protect our own lives. Having food and heat at home has become a luxury for many people. We don't even have means to save the life in the event of severe illness. All of us are unsure of tomorrow. Will anyone ask us what we want before they push the red button and bury us and all our dreams under the mushrooms of a nuclear war? The system of the consumerist format is arranged in such a way that the maximum we are entitled to is to choose who will make decisions for us. During elections, we basically give our rights for a pig in a poke. We give away not just our rights, but also our benefits at disposal of a few individuals whom we often do not even know. Meanwhile, at the international level, we have no opportunity whatsoever to directly defend our own interests at all. Do you know what it may be compared to? Imagine that you issue a general power of attorney for someone to use and dispose of your house, and the right to move people in and to sell, demolish, or rebuild the house without your consent.
At the same time, you continue to live in this house. Everything that remains for us to do under the current system is to trust in the authorities and hope that they will solve our problems, or to express our discontent at mass meetings and demonstrations in the hope that we will be heard. Despite the existence of a huge number of laws, international treaties and agreements, society's problems will never be solved in the consumerist format. Because we, people, do not participate in making socially important decisions. Whether a war is needed or not, what taxes we will pay, and how natural resources should be used. Meanwhile, all of these issues directly affect our lives. This consumerist format of society, where power and money are at the core, has reached a dead end. But the situation can easily be changed, so that there is a decent life for everyone, not just a few individuals. In a legal and evolutionary way, we can implement the concept of the creative society, where a human is at the center. Self-government in society is one of the fundamental pillars of the creative society format. We can hear such a statement that society is impossible without power. But how can we then explain, for example, people's self-organization and mutual help in emergency situations, when there are various disasters and catastrophes? People themselves will effectively solve all the pressing issues and tasks without waiting for any action from the clumsy system of government authorities. Moreover, without the involvement of civil society volunteers, the state is totally unable to solve the issues of providing people with everything they need. So, a fair question arises. Is it us who cannot do without the government, or is it the government that cannot do without us? Generally speaking, let's take a reasonable look. Why do politicians strive for the peak of power? In order to help us? Do they love us so much? Let's just not be naive. Everyone understands perfectly well that everyone strives for a better life. People whom we endow with power always pursue their own interests only, and the power of a few individuals inevitably leads us to inequality and exploitation. So what is self-government? Self-government in society is when we, as the entire community, decide by majority vote whether something should take place or not. You have to agree that it is actually natural and normal for every person to manage their own private life. Then why, when it comes to managing matters of public importance, on which our private lives depend even more, do we begin to think that someone knows better how we should live our lives? We people must have a voice in direct resolution of all publicly important, socially significant, economic issues that affect the quality of human life. This very principle is embedded in the eighth pillar of the creative society, the self-governing society. This pillar defines self-government as the absence of power and the right of every person to participate in managing society's affairs. Self-government means participation of people themselves in decision-making on the electoral platform. The electoral platform is an electronic system owned by society, which is the only tool
for all people to initiate and adopt laws and decisions. And it is also a single legislative framework. Self-government doesn't mean that incompetent people will run the state. Yes, people make all decisions that affect their lives. Naturally, there should also be an executive apparatus to implement the decisions which people make. But those are merely executives, whom society hires and controls. Society can dismiss any executive who doesn't fulfill his obligations and replace him with another person at any moment. Self-government removes manipulation of legislation in favor of anyone's private interests. In the creative society, no one will be able to amend laws in the interests of individuals. Lobbying will cease to exist. Creative society removes conditions suitable for corruption because decisions will be made by people themselves. And it's impossible to bribe 8 billion at once. And it makes no sense to influence executives either with threats or with blackmail or with money, because they do not make crucial decisions. It's not within their competence. The electoral platform makes it possible to exercise public control to the fullest extent, and public funds will not end up in the pockets of a few individuals, as it happens nowadays. Everything is open and transparent, which is guaranteed by the fourth pillar of the creative society. On the electoral platform, each of us can vote for a decision that is important for him or her. And together, we will adopt the simplest and most convenient procedure for implementation of our rights and interests. People will really be able to quickly resolve their issues on the electoral platform without lengthy procedures, red tape, and bureaucracy. Therefore, self-government in society provides every person with the following: real equality without privileges, statuses, and immunities, an opportunity to initiate and participate in making key decisions. Point number 3, an ability to monitor implementation of decisions and receive reliable information about the state of affairs in society. Point number 4, stability and confidence in the future. In the creative society, thanks to self-government, authority is given back to a human, along with all the benefits that a human should have by birthright. Thank you very much for your attention. Today, everyone claims that your future depends entirely on you. But is this really the case? Is your opinion always really considered? Not to mention that simply expressing your opinion today can be risky or life-threatening. If you want to change something in society, how realistic is it to do so? Yes, we can elect those who supposedly stand for the slogans that coincide with our desires. But when our elected politicians come to power, they embody something completely different. In fact, who are we in a consumer society? Rightless pack animals. Let's see how our lives will change in the creative society. The first and crucial difference is that in the creative society, your present and future will actually depend on your choices, and everyone's choice will improve everyone's life. Today, we have a representative democracy. That's when we elect representatives and hand over power to them, and they decide how we should live and manage our wealth, money, natural resources, and our lives.
In the creative society, power will be in the hands of people themselves, and they will be able to directly exercise it by making decisions on the electoral platform. Because people will become the legislative body. Every day, people will live more comfortably, more prosperously, and more securely, with full confidence in the future. For example, Anna, a woman of 38, a wife, mother of 2, and employee of a design company. She will have a direct impact on improving society without being a politician. How can this be implemented? With the help of up-to-date technology. A platform is created for considering initiatives, passing laws, and voting. Anna will install an app on her phone or tablet. The platform will allow you to solve absolutely all issues online. Now, Anna's opinion will actually matter. It will be taken into account immediately, since voting takes place right there on the platform in electronic format. The application will be easy to use, simple, and intuitive for everyone. Designed for user convenience and fully protected against the possibility of result falsification. The most important thing is that Anna will spend no more than 30 minutes a week to vote on the platform. She will be able to read the current agenda while sitting in a cafe, while her children are playing sports. Simply ticking yes or no next to each question. The app will be available to every adult, regardless of location, gender, or technical ability. After all, every person matters in the creative society. It is absolutely possible to create such a platform, taking into account today's level of technical development. Many effective developments are already being successfully tested in different countries. The use of such a platform will make it possible to get rid of unnecessary intermediaries and move to effective self-government. What is self-government? Self-government is, in fact, direct decision-making by the people. You will make the laws and decide which ones are acceptable to you and which ones are not. Any initiative to improve people's lives will be welcomed. The initiative can be local, state, or global. Experts develop and propose laws, options for solutions, and implementation of what people want. For example, Anna is a designer, so she decided to take the initiative to develop ergonomic and comfortable seating in public transportation in her country. You may be thinking right now, how am I going to make laws? How am I going to understand so much information? After all, I'm not a lawyer. But in fact, there will be very few laws to consider. They will be presented in a simple, clear form and with an obligatory explanation of how exactly it will affect your life. What will guarantee the efficiency of self-government? It's very simple. First, a law on the electoral platform must be passed. It will secure the right of the individual to make proposals and pass laws. It also legislates the electoral platform as a mechanism for implementing such a right. Thus, the individual participates directly without intermediaries in making decisions and laws. Putting the 8 foundations of the creative society into the Constitution and following them steadfastly guarantees the effectiveness of self-government. These are the most basic norms of human and social life. All other legislation must correspond to these norms. That is, it must not violate them. Thus, in the creative society, it would be impossible to make decisions that worsen a human situation or threaten his life, liberty, and security. For example, today, Anna decided to meet her friend after fitness and arrived at the restaurant 30 minutes earlier. She set aside this time in her calendar in advance to go to the electoral platform. She checked out what bills and initiatives were open for a vote. And in order to make a decision, she only needs to answer her own question. How much
will this improve my life? And give the answer, yes or no. Won't Anna figure out what's good for her? Of course she will. For example, Anna had 2 bills on the ballot: to allow houses to be built at the water's edge or not. The main point of each bill will be briefly and clearly stated with all the explanations for and against. The first bill suggests building houses not closer than 200 meters from the shore, taking into account the preservation of the environment. It also provides for a free passage to the water body with a public beach. The second bill suggests building right by the water. In this case, only a few people get the opportunity to have a house with access to the water, which means there will be no public access to the body of water. Besides, it would harm the environmental balance. Which option do you think Anna will choose? In this way, people will be interested in making their own decisions because it will affect the improvement of their lives. Of course, all the complex issues must be worked out by specialists. Any initiative is first considered from the point of view, how will it affect a person's life? Simple and clear expert offers are developed. You may ask, how will implementation be controlled? It will be simple, transparent, and will be carried out on the same electoral platform. All those who have power over us now, in other words, politicians, will be responsible doers in the creative society, and nothing more than that. They will have no privilege, no exemptions, and no immunity. The law will work the same for everyone. If they fail, they will be subject to recall at any time. When a politician loses power, he automatically becomes a doer. He becomes an employee who is hired by us, the people, and as customers, we can terminate the contract with the employee at any time. The introduction of modern technology, including artificial intelligence, will eliminate corruption and bureaucracy once and for all. There will be complete transparency in the appointment of executives, transparency in the movement of funds, and implementation of projects. All this will be controlled by society through the electoral platform. How will issues be dealt with at the international level, you ask? There will no longer be an international level. Humanity will become a united people. Everywhere, in any part of the world, there will be one law, one time zone, and decent living conditions for everyone. Now we are divided into countries, nationalities, states. In the creative society, national culture, history, and traditions will be preserved, but at the same time will be united. All this will rule out wars and any conflicts. A united civilization opens up a new phase in the evolution of humanity and prospects for rapid development. The creative society is a bright future for every person and for the entire humanity. You know, per week, and vote for that will improve my life. I like that it will be accessible and understandable for everyone, even older people. It is truly an evolutionary concept that we can all understand and use. The most exciting part is that my voice finally matters, that I can decide for myself instead of choosing between two evils like we do right now. I really like the changes that we make and the benefits that everyone will receive. This is a true unity. Finally, we can build a wonderful world for everyone. And I do not need to blame or complain about some politician with his empty promises. I am in charge now. I am now building a bright future for my kids and not just dreaming about it. I also like that politicians can be easily recalled if they do not deliver on their promises. The power will belong to the people, and a regular person like me
can become responsible for a social project, propose ideas, and see them come to life. Who knows better than us how to improve our own lives, right? Finally, we will know where our money is going. The transparency will allow us to monitor all projects, salaries, as well as public investments. And it will be impossible to conceal money anywhere because the fourth pillar of the creative society guarantees transparency and openness of information for all people. It is our right to make our own decisions, plan our lives, and be in control of our own destiny. Ďakujem, Roy. Je našim Thank you, právom. Roy. We have the right to make our own decisions, to plan our own lives, and to manage our own destiny. But along with this right, there comes a responsibility and a desire to act. And right now, we can all together see the results of people's choice and their volunteer work. I am honored to present and invite you all to watch a music video, but a song. That's a gift for the forum from all the participants of the Creative Society project from Slovakia. Its title is Unity, which accurately describes the essence of the Creative Society project. Participants from the Czech Republic, Kazakhstan, United Arab Emirates, and Russia took part in creating this music video. When people are willing, they can do what seems to be impossible. The same happened when this song was created. Its authors, who starred in the music video themselves, are not professionals. They are people who came together with a common goal to create a song for the forum and for the Creative Society. This video also depicts our common journey to the Creative Society. The beginning is dark and hopeless, just like our society today. But in the distance, we can see the light, and those people who were the first to understand the idea of the Creative Society without hesitation. They go forward, and some of them even run to implement this idea, because in the Creative Society, darkness will dissipate and we will be able to start living and developing our potential. Okay? That's enough words. Let's get inspired. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single living soul.
A beautiful song. Big thanks to the participants of the Creative Society from Slovakia for such a gift. Dear friends, this is another example of what can be done at the informational stage and what outstanding projects volunteers can accomplish when they come together. I want to remind you that we are now at the most crucial step of building of the Creative Society, the informational step. It's the simple, small steps that are the most valuable today. Right now, during the live broadcast, you can write to a friend or send them a link to the broadcast or the recording, which will be available in 150 languages today after the broadcast on the Creative Society platform. Hey, earlier today, we heard that we have all the legal basis for building the Creative Society. Now, let's focus on the economic system. And trust me, the question of how the economy will work to provide all the benefits for every human being comes up a lot. So this is what we will talk about right now. The information you're about to hear is very important. It is life-changing and will be presented for the first time. So please pay attention as we explore how our economic system will function. So the ultimate goal of the economic system in the Creative Society is to bring everyone to the same best possible standard of living. And we are talking about the highest quality of medical care, education, housing, food, clothing. Everyone will have the best of everything according to the strictest quality standards. So imagine a stable economy with no crisis, no fear for tomorrow, and the entire population of the planet with stable income, meaning everyone has great purchasing power and time to enjoy the products and services. To achieve this goal, the economic system needs a complete overhaul, which will happen in two stages. First, we need to transition from our current economic model to the economy of the Creative Society. This transition period will last for about 5 years. A very important change will be the introduction of a unified monetary unit created by a single World Bank that belongs to and is operated by society. The key element of the new economic model will be that every human being will receive a monthly unconditional basic income equivalent to $10,000. This will create a high purchasing power for each member of society and ensure a steady demand for goods and services, which, in turn, will create conditions for the growth and development of enterprises. An important condition that will be fulfilled immediately when we transition to the new system is the cancellation of all debts of countries and individuals. From that point on, it will be forbidden to lend money at interest. If you need money, you take it and pay back exactly the same amount. And with the help of AI, the economy will be planned by and for the benefit of society as a whole. Global demand will be formed by people themselves and analyzed by artificial intelligence, which will be able to predict the required volume of production of food, goods, and services to provide each person anywhere in the world with everything necessary. This will ensure the most optimal allocation of resources and production volumes at the planetary level. The demand for all goods and services will always be available online and accessible to everyone. For example, you want to start a business and inquire about opportunities in a field of your choice.
The AI gives you a prediction about the current and projected requirements for this industry, and you choose what you can do will have a guaranteed demand. All new technologies will belong to society and will be fully accessible to any business. This will make it possible not only to automate the processes of production and economic activity of companies, but also to create conditions for improving the quality of products and services. Another important change: prices will be fixed from the beginning of the transitional period. Specialists, with the help of AI, will calculate optimal prices for all goods and services, taking into account logistics and production costs. It will not be possible to increase the prices, only to decrease them, all while maintaining or improving the quality. And prices for the same goods and services will be the same anywhere in the world. Automation and new technologies will make it possible to work 4 hours a day, 4 days a week, all while having a high level of earnings. No matter how much a person works, they will continue to be paid the basic income every month. There will be an incentive for everyone to work, to live an even better life. To give you an example, everyone is provided with great quality housing of 60 square meters per person. So a family of 4 lives in an apartment of 240 meters. If I want to have a house of 500 square meters, I can work to earn more and buy a bigger house. Then you come to visit and see that we live in a 500 square meters house, while you and your family live in a 240 meters apartment. Well, you already want to work and to live in a house like ours. And no matter where in the world you choose to live and work, professionals with the same qualifications will be paid the same high wage for the same job all over the world. This would eliminate labor migration and the difficulties associated with it. So let's do a quick recap. A single World Bank owned and controlled by the society, single unified monetary unit, fixed prices, and no interest on loans completely removed the possibility of inflation and crisis in the economy. We no longer need to seek for balance between supply and demand, between the amount of money circulation and the goods and services on the market. If today competition is built on money, on price reduction, in the transition period, companies will compete on quality. Fixed prices, no interest on loans, a unified monetary unit, no inflation, and full access to new technologies give businesses enough room to improve quality and make good profits. All these factors will create conditions for healthy competition and will stimulate the production of higher quality products. This, in turn, will ensure a high standard of living for everyone. In the creative society, conditions will be created in which corruption and influence of individuals on politics and economy will be impossible. For this purpose, a limit on personal wealth will be introduced, meaning that there will be a limit on the maximum wealth per family. We will determine this limit together as a society. Let's say $10 million. Such a fortune is more than enough for a comfortable, rich life, but not big enough to start a war. The world's resources, strategic industries, and life-supporting enterprises will belong to the entire world community, including the mining industry, energy production, the financial system, the development of new technologies, healthcare, the production of medicine and medical equipment, and last but not least, large agricultural enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions and having created the new economic framework, we will choose a date on which the new economy of the transitional period to the creative society will start. At this point,
the currencies existing in different countries will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made taking into account the wealth limit. If the savings exceed the maximum threshold set by the society, the rest of the money is not exchanged. At the same time, all debt will be nullified, prices will be fixed, and unconditional basic income will begin to be paid to each person. Many of you are probably wondering right now, where are we going to get the money in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we answer this question, let's understand what money actually is. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods and services. It doesn't matter whether it's made of metal, paper, or it's just numbers on a screen. For centuries, gold and silver have been used as money. But as time passed, people came up with the idea of depositing their gold in a bank and getting a receipt stating that the bank owed them that amount of gold. These receipts, or banknotes, were used as money. This system was called the gold standard. But after the 1970s, the gold standard was abandoned altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold. And now money is not backed by anything. Once the value of money was determined by gold, but now it is backed only by our trust. Money is simply an agreement. Anyway, in a world where you have to pay for everything, we depend on money. And people spend most of their lives trying to make money. And for money, we are willing to do what we are told. Whoever has the money has the power. More money, more power. In the consumer formative society, money is the key instrument of power. And this instrument has a master. So, who is the master of money today? In today's financial system, money is created by the central banks of countries, although these banks do not always belong to countries. In the United States, for example, the central bank is the Federal Reserve. But did you know that the Fed is owned by private bankers? But more interesting, over 90% of the money is created digitally by the private banking sector. So most of the money in the world is private. It is owned by someone. It does not belong to the government. It is private property. And there are trillions of dollars in private hands at the moment. And that's the root of the problem. Money belongs to a small group of people, not society. And no matter how we try to earn it, money always goes back to its owners. But here's the good news. Economics is not an exact science. There is not a single law in economics like the law of gravity in physics. In economics, there are no axioms or postulates. Economics is simply an arrangement between people, and that means that we can change it. We're used to thinking that money belongs to someone else. It is public, international, or private. But in the creative society, the money will belong to society itself. As we said earlier, there will be a single world bank that will be owned and controlled by society. The function of this bank will be to create and redistribute money for the needs of society. A new single unified monetary unit will also be created. With its introduction, other currencies will cease to exist and all savings and income will be exchanged for them. Private banks will no longer be able to create money, as there will be no more private banks. We will decide by ourselves, as a society, how much money we need to create to provide each person with an unconditional basic income, quality housing,
development of medicine and education, and improvement of our lives. We can create as many trillions as we need, and they will be all ours. And they can get kept on our common account if we don't need them. The key point is that it's very important to understand that this money will not be subject to inflation. Because in the economy of the creative society, prices are fixed all over the world and cannot be raised. Prices will no longer depend on the amount of money in circulation, and the value of money will be maintained. And we must understand that keeping money in circulation is a temporary necessity during the transition to the creative society. It's also crucial to understand that a creative economy is a harmonious global economic system. The economic principles we've just discussed can work only together, everywhere around the world. Only one or some of the creative economic principles will not work independently of each other. And during this transitional period, we will be able to rebuild our economy, develop and make available to everyone new technologies in energy, science, healthcare, ecology, food, and other products. This will enable us to move on to the next stage, the creative economy. This is a completely different world, a world of new, unlimited, accessible to everyone, and free energy. It is a world of new technologies for the production of good and food through the control of elementary particles. This world will be no longer need money. In the creative society, each of us will be rich, confident in the future, and free to live the life each of us wants. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd and dangerous we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. Energy is the basis of our life. Energy is food, water, sanitation, communication, heat, and mobility. Energy is the basis for all our production. The development of energy leads society towards technological progress. Without energy, our society cannot exist. But what is going on today? We are already experiencing an energy crisis. It is really scary because as soon as I go out, now after 2 hours I'll come in and it's already £2 and you're thinking, I'm not cooking, I'm not doing anything. And how does that make you feel? It makes you really anxious. So you've really got down to thinking in detail about every electrical appliance you've got. Yeah. Whether you can switch which one them works off. more, which one doesn't. Normally, if we have like every year like 10% extra cost, it's not a problem, but it's now like 10 times more than 2 years ago. It's crazy. In this way, if nobody can survive. No company, no people with a household, nobody. In many countries in Europe, in America, and Canada, electricity prices have risen by 30 to 50% and led to a spike in the prices for all goods. People are no longer able to pay their energy bills. To date, even in civilized Europe, people are stocking up on firewood. In some countries, even private clinics have to be closed. In Europe, farmers are shutting down winter production of vegetables and greens because it is too expensive to maintain the necessary conditions in greenhouses. Even storing crops has become unprofitable because of higher energy prices.
Farmers are forced to destroy their crops. This means that we will not see our usual vegetables, fruits, and greens on store shelves this winter. All the prices are going up more and more. Today we have to pay 300% more for fertilizers and fuel than a year ago. Suppose we stop working, then everything stops altogether. What do we have to do then? Just work losing our money and constantly asking for help and money to keep working. It's a vicious circle. Why don't you turn on the air conditioner at home? I can't afford the electricity bills. The city folks get salaries. We farmers don't. The production of meat and dairy products is totally dependent on electricity. Rising prices for this resource create a spike in the prices for meat and dairy products and can create a shortage of these products in stores. It is not only producers of agricultural products who suffer. Even hospitals are at risk of being left without power. For example, the hospital in Naples received an 11 million euro electricity bill. Factories have to reduce production or shut down completely. To date, many countries are already preparing for reduced electricity consumption. Shutdowns and partial shutdowns of production facilities and businesses are being planned. This, in turn, will lead to higher prices and shortages of products and other goods all over the world. Imagine coming to the store tomorrow and seeing half-empty shelves. Moreover, you just won't be able to afford what's left on the shelves. Perhaps this is one of the reasons for the famine that we are promised from the high tribunes. So why are electricity prices rising all the time? Governments are making huge investments in energy development. In 2022, this amounted to $710 billion. This year, energy funding amounted to $2.5 trillion. Of that, almost $1.5 trillion went to green energy development. The net income of the world's oil and gas producers has doubled in 2022 to more than $4 trillion. Money from our taxes goes to the development of the energy industry. But every day, energy is becoming more expensive and unaffordable for us. The reason is that energy today is a business like any other, and people just make money on it. Electricity is a commodity. It is sold and bought on the energy market. Any company, private or state-owned, has the goal of making as much profit as possible. One and the same megawatt an hour can be resold several times, and each time the price will increase. The more times that the megawatt an hour of energy is sold on the market, the more expensive the electricity will ultimately be for us. This is what creates such an increase in electricity prices for people and factories. We pay for the profits of the energy industry, enterprises, in every bill. And on top of that, taxes on the development of green energy are added to our energy bills. Green energy also has a significant impact on price growth. Its tariff is the most expensive, but the rules of the energy market oblige us to buy green energy in full. We are being persuaded that the transition to green energy will reduce CO2 emissions and save the world. Instead, we are no better off than before. We have spent trillions of dollars on free solar and wind power, while electricity prices have skyrocketed. We are shutting down nuclear power plants, thermal power plants, and are trying to switch to green energy. But even if we cover the entire surface of the planet with solar panels and wind turbines, the energy they will produce won't be enough. Has it only now dawned upon us that the sun doesn't shine at night and the wind doesn't blow all the time? In such conditions, power outages are unavoidable. That's why we can't give up conventional power plants. But for some reason, we have imposed an additional tax on all hydrocarbon energy, and we are paying 3 times the price for it. In fact, we haven't switched to green energy. We have just added an unnecessary and unreliable source and only increased the costs in our bills. So it turns out that we ourselves pay for the creation of inefficient and expensive energy. The absurdity is that in our world, energy is a commodity. It belongs to a few and is a tool of power, political influence, and manipulation of people. In a normal human society, resources must belong to all people, and energy must be free and available anywhere in the world. When we come home in the evening, each of us wants to turn on the light, air conditioning, take a hot shower, watch TV, charge the phone, and make dinner. We are used to taking it for granted. But even now, many of us can't afford it.
And these are not temporary difficulties. We are destroying the existing stable system of energy supply. And instead of waking up and seeing the dire consequences of what we have come to, we are told to simply consume less energy, to give up traveling, home comforts, and even food. Wouldn't it be easier for us to move straight into a cave, or better yet, straight into a grave, so as not to emit extra CO2, which, by the way, has nothing to do with climate change. Extreme climatic conditions will worsen. Our civilization simply will not survive without reliable energy sources during this period. This year's record-breaking droughts, floods, tornadoes, and extreme temperatures are just the beginning of climate disasters, and we are already feeling the effects of power plant shutdowns and lack of energy. In times of climate change, we rely on weather-dependent energy sources despite the fact that they are the most vulnerable to climate change. Within just an instant, there could be a total collapse of the energy system. De-energized cities will be left without water, food, light, transport, and communications. It is obvious that further transition to green energy would be a fatal mistake of humankind. At a time of climatic disasters, it is vital that we create reliable energy sources that are powerful and independent of weather conditions. The ability of our society to survive is inextricably linked to a stable energy supply. But as long as this vital field is privately owned and one can make money out of it, it is unable to serve us, people. Stable energy sources already exist today, but they can only be implemented if we choose the creative format of society. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200% for non-household consumers. For many years, this was due to the transition to the so-called green energy, which should have been developed to eliminate the use of hydrocarbons, at least in theory, while we were paying for the solutions directly out of our family budgets. Now we're confronted with geopolitical problems, while we keep paying more and more for energy. The energy prices have already become a threat to people's subsistence. It is not the first time we're talking about this. In the previous conferences, we have already warned that the existing framework will lead to an energy crisis created artificially. And what do we see today? Nuclear power plants are already considered green in the European Union. The so-called green energy business is no longer interesting and is gradually being given up. The key point is that we have made a business out of the most important resource for every person, energy. In the consumer format of society, energy is a commodity for which we have to pay. By raising the price of energy and restricting access to it, energy is used as an instrument to artificially create asymmetries, to separate, control, and manipulate us. While, in fact, much more efficient, environmentally friendly, and safe technologies already exist today. These include small modular reactors, fast neutron reactors, thermonuclear fusion, and many others. And a completely different technology is already in use. Fuel-free generators, or FFGs. It is an open system that allows the production of inexhaustible, clean, free energy from the surrounding space.
FFGs will change the entire structure of the energy sector and enable everyone to remain autonomous with no risk of a blackout. However, in our consumer format, the introduction of technologies that will make energy unlimited and free of charge would not be beneficial for us. This sounds like a paradox. So how can this be? If we assume that we could generate inexhaustible, clean, and free energy starting today, we would not be able to use it in our daily lives, because the energy sector would disappear and millions of people would lose their jobs. This would lead to an unprecedented crisis and a total collapse of the worldwide economy. This is the absurdity of our current economic system. But the trouble is that exactly this economic system is already leading us to a collapse. Because of skyrocketing energy prices, millions of people are already faced with choosing between buying food, paying the energy bill, or paying for health insurance. So one way or the other, as of today, we're moving towards an unprecedented energy and economic crisis, because energy, although a basic resource, is mainly used for making private profits. But who decided that energy should be used for profit? Energy is like air or water. All people need it. Energy is just a basic human right. Therefore, in order to improve our lives, to become truly prosperous, we need to make sure that we all benefit from the introduction of new technologies for generating energy. But this is possible only by changing the framework of our lives. Today, we reach the point where we have everything we need to move to this format, the format of the creative society. In the creative society, all strategic and life-supporting industries will belong to society. Energy is one of them. It will no longer be an instrument of profit for a few or an instrument for manipulation. After all, energy is a resource that rightfully belongs to people. Therefore, in line with the goal of the creative society, we will be able to provide inexhaustible and free of charge energy to every home and every business. But already in the transition to the creative society, thanks to the new economic model optimized by artificial intelligence, we will be able to plan the production and provision of energy required by all 8 billion people on Earth. Energy will be free of charge for consumers because it will belong to people. We will not have to pay for the energy itself, its generation, or distribution. While the people working in the energy sector will all receive high salaries on top of the unconditional basic income. All of this is possible due to the unlimited financing provided by society to strategic industries. How much money do we spend today for energy? Imagine how much of our personal budget will be freed up when energy becomes free. And we will be able to spend this available budget on goods and services we cannot afford today. In the transition period to the creative society, we will still use all types of power plants we have today: hydro, wind, solar, thermal, nuclear, including small modular reactors, fast neutron reactors, and so on. Because we will need all forms of energy available to ensure a stable energy supply, grow the economy, and enable breakthroughs in technology. At the end of the transition period, when the new global economy will have been optimized and it will have reached its goal, namely, to ensure a decent standard of living for everyone, it will be possible
for literally everyone to use FFGs. This will mark the beginning of the creative society. In the creative society, the universal availability of such a technology will allow us to step into a new era of energy. Everyone will enjoy unlimited energy at home, at work, when traveling, anywhere, anytime. And when energy is free, people become free. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these operating principles have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup, and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy.
but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems, whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. It brings billions of dollars in profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, who used custom-made magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, a US company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic power plant. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the compressor of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption. 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very compact African technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade a car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible to launch these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money. While the generators themselves cost crazy money, the percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because
We are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact autonomous generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it. I think the above video was very clear and it truly emphasizes the importance of free energy. We have seen there are a variety of energy sources, and what impresses me the most is the number of alternative potential energy resources that are currently available to all of us. Free energy is not only possible, it's already here. Many scientists and inventors like Nikola Tesla and John Searle have already scientifically proven the existence of free energy and brought their proof to the mainstream. Free energy is a freedom for humanity, a birthright given to all of the living beings. By using this technology, we'll be free from the ties of the consumerism in the form of gas and energy bills. Free energy gives us the opportunity to produce it in unlimited quantities, with the only limit being our imagination. Can you envision the beauty of this dream world? It's not only a dream, it's our reality. It's up to us to choose. And from the bottom of my heart, I wanted to say thank you to everyone who has made a choice to be part of the Creative Society family. I'm beyond blessed to be part of this family. Free energy is the solution to many problems in society. The fact that we will have access to free energy already in the transition to the creative society will allow us to use new technologies. It will help to solve such a global problem as the food crisis. This problem is affected by two factors. One of them is like,
One of them is economic, which will be solved by the new economic model of the creative society. In the creative society, there will be no poverty, no crisis, no inflation, and consequently no hunger. Stop. With the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already during the transition to the creative society, regardless of the climate situation, the solution is vertical farms. I would like to introduce our distinguished guest, Dr. Dixon Despommier, Emeritus Professor of Microbiology and Public Health at Columbia University. Dr. Despommier has also lectured on the concept of vertical farming at many leading universities in the United States. In 2010, he published his widely acclaimed book, Vertical Farm, Feeding the World in the 21st Century. Dr. Despommier, the floor is yours. First of all, let me thank you for inviting me to share my views with you. Everywhere, no matter where you go in the world, everybody has to pay for food. That's a basic commodity that's absolutely essential. In most places, people also have to pay for water. Water is another basic commodity that is not equally distributed. So the biggest question is, why do we do that? And the answer is easy. It's called greed. Greed is the biggest driver for accumulating wealth. And why do we do it? Because with money there comes power. With power, you can tell people what to do, and they will do it. And so you can even get more power that way. There's too much wealth in too few people's hands, and not enough wealth in everybody else's hands. And it's about resources, and it's about your right as a human being, basically. Food, water, energy, housing, clothing. So let's take a long view now of vertical farming. First, let's just talk about the advantages. One is that you can grow food anywhere in the world, as long as you have water. Indoor farming uses so much less water than outdoor farming, and there are many reasons for that, but the major reasons are that all the water is recycled through the plants indoors. And so that you use 70% less water if you farm indoors, 70%. Right now, of all of the available fresh water on the planet, 70% of that is used to farm. And then it's no longer available. That's sheer stupidity. We are just not thinking about how to do it the right way when we know that there's a different way. So the different way is to use less water to get the same amount of food. And so basically that's what indoor farming is. Now, I can have food all year round. Okay, so you take that idea and then scale it up. You've got the same plant as you have outdoors, only the big difference is the rate of growth is much more robust and faster indoors than it is outdoors, because you can control all of the conditions that this plant needs in order to grow. Temperature, humidity, oxygen levels, CO2, all of that can be controlled. There's a farm not far from here in Kearney, New Jersey called Bowery Farms. They have 5 people that work in this farm, 5 people. It's all done automatically. They have, artificial intelligence that is surveying the crops for diseases, growth rates, when to harvest, how to package. It's automated. The whole goddamn thing is automated.
So it's really crazy why we are not doing it, right? A lot of people say, a lot of what we grow ends up as animal food. Well, why don't we grow that inside also? We can do it, but I think if you started with farming and allowed people to have enough food, everybody, then there would be a lot less fighting, because most of the fighting is done for territory. Now, imagine all of a sudden, everybody could have wheat. Everybody could have rice. Everybody could have barley. Everybody could have whatever you'd like. Everything will grow indoors that grows outdoors. Everything. Everything. Remember why we said there are a third of the world starving? Because they can't afford to buy food. So why is it that we only grow the food indoors that we can make the most money from? And that's the question. The question is, why do we grow just leafy green vegetables? And the answer is because they grow fast, there's a demand, and we can charge a premium price for them. Why don't governments subsidize indoor farming? So that they will be encouraged to grow potatoes and celery and all the other crops that we would like to be eating that we don't have access to, because they won't grow them because they don't get enough money for them. And if that ever happened, if the world ever got together and said, there should never be a least developed country, at least in terms of food. It's a human right. When you're born, it's your right to get food. It's not a privilege. It's a right of birth. And I firmly believe that. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Professor said, we have the capabilities and technology to feed the entire population on the planet. Let's look at these technologies that will allow us to produce enough products and food for all people anywhere in the world and even in the space. And let me just remind you that this will already be possible in the transition period to the creative society. Today, we can easily solve the problem of hunger using technologies that already exist. One remarkable example is vertical farms. The main differences between vertical farms and traditional greenhouse facilities are that they allow for growing on multiple levels and in a fully controlled indoor environment. Several technologies are used in vertical farms. 1. Hydroponics, growing plants in an artificial environment without soil. 2. Aeroponics, growing in an airy environment without soil. 3. Aquaponics, a technology that combines hydroponics and aquaculture, fish farming. So, we see that the soil is not used. There are no insects. There is no need to use pesticides. The products are ecologically clean. It is a closed ecosystem. It is not harmful to the environment. Its efficiency speaks for itself. The Mirai Core vertical farm in Japan is one of the largest city farms on the planet. It requires 98% less water than a conventional farm, and it is 50 to 100 times more productive. An American farm called Aero Farms yields up to 26 harvests a year and produces 390 times more food per square meter than field farming. Aero Farms now grows more than 550 different varieties of fruits and vegetables. To date, the NASA Center is conducting practical developmental work on growing wheat to provide for humans in space. Researchers at Stanford University have calculated that wheat grown in an indoor 10-layer vertical farm can produce up to 660 times higher yields than modern farming methods provide. Yes, we actually published a paper in 2020 on wheat production in vertical farm. So you could really produce a lot of food
and 365 days a year, not just during the season. And it's totally independent of climate, but it has a cost. That means that every year you need to spend about $15 million in electricity, which is quite a significant amount of money. Now, if you remove the energy challenge, it's great because people can have food. And we will solve the electricity problem in the first year of the transition period to the creative society, thanks to the gradual introduction of fuel-free energy generators, the technology which already exists nowadays. Another amazing opportunity that vertical farms offer is growing vegetables anywhere on the planet. One of such examples is Antarctica. I'm standing here in our Antarctic greenhouse from the ISS project, and today I will give you a quick look around. As you can see here, I'm surrounded by plants. To my left side we have tomato plants, behind that are cucumber plants. To my right side we have here 4 different types of lettuce. Thus, we see that vertical farms are greatly expanding our possibilities in food production, but this is far from the limit. Nowadays, projects are being developed for complete ecosystems capable of growing not only fruits and vegetables, but even raising fish and poultry. French architect Pierre Sartou has proposed a vertical farm of mixed functions, Tour Vivant, living tower in which housing, farms, leisure facilities, restaurants, and shops can be located. The concept of the Tour Vivant Eco Tower is to combine hydroponics production and housing in an urban environment. The 30-story pyramid farm, designed by Dixon Despommier, is a closed-loop agricultural ecosystem in which almost every element of the agricultural process, including water and nutrients, is recirculated. It will utilize only 5% of the space of a traditional farm. One such farm will produce a wide variety of fruits and vegetables, fish and poultry, and feed about 50,000 people annually. These few technologies alone show that once a transition from the consumerist format to the creative one starts, the problem of hunger will be solved instantly. By bringing together scientific potential, the best developments and resources, cross-functional, multi-purpose farms will be built within the first year of the transition period to the creative society. In such facilities, in addition to plant cultivation, there will also be fish, livestock, and poultry farms in one building. The first floor is a fish farm. The second and third floors are allocated to livestock farming. The upper floors are for agricultural products, plants, berries, fruits, and vegetables. We can create such farms even in areas where nothing grows and the land is not suitable for human habitation. We will turn the Sahara Desert into the most fertile area on Earth. Fresh products without chemical treatment or pesticides will be on your table at any time of year, anywhere in the world. In today's format of society, vertical farms are simply not economically feasible. They require large financial investments and, most importantly, a lot of energy. But already, during the transition period to the creative society, energy will become a free resource for every person and for the entire economy, because it will belong to society. We will have enough energy to operate not only vertical farms, but also other advanced technologies. We can create such farms even in the areas where nothing grows and the land is not suitable for human life. The Sahara Desert can be turned into the most fertile area on Earth. Does this sound like science fiction? But let's get this figured out. Vertical farms are on average 10 times more productive than those traditional farms. In vertical farms, crop is harvested at least 10 times a year, depending on the plant species. On traditional farms, it is harvested only twice a year. This means that vertical farms are 50 times more efficient than existing farms. We currently use
an area of 50 million square kilometers around the world for agriculture. This area includes pastures, crops for people, and forage for livestock. By size, this is the area of Australia, North and South America combined. Vertical farms would require an area of 1 million square kilometer to produce the amount of food needed today. That's 1/5 of Sahara. 1/5 would be enough to feed the entire planet. The single plant economy will optimize the transportation of products and significantly reduce transportation costs. Food will be available anywhere in the world at the same prices. The transition to universal multipurpose complex technologies should be gradual. While we will be building these complexes around the world, we will need to continue to use traditional methods of agriculture, improving them and their efficiency and environmental friendliness. This is a real solution to hunger, even in the scale of climate disasters. The problem of fresh water and its shortage is even more acute. After all, not only agriculture, but any production is impossible without it. Of all fresh water, we use 80% in agriculture today. At the same time, half of the world's population suffers from water shortages. But already today, there are technologies that can completely solve this problem. For example, water from fog. In Lima, one of the largest capitals in the world, located in the desert, fog is collected in a huge net and used to produce drinking water. And in Morocco, there is one of the largest installations which can produce up to 6,000 liters of drinking water a day from fog. It costs practically nothing to operate and requires no outside energy. Water out of the air. Atmospheric water generators can extract up to 3,000 liters of potable water per day and can be scaled up to 1 million liters. They can be mobile and stationary, operate from any energy source and in any climate conditions, even in an arid desert. Next one is desalination plants. Around the world, about 16,000 desalination plants clean ocean water from salt and turn it into fresh water. They can produce millions of gallons of fresh water per day and supply 300 million people. Water recycling. The technology has undergone many tests. It allows the purified water to be used for watering, cooling, and any other technical needs. The quality of water purified in this way exceeds the standards of the World Health Organization. And this is just a small part of the technology we know. Now we are being told that there are too many of us. In the consumerist format, we are offered the only solution, population reduction. Whereas in the creative society, for the development of humanity, we will need at least 50 billion people, which our land can easily feed, and even the climate will not be an obstacle. Because only in the creative society, advanced technology will be able to work for the benefit of all people. And when we pass through the transition period to the creative society, we will get such technologies that we won't even need vertical farms. Now back to our hosts.
Yes, as we see it, humanity will forget the problems of hunger if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers, scientists, experts, video editors, translators into 150 languages, we have been given this unique information. We have learned about such great perspectives. This forum was made by people for people. Now it's important that the idea of the creative society goes viral. You can share this video with all of your friends on all your social networks. We repeat once again that it is allowed to use, publish, reproduce, transmit this information presented on this forum, regardless of the form of its presentation in any way, at the discretion of individuals or legal entities, in whole or in part, without distorting the text of the transmitted information while maintaining links to sources. If you need access to videos of this conference in your language for distribution, write to the email info@creativesociety.com. The following topic will not leave anyone indifferent. Vertical farms are a temporary solution to the food and water problem in the transition to the creative society. And already in the creative society, we will have an even cooler technology. Let's see a video about it. रचनात्मक समाज में एक नई तकनीक जैसे कि एक रेप्लिकेटर सभी लोगों के लिए उपलब्ध होगा। एक प्रतिकृति विज्ञान कथा नहीं है, यह एक उपकरण है जो भौतिकी के नियमों के अनुसार काम करता है। उदाहरण के लिए एक लॉबस्टर, एक टी शर्ट या एक फोन लेते हैं। दिखने में वे पूरी तरह से अलग हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं तो हम देखेंगे कि वे एक ही प्राथमिक कणों से बने हैं, केवल उनकी संख्या अलग है और उन्हें एक अलग तरीके से व्यवस्थित किया गया है। ये कण परमाणु बनाते हैं और परमाणु अणु बनाते हैं। इन प्राथमिक कणों के दिए गए संयोजन के कारण हमें या तो एक लॉबस्टर या एक टी शर्ट या एक फोन मिलता है। रेप्लिकेटर का कार्य सिद्धांत मूल रूप से प्राथमिक कणों को उचित संयोजन में इकट्ठा करना है ताकि हमें जो चाहिए उसे प्राप्त किया जा सके, एक गर्म नाश्ता या फैशनेबल पतलून। इसके अलावा वे बिल्कुल नए हैं, पहले से ही स्थिर और उच्चतम गुणवत्ता के हैं। सब कुछ आपके द्वारा स्थापित कार्यक्रम पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक नए गैजेट को एक प्रतिलिपिकार में प्रकट करने के लिए आपको 3 घटकों की आवश्यकता होती है: शक्ति, कण जिनसे वस्तु बनाई जाएगी, उनकी असेंबली के अनुक्रम के बारे में जानकारी, ऊर्जा का मानवता द्वारा लंबे समय से सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है। रचनात्मक समाज में हम नए और लंबे समय से खोजे गए ऊर्जा दोनों प्रकारों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। किसी भी वस्तु को स्कैन किया जा सकता है और सूचना को रेप्लिकेटर में अपलोड किया जा सकता है। पे आणविक मुद्रण प्रौद्योगिकी में एक समान सिद्धांत पहले से ही लागू किया गया है। कोई भी पेय पदार्थ सीधे अणुओं से मुद्रित होता है। मुख्य बात यह है कि उचित मात्रा में कण होना चाहिए जिससे हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है वो भौतिक हो जाएगी। ऐसा करने के लिए हमें एक उपयोगकर्ता की आवश्यकता है। अनावश्यक चीजों को प्राथमिक कणों में विघटित करने और कारतूस में रखने के लिए इसमें रखा जाएगा। और रेप्लिकेटर कारतूस और जानकारी के उपयोग के साथ आपको जो कुछ भी चाहिए वो बनाएगा। तो आप कचरे का निपटान करते हैं और वो सब कुछ प्राप्त करते हैं जो आप चाहते हैं। एक रेप्लिकेटर और एक यूटिलिटर आपके माइक्रोवेव या छोटी अलमारी के आकार के बारे में उपकरण हैं। उनके अंदर की चुंबकीय शक्ति किसी दिए गए संयोजन के अनुसार कणों को पुनर्व्यवस्थित करने में मदद करेगी। मिलीसेकंड में और किसी भी समय आपको वो सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए और पूरी तरह से निःशुल्क, आपके स्वास्थ्य या ग्रह की पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाए बिना। एक रेप्लिकेटर न केवल हर व्यक्ति को लाभान्वित करेगा बल्कि यह पूरे ग्रह को भी लाभान्वित करेगा। उदाहरण के लिए, आज नाश्ते में एक स्वादिष्ट ताज़ा बन का आनंद लेने के लिए जटिल उत्पादन प्रक्रियाओं की एक पूरी श्रृंखला होनी चाहिए। आपको खेत जोतने की जरूरत है और आपको इसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। ट्रैक्टर और उसके सभी घटक भागों का उत्पादन करने के लिए हमें विभिन्न कारखानों का निर्माण करना होगा। और ये सभी कारखाने टन जहरीली गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जबकि उनके अपशिष्ट जल में खतरनाक रासायनिक यौगिक होते हैं।
हमें कच्चे माल की भी आवश्यकता है जो लोग खदानों और खानों से निकालते हैं। गेहूं उगाने के लिए हमें कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता होती है जो मिट्टी और फसलों को जहर देते हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए उसके वितरण के लिए एक बड़े खर्च की आवश्यकता होती है, ईंधन और स्नेह। हमें परिवहन की आवश्यकता है, ट्रक, जहाज और ट्रेनें। देखिए एक साधारण वन पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है, और यही कहानी हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। रचनात्मक समाज में पर्यावरण के लिए विनाशकारी ये सभी प्रक्रियाएं गायब हो जाएंगी क्योंकि हर किसी के हाथ में एक रेप्लिकेटर होगा। बस बटन दबाएं और ये रहा आपके खाने के लिए बन। ग्रह पर कहीं भी हर किसी के लिए सब कुछ पर्याप्त होगा। हम सभी खतरनाक रेडियोधर्मी प्रदूषण से हवा, पृथ्वी और महासागर को साफ करने में सक्षम होंगे। कचरा सबसे मूल्यवान संसाधन बन जाएगा जो नई सुंदर चीजें बनाने के लिए प्राथमिक कणों का स्रोत है। रचनात्मक समाज एक ऐसी दुनिया है जहां आप सबसे उन्नत तकनीक का आनंद लेंगे और आपका जीवन आर्थिक रूप से स्वतंत्र, आरामदायक और समृद्ध होगा। Здравствуйте, уважаемые зрители. Greetings, dear friends. I have a question for women. How long ago did you buy yourself a new dress to wear? For example, to go to a restaurant or theater? When was the last time you took a warm bath with scented foam? Where did you last go on a trip? Perhaps these questions may seem too frivolous to some, but it's not that simple. When was the last time you felt truly happy and free? When was the last time you even felt like a woman? Be honest. After all, the answers to this question provide so much insight. A woman is a source of love and life. Each of us has infinite creativity that is now trapped in the cage of routine, obligation, duty, and the absurd rules of consumer society. Instead of enjoying life, it's like a woman is running a cross-country obstacle from a kitchen to the store, from the store to work, from work to daycare or school, all the while hugging a day planner with an endless to-do list. The day planner certainly has dreams and plans in it, but is there a time to accomplish them? A few minutes ago, we watched the replicator video. Just think about it, how much time this technology alone could free up. No more endless cooking, no need to puzzle over what to wear. The replicator closet will create new, stylish, and perfectly ironed clothes for you in seconds. The clothes that will fit you exactly. But that's not all. You have no idea what the future holds in the creative society. We can talk about it for a long time, but it's better to see it with your own eyes. For this, we have created a film about the life of a woman in a consumer format and what it will be like in a creative society. Surely, you will recognize yourself in it. I appeal to every woman. This is a gift for you to understand that what you are missing out without creative society. I'm so sick of this.
My name is Maria. I'm a housewife. My husband, Alex, provides for our family. Thanks to him, I don't have to work. This is how my usual day begins. One of the 365 days of the year. Evelina, wake up! We are gonna be late for school again. Mom, where is the skirt from my uniform? Should be on the hanger. I ironed everything yesterday. Have you seen my watch? Check the nightstand. I don't want this oatmeal. What will you have then? Pancakes. My uniform, Mom! Just change quickly. It's not there. Here it is. Mom, the pancakes is burned. Hello. Hi. Hi. You didn't forget you're supposed to come for a haircut today. Oh shoot, I totally forgot. Can I reschedule? For Saturday. I don't have any time today. This is the third time you're putting it off. You shouldn't put yourself last. I know. How do you manage to find time for everything with your job on top of it? But I don't. I'm sick of it already. After coming home from work, I wash, cook and clean until midnight. Every day the same thing. I wish I could retire already, take a break from all this. Okay, I got you. Let's make it Saturday. Yes, I'm a housewife. It would seem that I don't work. But I have no personal life at all. No days off. No vacations. Why did I even go to college? I have no time for self-development or self-fulfillment. It's like I'm a hamster running on a wheel. Some might say, "What are you whining about? Your life is not so bad." But the problem is, we are so used to it that we no longer see that we are slaves. Hello. Well, hey there. Have you got something for pain? My back is hurting so bad. Of course it's going to hurt. Look at your bags. I too can barely make it home after such weightlifting. Let me get you something. Oh, I forgot milk. Daiga? Hi. Hi. Is it supposed to be your shift today? No, we're just short on money, so I take more shifts. Did you get your electricity bill yet? Not yet, but I can imagine what's there. I'm so tired, honestly. Some things got to change. Yes, but what can we do? I'm looking forward to the time when kids grow up. Maybe it will be easier. At least I wouldn't have to work so hard. Right. Only when kids grow up, we'll have grandchildren.
we're about to have dinner. Get Daddy and Katrina. And where are you going? I'll be right back. Just unpack the laundry while I still remember. From early morning till late at night, every day it's the same thing. Cleaning, cooking, laundry, shopping, repeat. Taking kids to and from school. But when do I get to leave? And this is despite the fact that I don't work. But I feel like a slave. Did God really create humans to be slaves? Good morning, Maria. Your screening is complete. Hormonal, vitamin and micronutrients levels are optimal. The health parameters are normal. Cody, today I'll have medium roast coffee with hazelnut flavor. Done. Cody, I want to set the table for breakfast. Suggest options. This one's good. What would you like for breakfast? Pancakes. With your favorite jam? Yes. And I'll have baked rolls. And I'll have my favorite salad. Alex, what will you have? I'll have lobster. For breakfast? Well, why not? Lobster. Is that a lobster? Oh my god, that is so ugly.
No, I'd rather have steak. At least I'm used to it. We're going to the water park today. Mom, are we going to water park today? Yes, Dad will come home from work and at 3 o'clock we'll be at the water park. Yay! You know what I like about the Creative Society? What? You don't have to sharpen your knives. They're always sharp. Thanks, Mom. I love you. Thank you, Mommy. I love you. Can you help clear the table? Yes, of course. It's empty. Empty. Girls, are you ready? Yes, Mom. We'll be right there. Good. Cody, let's read that book we started. Chapter 12. The Architecture of Machu Picchu. Cody, turn on the deep cleaning function. Launching. Continue reading. Yes, go ahead. The amazing thing is that the whole city is built without any kind of bonding compound. All the structures are held together by their own weight. Mom, we are leaving. Have a nice day. Cleaning is complete. At 1 o'clock, you are scheduled to get together with your friends. Oh, I completely forgot. Cody, help me choose a look. No. Not this one. This one's cool. Cody, that Levy restaurant. Fasten your seatbelt. The travel time is 7 minutes. Would you like to listen to some music? Of course. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me to build a world we wanna be. The Creative Society. Take a look around. There's so many wars. Do you even know what we're fighting for? Take a stance. Raise your voice. We need to make a choice now. So now we finished developing this technology, and soon it will be in every shower room. Girls, you will be scanned and cured of all diseases in a matter of 5 minutes. Wow. Yeah, and it will be available to everyone. And that's not all. If you want to change your appearance, that's easy too. You can lose weight,
or on the contrary, gain weight and sculpt your body, and even change your height. Even change the height? How is that possible? Girls, I look at you and I'm so happy. How beautiful you are. Finally, we became women and stopped being slaves. Yes, the creative society cannot be compared with the past. It makes me shudder just recalling it. It's good that you found that website back then, and we were able to do our part in building such a beautiful world. Yes, girls. How quickly everything has changed. Maria, how are your megaliths? We are going to Peru one of these days to see the complex. Wow, how cool! Yes, very. I'm so excited. Girls, I could talk to you for hours, but my family will come home in 15 minutes. We are going to the water park today. That was a scary black pipe back there. No, it wasn't scary. Which one did you like most? I like the blue one best. I like the blue one too. Oh, look. Oh. No, Katrina. Don't fish out the lemon. It tastes better with it. Bon appetit. So, starting tomorrow, I'm on vacation. Have you planned the next 2 months for us? Well, we'll probably go fishing first. Yeah, I'll never say no to fishing. Right, and then we are going to South America, just like we've always wanted. Yay! And then we'll fly to New Zealand to visit our parents. And then we'll decide where to go next. Hawaii or Fiji. Okie. Dad, maybe we could sail on yacht from there. Great idea. Cody, plan the route. Working on it. Life is always the result of our choice. This is how my day in the creative society ends. One more best day of my life. Are you saying this is science fiction? This is the reality. This is the absolute reality of tomorrow. If we build the creative society today. Dear friends, hello. To be honest, this video makes me want to burst into tears of shame that we still do not have the creative society. Oh my God, I want that kind of life. Everything you've seen about the life of a housewife in consumer society is true. My life and the lives of my friends look exactly like this, if not worse. I would also add that the whole routine is endless. I'm catastrophically short of time. I cannot even spend enough time with my husband or just sit quietly to read a book. All the time I have for myself is when I'm in the bathroom or taking a shower, and that's it. I have tons of business ideas and plans for my life, but I just don't have time or resources to do it all. As you've understood, all the time is taken away by household chores. Every day I just work like a horse without days off and breaks, and no one pays me any money for that. The entire life of a housewife is in cooking and cleaning. And I also keep thinking that my life is not successful and I haven't achieved anything in it. Even though I love my husband and children, I often have such thoughts. Now, after watching this film, everything resonated inside me and just opened my eyes on what my life and the life of every woman in the creative society can be like. I couldn't even imagine such a thing. The creative society gives you a chance
chance to get enough sleep gives you a lot of free time for self-development, acquiring new skills and fulfillment of your desires. The most important thing is that all household chores will be done by robots. No washing, ironing, or cooking. Just imagine robots do all the chores at the snap of a finger. That is everyone's dream, isn't it? Even my children want to live in the creative society. I was scrolling through Instagram the other day and found a photo of a kid from Africa with a poster of the Creative Society. He wants the Creative Society. He supports it and informs about it. Meanwhile, there are adults who know about the Creative Society but do not say anything to anyone. Don't they want the Creative Society? Don't they want to free their women from household slavery so that they can be free and reveal themselves as true members of society? Don't they want us and our children to have a future? I have a question for those people then. Are you idiots? Don't you understand that this is your happiness? I'm sorry for calling these morons the morons, but because of those idiots, I will now have to come home and spend all my time cooking and cleaning after the forum. If it were the Creative Society, I would only have to push a button or say 2 words, but now I have to come home, work hard for hours and waste my personal life, which is already very short for us, people, on cleaning up the mess, feeding my always hungry family, washing the dishes after them, and dirty clothes. I live in such a shithole because of those stupid people who don't understand simple things, that today we can make our world better, more beautiful and safer. I have a question. Why do these morons think that women were born to exist in this household slavery? Yet they dream of being welcomed home by a queen. Right now, I have neither physical strength nor mental energy. Why do I have to live in constant stress and worries? Why do I have to worry whether my child will return from school alive and unharmed, whether there will be a nuclear war, or worry about the uncertainty of tomorrow, and a lot of housework that can never be done? And what awaits me tomorrow? More cleaning and cooking and the same fears? Why do I have to suffer? Because there are idiots who don't understand the prospects of the Creative Society for themselves and for all people. In the Creative Society, all wars or threats to life are impossible. So what should I call those who don't want to build a Creative Society? Friends? They are not friends. They are bastards. They are so stupid that they cannot see further than their own noses. I'm tired of all the worries and anxiety. I just want to be a woman, not a tractor that plows from morning till night. I just want to enjoy life, spend time with my husband and children, develop and always be beautiful and rested. Isn't that bliss? Isn't that a dream? It's a dream that can become a reality. For this bliss to come true, we, the women of the world, just need to inform all the people on earth about the Creative Society. After all, there are only uninformed people standing between us and our wonderful lives. We should remember that if we now have someone around us who doesn't know about the Creative Society, he is the reason that you and I, dear women, remain in this household slavery. In order to get out of it, we only need to inform everyone, because we all want to be free and happy.
So inform everyone you can, whether in the street or in a hair salon, in a store, or at the doctor's, wherever you talk to people. Inform them and support this topic. If you cannot do anything at all, you are sitting at home, write a poster, "I support the Creative Society," and hang it outside your window or put it in your yard. Let people read it. Use every possible way to inform them. Women, I appeal to you. Let's build the Creative Society and finally be free, happy and enjoy life. We deserve it. This is a very timely topic, and indeed, only in the Creative Society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as a wife, and finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now, we are in the first stage of building the Creative Society, which is the informational stage. We are being asked, what can be done right now? We have a simple answer to that question. There is nothing simpler than a small action. You can start wearing a t-shirt with the Creative Society logo on it, a baseball cap, a sweatshirt. Start wearing them to make people aware of the Creative Society. All the designs are now available on the Creative Society website. Tell me, what's the point of buying a branded t-shirt from a well-known company and for your own money to wear their ads in these huge letters? I would rather wear a t-shirt of the Creative Society because I want to live in the Creative Society. I want my children and parents to live in the Creative Society. I want all the people in the world to learn about the Creative Society. And now I would like to welcome Shayla Bonnick, an incredibly talented, creative, beautiful, and most importantly, a person of great heart. Many of you know her as a leading singer of the legendary music band Bonnie M. Shayla is a songwriter, performer, co-producer, fashion designer, author, among other things. Together. Hey, let me tell you something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you it will be okay. We'll find a better way. There's no need to be afraid if we unite today. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We just want to live. We just want to be happy. We hear you loud and clear. No, we don't fear. Society
Today's forum is unique. It's filled with both the awakening truth and the love of those who reach out to humanity through their actions and creativity. Our survival is in unity. We can do it, but only together. This beautiful song has now reached the hearts of many people. It's very inspiring and motivating not to stop, to keep informing people about the creative society. Have you ever thought that if human life is the main value of the creative society, then the top priority of the creative society would be to keep people healthy? Right now, we are 8 billion of patients in the consumerist format. On the one hand, there is a lot of money circulating in medicine. And on the other hand, people are getting sicker and sicker. Pandemics have taken millions of lives. Diseases that are unknown to doctors continue to appear. In this block of our forum, we will look at the situation in medicine through the eyes of a doctor and a patient of the consumerist society format. And also we will learn about the incredible technologies of health improvement and life prolongation, which will be valuable for everyone in the creative society. Our guest today is Mr. Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. My name is Vladimir Razumenko. I am a physician by occupation. That's the main thing in my profession. I am a doctor of medical sciences, professor. I am also an academician of the Ukraine Academy of Sciences and a corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine. By position, I am the chief neuro-oncologist, that is, a neurosurgeon who deals with oncological diseases. I spend almost every working day in the operating room. I perform the most complicated surgeries on the brain in case of brain tumors. Without the development of medicine, it is impossible to further discuss the issue of health of the entire world's population. With the current population of about 7 billion, unfortunately, not in all countries people are able to get adequate medical care. It's a negative moment in the development of the healthcare industry in every country. Medicine today has to be highly technological. Medicine today should be highly effective. And the application of various medical measures should not only be aimed at curing a person, it should be aimed at disease prevention. And there is a serious issue of correlation between our actual life, ecology, and environment and the diseases that occur in the body. Today, technology makes it possible to cope with a whole range of very serious diseases. It concerns all organs, all body systems. But it has to be applied everywhere and in all countries. And today, if something has been invented somewhere and is being used highly efficiently, then it's necessary to share its experience. Each country should gather forums and cover it widely, not keep it a secret. And then together, it will be possible to collectively develop the chosen direction in a specific aspect of a certain disease. It's a significant problem. And another important aspect of the problem in the economic component of medicine. Unfortunately, nowadays,
The economy suffers from a variety of factors. This concerns how an economically developed country uses the resources that it receives at the expense of business, how its enterprises work, and how people use the accumulated balance and accumulated funds for development of healthcare. It is considered that if the economy is high level, then the therapeutic measures must be high level too. And what to do in economically non-developed countries? And what about those countries with wars going on? When there's a discrepancy between the life aspirations and attitudes with those who run a country and who benefit from the wealth accumulation for the sake of their existence. They don't think about humanity at all. This is a major problem as well. A doctor should not make money, but should receive a proper salary, proper conditions, so that he doesn't have to think about everyday routine or that his family is not fed. He should think about applying his professional qualities to treat these or those diseases. Therefore, preventative medicine is an important issue. And such a doctor is a real doctor who pays attention to disease prevention, who makes it possible to prevent the development of any disease at an early stage. A crucial component of our life today is the creative society. We can speak of the creative society only when we match it with the conscious state of society. If society is conscious, if it is not consumerist or parasitical, then the creative society will really allow us to change our planet, change people's relationships, improve medicine and people's health. I think that it is necessary for all of us to unite humanity on earth as one whole in making sure that the creative process is steadily progressing and not halting or regressing. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Today we say with certainty that the medicine of the creative society will provide the most important thing, the protection of a person's health. We already have enough technology to cure all diseases. In the creative society, people will not fall ill at all, and our life expectancy will increase considerably. Let's watch the video. You will be surprised how many diseases can be cured even today, and what technologies exist. We're told about incurable chronic diseases and that there is no way out. Either surgery or taking drugs for the rest of your life. We are milked by playing on our feelings of fear and hopelessness. But let's see how things work in reality. Genetic engineering technologies are already working wonders. Gene therapy affects the human body at the DNA level. This is not a fiction. There are many successful results of its application when patients have been completely cured. You can find information about these technologies in public access by Googling them or by visiting the offices of the development companies. For example, Tessera Therapeutics genetic engineering technologies can already rewrite DNA fragments
eliminating most genetic diseases. Tessera Therapeutics believes that rewriting genes will make it possible to treat genetic defects that are the basis of most modern diseases. Just imagine, people will be able to get rid of diabetes, cancer, asthma, hypertension, joint diseases, allergies, heart attacks, autoimmune diseases, and many others. To date, leukemia is often a fatal verdict for a child, accompanied by long periods of suffering, and it is a terrible grief for his parents. But this is only because advanced technologies are not used, but they do exist. The last chance for the patient with an aggressive form of leukemia was TALENT technology, which was used in London Hospital back in 2015. The girl's life was saved with the help of genome editing. The horrible word HIV is in itself a complete doom. Matt Chappell from California, USA, has lived with HIV for most of his adult life. But after ZFN therapy, affecting the damaged gene, he stopped needing antiretrovirals. This is not all. Not only acquired, but also congenital pathologies can already be corrected. Today, it is a terrible misfortune to give birth to a child with severe vision loss caused by retinal diseases. This inevitably leads to complete blindness. Up until gene therapy, there was no cure. In 2017, Spark Therapeutics registered a gene therapy injection drug. Thanks to these technologies, 27 patients from the US have already regained their sight, and very quickly. After treatment, these children saw stars for the first time. But this is just the beginning. Another example of what technologies we have today is nanorobots. Nanorobots, or nanobots, are robots of the size comparable to a molecule less than 100 nanometers, with a function of movement, processing and transmission of information, and execution of the embedded program. Even if you have not yet heard about how nanotechnologies work in healthcare, you are already actively using them in your smartphone. It is thanks to nanotechnology that your smartphone keeps its charge for many hours. 4G, 5G mobile networks, microprocessors, all these are nanotechnologies. The cost of making a nanorobot is only a few cents, and the time to assemble it takes only a few minutes. This will significantly reduce the cost of medical services. And due to the microscopic size of nanorobots, a person will not experience any discomfort or pain during treatment. You just drink a glass of water, and nanobot doctors will perform treatment where it is necessary. To date, nanorobots can already destroy cancer cells without harming the body, deliver drugs to all tissues and organs, remove blood clots, thus preventing heart attacks and strokes, improve the quality of diagnosis and detect any disease at its earliest stages, or even predisposition to it, destroy pathogens of any infectious diseases, including the fatal ones. An amazing technology was discovered by Iran's academician, Peter Petrovich Gariev, and his colleagues. The method allows us to read information from healthy DNA using a laser and record it in the form of a sound spectrum. When the sound wave affects a diseased organ, the damaged DNA code is restored and a patient fully recovers. How long do you think a person can actually live? Prolonging a person's life is already possible. Nowadays, our long livers look like this. But prolonging life is not only an opportunity to live more than 100 years without diseases, but also to live precisely in the young body. The key to youth and longevity has already been found. Stanford University has developed technology for genetic age reprogramming
and obtained a license for its use. Just imagine, at 100 years old, you will be able to do sport and be in the same physical shape as you were when you were 25. These are just some of the technologies that exist. They are not available to you today because today, your life has no value for anyone but you. Any person in the consumer's format faces diseases and loneliness. But everything will change in the creative society. All advanced medical technologies will be available to everyone, even during the transition period to the creative society. Artificial intelligence technologies will combine the knowledge of specialists from all over the world to help make diagnosis accurately and restore people's health. Such notions as medical error, misdiagnosis, complications from treatment, and side effects will disappear. Healthcare will quickly become exclusively preventative, whereas in a creative society, people will stop getting sick at all. Every home will have a revitalization capsule. When you enter it, you will be able to scan and repair your body in a matter of minutes, and also correct your body shape as you wish. At last, you will be able to eat your favorite dishes and desserts without harming your health. A pleasant bonus in a creative society will be prolonging life beyond the species limit. Even at 125 or older, people will look and feel like they are 20 years old. You will be able to make all your dreams come true. Climb the Great Wall of China. Walk 50 kilometers across the South Island of New Zealand in one breath. Run with your grandchildren and dance salsa until dawn in your 60s or 90s. To date, healthcare is a business, and health is an expensive commodity that many people cannot afford. It's time to make healthcare high quality and free for all. Eternal youth and good health is your reality in the creative society. Share this information with everyone right now. When one hears the benefits of a person in the creative society, I, for myself, want to say that I want to live in such a society. Creative society is the real dream for everyone. To create a creative society, we must unite on the idea of a better society. We are not uniting on possessions, cultures, or houses. Unity does not mean that we not all now start wearing the same type of clothes, listening to the same music, or thinking the same way. No, we unite in our diversity only on an idea, the idea of a better society. A society where human life comes first and where every human being is provided with the dignity of life from birth. A creative society is beneficial for every human being. And that's why I'm happy that the creative society is also supported by the Roma. Bogdan Chayanok from Poland will tell us about his vision of the creative society. Let the gracious God grant everyone goodness and happiness. Let everyone be healthy and happy. Roma all over the world. Be healthy and happy. My name is Bogdan Trianek. I'm a Rome from Poland, a member of a government commission that works for integration. Love for our neighbor, for brothers and sisters, and not only for the Roma. Dear ladies and gentlemen, I am honored to be a speaker together with you today here at this international forum where I can share my love and warmth for my Romani brothers and sisters, but not only for my Romani brothers and sisters, but for all people with a good heart. And I know that people with a good heart are watching and participating today. People who strive for big changes when love, tolerance, and nature will reign. The world is beautiful, it's
just that people spoil it, but thanks to all of us tremendous support and great love, this world will become more beautiful. What is the use of a tree without leaves? It withers away. So if we all seek together and speak the same words in one voice, and we all say, stop violence, stop destroying the world and nature, our world will become more beautiful. We live all over the world, Roma brothers, we have our own and our love. We certainly feel great in our countries, but my appeal to my brothers around the world is that we should be able to find ourselves and learn. Ladies and gentlemen, it's a great honor to say today that I have a favor to ask. It is a request of a pious man to my Romani brothers and to all of you who hear us, who participate in this beautiful forum. We must unite with all our hearts. Why do we unite with you? Because we can see that the creative society is doing a wonderful work in the name of love. I would like to sincerely ask all of you, my brothers, to change things from now on. We want and desire it. Let's not pretend. Let's not be indifferent to people, to the world, to animals. Let's not pretend that we don't care, because I know that you and I care, because this is your future and my future. My grandmother had always told me about great love and tolerance, and suddenly I came across the creative society that talks about freedom and love, about a free world. This is what every human being wants, and especially we, gypsies, because we, gypsies, are free people. No one has ever forced us to do anything, and if they did, we did not give in. Together with you, we will build a wonderful world. The fact that today we join together around the world at this international forum is proof of that. And my Roma brothers around the world, I, as a Roma brother, ask you to join in. It is necessary to unite so that we can be like one fist, one force, because our strength is in unity. When we all get together, we will change the world. У вас может возникнуть вопрос, кто же все эти люди? А действительно, кто мы? Мы — это человечество. You may be wondering, who are all these people? And really, who are we? We are humanity. The creative society is all of humanity. It is not some saintly call. It is a society where everyone has a place. And when I say all, it means all. We are on every continent of our planet. We are all volunteers, regardless of age, status, profession, or hobby. We all contribute to the common future of humanity in our own time and our own way. We are bikers and businessmen, bankers and teachers, criminals and generals, construction workers and terrorists, politicians and taxi drivers, scientists and sailors, students and athletes. There are members of all religions and sects among us. And yes, there are even Freemasons among us, and they too are doing a lot of good and working for the common good of the whole of the people. Even alcoholics and drug addicts share our views. Are they not human beings? Don't they want a normal life? Whoever you name, they will be in our ranks anyway, from the Talibs, the orcs, the banderas, the communists, the fascists, and the mafia. I will tell you more. There are even Democrats and Republicans among us. Do you know why they are? Do you know why we are so divided? Because before we didn't have one common idea, we didn't have the creative society. The consumerist format has fragmented us all and put us in our own niches, forced us to get our own bread in different ways, turned us away from each other in pursuit of personal happiness. There are true heroes and geniuses among us. They've been working for years for the good of humanity. Some have already given their lives for the survival of humanity. The consumerist format does not allow us to say their names because the consumerist format will inevitably exterminate them. Yes, we are heroes, but we're also the outcasts of today's. Take the Taliban, they are terrorists. Why did they have to take up arms?
Have you ever asked yourself this question? We do not support terrorism or justify their methods, but right now in Afghanistan, our members are translating this form for the same Taliban who have taken up arms under compulsion of the consumerist format, because they dream of being humans, of fulfilling the precepts of Prophet Muhammad. They dream of the creative society. I will shock you once again. There is even the all-to-know common mafia among us: Yakuza, Triad, Sicilians, Russians, Mexican, and American. And do you know why they are our members? Because they are human beings, and under different conditions they would be true people. But now they are victims like the rest of us. Our law says they are criminals, and we say they are victims of the consumerist format. In other conditions, they would be heroes. In the consumerist format, they will risk their lives to. In the consumerist format, they risk their lives to earn their bread. And in other conditions, they would risk their lives to improve everyone's life. They would be heroes. They are risk takers. They have a risk character. They are not afraid to risk life, to sacrifice their freedom and their lives. But for what? Today, for a piece of bread. In other conditions, in the creative society, they would be explorers. The most extreme and dangerous professions would be for them. Every person on the planet would know and be proud of them. Let's be honest. Many people have been pushed on the criminal path into the ranks of the mafia as a protest against the injustice of this consumerist format. Isn't that a crime? This whole consumerist format just change the conditions and billions of people will get a chance for a better life. A life without humiliation and oppression, a life of quality and justice for all. Where are these people? What are these people strive for right now? Has anyone looked into their souls? No one. No one but us. Now they are persecuted by society, but in the consumerist format that has made them to be like that. The consumerist format has divided us, made us banderas, fascists, communists, anything but humans. The consumerist format has divided us as much as it possible, but we want to unite and become one civilization. When one lives in prosperity, there is a tomorrow, and the whole world is beautiful. All the best will flourish in every human being, and that's the point of the creative society, not only to save humanity physically, but also morally. And we will not have to protect pedophiles condemning children to abuse. We will not have to fight for gender identity. We will be able to live and enjoy life, because life is given once on this planet. And life is given to humans for much more than just to quarrel or die for someone else's interest. For someone to steal another billion, tens of thousands of people must die. Isn't it nonsense? What are we fighting for? For someone else's ambitions? When the whole world belongs to humanity, everyone will take care of the common good, and there will be no need for quotas on ecology. We will live in symbiosis with the planet, not as parasites, but as symbiotics. The planet will benefit from us. The planet will benefit from us, and the planet will benefit us. They are saying now it is necessary to reduce the number of people because we're eating away the planet. But believe me, in the creative society, nobody will eat anybody. There will be enough food and resources to feed 50 billion people, because the goals that we set for humanity are ambitious, realistic, and achievable, unlike the goals that the consumerist format set. In the consumerist format, the main thing is consumption. We want to live in a beautiful future where we are united, where we are a united civilization. We want to save not only humanity, but the human in each of us. Thank you. We're all people. We're all united by the fact that we want to live, but live to live decently, safely, and happily, to live in creative society, because in creative society, everyone will benefit.
And right now, I would like to pass the floor to American politician, 2020 presidential candidate, ambassador, and International Human Rights Commissioner, Robbie Wells. Hello, ladies and gentlemen. I am honored to participate in this landmark international forum. I'm grateful for the opportunity to reach out to people around the world, to you, dear friends. I agree with our distinguished speakers. Our climate and geopolitical situation are very urgent. Even in my home country, the United States, the economy is collapsing rapidly. Record inflation is eating away at our salaries and savings, and more people are left on the streets because they can no longer pay their rent. Think about it. There is an unprecedented increase in child poverty in the United States right now. My heart bleeds to realize how many children will go to bed hungry tonight and how many more will go to bed hungry tomorrow, because the situation is only getting worse. And this is all in America. In America, children go to bed hungry. It's not somewhere in developing countries. It's already happening here in the United States. All this despite the fact that we are the most developed nation in all the world. And we no longer feel safe in our country. When sending children off to school, every one of us is afraid, and we pray. God forbid that nothing happens to them while they're away, and we hope that they come home alive. The polarization of society has reached its climax. We are divided. We're pitted against each other, and we are afraid of our neighbors. And all of this is happening at a time when we absolutely must be united, because the climate is wiping us Americans and our beautiful country off the face of the earth. These conditions in which we find ourselves leave us no choice. We can no longer stand by and hope this nightmare will go away on its own, like a bad dream. It will not go away. And we will face the inevitable end unless we act together. This is the first time humanity has found itself in such a critical situation. So we need a new action plan. The existing programs will not save us. Can I let you in on a secret? We politicians, we're sick and tired of proclaiming our endless new action plans while realizing they don't work. How much longer can we keep bad-mouthing each other while fighting for our office? We don't have time for these political games. We need a feasible working model that will unite our fragmented society and defeat the undefeatable. And I mean the climate. Because no matter how much we are pitted against each other, we all have the same enemy, which is the climate. It is time for all of us, all of society, to grow up and stop being passive. The price of our inaction is human life, our lives. I'm an American. I grew up in America. I owe what I am today and what I have achieved to my country, to the people of this country, to my parents, and my teachers. It is time to give back to my country, which is now in great need of a new creative format of politics. But first of all, I am a man, a resident of our shared planet Earth. We are all inhabitants of this planet, connected closer than the people of one nation. We are linked by an inevitable thread of humanity. It is this quality together with our determination and persistence that will help us to build a creative society the entire world over. With all of this in mind,
I would like to announce that I am taking a couple of months to make a decision on whether we will run for president in 2024. Expect that decision by the 1st of next year. The cornerstone of my election, if I choose to run, will be the building of the creative society, because only the incorporation of the 8 pillars of the creative society into the Constitution will guarantee a secure, stable, comfortable, and happy life for all people. Why the 8 pillars, you may ask? Well, I often travel around America and talk to voters. And believe me, everything they want is already spelled out in these 8 pillars, because the people themselves formulated them. And I'm all for what society chooses. Look, at this global crisis, it is evident to me that the creative society is the only chance to build a wonderful world for all, the world that each of us dream about. No matter how great America is, we cannot overcome the climate alone. So, as was said above, to defeat this common enemy, we must put aside our differences, reach out to each other, and together choose the creative format of society. I will stand for the creative society to the end. And when I win, if I choose to run, the presidential election in 2024, and I know I will win, I will build a creative society, not just in the United States, but around the entire world. One more thing, and you can bank on these words right here. I will put Putin and Xi Jinping around the same table, and they will accept the creative society. And together, we will surely save our planet. May God bless each and every one of you around the world watching tonight, and may God continue to bless these United States. Wow, this is a very honorable promise, and absolutely all people want to live in the creative society, but many don't know about this format yet. At today's forum, we described in detail how the creative society will benefit each individual. Now, let's watch a video and hear from the people themselves. I dream of living in a world free of diseases. My dream world where everybody's treated fairly, everybody's treated equally. I believe that something like universal basic income would be quite reasonable. Everyone has the right to water, safety, an education, and either a supply of food or the means to provide food for their families. It seems to me that once a person is born, he or she should already be provided with good living conditions, housing and food. I feel they should have like basic necessities, so like food, water, obviously like electricity, status, health, health aside, because without health you can't do nothing. No. Yeah, and just free healthcare as well. It would be great if every person on this planet already had housing at the moment of their birth. If everybody could work with what they love, I think we could see a huge difference in society. By birthright, a human should have the freedom of moving around freely. There shouldn't be borders, because I believe that God created the earth and sky for everyone, but people began to divide it. I think every person should be given a fair right. A child should
should be able to have a loving home, I think. And maybe the government shall support families that don't have that much money on their child. I think there should be benefits to help mothers and raise kids. First of all, it has to do with freedom of movement. Primary education should be free. It's a basic fundamental human right. Free health benefits still 5. Because some parents, they're going through crisis. Don't fight each other. I think it's important for people to have clean water and good food. Of course, a peaceful world. Ideally a world without diseases, so that we could cure as many diseases as possible, the whole spectrum of diseases. So everyone should have a roof over their head, everyone should have employment, access to free education, access to free healthcare. In an open and technological society where you should probably work 3 or 4 hours a day and do only a job that is interesting to you. In fact, nowadays, there's enough technology for people to not work at all. A world where collaboration is like the main intention and not like just competition. A society that gives the tools for anybody to develop. A society where everyone can fulfill their potential. Opportunity. Yes. A chance of a happy life. An education, a safe home, secure home, and equal rights. Old age should be decent. Pensions should be decent. To live in the world where human life is the most important thing. Yes, I think so too. Everyone must have access to information, and it mustn't be distorted by those in power. Mass media should be free. Well, I suppose for human life to be a priority, you have to look after the environment that you work in. So resources have to be shared, nurtured, invested in for everyone, not just the wealthy few. The government should take care of everybody, and everybody should be living in peace. Want to be friendly, to cooperate with each others, not kill each others. There must be economic independence. It is necessary to ensure that laws are obeyed and human life is respected. All the money that we are investing in army, we have to invest it into education. No hunger in the world. Peace in the world and relationships between people should be friendly. For me, it is a world without war. An alternative world, a world without nuclear power, a world without bombs and mines. I would like to live in a world free of crime, you know, where the government fulfills its promises. Do you support the creative society? Of course, I'm as active as a participant as you are. The creative society is what we are building today. Definitely, yes. Definitely. Yes, of course. Yeah, I support this. I would definitely support creative society. Of course I support it. I believe it would make the world a much better place. I don't just believe, I'm sure. It's important for the whole world. That's a fantastic initiative. Yes, I'm definitely going to participate. I want the creative society, a society of kind, open and bright people, to be for the future generations. And I would like it for us too. Sure, because I'm actually already doing it now. Deep inside, we all know what is right. At some point, we shifted responsibility onto others because we thought they could save us. But the only ones who can really save us is ourselves. Of course, I want it too. Who wouldn't want it? We all want to live in such a society. Yes, absolutely. We are supporting and we are dreaming about like this society. Yeah, definitely. Yes. Yes, I would definitely want it. I dream about it. Do you support the creative format of society? No doubt. I surely do. Yes, definitely. I'm definitely on board, 100%. Of course, I would like to live in such a creative society. Sure, definitely. I think all reasonable people support it. Of course there will be a new world, and I definitely support it. Not only with words, but also with deeds and actions. Of course. I believe it's the only way for us to survive in the world that we have created. Absolutely, yes. I want all people to start living in the creative society as soon as possible, because I believe
that it's our chance to really live a happy and peaceful life. I would, obviously, and more importantly for a person like me of my age, I'd like my children and grandchildren to have a society like that. So that's why I would be very supportive. That's what we're supposed to have, an equal and creative society that spreads resources for all. Of course, I support it. I'm a mother and I will soon become a grandmother. I surely support it. And who doesn't? If such a format of society exists, any reasonable person would certainly support it and aspire for it, regardless of its name. Creative society, good society, happy society, or whatever. Do you support the creative society? Absolutely. We also support it. A creative form of society, we do support it. Yeah, of course I do. Yes, definitely I support the creative format of society. I love creative society. Creative society is in me. I am creative society. I definitely support that, like definitely 100%. For many, many, many reasons. But, you know, everybody will say, oh, yeah, cool, we work less. No, it's not about working less, it's about achieving more. Naturally. Well, yes, I think that's what many people want and actually what everyone wants, what everyone is somehow striving for. That would be the greatest society. If we all really become united, there would be no evil. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly and loudly to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread this information. Now you can tell everyone about the creative society, and in this way, we will form an electoral request to politicians. At the next election, we will vote only for politicians who support the creative society. And if there are no such people, then we will not vote for anyone. This is the only way we will change the format of society to the creative one, peacefully and quickly. There is nothing more valuable than human life. It cannot be returned or bought. Let's restore our right to life. And now, we want to present the song prepared for us by participants of the Creative Society from Africa. The song is called We Will Rise. We will rise, we will rise, we will rise, we will rise, creating society. We will rise in power of unity. We will rise. Every day you wake up, you want the news and ask yourself, why? It's one day the hatred and all the fight comes to an end. If one day the killing and greed is over, if one day humanity's mind is sober, every time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we are walking on the streets. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. We will rise. What we want is a peaceful life. It is 10 billion of us. We want to live, not just survive. The power is within us. Creating society, we will rise.
We would like to thank the very famous singer and very talented Dr. Phyllis Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society technology. Technology, as we know, should always serve to improve our lives. But today, it's impossible to achieve this. Even though we live in a time of technological breakthroughs, we are limited by the consumer format. Only by joining together will we move to a level of technology that you could never even dream of. Free energy, life extension, smart and technological cities, nano robots, robotic assistants and various drones, artificial intelligence systems, and much, much more. There's simply not enough time to list all the technologies. So let's watch a video about the essential technologies available to everyone in the Creative Society. कोई भी पर्याप्त रूप से उन्नत तकनीक जादू से अप्रभेद्य है। 8 लाख। आपका सबसे बड़ा सपना क्या है? जब यह सच हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? एक बड़ा सुंदर घर, एक सुपर मॉडर्न कार, बहुत सारी यात्रा। क्या आप कम काम करना चाहते हैं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं? आप व्यक्तिगत रूप से क्या सपना देखते हैं? क्या होगा अगर पृथ्वी पर हर व्यक्ति के सपने सच हों और रचनात्मक समाज आ जाएगी? आपका जीवन कैसा होगा? क्या आपने अभी तक इसके बारे में सोचा है? रचनात्मक समाज में मनुष्य सबसे मूल्यवान तत्व है। इसलिए पहली चीज जो विकसित और लागू की जाएगी वह है तकनीक जो आपको कठिन, भीषण और खतरनाक श्रम से मुक्त करेगी। इसे रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किया जाएगा। आजकल उपभोक्तावादी प्रारूप में उन्नत तकनीक की शुरुआत आपको बिना काम के छोड़ देगी, लेकिन रचनात्मक समाज में यह अलग होगा। $10,000 प्रति माह की सार्वभौमिक मूल आय के अलावा आप अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं और उस गति से काम कर सकते हैं जो आप सहज महसूस करते हैं। दिन में 4 घंटे से अधिक नहीं, सप्ताह में 4 दिन। और यदि आप एक उद्यमी या व्यवसायी हैं, तो बिना किसी चिंता के अपना समय निर्धारित करें, क्योंकि आप और आपके कर्मचारियों दोनों की यूनिवर्सल बेसिक इनकम है और सभी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियां और रोबोटिक्स आपके लिए हैं। आज के वक्त में रोबोट पहले से ही कृषि, धातु विज्ञान, खनन, मोटर वाहन और अन्य उद्योगों में सबसे अधिक श्रम गहन कार्यों को करने में सक्षम है। और यहाँ तक रेडियोधर्मी कचरे के निष्प्रभावीकरण में भी। यदि आप काम नहीं करना चाहते हैं तो काम न करें, आप इसे वहन कर सकते हैं, लेकिन आप कब तक सोफे पर लेट पाएंगे? 1 सप्ताह, 1 साल, आपके पास वो करने के बहुत सारे अवसर होंगे जो आप पसंद करते हैं और एक ऐसी आय अर्जित करते हैं जिसका आप पहले केवल सपना देख सकते थे। आप नए पेशे और कौशल सीखने में सक्षम होंगे और जितना चाहें उतना खुद को शिक्षित करेंगे। शिक्षा में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा जो सीखने की प्रक्रिया को अति रोचक, आसान और संवादात्मक बना देंगी। आभासी वास्तविकता, चश्मा और होलोग्राम आज पहले से ही उपयोग किए जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक जिसे सबसे उन्नत तकनीक के साथ उन्नत किया जाएगा वह है मानव के जीवन की सुरक्षा और उसकी खुद की सुरक्षा। इस प्रकार आप हर जगह सकुशल और सुरक्षित रहेंगे। आप देर रात घर आने से नहीं डरेंगे। आप अपने बच्चे को बाहर अकेले भेजने में नहीं डरेंगे। आप दुनिया में कहीं भी जा सकेंगे और आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर सेफ सिटी सिस्टम पहले ही बनाए जा चुके हैं। वे आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया दे सकते हैं, नागरिकों और आगंतुकों की हर दिन रक्षा कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं और यहां तक अपराधों को भी रोक सकते हैं। सड़क के बुनियादी ढांचे में इंटेलिजेंस सिस्टम पहले से ही पूरे शहर में यातायात को नियंत्रित करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम हैं। वे ट्रैफिक जाम को रोक सकते हैं, कार को एक पैदल यात्री के बारे में संकेत भेज सकते हैं जो सड़क पर कूदने वाला है, और टक्कर होने की स्थिति में ब्रेक सक्रिय करके टक्कर से बचाया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे स्मार्ट शहर में घर जा रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑटो पायलट एयर टैक्सी में आप वीडियो कॉल के जरिए चैट करते हैं या अपनी पसंदीदा फिल्म देखते हैं। आप अपने सुंदर बड़े घर में जाते हैं और आपके पास पहले से ही पूरे परिवार के लिए गर्म खाना आपका इंतजार कर रहा है। स्मार्ट गैजेट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले ही कपड़े धो चुके हैं, इस्त्री कर चुके हैं, सब कुछ साफ कर चुके हैं और भोजन वितरण का आदेश दे चुके हैं। फिर रात का खाना किसने बनाया? होम रोबोटिक रसोई पहले से ही आपके रेफ्रिजरेटर को स्कैन कर सकती है, आपके अलमारी में सही गैजेट ढूंढ सकती है और किसी भी विश्व व्यंजन
वर्जन का भोजन अपने आप बना सकती है। अद्यतन संस्करण डिशवॉशर में गंदे व्यंजन डालने और अलमारी में साफ रखने में सक्षम होगा। और ये नवाचार समाज के उपभोक्तावादी प्रारूप से रचनात्मक रूप में संक्रमण अवधि के दौरान आपके लिए पहले से ही उपलब्ध हो जाएंगे और कुछ वर्षों में रचनात्मक समाज में और भी सुखद आश्चर्य आपकी प्रतीक्षा में होंगे। भोजन, कपड़े और आपकी जरूरत की हर चीज के प्रतिकृतियां दिखाई देंगी। क्या आपने कभी सुना है कि रेप्लिकेटर क्या होता है? यह एक ऐसा उपकरण है जो एक हैमबर्गर से लेकर टी शर्ट या झुमके प्राथमिक कणों से आपकी जरूरत की वस्तु बनाता है। ऐसा करने के लिए यह वस्तु के बारे में जानकारी और थोड़ी मात्रा में ऊर्जा का उपयोग करता है। कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने पहले ही भविष्य की तकनीक तैयार कर ली है, एक प्रिंटर जो अणुओं से पेय बनाता है। कार्ट्रिज प्रणाली लगभग बिना किसी अपशिष्ट के हजारों प्राकृतिक पेय बनाना संभव बनाती है। और यह तो सिर्फ शुरुआत है। मैसाचुसेट्स और ये स्नातकों द्वारा नैनो ट्यूब प्रौद्योगिकी की सफलता की खोज उन्हें आणविक स्तर पर पदार्थ में हेरफेर करने और पहले से ही सीधे हवा से गैसोलीन और अन्य ईंधन प्राप्त करने की अनुमति देती है। जब यह तकनीक हर जगह होगी तो हमारा भविष्य कैसा दिखेगा? मैं जो चित्र कर रहा हूँ वो एक मिनी फ्रिज के आकार जैसा कुछ है जो अनिवार्य रूप से अपशिष्ट पदार्थों को ले सकता है और उन्हें उपयोगी उत्पादों में बदल सकता है, जैसे ईंधन और निर्माण सामग्री, या यह CO2 को हवा से बाहर निकाल सकता है और इसे ईंधन या निर्माण सामग्री। रेप्लिकेटर के उपयोग से न केवल हमारा जीवन आसान होगा बल्कि हमारे स्वास्थ्य में भी काफी सुधार होगा। हम कृत्रिम खाद्य पदार्थ खाना बंद कर देंगे, जैसा कि हम अभी करते हैं, जिसमें बहुत सारे हानिकारक रासायनिक योजक और स्वाद बढ़ाने वाले होते हैं। रेप्लिकेटर का भोजन वास्तविक, बहुत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगा। यह प्राथमिक कणों से बना है, प्राकृतिक उत्पादों के समान। अंत में हम वास्तव में प्राकृतिक भोजन का स्वाद याद रखेंगे। बेशक यदि आप खुद खाना बनाना पसंद करते हैं तो आप अपनी खुशी के लिए खाना बनाएंगे, शायद एक प्रसिद्ध शेफ के साथ भी। रचनात्मक समाज में आपका स्मार्ट हाउस एक ऐसा घर है जो न केवल काम और भोजन का ध्यान रखता है बल्कि आपका और आपके परिवार का भी। यह आपके स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी करने में सक्षम होगा। उदाहरण के लिए ध्वनिक ऊतक पहले ही विकसित हो चुका है। यह आपके दिल और सांसों की वास्तविक समय में आपके द्वारा सूचना दिए बिना निगरानी कर सकता है। आप इसके माध्यम से बात भी कर सकते हैं, फोन का जवाब दे सकते हैं और अन्य लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं। स्मार्ट हेल्थ फंक्शन के साथ स्मार्ट शौचालय परीक्षण करेगा और परिणाम कृत्रिम बुद्धि और असामान्यताओं के मामले में आपके डॉक्टर को भेजेगा। यह आपको सलाह देगा कि आप अपने आहार को कैसे समायोजित करें। यह आपको बताएगा कि आपके लिए किस प्रकार का भोजन अच्छा नहीं है और आपको कुछ बीमारियों के जोखिमों के बारे में चेतावनी देगा। जब आप कपड़े पहन रहे हों तो स्मार्ट मिरर आपके स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण बातों को ट्रैक करेगा। यह आपके बुजुर्ग माता पिता को डॉक्टरों के संपर्क में रहने में मदद करेगा। यह आपकी त्वचा का भी ख्याल रखेगा। यह समय पर समस्याओं का पता लगाएगा और आपके लिए सही उत्पाद चुनने में भी मदद करेगा। रचनात्मक समाज में सुंदरता के लिए भी सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। आप मिनटों में अपना मैनिक्योर करवाकर और अल्ट्रा फास्ट रोबोट द्वारा अपनी पलकें बनाकर समय बचाने में सक्षम होंगे। या वर्चुअल ड्रेसिंग रूम में कपड़ों पर कोशिश करें। यकीन है कि आप इसे पहले से ही पसंद करते हैं। आगे क्या होगा इसे देखो। ईंधन मुक्त जनरेटर जैसे ऊर्जा नवाचारों की शुरुआत के लिए धन्यवाद। घर पूरी तरह से स्वायत्त होगा। कोई और उपयोगिता बिल नहीं, हीटिंग के लिए भी नहीं। रचनात्मक समाज में सब कुछ वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर सुधार पर केंद्रित होगा। कल्पना कीजिए, आपको अपनी कार या घरेलू उपकरणों की मरम्मत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ... वे टूटते नहीं हैं। स्वादिष्ट लंच के बाद आप क्या करेंगे? क्या आप अपने पसंदीदा बैंड के संगीत कार्यक्रम में जाना चाहते हैं? सुपरसोनिक ट्रेन आपको मिनटों में वहां पहुंचा देगी क्योंकि यह 1000 किलोमीटर घंटा से अधिक की गति तक पहुंच सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश सक्रिय रूप से वैक्यूम और चुंबकीय ट्रेन प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं और वे इस भविष्य की तकनीक में नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। क्या आप निर्जन द्वीपों पर कहीं छुट्टी बिताना चाहते हैं या ग्रह के दूसरी तरफ किसी मित्र से मिलना चाहते हैं? पहले से ही आज नासा व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मूक सुपरसोनिक विमान विकसित कर रहा है। इससे उड़ानों की अवधि कम से कम आधी हो जाएगी। और यह सिर्फ शुरुआत है क्योंकि रचनात्मक समाज में अंतरिक्ष तकनीक पृथ्वी पर भी लोगों की सेवा करेगी। आप न केवल जल्दी बल्कि बिल्कुल मुफ्त में दुनिया में कहीं भी पहुंच जाएंगे। कोई वीजा नहीं, कोई नौकरशाही नहीं, सभी को आवाजाही की पूरी आजादी होगी। दुनिया के हर कोने में आपका स्वागत होगा। एक दुनिया होगी, कोई युद्ध नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। हमारे पास अब लड़ने के लिए कुछ नहीं होगा। सच्चे मानवीय मूल्य अंततः समाज में लौटेंगे। अत्याधुनिक तकनीक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना सभी कचरे को ग्रह से साफ कर देगी।
आज भी नवाचार उद्योग में बार बार उपयोग के लिए कच्चे माल में अनसोल्ड कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल करना संभव बनाते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रचनात्मक समाज में कौन सी बड़ी संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही हैं। कचरा सबसे मूल्यवान कच्चा माल बन जाएगा, क्योंकि रेप्लिकेटर तकनीक की शुरुआत से कचरे और अनावश्यक चीजों को प्राथमिक कणों में पूरी तरह से तोड़ने में मदद मिलेगी और फिर घर छोड़े बिना उनसे हमारी जरूरत की हर चीज प्राप्त करें, भोजन और कपड़ों से लेकर गैजेट्स तक इत्यादि। हमें अब जीवित रहने के लिए ग्रह को नष्ट करने और जानवरों को मारने की आवश्यकता नहीं होगी। रचनात्मक समाज में हम फिर से स्वच्छ हवा में सांस लेने, क्रिस्टल क्लियर पानी पीने और महासागरों और जंगलों की प्राचीन सुंदरता का आनंद लेने में सक्षम होंगे। क्या आपने तय किया है कि आप रचनात्मक समाज में क्या करेंगे? क्या आप लंबे समय से अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का सपना देख रहे हैं, या अपना करियर बदल रहे हैं, या आप काम के बाद दुनिया के सबसे अच्छे समुद्र तटों पर सर्फ करना सीखना चाहेंगे? दोस्तों के साथ यात्रा, या हो सकता है कि आप साधारण दिखने वाली चीजों का सपना देखते हो ताकि आपके माता पिता सुरक्षित रहें और लंबे समय तक जीवित रहें, ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें, और यह कि आप स्वयं कि आप बूढ़े नहीं होंगे और 100 वर्ष से अधिक जीवित रहेंगे। रचनात्मक समाज आपके सपनों से बेहतर है। आपके पास कुछ ऐसा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपकी आवश्यकताओं पर केंद्रित समाज है। यह सर्वोत्तम तकनीकों का कार्यान्वयन है, दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाएं, सब कुछ आपके लिए। अपने सपने की कल्पना करो। यह रचनात्मक समाज में एक वास्तविकता बन जाएगी।
use new technologies. It will help to solve such a global problem as the food crisis. This problem is affected by two factors. One of them is like one of them is economic, which will be solved by the new economic model of the creative society. In the creative society, there will be no poverty, no crisis,